ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚಿನ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಪಿಚ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು. GSB प्रीमियर लीग 2026 हाजी फर्स्ट मॅच आचे टॉस जावचार आसा ताचे पाशी फुडें आमगेल्या थंडाचे गोपी भटमाम कार्यक्रम आरंभ कोण दिवका देवाल उडगास कोण दिवका आमकां म्हणून मी निमगून घेता आसाची. GSB प्रीमियर लीग हाजी फर्स्ट मॅच आचे टॉस जावचार आसा कोडियाल सुपर किंग्स वर्सेस अवतार्स मल्पे युनायटेड. शिवण्णा तशेंच आमगेल्या क्रिकेट टीम कमिटीचे पुरो जनान येद्र येवका म्हणून निमगून घेता आसाची कॉल करता आसाचा अवतार्स मल्पे. चेसिंग सुपर किंग्स घेतील आसा असं सांगता. चेसिंग करता सर. नवे ग्राउंड नवे जागो वार खंयचे सायड येता असं कळतना चेजिंग घेवच्या कारण कसं टॉस विन जाल्यार ऑलमोस्ट सकट चेज करता ती म्हळ्यार टार्गेट म्हणून आराम खेळत की मारून खेळत की म्हणून करचे का नवे ग्राउंड तशी एक चेस कोण पळोवया म्हणून फर्स्ट. ओके ऑल द बेस्ट. तशी मल्पे टीमाच्या येद्र येवका पुढली वर्साचे विनर्स आणि आजी फर्स्ट मॅचान तू बॅटिंग करता सच तुम्ही कसं केलं बॅटिंग की चेजिंग. ॲक्च्युअली आम्ही चेजिंग करता म्हणून आशिल्ले की टॉस हिन्नडे जाल्यार गेम म्हणल्या नंतर प्रत्येक आम्ही प्रयत्न करता जय मेळटा म्हणजे विश्वास आसा. आणि पिच पळयतना कसं दिसतं पिच्च बार लायक जाला मागीर यूथ ऑफ GSB आमी मस्त थँक्स म्हणटा तेका म्हळ्यार आमगे GSB प्लेयर्सांक इतलो टुर्नामेंट आयोजन करचे व्हडले विशय हाजे खातीर मिगेल तर्फेंत हृदयपूर्वक धन्यवाद दितास. आणि प्लेयर्सां खातीर एक महिन्या भितर ग्रास जालें कितले खुश आसा. निजान व्हड विशय नरेशन फस्ट निमगे जाल्यार ह्या फाटी ग्रास करता त्यो हाडना म्हणून तांणी प्रयत्न करता ते म्हणटाना म्हाका आश्चर्य जालें जाल्यार आमगेल्या प्लेयरा खातीर तांणी इतलो व्हड स्टेप घेतिल्ले निजान व्हड विशय. ऑल द बेस्ट दोन टीमाक रेडी जायाची. हॅव अ ग्रेट मॅच. थँक्यू सो मच. तशेंच नरेशणा फर्स्ट मॅचाचे एक विषय उरलो का शांत कुदरू फर्स्ट मॅच जावो मागीर उलया म्हळ्यार कसले तयार ना म्हळ्यार
एक धंची वर्सा GPL हांग करक म्हणून म्हळ्यार आम्ही सह्याद्री ग्राउंडात करचे मंजुनाथ भंडारीन आमकां सह्याद्री कॉलेजा चेअरमॅनान मस्त हेल्प केलेलं आसा पुढतुकून आम्ही मॅच करूक कारण मस्त जन आसाची एक वेदव्यास कामतिले सपोर्ट बॅकअप ना जाल्यार साध्य नाशिल्ले ताणें प्रत्येक विशयान तो आमकां सपोर्ट केला तशीच स्वाम्यालांनी देवालय आशीर्वाद ना जाल्यार खंयचेय जायना म्हळ्यार हेंचे एक निदर्शन कसं जाल्यार म्हळ्यार आम्ही एक 2 वर्स तुकून हांगा करक म्हण एक आशेरी मुलकी देवाला प्रसाद घेवचे ते पूर केला जाल्यार टाइम मेळ्ळी न्ही आशिल्ले धांची वर्सां म्हणटा समज हांव कसं जालें म्हळ्यार हांगा एक आमी एक बपनाडू देवी महात्मे खेळ केले नंतर हांगाचे देवाल दयेन कंप्लीट म्हळ्यार हे अशी जत्त म्हूण सांगून आम्ही उलयतना म्हळ्यार आमी लेखनी तितले देवालांनी स्वाम्याला अनुग्रहा निमित्त जाल्ले तशीच प्रत्येकल्याल सपोर्ट हांगा हेजमाडी पेंटेज अशा पुरो मुलकीचे अशा पुरो आमकां युजली पुरो जनांना सगळे आतां खंयचे गांव सांगचे विशय येना कसं जाल्यार म्हळ्यार प्रत्येकल्याल सपोर्टा निमित्त आमी करचे आनी आमगेलो हांचो उद्देश कसो म्हळ्यार हे आमगेले एक GSB समाजाचे एक हेम्मे आहे कसं खातीर म्हळ्यार आमी करतरी मस्त समाजाच्यान असल कॉन्सेप्टारी क्रिकेट मॅच खेळू पुरोचे कम्युनिटी बेस्ड एक गेट टुगेदर करून पूरा जन ओटू जावन हंतू मस्त लाभ आसा अवतार मल्पे युनायटेड हांगे मध्ये चलचे आसा कोडियार सुपर किंग्स टॉस विन जावन फिल्डिंग घेतील आसा तशी 2 टिमाचे 12th मॅन एक एक्स्ट्रा प्लेयर आना कोडियार सुपर किंग्स आणि अवतार मल्पे युनायटेड 2 टिमाचे एक्स्ट्रा प्लेयर आना हांगा स्कोरर लागी कमेंट्री बॉक्सर येऊ का ಚೆಕ್ येऊ का म्हणून घेता ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟೀಮ್ ರೀಲ್ प्लेयर्स जल तितले बघी ग्राउंड देऊन म्हणून मी निमून घेत असाची कोडियाल सुपर किंग्स वर्सेस अवतार्स मल्पे युनायटेड या 2 टीम फर्स्ट मॅच कशी खेळत असं म्हणून मस्त जनाक डाऊट असेल ऑर्गनायझिंग कमिटीने लेखले कसं म्हणारे कोडियाल सुपर किंग्स 10 वर्ष दुखून खेळत अशी तसं एक टीम प्रति वर्ष त्यांनी खेळ्याची 2 वर्ष या सेलिब्रेशन आकत आणि फर्स्ट मॅच खेळ का म्हणाले का अशी ऑर्गनायझिंग कमिटी कशी त्याच्यानं फर्स्ट मॅच ತಂಗಿಲೊಟ್ಟು खेळत असं लास्ट इयर चॅम्पियन्स अवतार्स मल्पे युनायटेड अशानं 2 टीम आज फर्स्ट मॅच खेळची बरी जात आता फर्स्ट मॅच कोडियाल सुपर किंग्स वर्सेस अवतार्स मल्पे युनायटेड हे ग्राउंडार जावचारस शानबोग कुद्रू मला चंद जागो कितले काही वर्ष पुढे हंगा शानबोग माम म्हळ्यार शणै माम म्हणीत तंगेलेच हे जाग जावन शिल्के कुद्रू हे का आयलँड म्हणताचे मी त्याच्यावर मस्त वर्ष जाता पास एक आमची गेल्याची जाग घेऊन या चलासी तशे भारी एक खुशीच विषय त्याच्यावर शानबोग कुद्रू काढलेला तुमका सगळ्या काही मगान आता असं स्वागत करता असची आता फर्स्ट मॅच कोडियाल सुपर किंग्स वर्सेस अवतार्स मल्पे युनायटेड जावचार आसा ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स थँक यू सो मच तशीच कोडियाल सुपर किंग्स आणि मल्पे टीमात गेल्या गमनाक तशीच लाईव्ह अंतू कोण परे पळयता की पुराय टीमाक आमी सांगू इच्छा जोपास उडगास करता आसाची 7 ओव्हराची मॅच असता 7 ओव्हर्स एक इनिंग्स अंतू तशीच 4 ओव्हर नंतर एक ड्रिंक्स ब्रेक असता 4 ओव्हर नंतरची एक सणाची ड्रिंक्स ब्रेक असता पॉवर प्ले 2 ओव्हर 5 बॉलराक तुम्ही यूज करका 5 बॉलराक यूज करका
आणि एक इनिंग्स ड्युरेशन 30 मिनिट्स वैर जल मंजलारी मागीर अंपायर थर्ड अंपायर कसं डिसिशन घेता तक तुम्ही तयार जावन आसुका एक इनिंग्स ड्युरेशन अंपायर्सान थर्ड अंपायर निगदी केला म्हणकेची 30 मिनिट्स असता ऑलरेडी तुमका या रूल्स गोत आसा वापस एक उडगास करता आसा प्रति एक टिमाचे एक गमनाक आसो म्हणून सांगून Versace GPL yeah feel the thrill ಸೌಂಡ್ಸ್ ನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾನಿಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಎದುರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದಂಚ Versace GPL ಅಪ್ಪೈತ ಕೊಡಿಯಾಲ ಅಪ್ಪೈತ कोडियाल सुपर किंग्साच्या 12th मॅन जेव्हा एक्स्ट्रा पर्सन एक्स्ट्रा प्लेयर इमिडिएटली हंगा कमेंट्री बॉक्स येऊ का प्लेयर्स नाव सांगू का जाता एक भारी कष्ट जाता आमका मॅच स्टार्ट करू का इमिडिएटली कोडियाल सुपर किंग्स एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स येऊ का म्हणून घेता कोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड शानबाग कुद्रुंतू सुरवे वर्ष GPL आचे 10th सीझन ज्याला शानबाग कुद्रुंतू फर्स्ट मॅच जतास कोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड मध्ये कोडियाल सुपर किंग्स टॉस विन जाऊन फिल्डिंग घेतला पिच कंडिशन ग्राउंड कंडिशन कसले सांगू जायना पुढले मी सह्याद्री जलारी एक जजमेंट असेल प्लेयर्स आला दनपार नंतर कंची साइड वार येता कशी स्कोर कोर येता संजे नंतर कशी स्कोर जाता ग्राउंड कंडिशन कशी असा म्हणून पुरे अंदाज कोर येते जलारी आता शानबाग कुद्रू ग्राउंड अंतू फर्स्ट मॅच जलाल निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಚ್ ಜಾವುಕ ಜಾತ ಪಿಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ पुरा कोळका जलारी पळका फर्स्ट मॅच अंतू या दोन टीम कशी परफॉर्मन्स करता पळका कोडियाल सुपर किंग्स हातांनी टॉस विन जाऊन फिल्डिंग घेतला पळया एद्राच्यांनी कितली रन मारताची म्हणून सांगून एक कितली रन भितर रबो का आमके एक जजमेंट कळता म्हणाल खातीर जाऊन कोडियाल सुपर किंग्स हातांनी फर्स्ट शानबाग कुद्रून जलाला 10th सीझनाच्या या मॅच आका टॉस विन जाऊन फर्स्ट फिल्डिंग घेतलंस बॉलिंग घालू का आता गणेश नायक तशीची स्ट्राईक आका नितेश नॉन स्ट्रायकर आरी श्रीनाथ फर्स्ट बॉल गणेश नायक फर्स्ट बॉल लेफ्ट गो सलामत कॅच ड्रॉप म्हणत फर्स्ट टकाची एक कॉट बेंड विकेट चान्स आशिल्ला लायक एक चान्स मिस केल्यामुळे कोडियाल सुपर किंग्स हातांनी तशीची लायक एक अदृष्ट अवतार्स मल्पे युनायटेड तांकां मेळ्ळेलो आसा फर्स्ट टकाची फर्स्ट बॉलाची कॉट बेंड विकेट लायक एक अवकाश ते ड्रॉप जाला एक लायक एक लक्क मल्पे टीमाच्या बॅट्समॅनाक मेळ्ळेलो आसा सेकंड बॉल लेफ्ट केला सीधा फील्डरला तांदू एक रन धावन कंप्लीट केला बॉल गॅदर करून उडच भितर लायक एक रन मिडविन विकेट ती गणेश नायक कोठा गणेश नायक कोडियाल सुपर किंग्साच्या कप्तान जावन फर्स्ट टकाची तेगेल बॉलिंगाची जबाबदारी घेताची फर्स्ट ओव्हर घालता आसा लायक एका बॅटिंग कॉम्बिनेशन ते राईट हँड लेफ्ट हँड बॅटिंग कॉम्बिनेशन दोग जन बॅटर्स नॉन स्ट्रायकर राहत तसं नितेश स्ट्राईक घेता आसा लेफ्ट हँडेड बॅटर श्रीनाथ शानबाग कुद्रुंतू GPL सीझन धंच फर्स्ट मॅच तुमगेल्या इथं चलता आसा आणि मस्त मॅच आयचे दिवसा जावच्या आसा रात्री साडेबार एक गंटताई ताज्या भाषे वैरोच्या की पुरो आयचे दिवसाच क्रिकेट पंद्या ढंग चलता गणेश नायक बॉलिंग घाल तयार स्ट्राईक आका श्रीनाथ चंदेक बॅटिंग ते लायक एक ड्राईव्ह केला एक रन मिळता एक रन कसले मोसना लायक एक रन मिटवीन विकेट ते वापस चंद सिंगल काढू स्कोर मुखार वतास दोन्ही ओव्हराचे पॉवर प्ले असता वापस उडगास करता 4 ओव्हर नंतर एक ड्रिंक्स ब्रेक 7 ओव्हराचे पंद्याट तदनंतर एक इनिंग्स अंपायर्सान 30 मिनिट्साचे ड्युरेशन फिक्स केलेला आसा तदनंतर तुमकां तसं 30 मिनिट्स वयर जाली म्हणून जाल्यार एक तुम्ही टाइम वेस्ट केली म्हणजे जाल्यार ते
टीमाक कशी पेनल्टी घालका म्हणून मागीर अंपायर्स आणि थर्ड अंपायर्स डिसाइड करताचे. गणेश नायक वापस बॉलिंग घालू तयार. नितेशाक फर्स्ट ओव्हर चालतीन तू. लाईक एक ड्राईव्ह करू प्रयत्न ते कम्प्लिटली मिस झाला बॅट्समॅन. फर्स्ट पॉवर प्ले जाता तुमगेल्या एद्रांतू पॉवर प्ले तो एद्दोळ पलेलारी लाईक एक बॉलिंग परफॉर्मन्स दिला म्हणत गणेश नायकान. गणेश नायक मूळतः कोटा गावच्या तशीच कोडियाल सुपर किंग्साचे मस्त वस्तुलान कॅप्टन जावन तो खेळता या वर्षी या 10th सीझन तो कॅप्टन जावन येला. वापस लॉफ्ट करून प्रयत्न सीधा कॅच ड्रॉप. अनेक कॅच ड्रॉप दोन्ही कॅच ड्रॉप या ओव्हरांतू लाईक बॅटर आला. दोन्ही अदृष्ट नितेशाक बहुशा चांग एक अदृष्ट दिवस म्हणून सांगेत. फर्स्ट ओव्हर अंतूची दोन्ही विकेट मिळाल तशीची आमगेल्या ख्यात वीक्षक विवरणेकार सगळे टीम सांगा श्रीयुत सतीश ತಂಗಿಲೋಟು ಮುಲ್ಕಿತವನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ಮಾಮ್ बेंगलोर श्रीयुत यशवंत तशी एक लायक एक टीम कमेंट्री गेला. लायक एक ड्राईव्ह केला सिंगल रन धावन कंप्लीट केलेलं असा. लायक एक ओव्हर म्हणत कोडियाल सुपर किंग्स तुलाना ह्या एक फर्स्ट पॉवर प्ले ओव्हर आणतो. एक ओव्हर नंतर स्कोर 4 रन आफ्टर 1 ओव्हर 4 रन खंचे विकेट कळून घेईन अशी दोन्ही लायक एक कॉट बेंड विकेट अनेक एक पॉइंट अंतू कॅच हाके अवकाश आशिल्ले. ड्रॉप करून दोन्ही अदृष्ट अंग कोडियाल सुपर किंग्स त्यांनी कळून घेतला. तशीची लायक एक लक्क नितेशाक मेळला म्हणून सांगू येत. तशीची या एक कमेंट्री बॉक्स आणतो कोंकणी कन्नड हिंदी इंग्लिश पूर्ण भाषेत तुमका वीक्षक विवरण मिळचा कसं. लायक एक कमेंट्री बॉक्स ಅಂತ एक लायक एक कमेंट्रेटर टीम इंग्लिश हिंदी तशी कन्नड आणि तुमगेला इद्रक तन्नी कमेंट्री दिवचार सची. कोडियाल सुपर किंग्स आणि मल्पे ಯುನೈಟೆಡ್ ಅವತಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಂಗಿಲ್ ಮಧ್ಯಂತು ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಂಗು ತುಲಾನ್ ತುಮಕ ಸ್ವಲ್ಪ दूर तुलान दिसता तजे एक पवित्र जागेत शानबा कुद्रू म्हणाले एक द्वीप अंतू एक धनची सीझनाचे फर्स्ट मॅच तुम्ही लद्रा जातास आणि 3 दिवस एप्रिल 10, 11, 12 3 दिवस जाऊच्या या टुर्नामेंट अंतू कोण लाईव्ह अंत पळिता की तुम्ही जलतीतले अत्यधिक संख्येने हंग येऊ का. क्रिकेट मात्रने विंगड विंगड फुड कोर्ट सकडसाची दोन्ही ओव्हर घालू कैला. रोहिश स्ट्राइक श्रीनाथ लॉफ्ट केला पळक अनेक याचा अवकाश की म्हणून बॉल ड्राईव्ह करता फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द टुर्नामेंट शानबा कुद्रून जाऊच्या ह्या एक धानची सीझनाच्या फर्स्ट बाउंड्री श्रीनाथाला बॅटाल मुखांतर येईल असं मल्पे युनायटेड टीम बाउंड्री सिक्सर साक एक्सपेक्ट करत अशिल्ले. दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले असता सना एक अपास कॅचाक अवकाश की म्हणली केलं ना प्लेयर आलं मस्त बैर तुला ना बॉल ड्राईव्ह करताची लॉंग ऑफ लागी बाउंड्री केलाय वापस बॉलिंग आलो वापस लॉफ्ट केला या पटी बॅटाक निक झाला की नागोत ना हंगुदून दूर तुला दिसलाय जलारी खंचे एक रन अवकाश ना लाईक एक कम बॅक म्हणत रोहिश आला एक बाउंड्री दिल्यानंतर लाईक एक कम बॅक पॉवर प्ले ओव्हर जाता असा उगुर उगुर वार येत असं पळका त्या वाऱ्या डायरेक्शनरी बॉल होत की ना म्हणून वापस लॉफ्ट केला अनेक कॅच अवकाश की पळका ना दूर तुला ना एक कॅच जे दिसली ते स्लिप असेल ज्याला अवकाश असेल स्लिप ಸ್ವಲ್ಪ मार्क्स असेल मित कॅच हाका खंचे प्लेयर हाका अवकाश ना असेल ते पॉवर प्लेन तू मस्त जन वीक्षक लाईक एक स्कोर येता म्हणले केलं ज्याला गौंड्रा कंडिशन पिच्चा कंडिशन आता तुम कळता तिथली टफ असं म्हणून सांगून पॉवर प्लेन तू सुरवे ओव्हरांत केवळ 4 रन झाला दोन्ही ओव्हरांत फर्स्ट बाउंड्री झाला पळका या एक पॉवर प्लेच्या लास्ट ओव्हर म्हणत 7 ओव्हर इनिंग्स बॉलिंग आलो रोहिश तयार नितेश आका फर्स्ट मॅच तुम्ही इधर जतास यात्री
ಲಫ್ಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊಪಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ ಅವಕಾಶ ಸ್ಕೀಮ್ म्हणले ना 2 फीट मुखारी बॉल पिच जाला निमित्त कॅच दौरच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जजमेंट ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट झाले फिल्डर्स ह्या मध्ये फिल्डरान बॉल गॅदर करून थ्रो करचे भितरी 2 रन धावनो कंप्लीट केलेला असा दोन्ही ओव्हर चलता असं तुम्ही लेद्राक कोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड हंगेरीमध्ये मॅच जातास लाईक एक बॉलिंग परफॉर्मन्स ते सेकंड ओव्हर पॉवर प्ले जातास पॉवर प्लेन तो किती रन मार्क म्हणून बहुशा अवतार्स मल्पे युनायटेड तन निखिल की त्या रन नाके येऊन पावलेच की ना पडो का अनेक दोन्ही ओव्हर मुक्ताई जायनी बाकीस अनेक ಸ್ವಲ್ಪ बॉल येते लफको प्रयत्न जलारे कंप्लीटली मिस झाला हा चोटोची दोन्ही ओव्हर हंगाक मुक्ताई झाला दोन्ही ओव्हर मुक्तायानंतर स्कोर 11 विदाउट लॉस स्कोराच्या आणि एव्हरेज तुम्ही पळेल मोंजलारी संची एव्हरेज बशी तुग्गू असं तस देखून कोडियाल सुपर किंग्स आता ಸ್ವಲ್ಪ मटाक समाधान घेतला म्हणून लेखू येतं इतक म्हळारी पॉवर प्ले म्हणताना असल एक सिच्युएशन आणतो हॉट एक 2 ओव्हर आणतो स्कोर घालका म्हणून मल्पे युनायटेड तनी लेकुरशा बरो जलारी सांगू जायना पिच कंडिशन आमका अंगतुलान सांगू सुलभ वारस ग्राउंड आणतो सिक्सर बाउंड्रीज वत्ता पॉवर प्ले म्हणून सांगू सुलभ ज्याला ते खेळतल्यांक कळता एक सिच्युएशन कितली हार्ड असं म्हणून सांगून ताजो टोची बॉलर्स आल परफॉर्मन्स बॉलर्साना तसले एक तंगेल एक फर्स्ट दोन्ही ओव्हर आणतो लायक बॉलिंग परफॉर्मन्स दिलारी खंडित स्कोर मारूक तिथली सुलभ ना आणि दोन्ही अदृष्ट दोन्ही लक्क नितेशाक मेळाला एक सुरवे बॉलाकच कॉट बिहाइंड द विकेट चान्स आशिल्ले ड्रॉप झाला दोन्हीचे पॉइंट आरी एक प्लेयरान कॅच सोडला दोन्ही अदृष्ट मेळला त्या अदृष्टाक समजावन नितेश वरला परफॉर्मन्स दित की पळोक आता तिन्ही ओव्हर घालूक दुर्गेश आभरण एंडा तुलान दुर्गेश तिन्ही ओव्हर घालूक तयार झालेला असा थर्ड ओव्हर बॉलिंग घालू दुर्गेश स्ट्राईकाक श्रीनाथ भारीचंद एक बॉल ते 1 रन मात्र काढून दोन्ही रनाक धावता की पळोक ना फिल्डर लायक एक फिल्डिंग ते 1 रन मात्र मेळता पॉवर प्ले झालेला असा फील्ड रिस्ट्रिक्शन आता एंड झालेला असा पॉवर प्लेच्या तिन्ही ओव्हर जाता असा हांगा तुमगेले एद्राक आणि 7 ओव्हराच्या इनिंग्स सांगतो टोटल अधिकृत जावन आशिल्ले 42 डिलिव्हर्स सांगतो कितली रन मारताचे पळोक आयता म्हणल्यार 9 ग्राउंड 9 पिच 9 कंडिशन 9 जागो हे पूरे पळयतना कसले अंदाज घालचे भारी कष्ट धांची सिजनाचे ह्या एक शानबा कुदरून तू फर्स्ट मॅच फर्स्ट इनिंग्स जातास आणि ಸ್ವಲ್ಪ मॅचेस जावक आता सांगेल म्हणकेची ग्राउंड कंडिशन पर कोळका जालारी लफ केला सीधा कॉट हँड बॉल्डाचे एक अवकाश आशिल्ले नितेश आजी खंयचे पर देवस्थान हांवचून येयला म्हण कळना तीन अदृष्ट याची इनिंग्स आणतो नितेशाक मेळला आसा कष्ट आशिल्ले तितली सुलभ नाशिल्ले कॉट अँड बॉल चान्स खंडित आशिल्ले वय जाल्यार तितले पेस आशिल्ले तितले एक फास्ट येवन पळयत तसलो बॉल आता लेफ्ट हँड बॅटर श्रीनाथ स्ट्राईकाक फुल टू सेल बॉल श्रीनाथान ओपन मारला सिक्सर जीपीएल 2026 टूर्नामेंटाच्या भारी एक शार्प असाची भारी एक ऍक्टिव्ह असाची मस्त अनुभवी तीर्पुगार आमगेले द्राशील निमित्त तुम्ही कंचे एक तीर्पुगाराक तुमगेले अपिला निमित्त कसले तंगेले दिक्कू तपसूच्या जायना हा चोटूची अनेक ओव्हर मुक्ताय झाला 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 25 25 संची एव्हरेज भितर खेळतशील तसला अवतार मल्पे युनायटेड टीम लगी लगी 9 एव्हरेज येऊन पाविल असा लगी लगीची 3 ओव्हर 25 म्हळ्यार सदान 8.75 8.80 लगी एव्हरेज तुम्ही पुढे येता
तिनी ओव्हर मुक्ताय झालेलं आसा 4 ओव्हर मुक्ताय नंतर पक्कने तुमका बॅट्समॅन गुद्द आणि दिवक जाल्यार समयच एक 2 मिनिटाचे ड्रिंक्स ब्रेक असता 4 ओव्हर नंतर म्हळ्यार ह्या ओव्हर मुक्ताया नंतर तशीच खोडियाल सुपर किंग्स तुलना कप्तान तागेल्या दोन्ही ओव्हर घालूक या इनिंग्साच्या 4 ओव्हर घालूक मुखार येईल असा बॅटिंग करता असा द हार्ड हिटर नितेश नॉन स्ट्रायकर लायक एक परफॉर्मन्स दिता आशिल्लो श्रीनाथ तुमी लेद्राक खेळता आसा लेफ्ट हँड राईट हँड बॅट कॉम्बिनेशन दोन्ही ओपनिंग प्लेयर्साक अवतार मल्पे युनायटेड तांणी पेटून येदोल ते खंयचे विकेट काढून घेना अशी 3 ओव्हर 25 मारला आणि 4 ओव्हर बाकी आसा फर्स्ट मॅच जाता असे 2026 गणेश नायक बॉलिंग घालू का तयार झाला 4 ओव्हराचे फर्स्ट बॉल बॅटिंग करू का नितेश फर्स्ट बॉल लॉफ्ट केला जलारी खंयचे अवकाश जाते या बडी थर्ड अंपायर आला डिसिशन अम्यता वत्तासाची या एक इनिंग्स अंतू या एक टूर्नामेंट अंतू फर्स्ट बाउंड्री पडेला फर्स्ट सिक्सर पडेला रनआउट एक अपील केला तदनंतर थर्ड अंपायर आला फर्स्ट डिसिशन अम्यता वेट करता असाची खोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड हंगेल मध्ये मॅच जाता तशी नेक्स्ट मॅच आच्या मुंबई पल्टन्स आणि हंगे 11 दोन टीमा कॅप्टन आणि इनिंग्स ब्रेक आणतो स्टेजालागी टॉस येऊ का ते आमगेला संतनाल टीम रेडी असा शिवानंदनाल टीम रेडी असा टॉस आका ह्या मॅच जल्ली कुडले मुंबई पल्टन्स ह्या मॅच नाही या इनिंग्स जल्ली कुडले दोन टीमाचे कॅप्टनला नेमून घेता इनिंग्स ब्रेक आणतोची तुमगेल टॉस आणि टीम रजिस्ट्रेशन जाऊचे मॅच जर टाइम असना मॅच जर इमिडिएट नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जाता जसे करून मुंबई पल्टन्स आणि हंगे 11 दोन टीमाच्याने इनिंग्स ब्रेक आणतो अगत्य जाऊन तुम्ही टॉस येऊ का त्यातनाची तुमगेला टीम रजिस्ट्रेशन कोर का निघून घेता तशीच अंपायर डिसिशन वेट करता अंपायर डिसिशन नॉट आउट अंपायर डिसिशन नॉट आउट 4 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ಜತ್ತ 4 ಓವರ್ ನಂತರ 4 ಓವರ್ ನ ಬಳಿಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ವಾ तशीच थर्ड अंपायर आला एक टाइम ಒಟ್ಟು ते ड्रिंक्स ಸ್ವಲ್ಪ टाइम अशी निमित्त उद्दा पूछाकनी टाइम कन्क्लूड झाला अंपायर प्रकारे तमळारी अंपायर साल डिसिशन फायनल देखून या संदर्भांतोची याच वेळारी आम्ही उद्दा पिवचे कसल्यास म्हणजे रेस्ट मिळालेस देखून 4 ओव्हर नंतर वापस ब्रेक असना म्हणून अंपायर सांगताच गणेश नायक बॉलिंग आलो का तयार स्ट्राइक श्रीनाथ लॉफ्ट करूक प्रयत्न वापस वाईड की म्हण निंबिला श्रीनाथानंदना लाईना भितर आशिल्ल्या तसं करून वाईट दिवच्या जायना म्हणून अंपायर म्हणाला लायक एक डिलिव्हरी ते गणेश आलाय 4 ओव्हर जाता असता सांगील प्रकार श्रीनाथ आणि नितेश ओपनिंग येईल तसं बॅटर्स दोग जण क्रिस तसंच या पटी कंचे बीट जायनी कॉट बिहाइंड द विकेट जाऊन हार्ड हिटर श्रीनाथ आउट जाऊन मग स्वतःचा लायक एक सफलता मिळत सेट जल तसल एक बॅट्समॅन आउट केला रे खंडित टीम लायक एक प्लस पॉइंट तवे या इनिंग्स आणतो या ग्राउंड आणतो या मॅच आणतो फर्स्ट बाउंड्री फर्स्ट सिक्सर मारलं तसल प्लेयर श्रीनाथ आउट जाऊन मग स्वतःच देखून कोडियाल सुपर किंग्स लायक एक सफलता मिळला म्हणून खंडित जाऊन संगीत हजोटूची स्कोर तुमका संख म्हणजे 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट नौ बैटर श्रेयस शणै आता स्ट्राइक घेता नॉन स्ट्राइकर एक्सपीरियन्स प्लेयर नितेश नॉन स्ट्राइकर गेले एक अनुभव खंडित नौ बैटर अवेरी जाऊ जाता 4 ओव्हर चलता तशीच वापस नेक्स्ट मॅच मुंबई पल्टन्स आणि हंगे 11 तंक वापस उडगास करता इनिंग ब्रेक आवडली तुम्ही अगत्य जाऊन टॉस हाकत असू का वापस तुमगे लागी विनंती करतशी दैकोर कोरनाकाची इनिंग्स ब्रेक with that couple of runs scored numbers on to 30 on the board for
the loss of 1 wicket in the over number 5 in progress. 7 overs match, and the wait and see how well the team Avtar Malpe United will go into put some good runs on the board. So different condition, isn't it? After that 9 years which is played in Mangalore at Sahyadri Cricket Ground, this is a different venue, and off the back foot played it down to deep block of region for a single. And with the addition of that single, score moves on to 31 on the board. And batter Nitesh and Shreyas are the two batters out there in the middle. Slowly they're building the partnership, for which is very important to get a good score here. Just talking about that, this venue is a different venue with the beauty of the natures. And of course, a lot of hard work is done by Kodial Sports Association Mangalore to organize such a wonderful cricket tournament in this different venue. And all the hard work is paid off after watching this beautiful cricket ground. And this has been one of the most different and exciting view of this cricket ground. And here is the match number 1 is in progress after that inaugural ceremony of GSP Premier League 2026. Right arm over the kitty balls. Nice little one down to long off region. Just try to bit of make a room to play the shot in the negation, Shreyas, and picked up a single down to long off region. One more over completed, 5 gone. After completion of 5 overs, the team Avtar Malpe United are 32 on the board for 1 wicket. Last 2 overs remaining, and it's the start of the penultimate over. It's a bright and sunny morning. Time is exactly 11 past 15, and a strong breeze is passing in the middle of the ground. The shot selection is going to be key for the success for the batters. Well, coming to this condition, how to see that which direction the wind is flowing, and even for the bowlers also, they have to see that which wind is going to be good enough for them to get their in and out swing deliveries. Altogether, I think the weather condition will going to play a big role here. But just like I mentioned about in a little time, the short time, they managed to provide this such a wonderful condition here to organize the 10th edition of GPL. Try to york the batsman, negotiated very well by the batter, just getting that one in the pull. Played it down to short mid-off region. They've gone for a quick single. Maybe it was a risky one, but they have to take the risk because they are dealing with the final overs, the penultimate over. Rohish, the bowler, the brought into attack from the commentary box, and for Kodial Super Kings, the good comeback actually bowler after that some expensive over, especially the third over is a very expensive ball by Durgesh. This time catch it is a call, but no one there in the deep wide is long on boundary for 4 and 1 bounce into the fence for 4 runs. Slight a bit the ball is drifting onto the legs of the batter, and always the left and right hand batsman so strong off their legs is asking for trouble, even though he kept 2-3 fielders in the onside region, but still the batter has managed to get that placement right into the cow corner for 4 runs. Nitesh quickly realizing that they have to change the gear here onwards to get some acceleration in the run rate. It's 37 on the board, much required boundary. Short pitch delivery doesn't get hold of that properly. The slow short pitch delivery, that's why Nitesh couldn't manage to get hold of that stroke properly. Picked up a single for that. With that single, score moves down to 38 on the board for the loss of 1 wicket. Very good partnership is progressing here. But here, I think more than the partnership, with some aggressiveness is very important to deal with the remaining deliveries of their innings. Shreyas facing Rohish. Full toss, doesn't get hold of them properly. Mid-off fielder underneath it. And he taken the catch comfortably. That's the end of the innings of Shreyas, and partnership is broken. It's a full toss delivery, but not an easy full toss to tackle for the batter, and almost just below the waist level, but he couldn't manage to handle that full toss delivery very well. Tried to get the placement, tried to get the stroke down to long off region, but he missed that timing what he's looking for. Wicket number 2 back in the pavilion. It's 38 for loss of 2 wicket. May batter replacing the place of Shreyas Sunil, correction, and with the jersey number 19. Not a big ground, not a huge cricket ground, but good enough in this condition, I think. Rohish again, right above the wicket, lofted, and he will go in to get the field. No, it doesn't.
Well, one stage looks like the jersey number 7, Ganno will going to get that catch, but he just got a valiant effort, but absolutely gone in vain. But just defeating his trying hands in the deep long on boundary for a maximum. This is a stroke exactly what doctor ordered. You know exactly the Sunil, even though he's playing his first delivery, but have a look at the level of confidence from the batter. You know exactly how to get some big shot in this penultimate over. Just clearing the fielder at long on. Just transferring his weight onto the back foot. Lofted handsomely down to deep long on. 45 on the board. Once again, this time I think it's better than the previous one. Will it go into 1 more 6? Yes, it does. The fielder now at the mid-wicket fusion, jersey number 41, has got a hand onto that. But he couldn't manage to save that one. At least he tried for the saving the 6, even though he couldn't manage to catch that ball. But at least he can try for saving the runs. But he's a young man there. The young man definitely lack of experience. But 2 sixes in 2 consecutive deliveries of Rohish by Sunil really takes the total score of team Avtars Malpe United into 50. Exactly the 50 comes off here for the team in the 5 overs, which is 6 overs, which is comes to an end. Just like we are talking about the acceleration of run rate in the penultimate over. 2-6 and a boundary. That makes this over a huge one for the point of view of team Avatar Malpe United. Just like we have mentioned about after getting the blessing of God Venkatramana as well as our respected Barji, Gopi Barji, starts cricket commentary as well. It's been a great pleasure for us to sharing a mic with him as well. Far outside and off tempered well with the reach of the batter. Misjudgment by the batter and even shuffled across the line of the delivery. The initial movement of the batter. And this is what sometimes you have to see that present rules and regulation is concerned. Umpire will go in to watch the initial movement of the batter. Just a little bit shuffled across the line and umpire extending that line. Oh, lovely delivery. Beautifully balled. It has been suicide, isn't it? This is definitely going to be suicide. Lovely bowling performance here from Harikishan. The young man absolutely did a great job. The man who couldn't manage to complete the catch in the deep mid wicket, now he wanted to come back with this bowling. Durgesh, the wicket keeper, absolutely has got a presence of mind as seeing the batter is out of crease. And hitting the stump, so easy for the wicket keeper to get that 3 stumps in front of his eyes, and the batter is short of his crease. 50 for the loss of 3 wicket, and Shreyas departs, and it will be correction, Nitesh departs. Sorry, Sunil. We have in my left online scoring department. We have Rashmi and online scoring department, and Manvit in manual scoring department in our commentary box. And just like mentioned about, we have a very experienced commentary panel. Digant being batter in. Short pitch doesn't get hold of the properly. Chance of run out. In the 9 seconds, and once again, 1 more wicket back in the pavilion in the form of run out. Well. Wickets are tumbling like house of cards in this last over. 1 more wicket is back in the pin. It's all happening when you're trying to get the runs in the last over. The run out, which is a couple of run outs taken place. It's been a great bowling performance here from Harikishan in the first 3 deliveries. Hello, check. Mic testing 1, 2, 3, check. Hello, check. The kind of over which is badly required for the Kodial Super Kings in this last over. The bowler Harikishan definitely so far has been outstanding, but job which is not yet over. Have to get another 3 good deliveries, but at the same time, the batter have to get some runs here for the team. Scoreboard is 50 on the board, exactly 5-0. Half century, 50. Harikishan again. Bowls again across the line, try to swing that one. What a fantastic bowling performance here from Harikishan. I'm really appreciating his the presence of mind. He's just watching the bowler batter's movement very well.
the releasing point, we can see that he was releasing the ball in the last moment. He observing the batter's movement and then he was changing his line cleverly. The great thinking bowling there from Marikishan so far in this over. This shot, he swings it away, but I think he will go to get the distance with the direction of the wind. And ball is absolutely landed just in front of the cameraman, who is just missing that ball. But what a lovely pull shot came from the bat of the batter Hemant in the negation. Hello, check. Hello, check. Hello. Hello, check. Hemant this time just getting the position so quickly. Hello, check. Harikishan this time couldn't manage to get that short pitch delivery effectively. The batsman just going back, making that ball short. It's not that much of a shot, but he's just going back and getting that very good line and length to pull the ball. This time again, ball went to the hands of short final fielder. The appeals came from wicket keeper, but just an excitement rather than the confidence. By call by umpire. Over number 7 in fact, which is comes in. That means the team Avtar Malpe, the United. Hello, check. Hello, mic testing. 1, 2, 3, Authors check. Malpe United, they completed their 7 overs quota with exactly 57 on the board. They set a target of 58 to win this match. And probably I think this is one score in the morning. But conditions looks like for me, that seeing the dimension of this cricket ground, it's not a huge cricket ground, it's almost 40 to 45 meters to travel for the big one. I think it may be the score which is not good enough if you're not bowled well, because we can see that the strong breeze is passing in the middle of the ground. The bowlers of team Avtar Malpe United have to really work hard to restrict their opposition, because the Kodial Super Kings, everybody knows that the team which has got some potential in the batting department. So we are just expecting from these two batters, these two teams, that very healthy battle between bat and ball. And surely this is going to be a first match of the day, one of the prestigious GSP Premier League 2026 season 10. They're going to be a very, very interesting. So before we are going to start, the innings of Kodial Super Kings, it's a time to change in voice as well as language. So it's a time for change in language. It's absolutely language which is loved by the most our community, and it's begin Konkani language. Definitely Suresh Bhattji for the next match. So okay, I request Mumbai Paltons as well as Hangyo 11. Please be reported here, captains, for the tossing ceremony for the next match. And it's a time for welcoming Suresh Bhattji, one more multi-talented and multi-language commentator who can give the commentary in 3 languages very well: English, Konkani, and as well as in Kannada. So welcome for Suresh Bhattji, and good morning, sir. And good morning to all our commentary panel. We have senior most commentator Ajay Rajji with us, and we have Yashwant sir is also joining in our commentary box soon. And altogether, it's been a great commentary panel for this prestigious GPL 2026 season 10. It's over to Suresh Bhattji. Thank you. Hello, check. Mic testing. 1, 2, 3, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing. 1, 2, 3, check. Hello, check. थँक्यू सतीश. GSB प्रीमियर लीग सीझन 10च्या फर्स्ट मॅच प्रारंभ जावन फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट जाला. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन अन्नी आयोजन करचे GSB प्रीमियर लीग 2026 आज प्रारंभ जाला. शानबोगु कुद्रू ग्राउंडांतू कोडियाल सुपर किंग्स वर्सेस अवतार्स मल्पे युनायटेड या 2 टीमांमध्ये मॅच चलतस. दोन्ही टॉप मोस्ट टीम्स अवतार्स 11 लास्ट इयर GPL चॅम्पियन्स टीम तांगेले एद्रा खेळतस. कोडियाल सुपर किंग्स 59 टार्गेट मेळ्ळात. कोडियाल सुपर किंग्स एद्राक एक हॉड एक टार्गेट आस.
8 रन अपेक्षा चड रन रेटर खेळका जाता 7 ओव्हर्साचे मॅच कोडियाल सुपर किंग्स आणि टॉस विन जावन फिल्डिंग चूज केलेला कॅप्टन कोटा गणेश नायकानं फिल्डिंग चूज करून बॅटिंगाक आमंत्रण दिलं टीम अवतास मल्पेने लायक कोण बॅटिंग प्रदर्शन दाखवून 58 रन स्कोर केला 58 टार्गेटस दोग जण ओपनर्स कोडियाल सुपर किंग्स तर्फे क्रीसार आयली ती एक साइड अंतू पद्मनाभ पै कोटा आणि एक साइड अंतू हार्ड हिटर दुर्गेश फर्स्ट ओव्हरच्या फर्स्ट बॉल प्रारंभ जातोस बॉलर रतीश एक बॅड स्टार्ट म्हणून येतं फर्स्ट बॉल नो बॉल जावन आशिल्ले सो फ्री हिट मेळतस लायक एक चान्स हांगा पद्मनाभ पै कोटाक पळोवया फ्री हिट अंतू कसं करता म्हणून शॉर्ट बॉल जावन आशिल्ले पुल केले टर्न केले ऑन साइड अंतू डीप स्क्वेअर बॉल वतस वेदांत भट्टान बॉल कलेक्ट करून थ्रो केला विकेट कीपर सुनील शेनायक बट तागेला थ्रो ಏನು ರೀಚ್ ಯೂಚ್ ಪೂಡೇಚಿ 1 ರನ್ ದಾವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ केला सो पद्मनाभ पै कोटा हागेला अकाउंट ओपन जतस फ्री हिट बॉल ಅಂತೂ ಖಾಲಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ कोडियाल सुपर किंग्स पूरा ಗೊತ್ತಶಿಲ್ ಮಣಿಕೆ लास्ट 10 सीझन ಅಂತ खेळलेले एक मात्र टीम बनते कोडियाल सुपर किंग्स दोन्ही पटी रनर अप टीम तशींची 5 पटी थर्ड प्लेस घेतील टीम आता मल्पे युनायटेड डिफेंडिंग चॅम्पियन्स आहेत खेळतोस लाइक एक बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप पडाल बॉल बॅट्समॅन कम्प्लीटली बीट जातस बॅट आणि बॉलामध्ये कंचे कनेक्शन ना सो बॉल सीधा गेले विकेट कीपर सुनील शेणायन हातांतून सो बरलेल काम विकेट कीपर सुनील शेणायन केलेला सो बॉल कलेक्ट करून वापस केला बॉलर रतीशाक बॉलिंग मार्ग वापस मागशी वतस रतीश क्रीसारी आक्रमक स्ट्रोक केल्च प्लेयर दुर्गेश हार्ड हिटर वेट करतस नेक्स्ट बॉल फेस करू का वापस लाइक एक बॉल सिमिलर डिलिव्हरी एंड सिमिलर रिझल्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल चिक्के डिफिकल्टी फेस करतस त्या बॉल रीड करून जायनी दुर्गेशाक बॅट्समॅन दुर्गेश कंप्लीटली बीट जातस कंचे रन मिळतना विकेट कीपर जावन सुनील शेणाय टीमाच कॅप्टन लीड करतस अवतार मल्पेक लाइक बॉल ब्लॉक पडा बॉल ऑलमोस्ट लाइक ए यॉर्कर डिलिव्हरी म्हणत मस्त लायक बॉल तिथलेच एक रक्षणात्मक रीती त्या बॉलाक कंची नमुन्याची एक रेस्पेक्ट दिवका की तशीच खेळलो दुर्गेश कंचे रन येताना बॉलर्स बॅक ड्राईव्ह जन आशिल्ले बॉलर रतीशन अपास गेले बॉलिंग मार्ग मागशी वतस नेक्स्ट बॉल घालूक फार एंड दाखवून बॉलिंग कंटिन्यू करतस रतीश क्रीसारस दुर्गेश नॉन स्ट्रायकर एंडरी पद्मनाभ पै कोटा यापटी ऑफ स्टंप मस्त बाहेर गेलेला बॉल खंडित जाऊन वाईट जाऊ का कंचे डाऊट ना बॅट्समॅन दुर्गेशन क्विकली रिअलाइज केले ऑफ स्टंप बाहेर वत म्हणून सोडून दिले मार्च प्रयत्न करनी सो 1 रन मिळतस कोडियाल सुपर किंग्साक एक्स्ट्रा मुखांतर या 1 रन तांगे स्कोर आता ಒಟ್ಟು 3 जल्ला सुरवे ओव्हर चालतींतस स्लो डिलिव्हरी मुखार वचून मारचे प्रयत्न केला हॉट एक शॉट प्रयत्न बट टायमिंग तितले लायक नाशिल्ले लॉंग ऑन अंतू मारलेले शॉट दुर्गेशान ऑफ साइड आशिल बॉलाक अगेन्स्ट द विंड खेळलो तशें जावन मस्त एक पवर आहे नाशिल त्या शॉट अंतू सो 1 रन मेळतो संगा लॉंग ऑफ द फील्डरान येवन बॉल कलेक्ट करून थ्रो केला बट तागेल थ्रो येवन रीच जोश पुडेची 1 रन धांवन कंप्लीट केला सो दुर्गेशाला अकाउंट ओपन जतस आता सिंगल कळाल मित्र पद्मनाभ पै स्ट्राइक आयला लूज बॉल ऑफ साइड फाइन लेग टर्न केला सीधा डायरेक्शन दिले बॉल वतस सीधा बाहेर सरनाक पद्मनाभ पै कोटाला बॅटन आयले फर्स्ट सिक्सर या लूज डिलिव्हरी जावन आशिल्ले पनिश केले 6 रन मेळ्ळे असले शॉट जावक आशिल्ले पॉवर प्लेन तू कोडियाल सुपर किंग्साक इथे म्हळ्यार हॉट एक टार्गेट अस 58 रन्साचे टार्गेट तांगेल मुखार अस रन्स मस्त उणे आशिल्ले सो
शॉर्ट बॉलाक लेग साइड पडल बॉलाक सीधा विथ द हेल्प ऑफ द विंड मारल्यार शॉट 6 रन मेळतस कोडियाल सुपर किंग्साक 6 रन ऍड जावन ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಕ್ಕೈತಸ್ 10 ರನ್ ತಶ್ಮಂತನ ಅನಿ ಬರ್ಲಾಲ ಓವರ್ ಅಂತೂ 48 ರನ್ ಜಾವ್ಕ ಮಿಗೆಲೊಟ್ಟು ಯಶವಂತ್ ಜಾಯಿನ್ ಜತ್ತಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯಶವಂತ್ ಸುರ್ವೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಲ್ತಸ್ GPL ಸೀಸನ್ 10 ಅಂತೂ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿ ಅವತಾಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜತ್ತಸ್ 58 रन ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಸ್ ಸೊ ಕಶ್ ಚಲ್ತಸ್ एक ಮ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಎದುಲ್ತೆ ಪಳೆಯಿಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೊಳಚ್ ಮಂಜಲರಿ ತುಮಕೆಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Thank you, Suresh. Good morning, everybody, and some of you who are watching live, good morning to you also. As Suresh rightly said, we are just witnessing the first match of this tournament, GPL Season 10 2026, and this event has been sponsored by Kodial Sports Association, and you have fantastic broadcast partners, Youth of GSB. Coming back to Suresh's question, yes, 58 looks to be a bit of low score and in tennis ball format, especially when you play such games, and with the support of the wind, if the batters are quick enough to identify and get those gaps, I'm sure this should not be a big target for them. ಸೊ ಶ್ರೇಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೊಡುಕ ರೆಡಿ ಜತ್ತಸ್ ದೊಂದಿ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಜತ್ತಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ ಗಲ್ಯಾಲ್ ಬಾಲ್ ವಾಪಸ್ ಆಫ್ ಗೆ ಬಾಯರ್ ಅಶಿಲ್ ಬಾಲ್ ದುರ್ಗೇಶ್ ಬಾಲ್ ಮೆಳ್ತನ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಕ್ ಬಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಜಲ್ಲ लेफ्ट आर्म मीडियम फेस बॉलर एक एक्सपीरियंस बॉलर श्रेयस युवा बॉलर म्हणत मस्त एक यंग एंड एनर्जेटिक क्रिकेटर सुमार क्रिकेट टूर्नामेंट ಅದು GSB ಅಂತೂ लायक बेस्ट बॉलर मला प्रशस्ती पात्र झाला बॉलर यापटी मल्पे युनाइटेड तर्फे केलतस यापटी शॉर्ट बॉलर सीधा स्लॉट पिक केले आणि सीधा पेटेला वैरी बायरी आणि दूर 6 runs maximum. That's a beautiful 6. This was expected. The batter got it easily on the leg side and he did not spare that ball. He had to drive it just with a footwork. Picked it up between the long on and mid wicket. That gives a big score for his team. With this, the score moves to 16. Fantastic opening by both the batters here. Yes, Durgesh आणि पद्मनाभ पैकोटा डॉगजेड ओपनर्स जाऊन कोडिया सुपर किंग्स लायक फाउंडेशन घालतस लायक एक पार्टनरशिप येतस सो असल एक सन्निवेशात वापस एक हॉट शॉट प्रयत्न केला सीधा पेटेला लॉंग ऑफ करून बाहेर अनेक सिक्सर बॅक टू बॅक सिक्सर दुर्गेश बॅटाना. That was slightly outside the off stick. The batter identified and he had enough time there. Let me remind you, the bowler is bowling against the wind. He had to fight it hard to get the ball reaching the batter there. That's because you are surrounded. This is played in Shambog Khudru Island. It's said to be a blessed island. The entire surrounding is with the river, Shambhavi River. For some of you who are watching live and who are here, let me give you an incident here which would remind us about our Guruji. डाउन द लेग साइड जाऊन आशिल्ले वाईड बॉल सो यशवंत तुम्ही कसं शांभवी रिव्हर ಬಗ್ಗೆ सांगता आशिल्ली ती. Exactly. This is an island called Shambog Kudru Island. This is surrounded by river on all the sides, and for all of our GSB community, this island and especially this river is something which we would remember and keep it in our lifestyles. Basically, I am given to understand that our revered Sudhindra Tirtha Swamiji took his holy consecration here, that is initiation into monastic life during 1944, and then he went to Mulki Venkatramana temple for rest of the proceedings, and he was blessed by his Guruji Sukrutindra Swamiji. And are we not blessed to be playing in the middle of this river, in the center of this river which has been covered today as an island? That's a fantastic moment. We would request each of you to just remember our Gurujis in the moment and also be grateful to our society and community. खंडित जाऊन लायक एक पवित्र नय शांभवी रिव्हर अजमदेश बॅट्समॅन हॉट शॉट प्रयत्न केले कॅच जो चान्स आशिल्ले मस्त वेळ बॉल वारर आशिल्ले बट जजमेंट तितली लायक नाशिल्ले दोन फिल्डर्स मध्य बॉल पडले बहुशा मुखार आशिल्ले फिल्डरान चिके करेक्ट जाऊन जर्जी केला जाल्यार एक विकेट पडचे अवकाश आशिल्ले बट तसले एक चान्स त्यांनी अवतार सिलेवन मल्पेन कळवून घेतला सो एक हॉट एक जीवदान मेळतस बॅटराक सो शानभोग कुद्रू ग्राउंडांतू क्रिकेट टूर्नामेंट आज प्रारंभ झाला 3 दिवस चलचित असलेल्या क्रिकेट फेस्टिवल क्रिकेट कार्निवल
एक मेगा क्रिकेट एक्स्ट्रावेगन्स म्हणत GPL सीझन 10. In fact, that's another good ball. On the strike, we had Durgesh Prabhu. The ball was slightly outside the off stick. The batter wanted to hit it towards the covers, but could not get the full width of the ball there. He just could get one run, and with this, we end up with a score of 26 at the end of 2 overs without the loss of wicket. Suresh, I felt that the catch which was there had enough time for the fielder to run to the ball and get it. Probably the fielder who was behind at the long should have attempted it. Catches are very important because the score is not very high, and with the support of the wind, the batters are getting fantastic strike rates here. खंडित जेवण कॅचेस विन्स मॅचेस म्हणून आम्ही म्हणतात ते, बट तसं एक प्रयत्न फिल्डर तर्फे येणी भविष्याचे प्रयत्न केला जाल्यार कॅच जाल्ली म्हणून जाल्यार एक कोडियल सुपर किंग्साक हॉड आघात जात तशिल्ले. सो 26 जाल्ला, 2 ओव्हर कंप्लीट जाला यशवंत तशमंताना आणि 5 ओव्हर बाकीस म्हळ्यार 30 बॉल्स अंतू 32 रन्स. सो लायक फाउंडेशन गलतसती दोग जण ओपनर संघ. सो लायक एक स्कोर आयला खंडीत जेवण कोडिया सुपर किंग्साक चान्सेस चड ह्या मॅच विन जेवची म्हणून म्हाका दिसता. कसो तुमगेलो अभिप्राय? Definitely. Durgesh Prabhu is already in the form with 2 sixers. तो prove करता असता. He is one of the best batter for the to play for his team, you know. That's a nice delivery. That's a nice delivery, beating the batter there. Padmanabh Pai is on strike with jersey 33. Correction there, I'm sorry. Durgesh Prabhu is the striker there with jersey 33. Nitish Nayak is the new bowler. Slightly bowled. The batter misses it completely. There's an appeal. Umpire goes on mode. That's a good attempt to keep the fielders and the bowlers on top. मस्त नेला राहील बॉल यशवंत बॅट्समॅन खेळू जायनी लो जेवण येईल मित्र बीट जाल्लो. सो खंयचे डॅमेज जायनी स्कोर 26 अंतू डबला. दुर्गेश 15 रनर खेळतोस. पद्मनाभ पै स्कोर 8 4 बॉल फेस केला. दुर्गेशन एदुलते 2 सिक्सर समेत इक्र बॉल फेस करून लायक एक टेरिफिक फॉर्मर असं एक विध्वंसक बॅटिंग करतोस. That's a single. They are in front of the bowler. The bowler tries to hit the ball with to the wicket, but misses it completely. Gets one more run. 27 is the score. 27 जल्ला आणि वरल्या 27 बॉल अंतू 31 रन जावक ह्या एक संदर्भली असल एक सन्निवेश अंतू टीम अवतास 11 मल्पेक विकेटाचे अगत्यते अस खंडित जेवण ह्या ओव्हर अंतू विकेट पडली म्हणून जाल्यार एक ब्रेक थ्रू मेळता तांगेल्या टीमाक एक कमबॅक मेळता. Definitely, Suresh. That was a full toss. This is the ball which they have to avoid. With one pitch to the fielder there, the fielder doesn't make any mistake, holds the ball and returns it safe to the bowler. The bowling team has to avoid full tosses. If the batter gets an advantage of the wind, I'm sure they'll ensure that the ball has disappeared in the sky there. Durgesh Prabhu and Padmanabh Pai are the batters in the middle. Will be playing Nitish Nayak. That's a single. Towards the cover, gets a single run, no attempt for the second. लायक एक इंटेलिजंट क्रिकेट म्हणून म्हणत ब्लॉक वाला पडाल बॉल होगूर ऑफ साइड टॅप करून स्ट्राइक रोटेट केला. दोग जण बॅटर्स एक प्लॅटफॉर्म सेट केला. 29 रन ऑलरेडी आयिलस. 29 रन्स आणि काही जावका 25 बॉल्स बाकीस. लायक एक रोमांचक मॅच चलते साजे मध्ये ऑफ साइड ड्राइव करचे प्रयत्न, बट फिल्डर मस्त मक्ष रब्बून आशिल्लो. तश जेवण खंयचे डॅमेज जायन हंगा बॅट्समॅनाक पद्मनाभ पै कोटाक 1 रन मेळतस. 1 रनान तांगेले स्कोर जाल्ले 30. 3 ओव्हर मुक्ताय जाला यशवंत. 3 ओव्हरांत 30 रन आयला. खंयचे विकेट कळवून घेना अशी. दुर्गेशन इंडिविजुअल स्कोर 17 whereas Padmanabh Pai is batting on 10 runs. So 24 balls बाकी 28 रन जावक लायक एक नेल बाइटिंग फिनिश मॅच जाता म्हणून म्हाका दिसता. सो तुमगेलो अभिप्राय? Definitely, Suresh. With 30 on the scorecard and both the batsmen having their strike run rate more than 120, especially on Padmanabh Pai with 166, I'm sure they are going to drive this match as early as possible. At this point, they have a need of 7 runs per over. But with the batters and if the batters put their thought mindfully to utilize the wind for their support and use their biggest muscles against the bowler with the support of wind, they should get the score easily. वापस श्रेयसक
इंट्रोड्यूस केला हांगा मलपेच टिमाच्यान लास्ट ओव्हरचे एक्सपेन्सिव्ह जेवण आशिल्ले श्रेयस लास्ट ओव्हरांतू दोन जबरदस्त सिक्सर मारले दुर्गेशान त्या एक ओव्हरांतू तांगेली टीम लायक एक स्कोर येवचेक सहाय जाल्ले आता वापस अवतार्स मलपेच कॅप्टन सुनील शेणेन श्रेयसाक बॉलिंगाक इंट्रोड्यूस केला पळोवया श्रेयस कसं करता म्हणून यापडी बॅट स्टार्ट ऑफ साइड तकून मस्त भायर आशिल्ले वैड म्हणून म्हणला अंपायरान या मॅचाक अंपायर जावन दीक्षित आणि पवन मेन अंपायर जावन दीक्षित तशीच स्क्वेअर लेग अंपायर जावन पवन Shreyash, and I get one more banked ball. It's a six towards the long on. A longer one neatly hits the TV screen here. Umpire signals 6, raising in hand. Score moves to 37 at the end of 3.1 overs. सुपर जेवण असे शॉट आशिल्ले असल शॉटाक मस्त नाव घेतील प्लेयर पद्मनाभ पै कोटा सुमार काळ देखून जीएसबी क्रिकेट अंतू खेळचे तसल एक दिग्गज प्लेयर लेजेंडरी क्रिकेटर म्हणून पद्मनाभ एक्सपीरियन्स क्रिकेटर वापस शॉर्ट बॉल पुल केला बट या पटी ते फील्डर सीधा फील्डर हातांतू वसंत फील्डर कंचे चूक करनी लायक कोण जज कोरनो कॅच जावन करियर केला तस जावन कोडिया सुपर किंग्साच्या फर्स्ट विकेट पडला हांगा एट द स्कोर ऑफ 37 श्रेयस गेट्स द विकेट. That's a short pitch ball. Unfortunate for the batter that he could not get the full length of the ball. He could not time it well also. He had the best hit, but it landed up straight into the hands of the fielder in the mid-wicket section. Gets no run, but ends up with a loss of his wicket. That's a little bit disappointing for the batting team there, but however, it should not matter. They still have 9 wickets in their hand. And they should still be an easy walk for them if they concentrate in the middle and try to get those rotating strikes and hit against the bat ball with the support of the wind here, Suresh. खंडित जावन विकेट अगत्यते आशिल्ले मलपेक राईट टायमारी विकेट पडलेलो आसा पद्मनाभ पै तसल एक डेंजरस बॅट्समॅनाक मागशे पेटोवच्यांतू यशस्वी जाल्लो श्रेयसाक मस्त पनिशमेंट मेळ्ळें लास्ट ओव्हर एक्सपेन्सिव्ह जावन आशिल्ले हे ओव्हरांतूय पद्मनाभ पैन सेकंड बॉल सीधा भायर पेटयला बट ताजी वरी नेक्स्ट बॉलांतू अनेक तसले एक हॉट शॉट मारचे प्रयत्न केले बट बॅट आणि बॉला मध्ये तितले कनेक्शन लायक नाशिल्ले टायमिंग्स लायक नाशिल्ले आणि प्लेसमेंट तितले परफेक्ट नाशिल्ले काही फिल्डर आशिल्ले की थंयची त्याच जाग्याक कॅच जाल्ला तश जावन विकेट पडलेलो आसा. If you look at the last ball was also hit against the wind. In fact, that's where he did not get the full length of the ground there. So अजूनंतर नेक्स्ट मॅच मुंबई पल्टन्स वर्सेस हँग्यो 11 या दोन टीमांमध्ये चलचर असं टॉस आय थिंक ऑलरेडी जाल्ला मुंबई पल्टन्सचे टॉस विन जालेलो असं दोन टीमांचे रेडी असू का. Shreyas, a left-hand batter, gives it full toss to the batter there, and this should be another catch. Can this make difference into the team? That was unfortunate. Umpire signals no ball. With this, they end up with one more free hit, and it's time for batter to stretch his muscle again and see if he could get the maximum of the next ball. लायक कॅच जावन आशिल्ले दिगंतला बट अनफॉर्च्युनेटली त्या नो बॉल जावन आशिल्ले अंपायरान नो बॉल म्हणला वापस तसले एक स्ट्रोक बट बॉल वत्ता या पट्टी सीधा येवन कमेंट्री बॉक्स तक सरंदा जबरदस्त सिक्सर. That was one pitch into the commentary box, straight behind the bowler's head. Gets a complete 6 run to the batter's team there. This was Durgesh Prabhu. Jumping with the score. 23 is what his individual contribution out of 45 playing 14 balls. And he had 3 sixers almost by now. यस 45 रन जाल्ला ऑलरेडी आणि 20 बॉलर्स आणि काही खाली 13 रन जाऊ का निदान जाऊन हुगुर मुखार वत्तस कोडियाल सुपर किंग्स टवर्ड्स द विक्ट्री. For some of you who started watching it late, you are witnessing a live telecast broadcasted by Youth of GSB Worldwide. They are the broadcast partners, and this tournament has been organized by Kodial Sports Association. This is GSB Premier League 2026. It is the 10th year of successful running. A decade's history has been made here, with this year getting concluded by next 2 days. Welcome you all back on the live session there. The
toss was won by Kodial Super Kings and they opted to field first and could put only 57 runs into the scorecard, and chasing that is Avtar Malpe United. The last year's winning team is what I was given to understand. They are already demonstrating why they were the last year's winning. The opening batsman gave them a big hit. लाईक शॉट जावन दुर्गेश डॉग एंड फील्डर्स मध्य दोन फील्डर्स बाइसेक्ट कोड वन बाउंस जावन मिड विकेट बाउंड्री गेला 4 रन्स मेळतस कोडियाल सुपर किंग्स चा स्कोर जंप जावन 49 जल्ला यशवंत आणि काही 3 ओव्हर बाकीस काली तंक रन्स जावका 9. This looks to be an easy walk for the batters team there. Unless the bowling gets couple of good wickets, they should try for hat tricks, which usually is very difficult in this format. But who knows? Cricket is a game which can turn the results in even the last ball and the last over. Suresh. प्रस्तुत सन्निवेश पळेल म्हणजे ड्रायव्हर सीट अंतस कोडियाल सुपर किंग्स आणि काही 9 विकेट ತಂಗನಿಗೆ सुरक्षित जावनस एक टेरिफिक फॉर्म अरस दुर्गेश 16 बॉल ಅಂತೂ 27 रन 27 रन स्कोर केला 3 जबरदस्त सिक्स तागेल बॅट आणि पळोवच्या मेळ्ळा तशींची आता टीमाच्या कॅप्टन आयकॉन प्लेयर फुडली लास्ट 3-4 सीझन देखून कोडियाल सुपर किंग्स लीड करतसच्या टीमाचे आयकॉन प्लेयर कोटा गणेश नायक ऑलराउंडर क्रिकेटर मस्त एक्सपीरियन्स प्लेयर तो स्ट्रायकर अस सो कोटा गणेश नायक इज ऑन स्ट्राइक वेदांत बट रेडी टू बॉल वेदांत गेल्या बॉल लायक शॉट आशिल्ली खंयची रिस्क घेन अशी नेलार मारला शॉट डाउन दी ग्राउंड म्हणतात आमी तसले एक स्ट्रोक जावन आशिल्ले लॉंग ऑफ गेल्ले बहुशा क्रिकेटांत एक सेफेस्ट शॉट म्हणून यशवंत Definitely, anything on the ground level is the safest, and with that beautiful footwork what he had, they should definitely make a sense for all the cricket watchers who are looking at the live streaming there. वेदांत गेल्या बॉल ब्लॉक वाला पडले बॅट्समॅन होगूर टॅप केले जस्ट स्टीयर कोड नो थर्ड मॅन बॉल वतस विकेट कीपर सुनील शेणैनी बॉल कलेक्ट केले बट 1 रन प्रिव्हेंट करू जायनी डॉग एंड बॅटर्स 1 रन आराम से धावन कंप्लीट केलेला सो गणेश नायक या सिंगल घेतील मी गणेश नायक कोर्टात स्ट्राइक आयला जीपीएल अंतू एदूर जनरल सीझन अंत एक पटी मॅन ऑफ द सिरीज अवॉर्ड घेतिले प्लेयर कोटा गणेश नायक आम्ही कोडियाल सुपर किंग्स ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋಚ ಮುಂಜಾನೆ ಯಶವಂತ್ ಪುಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ 9 सीझन तकून खेळलेले एक मात्र टीम येदूर ते ट्रॉफी उबर जायनी बट या पटी त्या एक स्पष्ट इंटेंशन अंतू केलतस ते आमक दिसतो संगत सुरवे जावची मॅच अंतू Definitely, I wish all the best for them, but let's see, till the last over we need to wait. Vedantu Durgesh gets a single run there, driven towards the third man. No attempt has been made for the second, and yes, the batters are running for the second run slightly. The fielders lose a bit of confidence there. They are sensing the loss. Hopefully, that should not be the case when they're playing here. They need to keep themselves on high and try to get the ball stopped and protect as much as runs they can. Yes, ತಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಚೆ ಔಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇಜ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಳೆಯಲು ಮುಂಜಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನಿರಾಶ್ ಜಲ್ಲಿಂತಿ ಈತ ಮಳೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹುಗುರುಗುರು ತಂಗೆ ಹತ್ತದಕ್ಕೂನತ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಜತ್ತಸ್ कोडियाल सुपर किंग्स पूरा लायक रीतीर मुखार वतस इता म्हळ्यार आनी जावक तांकां काळी 4 रन आनी काही 13 बॉल बाकी आस दुर्गेश आणि गणेश नायक क्रिसा मध्ये आसा तुम्ही पळयत आसा ती कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मँगलोर प्रेझेंट्स जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 प्रेझेंटेड बाय अँड स्पॉन्सर्ड बाय अमगेल आभरण Vedu to Durgesh, but this time the batter gets enough space, hit towards the point, gets a single. And it was a deep point that the fielder comes and picks up the ball, returns it back to the keeper. However, the batters get 1 run with this. The over gets completed. We are at the end of 5 overs with 55 on the scorecard for the loss of 1 wicket. 5 ओव्हर कंप्लीट झाला 55 रन कोडियाल सुपर किंग्स चे स्कोर केला खाली 1 विकेट मात्र लॉस झालेला आउट झालेला बॅटर मला पद्मनाभ कैन लायक एक स्टार्ट दिला ताके काम ताणी केलेला 8 बॉल फेस स्कोर 16 रन स्कोर केले तंतु 2 6 आशिल तागे बैटिंग अंतू आता दुर्गेश अनेक आक्रमणकारी प्लेयर
ताणे लाईक स्टार्ट दिला श्रेयस ओव्हर अंतू जबरदस्त सिक्स मारला बट आत्ता सिंगल्स डबल्स कारण स्ट्राईक रोटेट करतस सिंगल्स मस्त इंपॉर्टन्स दितस इथे म्हणता गोत सिच्युएशन ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ತಂಗೆಲ್ ಹತ್ತಂತ म्हणू सो नवे बौलर जाऊन श्रीनाथ चिन्ह नेतस अनेकलो बेसिकली केरळचे प्लेयर तवळी आम्ही तागे लायक बॅटिंग परफॉर्मन्स पळयले आता बॉलिंग ಅಂತೂ बॉलिंग लुक श्रीनाथ रेडी जल्ला दुर्गेशन होगू ड्राइव केले मिड ऑफ हाक टवर्ड्स द मिड ऑफ ते फील्डर्स तशेवन एक रन मात्र मेळतस एक रन दुर्गेश स्कोर जल्लत 32 and Kodial Super Kings at the moment 56 for 1. Srinath to Ganesh, and this time Ganesh doesn't spare that full toss. Hits it outside the boundary, gets a six, umpire says, dancing in the middle, raising his both the hands to show that it's six. So full toss ball जाऊन आशिल्ले असल बॉल मेळ्ळ्यारी गणेश नायक कंटितके सोड दिना सीधा पनिशमेंट दिल्ले बॉल सीधा भायर पेटयला सरन मेळतस विक्ट्री शॉट आयला आ जोटोची लायक एक शुभारंभ मेळ्ळाला कोडियाल सुपर किंग्साक सुरवे मॅच अंतू जीपीएल सीझन 10 चे फर्स्ट मॅच अंतू अवतार तसले एक बलिष्ठ टीमाक डिफीट करून लायक एक स्टार्ट मेळ्ळा ए टूर्नामेंट अंतू कोडियाल सुपर किंग्साक आराम से टूर्नामेंट ए मैच विन जल्ला 9 विकेट अन कोडियाल सुपर किंग्स हैव डिफीटेड अवतार मल्पे यूनाइटेड. Definitely, Suresh, Kodial Super Kings are putting all their experiences of losing couple of tournaments in the previous season, while they were in third place for 5 consecutive years and 2 times runners-up of the tournament. This time, I think they have made their mind to be there till the last match. All the best to them. आणि थोडे वेळानं मॅच नंबर 2 प्रारंभ जाता मुंबई पल्तान्स वर्सेस हँग्यो 11. फर्स्ट टाइम जीपीएल अंतू हँग्यो 11 टूर्नामेंटात खेळतस या टूर्नामेंटाचे एक स्पॉन्सर आहे तशीची हँग्यो आईस्क्रीम हन्नी सुमार वर्ष दुखून जीपीएल इथले एक लायक रीतीन चलचे एक मस्त स्पॉन्सर करून सहकार दितस ती त्यांनी एक टूर्नामेंट टीम बांधून यापटी फर्स्ट टाइम एंट्री घेतस पळवा हँग्यो 11 च्या परफॉर्मन्स कशी असता म्हणून अनेक साइडान तस बलिष्ठ टीम मुंबई पल्तान्स जीपीएल सीझनात दोन पटी चॅम्पियन्स गेल्या टीम सो दोन टीमांमध्ये नेक्स्ट मॅच आणि थोड्या वेळानं प्रारंभ जातस तशींची आम्ही पळवत फर्स्ट मॅच एंड जाला हांगा अवतास 11 मल्पेचे प्लेयर्स मस्त निराश जावन डगआउटाक वापस वतस ती तशीची हर्षोद्गार उल्हास दिसतस आमका कोडियाल सुपर किंग्साची डगआउट अंतू सो कमेंट्री बॉक्स अंतू चेंजेस करतस ती मुखारच्या सेकंड मॅचाक कमेंट्री करूक आमी टू जॉइन जातस ती अजय राज मँगलोर. वेलकम सर. Hello, check. Hello, check. Hello, check.
Hello, check. के लिए एक बहुत अच्छी योजना हमारे चुनाव चितन कामत और नरेश प्रभु कर रहे हैं। इन त्रिमूर्तियों को हैट्स ऑफ कहते हैं। आइए इस वक्त सीधे चलते हैं जो गर्मा गर्मी इस वक्त चल रही है, जो द्वंद, जो संघर्ष, एक क्रिकेट का मत्सव कोरिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की प्रस्तुति जीएसपी प्रीमियर लीग 2026 चल रहा है। पहला मुकाबला आपने देखा कोरियल सुपर किंग्स और अवतार्स मल्पे के बीच में हुआ, और इस वक्त 2 बार चैंपियन रह चुकी मुंबई के पल्टन्स आ चुके हैं। क्या बात है, उनका स्वागत है। और हांग्यो 11 जिन्होंने हर साल अपनी तरफ से योगदान दिया, वो आज तक उन्होंने सभी के मुंह मीठे किए हैं, ठंडापन दिया है अपने आइसक्रीम से। आज वो अपनी शानदार टीम को लेकर इस मैदान पर उतरी है कि वो मैदान में बाजी मारे। उनको शुभकामनाएं, दोनों टीमों को शुभकामनाएं देते हैं। ये इस वक्त टॉस जीत के मुंबई पल्टन्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनके सारे फील्डर्स मैदान पर उतर चुके हैं। मुझे लगता है कि कमेंट्री बॉक्स में भी आज बहुत कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कमेंट्री पैनल बहुत बड़ा है, और अगर गोपी भट्ट जी ने अगर शुरुआत की है तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा। पूजा के पश्चात अगर कोई भट्ट उसकी शुरुआत करता है, ओपनिंग करता है, तो शुभ माना जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में गोपी भट्ट जी को, जी हाँ, उनको धन्यवाद दिया। कमेंट्री पैनल में सतीश सालियान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश भट्ट, यशवंत जी मौजूद हैं, जो आपको अंग्रेजी में हालांकि बहुत खूबसूरती के साथ विवरण सुनाते हैं। उनका भी हृदय से स्वागत है। और हो सकता है कि आने वाले 2 दिनों में कुछ और कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, यानी कि कमेंट्री पैनल बहुत स्ट्रांग बन चुका है। बहुत अलग अलग वेरिएशंस के साथ अलग अलग अंदाज में विवरण सुनाने वाले सारे कमेंटेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये जीएसबी की मुझे लगता है कि उनका पैमाना पूरा अलग अलग रंगों से बड़े पैमाने पर इस पैमाने को भरने के लिए उनकी योजना रही है, वो काफी सफल रही है। ये मैदान पर चलता है इस शानबाग कुद्रो आइलैंड हेजबाड़ी मुल्की के इस मैदान पर जीपीएल 2026 सीजन 10 का शुभारंभ हुआ। इस वक्त श्रृंखला का दूसरा मैच चलता हुआ, दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त विनायक तय है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अजय कामत। विनायक और अजय पारी की बागडोर को संभालने के लिए शुरुआत के लिए वेंकटेश आक्रमण पर आ रहे हैं। वेंकटेश दूर वाले छोर से विनायक को गेंदबाजी करेंगे। अग्रिम स्थान के ये बल्लेबाज क्या कुछ कर पाएंगे। दाहिने हाथ से विकेट, वो छोर से गेंद फ्रंट फुट पर गेंद को दबाकर पुश ओवर करने का प्रयास किया था। गेंद को पहले जज करना चाहते हैं। बहुत अच्छी योजना है। पहले आपको एक लय को प्राप्त करने की जरूरत होती है, जो कनेक्शन होता है बल्ले और गेंद के बीच में, उसको पाने के लिए विनायक ने थोड़ा सा फ्रंट फुट पर ज्यादा पैरों का मूवमेंट नहीं था, बस हल्के से पैर को आगे ले गए, लेन को पहचान लिया, हल्के हाथ से गेंद को मोड़ दिया। जब तक फील्डर आ जाते अपने पार्टनर अजय को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। सवेरे का प्रहर इस वक्त समय बढ़कर सवेरे से दोपहर तक पहुंच चुका है। 12 बज चुके हैं। तेज धूप मैदान पर फैली हुई है, और मैं तारीफ करूंगा आयोजनकर्ताओं की कि प्रकृति का एक ऐसा सौंदर्य जहां पर क्रिकेट का मिश्रण सोने पे सुहागा है। बहुत सुंदर दृश्य, नदी के तट पर यह मैदान बसा हुआ है। चारों ओर खूबसूरत पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, हरियाली भरा वातावरण है, और इसको बहुत खूबसूरती के साथ दुल्हन कहीं शब्द तो ठीक रहेगा, उसी अंदाज में इसको सजाया गया। 2 वाले छोर से फिर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। दाहिने से विकेट उनके गेंद, इस वक्त गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हो गया, थोड़ा सा मिस कर गए। फ्रंट फुट को आगे बढ़ाया, गेंद के लाइन को पहचानने का प्रयास किया, मिस कर गया। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। दूर दूर बाउंड्री लाइन के बाहर ध्वज अलग अलग रंगों में जो कि हवा में लहराते हुए संकेत कर रहे हैं कि वातावरण बहुत खुश्क है, और बहुत ही शानदार क्रिकेट श्रृंखला इस वक्त चल रही है। उस छोर से एक और गेंद को लेकर गेंदबाज वेंकटेश
तैयार हो रहे हैं। अजय कामत की विकेट और इस वक्त ये एंगल डिलीवरी जो कि स्टंप्स की सीट पर आती हुई उस गेंद को इंतजार किया, अंतिम क्षणों में दबाकर गेंद को पुष्ट बाहर कर दिया। जब तक फील्डर आ जाते अजय ने अपने आप को नॉन स्ट्राइकर बना लिया, रन को बढ़ाकर पहुंचा दिया 2 पर बगैर किसी नुकसान के। स्कोर और स्टेटस स्टेशन जिनकी बदौलत हम आपको रनों का लेखा जोखा सुनाते हैं, रश्मिता और मनवीत जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद। 30 मिनट का समय जो कि हर टीम को दिया गया इस वक्त देखना है, उसके अनुसार आपको खेल को आगे बढ़ाना है, वरना आप जानते हैं कि नियम के पक्के ही ये अंपायर्स। इस वक्त उस छोर से वेंकटेश्वर से आक्रमण पर तैयार हो रहा है। उनके गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, उसको बैकफुट पर जाकर पंच किया, दिशा से छोड़कर गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। जब तक फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलकर कुल रन संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया 3 पर। नो बॉल का संकेत अंपायर ने किया है, तो ओवर स्टंपिंग के जरिए और इस वजह से एक अतिरिक्त रन नो बॉल के रूप में, दौड़ के रूप में एक, उसके अलावा एक पुरस्कार। आधुनिक नियम कितने अच्छे हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को इसका लाभ हो रहा है। फ्री हिट का अवसर किस तरह से हो पाएगा। पूर्व से पश्चिम के दिशा में पिच जो कि बनाया गया है और पश्चिम से पूर्व की ओर हवा का रुख चल रहा है। उस छोर से गेंद ड्राइव किया गेंद को, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाया इस नो बॉल की गेंद का। लॉन्ग रन से फील्डर गेंद के ऊपर आ गए, उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि दौड़कर वो 1 रन को पूरा कर ले। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 5 पर बगैर किसी क्षति के, 5 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। बहुत ही सुंदर वातावरण इस वक्त, और इस मैदान को खूबसूरत बनाने के लिए जो मेहनत की है उसके लिए हैट्स ऑफ कहना होगा। अभी हल्के घास उगाए हुए हैं, जिस तरह से नन्ना मुन्ना बच्चा धीरे धीरे जब उठकर बाहर यानी कि बड़ा होता है, उस अंदाज में आने वाले साल में बहुत खूबसूरत मैदान बनेगा, हरियाली भरा हुआ इनफील्ड और आउटफील्ड देखने को मिलेगा। ये गेम जो डॉट में तब्दील हुई, रन लेने का अवसर नहीं, रन 5 पर बगैर किसी नुकसान के, 5 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। पिच बहुत खूबसूरत बनाया गया, चुनिंदा शानदार अंपायरों को ऑफिशियल्स के रूप में मैदान पर इस वक्त देख रहे हैं जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत अलग अलग टीमों ने इस क्रिकेट श्रृंखला में हिस्सा लिया है। निश्चित तौर पर अच्छा खेल देखने को मिल रहा है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। एक और गेंद इस वक्त विकेट कीपर जो विकेटों से सटे हुए हैं, इस मध्यम तेज गति से आते हुए गेंद को उन्होंने बहुत जल्दी गैदर कर लिया। जैसे ही गेंद बल्लेबाज को बीट करते विकेट कीपर के पास गए, उन्होंने गेंद को उठा लिया, गिल्लियां उड़ा दी, लेकिन बल्लेबाज बाल बच गए। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है, और इस ओवर की समाप्ति पर, पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन बन चुके हैं। एक अतिरिक्त रन अब तक बन चुका है, कोई क्षति कोई आघात अभी नहीं हुआ है। जीपीएल 2026 की योजना जिस तरह से शुरुआत में की गई थी, मुझे याद है सह्याद्री का वो खूबसूरत मैदान नेशनल हाईवे के बगल में, वहां पर पहली क्रिकेट श्रृंखला, और उसके पश्चात सफलता के बाद नदी तट का वो सह्याद्री का खूबसूरत मैदान, लगातार 9 साल, उसके पश्चात एक नया इतिहास यजवाड़ी के शानदार खुदरू आइलैंड में एक नया इतिहास, यानी कि 10वें साल में इस वक्त जीएसबी जीपीएल 2026 सीजन 10 का चलता हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए इस वक्त गेंदबाज आक्रमण पर छोड़ पर आ रहे हैं श्री कृष्ण गेंद को लेकर, और स्ट्राइक एंड पर अजय कामत ने अब तक 2 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया। विनायक भाई 4 गेंदों का सामना किया, 2 रन वो बना चुके हैं। तो गेंद को किस योजना के साथ श्री कृष्ण कर पाते हैं। दाहिने से विकेट उनकी गेंद आउट, ड्राइव कर दिया, फुल टॉस पर आकर गेंद को लॉन्ग ऑन में फील्डर आ चुके हैं, 1 रन लेने का अवसर मिलेगा। 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़ चुका है, औसत काफी धीमा चलता है, 6 रन दूसरा ओवर पर गति पर है। और मुझे लगता है कि मैंडेटरी पावर प्ले का भरपूर फायदा बल्लेबाजों को उठाना होगा। पिछले मैच में जो 57 रन बने थे, ऐसा लगा कि सम्मानजनक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन मैदान का क्षेत्रफल अगर देखें तो ऐसा लगता है कि मैदान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और हवा का साथ बहुत अच्छा मिलता है बल्लेबाज को। अगर वो पश्चिम की ओर बल्लेबाजी करते हैं, पूर्व की ओर हवा चलती है, तो स्ट्रोक कनेक्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर हवा का साथ मिलेगा। राउंड विकेट से गेंद, इस ओवर की गेंद बीट कर गए, स्टेप आउट नहीं किया, खड़े खड़े गेंद को उछालने का प्रयास किया, तेज चल रही है। हाईएस्ट 6 से एक और गेंद को राउंड विकेट, बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर थी और बल्ले को चलाया, मिस कर गया। अंपायर से गुहार लगा रहे हैं कि इस गेंद को वो वाइड करार दें।
लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि नीति नियमों की बात करें तो हम पर बिल्कुल पत्थर दिल बन जाते हैं और उनसे सहानुभूति की उम्मीद नहीं की जा सकती। रन्स अभी भी वहीं पर सिर है। दाहिने हाथ से राउंड विकेट की गेंद, इस वक्त अच्छी गेंद थी, लगातार ऑफ स्टंप के आसपास परीक्षा ले रहे हैं। गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई, बाई का संकेत अंपायर ने किया, 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है, रन्स बढ़कर 7 पर, बगैर किसी नुकसान के 7 विदाउट लूजिंग एनी विकेट, 7 रन बगैर किसी नुकसान के। दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन इस वक्त चलता हुआ है और ऐसे में फील्डर बार बार इधर उधर अपने पोजीशन को बदल रहे हैं, प्लेसमेंट को बदल रहे हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लगभग गली थोड़ा सा स्क्वाइड रखा गया, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, और बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को छक्का दे, सीधे जाकर स्टंप से टकराए, मिस में आए, हिट हो। तो दीपक बोल्ड होकर पवेलियन लौट रहा और इस शानदार विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2026 सीजन 10। स्टंप्स के सीट पर आती हुई गेंद, हालांकि माफ कीजिएगा दीपक हैं, वो अजय नहीं थे और थोड़ी सी भूल चूक, और इस वक्त बल्लेबाज गेंद को खेलने के प्रयास में बीट हो गए। आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कोई ऑप्शन नहीं था मुझे लगता है, क्योंकि रन गति इतनी धीमी गति से चल रही थी कि बल्लेबाज को मात्र एक रास्ता, एक विकल्प बचा था कि वो आक्रामक स्ट्रोक लगाए, और ऐसी परिस्थितियों में गेंद जो स्टंप्स के ऊपर आ रही थी उसको खेलने का प्रयास, और सीधे स्टंप से गेंद टकराई, बोल्ड हो गए और बहुमूल्य विकेट जो कि गिर चुका है। तो नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त अभी अजय आ चुके हैं। दाहिने हाथ से ओवर विकेट अजय कामत के लिए गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया, थोड़ा सा शफल कर रहे थे, गेंद की लाइन तक पहुंचकर जड़ से निकालकर गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, जब तक फील्डर आकर गेंद को समेट पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि 1 रन को वो बटोर ले। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समय पर 8 रन बन चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर 2 अतिरिक्त रन। आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 सीजन 10। तीसरे ओवर की शुरुआत के लिए गेंदबाज आ रहे हैं। अजीत भट्ट दूर वाली छोर से आक्रमण पर आ रहे हैं और किन शब्दों से तारीफ करें इस यजमानी के इस खूबसूरत मैदान की। और जैसे मैंने कहा कि जीएसबी समाज के लिए ज्ञान भक्ति जो विरासत में मिली है, और मुझे लगता है कि अजीत भट्ट भी आज पूजा करके आए हुए हैं कि उनको अच्छे विकेट्स मिले और बल्लेबाजी में भी कुछ वो चमक कर ऊपर आए। बल्लेबाज देखते हैं क्या होता है। दूर वाले छोर से अजीत भट्ट गेंद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। फील्डिंग में अब काफी बदलाव हो चुका है। मैंडेटरी पावर प्ले के पश्चात फील्डर्स कुछ फैले हुए, ऑफ साइड पर मात्र 2 खिलाड़ी नजदीकी। दूर वाले छोर से ये गेंद इस वक्त शॉर्ट ऑफ लेंथ पुल किया, गेंद को थोड़ा सा शॉर्ट आर्म पुल था, जब तक स्क्वायर लेग बैकवर्ड में फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन को बटोरने का। इस 1 रन के साथ रन्स बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अजय भट्ट की एक और गेंद विनायक पर, जो कि 7 गेंदों का सामना कर चुके हैं, मात्र 2 रन अब तक वो बना चुके हैं। उनको सोचना होगा कि क्या कर रहे हैं। निर्धारित 8 ओवर्स का मैच है और अगर 8 ओवर के मैच में 2 ओवर की शुरुआत में ही अगर अच्छे खासे रन्स नहीं बने तो धीरे धीरे दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव से हटने के लिए उनको निश्चित तौर पर अपने आत्मविश्वास को एकत्रित करते हुए कुछ विस्फोटक स्ट्रोक्स खेलने होंगे अपनी टीम को एक सम्मानजनक लक्ष्य को दिलाने के लिए। राउंड विकेट अजीत भट्ट की गेंद लेग स्टंप के बाहर की दिशा से भटकी और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। 1 अतिरिक्त रन। एक अतिरिक्त रन के साथ रन बढ़कर 10 पर, 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। कृष्णा जो कि इस वक्त स्टंप्स के पीछे अंपायर की जिम्मेदारी को निभाते हुए फुल टॉस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मिड विकेट की दिशा में उछाल दिया। मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का।
तो इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक थे जीपीएल 2024 सीजन 10। तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड आपने देखा होगा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम कर रही है जो कि ब्रॉडकास्ट पार्टनर है। आइए इस गेंद पर आते हैं। राउंड विकेट उस छोर से एक और गेंद, फिर से गेंद को हवा के रास्ते खेल दिया, कैच हो सकता है, फील्डर गेंद के नीचे आ गए, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, खूबसूरत कैच और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। क्या बात है। तो अजित भट्ट लगता है कि पूजा सफल हो गई। पहले जब छक्का लगा तो लगा उनको कि आज बात नहीं बनेगी, लेकिन ऑलमाइटी सुप्रीम कहते हैं कि धीरज का फल मीठा होता है और ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और धैर्य रखने के पश्चात उनको एक शानदार विकेट प्राप्त हुआ। इस विकेट के प्रायोजक थे जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चुनौती इस वक्त हांग्यो 11 को है क्योंकि उनका मुकाबला 2 बार चैंपियन रहे टीम मुंबई के पल्टन से है और आप जानते हैं मुंबई पल्टन अगर इतने दूर से आ रही है तो निश्चित तौर पर अपने माइनस को प्लस में बदलकर स्ट्रांग टीम लेकर आई होगी। तो आपका संघर्ष निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। अजित भट्ट फिर से गेंद को लेकर दूर वाले छोर से तैयार। अतुल इस वक्त स्ट्राइक पर है। दाहिने से विकेट गेंद अतुल के लिए ड्राइव कर दिया, गेंद को बहुत जल्दी पे चल के नॉन स्ट्राइक के दिशा में थ्रो हो जाता तो शायद कुछ और दृश्य हो सकता था। बहरहाल निशाने पर गेंद नहीं गिरी, स्टंप से नहीं टकरा पाई और बल्लेबाज बाल बाल बच गए। 1 रन चुराने के लिए आगे बढ़े थे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज, पलट कर क्रीज के दिशा में पहुंच गया तो हो चुका था, लेकिन निशाना उनका चूक गया और बल्लेबाज बाल बाल बच गए। अभी भी 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रन मानो कछुए की चाल चल रहा है, औसत को बढ़ाने की जरूरत है। विकल्प क्या है? सिर्फ करो या मरो वाली बात है। ऐसे में दोनों बल्लेबाज पर प्रयास कर रहे हैं। अतुल के लिए एक और गेंद, फिर से ड्राइव कर दिया इस वक्त, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, थोड़ा सा तिरछा स्क्वायर ड्राइव कर दिया, गेंद को कवर डीप में गेंद जा चुकी है। 1 रन आसानी के साथ लेने का अवसर है दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 17 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अजित भट्ट योजना बना रहे हैं, छक्के के पश्चात उन्होंने एक अच्छा कमबैक किया है और इस वक्त बल्लेबाजों को बांध के रखने में वो सफल हो रहे हैं। दीपक 2 रन बना चुके, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। उस छोर से इस गेंद का सामना करने के लिए वो तैयार है। फिर से ड्राइव किया, गेंद को फील्डर के दिशा में, रनआउट का मौका शायद बन जाता, लेकिन जब तक थ्रो आ जाता गेंदबाज गेंद को गैदर कर पाते। 1 रन को दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिया और इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 18 पर 2 विकेटों के नुकसान पर, जबकि संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हैं जीपीएल 2026 सीजन 10। वेलकम बैक जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 में। और सब कुछ शानदार है, डीजे की कमी दिखाई पड़ रही है और मैं आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि डीजे हर चौके छक्के और विकेट्स पर अगर धुन को बजाते हैं तो 4 चांद लग जाएंगे। तो थोड़ा सा अनुरोध करते हैं, कृपया डीजे शानदार धुन को तैयार रखें, हर चौके और छक्के विकेट के पश्चात अच्छे नंबर्स को तैयार रखें ताकि इस क्रिकेट श्रृंखला का स्तर बढ़े। 7 नंबर के जर्सी में गेंदबाज आक्रमण पर श्री कृष्ण अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं और स्ट्राइक पर दीपक 3 गेंदों में 3 रन बना चुके हैं। आज क्या योजना रहेगी क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है, रन बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। अतः स्ट्राइक एंड पर माफ कीजिएगा, ऑस्टन के बाहर थी, ड्राइव करने का प्रयास मिस करके विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। मुंबई पल्टन्स ने जो योजना बनाई है, चाहे वो स्ट्रांग टीम हो या वीक, वो अपना 100% करते हैं। होमवर्क बहुत अच्छा किया है, लाइन और लेंथ पर वो काम कर रहे हैं, दिशा पर बहुत अच्छी उनका नियंत्रण दिखाई पड़ता हुआ इस छोर से फिर से तैयार हो रहे हैं। फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, ऑफ साइड पर नजदीकी खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं, शॉट जी नहीं, थर्ड मैन शॉट में है और उसके अलावा पॉइंट बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के सीध में रखा गया है। ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी जो शॉट फाइन लेग पर है, जबकि एक वाइडिश मिड विकेट पर रखा गया। फुल टॉस गेंद को उछाल दिया है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर हवा से बातें करते हुए निकल गई 6 रनों के लिए।
इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट है जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। 13 छक्के श्रृंखला का दूसरा मैच चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अब तक 13 सिक्सेस लगाए गए हैं, चौके मात्र 3। इस छोर से फिर से ये गेंद अजय स्ट्राइक पर है, उनके लिए गेंद, फिर से उन्होंने गेंद को लेंथ में ज्यादा थी, उछाल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीपीएल 2026 सीजन 10 का एक और धमाकेदार छक्का। $30 for the loss of 2 wickets. पंद्रह के व्यक्तिगत योग पर अजय बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौन कहता है कि हांग्यो 11 नई टीम है? इस छक्के ने बता दिया कि अभी दमखम बाकी है। शानदार स्ट्रोक लगाकर उन्होंने साबित किया कि अभी बचे हुए ओवर्स में वो बहुत विस्फोटक पटाखेदार बल्लेबाजी करेंगे। इस छक्के के साथ लगातार 2 छक्का लगाया गया, रन्स बढ़कर 30 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। जो शुरुआत में औसत काफी धीमा चल रहा था, उसकी भरपाई कर दी इस बल्लेबाज ने। और छक्के के साथ गेंदबाज अब सोच में पड़ गए कि उनको किस योजना के साथ, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। और कुछ पलों के लिए खेल रुका हुआ है। रन्स जैसे मैंने आपको बताया 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 30 for the loss of 2 wickets। टॉस जीतकर मुंबई टाइटंस के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और हांग्यो 11 निश्चित तौर पर नई टीम है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब बिडिंग होती है तो अवसर मिलता है और उस टीम के कप्तान को, टीम ओनर को, कि वो अच्छे खिलाड़ियों को चुने। और अब किसके खेमे में कितने अच्छे खिलाड़ी आए हैं, ये तो किस्मत की बात है। अब ऐसे में कौन सी टीम बहुत ज्यादा सशक्त है, और आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कौन डिजर्व करता है श्रृंखला को जीतने के लिए। इस वक्त तेज हवा चल रही है और गेंद को दुरुस्त करने के पश्चात, लेने के पश्चात, पुष्टि करने के पश्चात अंपायर ने थमा दिया गेंदबाज को। फिर से गेंद को लेकर श्री कृष्णा तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में वो बहुत खर्चीले साबित हो रहे हैं। लाइन यहां से विकेट, उनकी गेंद जैसे ही 2 छक्का लगा, लाइन और लेंथ बिगड़ गई। एंगल डिलीवरी जो बाहर निकल गई लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर, और अंपायर ने कहा कि वाइड है। 1 रन के साथ रन बढ़कर 31 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। श्री कृष्णा योजना बनाकर तैयार हो रहे हैं। 15 के व्यक्तिगत योग पर अजय बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 6 गेंदों का सामना किया। एक और विस्फोटक धमाकेदार 100 गेंद गई दूर, हवा से बातें करते बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो इस जबरदस्त छक्के के बाद जगते जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। तो नदी तट का ये मैदान, और मुझे लगता है कि बहते हुए पानी में कई गेंदें आज स्विम करेंगी, नहाएंगी, तैरेंगी। जैसे मैंने आपको बताया 37 for 2, 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। अचानक रनों को रफ्तार मिल चुकी है। अजय इस वक्त बिल्कुल छुपे हुए रुस्तम की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शायद फील्डिंग में इधर उधर परिवर्तन करने की उम्मीद की जा रही है। कप्तान कुछ देर के लिए खेल रोके हुए हैं, और इस वक्त शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी पलट कर खड़ा है। गेंद को फिर से उछाल दिया, फिर से हवा के रास्ते गेंद गई दूर, कॉसो बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 का एक और धमाकेदार छक्का है। अजय के लिए उनकी एकाग्रता को भंग करने के लिए शॉर्ट लेग पर एक खिलाड़ी को जानबूझकर खड़ा कर दिया गया था, जो बल्लेबाज को पीट करते हुए खड़ा था। लेकिन मैं समझता हूं कि अजय ऐसी बातों को बिल्कुल अनदेखा करते हुए उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और अपने उस शानदार बल्लेबाजी को बरकरार रखते हुए, गेंद को फोकस करते हुए, एकाग्रित होकर जबरदस्त तरीके से गेंद को उन्होंने प्रहार किया और गेंद को हवा के रास्ते दूर भेज दिया 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ कुल मिलाकर रन बढ़कर 43 पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस छोर से एक और गेंद को लेकर श्री कृष्णा तैयार हुए। अजय के लिए फिर से उछालने का प्रयास किया, मिस कर गए। दिशा परिवर्तन होकर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, और अंपायर से इस वक्त अजय
कन्विंस करना चाहते हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस गेम को वो वाइड करार दें, लेकिन अंपायर ने कहा कि ओवर समाप्त हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 जो कि कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगलोर की प्रस्तुति है। 5वां ओवर इससे पहले के शुरू हो, अजय जो धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका बल्ला फिर से बोलना शुरू करें और उनका पार्टनर उनका साथ दे। मुंबई पल्टन्स के कप्तान जो कि इस वक्त विचार कर रहे हैं कि किस गेंदबाज को आक्रमण पर लगाएं, मोर्चे पर लगाएं। ये सब बातें सुनाने के लिए विवरण में बदलाव करते हुए फिर से मैं कोंकणी में श्री गोपी भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय सर. येदोलताई तुम्ही भारी चंदेका सुरे 4 ओव्हर अंतू हिंदी कमेंट्री ऐकल्याची प्रति वर्ष जीपीएल टूर्नामेंट अंतू एक हिंदी कमेंट्री तुमकां ऐकूचा मेळटा. तशीच विंगड समाजाचे टूर्नामेंट अंतू दक्षिण कन्नड उडुपी भाग अंतू जेवचे राष्ट्रीय मट्टाचे टेनिस बॉल जो स्टिच बॉल टूर्नामेंट समेत हंगिल कमेंट्री तुमकां ऐकूचा मेळ्ळा. तशी 4 ओव्हर ನಂತರ 43 43 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. पळोवचे गेले म्हणजे खंडित लाईक स्कोर आणि 3 ओव्हर बाकी भरला. 7 ओव्हरच्या ह्या एक इनिंग्सांत आणि 3 ओव्हर बाकी भरला. स्कोर एव्हरेज तुम्ही पळोवचे गेले म्हणजे तबडी फर्स्ट मॅच अंतू कोडियाल सुपर किंग्स 60 रन लागी चेस करता आशिल्ल्या भविष्यात तितली कष्ट जायनी. स्कोर हॉड म्हूण दिशिल्ल्या जाल्यार आराम चेस केला. तस देखून स्कोर लायक आसा जाल्यार यानी की 3 ओव्हर बाकी भरला देखून आणि 3 ओव्हर अंतू कितली रन मारूक साध्य जाता पळका हंगे 11 तंका भारी चंद एक बॉलिंग थी कंचे रन अवकाश दीनी. बॉलर वेंकटेश प्रभु 5th ओव्हर या इनिंग्साचे घालूक तयार झाला. बॅटिंग स्ट्राईक घेता अतुल, नॉन स्ट्रायकर अजय. 4.1 ओव्हर्स 43 फॉर 2. यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड चॅनल अंतू हे एक पंद्याट तुम्ही रद्रा जत्तास वेंकटेश प्रभु भारी चंद बॅटिंग ते पॉइंट अंत खंचे फिल्डर ना 1 रन धावन कंप्लीट केला. 2 रन धावन ताकि पळकना 2 रन अवकाश ना ते 1 रन मात्र मेळता. 1 रन ओटूची संतुष्ट जाऊक जत्ता प्लेयर्स अदानी अतुल आणि अजय एक लाईक सेट बॅट्समॅन 9 बॉलांतो 27 रन मारनु खेळता असलारी अतुल 9 ऐल तसल बॅट्समॅन 4 बॉल फेस करून 2 रन अतुल खेळतास. वेंकटेश प्रभु वापस तयार. लाईक एक ड्राईव्ह होते 1 रन मात्र मिळता. कव्हर असेल तसं फिल्डर आहात. ह्याच्या मॅच नंतर जीआरएस फॅन्टसी पार्क मैसूर वॉरियर्स आणि व्ही स्ट्रायकर सांगेल मध्ये जाऊच्या असं 2 टीमाचे कॅप्टन आणि या इनिंग्स ब्रेक वळारी अत्यगती जाऊन तुम्ही कमेंट्री बॉक्सला जाओ अंग स्टेजाला घ्या सुक जाता टॉस घालू का तशी तुमगेला प्लेयर रजिस्ट्रेशन करू का ओपास उडगास करता इनिंग्स ब्रेक वळारी नेक्स्ट मॅचाच्या जीआरएस फॅन्टसी पार्क मैसूर वॉरियर्स आणि व्ही स्ट्रायकर्स हाजी कॅप्टन नाना सुका लॉफ्ट करू प्रयत्न ज्याला कम्प्लिटली मिस झाला बॉल बॅट कनेक्ट जायनी. एक हॉड एक टोटल सेट करू प्रयत्न हंगे 11 तुला अतुल लाईक एक हार्ड हिटर या बॉलाच्या प्रति एक जीपीएल तुम्ही पुढे नशा पुढली वर्ष दिला रे लाईक एक ऑलराऊंड प्रदर्शन दिलेलं तसला बॅटर अतुल. तशीची बॉलिंग विषयी सांगा म्हणजे व्यंकटेश प्रभू लाईक एक आमगेल समाजाचे एक बॉलर म्हणून सांगून घेतया हंगेल एक जुगलबंदी कशी तपळो का वापस अतुलाना लॉफ्ट करू का ड्राईव्ह मारू प्रयत्न केला जाल्यार कंप्लिटली मिस झालो. एक लायक एक एव्हरेज जर खेळता आशिल्ल्या हंगे 11 ओगूर हे 5 ओव्हरान ಸ್ವಲ್ಪ बॅक आईला म्हणत इता म्हळ्यार ह्या एक ओव्हरान तू खाली 2 रन मात्र दिला. लास्ट 3 ओव्हर बाकी आशिल्ल्या असले एक स्लॉग ओव्हर सांतू हॉड एक रन मारता असेल प्रयत्न खंडित आसा जाल्यार ह्या ओव्हर लायक घाला म्हणून सांगितलं व्यंकटेश प्रभून. वापस 1 रन मात्र मिळता. फिल्डरला लाथत बॉलर रनआउट अवकाश ना तिथे भितरी रनिंग मिडवीत विकेट लागे 2 रन धावन ताकि पळोका ना धावनचा प्रयत्न केला एक पटीक जाल्यार नका रिस्की रन नका. स्ट्रायकर अतुल खेळतास आणि अनेक साइड अजय सट जाल्यार बॅट्समॅन रिस्क घेऊत नका म्हणून तांणी मना घेऊन जोटूची 5 ओव्हर मुक्ताई झाला. लायकी का बॉलिंग परफॉर्मन्स मुंबई पल्टन्सच्या व्यंकटेश प्रभूला
चारी ओव्हरांतून 43 आशिल्ल्या धांची एव्हरेज अशी चड गेलता आशिल्ली तसली टीम हंग्या वयल्या 5 ओव्हरा नंतर 9 एव्हरेजाक एक सरासरी रन रेट मक्षी एक्झॅक्ट 9 रन अशी चड ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಡ ಸ್ಕೋರರಿ एवरेज खेलता 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओव्हर्स 7 ओव्हराचे पंद्याट असता 7 ओव्हर पंद्याटांतू 5 बॉलराक उपयोग कोरका जाता दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले असता 4 ओव्हर नंतर सनाची ड्रिंक्स ब्रेक तशीच इनिंग्स ब्रेक असता एक इनिंग्साक 30 मिनिट्स अंपायर्साना ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗದಿ केलेला असा 30 मिनिट मात्र ते 30 मिनिट खंयची टीम दंटवतकी म्हळ्यार टाइम वेस्ट केल्ली म्हणून जाल्यार खंडितय तुमका पेनल्टी असता पेनल्टी खंयची रुपारी म्हणून सांगून होता अंपायर्सान डिसिजन घेतली त्या डिसिजनाक तुम्ही बद्ध जावका जाता देखून जलतीतले तुम्ही टाइम मेंटेन करून त्या फिल्डिंग टीम अशा बरो बॅटिंग टीम अशा बरो या टाइमाक सहकार कोरका म्हणून निघून घेता पंचावर घालून षटका मात सना वाटा कॅच की म्हणले केले ना की फिल्डर आलाय मस्त वैर येईल तसल बॉल एक रन मात्र मेलता तुम गोतशील म्हणकेचे 7 ओव्हराचे पंद्याट संची ओव्हर जाता आणि अधिकृत जाऊन तुम्ही काढली म्हणजे निक्र बॉलवरला एक बॉल जल्ला चरण बॉलिंग आलो का स्ट्राईक आगात सेट बॅट्समॅन अजय लारी चरणाला जुगलबंदी पडो का आणि इक्र बॉलवरला या इनिंग्साच्या अधिकृत जाऊन सांगा म्हणजे लारी अजय स्ट्राईक आका लेफ्ट के राजेन बॉल सीधा फील्डर पंद होता आउट लायक एक विकेट मिळला मुंबई पल्तान्स टीमा तंका म्हणून सांगेत सेट बॅट्समॅन अजय आउट जाऊन मग होता 10 बॉलाग 28 10 balls 28 रन्स लायक एक हंग्यो 11 टीमा तंका स्कोर आली लायक हंतार येऊन पवन अजय आता एक तगेले कसं कर्तव्य असेल की ओपनिंग बॅटर आल तुला ना त्या एक कर्तव्य साधारण मोठा परिपूर्ण केला म्हणे 10 बॉलाग 28 मारनु तगेले एक परफॉर्मन्स दिताची मुखारच्या प्लेयराक अवकाश कोण दितास अजोटूची तुमका उपास उडगास करताची 7 ओव्हराचे पंद्याट जातास संची ओव्हर चालती अस लायक एक बाउंड्री सिक्सरसाचे एक कन्नडानं मी सुरीमळे म्हणताची बाउंड्री सिक्सर गा सुरीमळे म्हणून सांगून तशीची लायक एक बाउंड्री सिक्सर्स आमका पोचाक मेळनो अजय अल बॅटर तुलान अजय आउट जाऊन मग स्वतःच आता 9 आईला बॅटर कीर्तन स्ट्राईक घेता बॉलिंग घालू का चरण फर्स्ट बॉलची लॉफ्ट करून प्रयत्न केला आउट स्टेप आउट जाऊन मग स्वतःच ಸ್ವಲ್ಪ स्टेप आउट करून फर्स्ट बॉलाची स्लॉग ओव्हर आणि हाजी नंतर एक ओव्हर मात्र जलदीतली स्कोर बिल्ड करूया टीमाच्या म्हणून सांगून फर्स्ट बॉलाकाची हार्ड हिट प्रयत्न केलेला जलरी फुट स्टॅम्पाच्या क्रीजाचे मस्त मुखार असेल देखून कीपराला आता बॉल येईल कीपरान खंचे चुकी करण्याचे ते स्टेप आउट जाऊन प्लेयर मग स्वतःच हजोटू लायक एक सफलता म्हणून सांगित 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स 47 रन 4 विकेट कडून घेऊन हंग्यो 11 5.3 ओव्हर्स तुमको स्कोर कार्ड यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड चॅनल आणतो युट्यूब आणतो तशीच फेसबुक आन तुमका लाईव्ह जातास या दोन्ही मॅच जातास फर्स्ट मॅच कोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड मध्ये चोलनो कोडियाल सुपर किंग्स फर्स्ट मॅच विन झाला तदनंतर सेकंड मॅच रिझल्ट कोळका ಮುಂಜಾನೆ यांनी ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ಅಮ್ಮಿ ರಕೋಕ ಜತ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ತಾನ್ಸ್ आणि हंग्यो 11 मध्ये सेकंड पंद्याट जातास 4 ओव्हराक 43 मारू लायक एक एव्हरेज आहे हंग्यो 11 चांगली ती बांधून गेला म्हणत मुंबई पल्तान्स टीम आता फर्स्ट बॉल ऑफास लॉफ्ट करू प्रयत्न केला पवनानं कंप्लीटली मिस झाला चरण आली संची ओव्हर अजनंतर एक ओव्हर मात्र बाकी असला प्रेशर सिच्युएशनात लायक एक बॉलिंग परफॉर्मन्स दितास चरण म्हणून खंडित जाऊन आमका सांगूक मेलतास चरण वापस स्ट्राईकाक पवन पाय वापस लॉफ्ट केला या पटी कंचे चुकीना ते बौडलेना बाहेरी सिक्सर एक मस्त टाइम नंतर अजयाला बॅट आतून नमका बोलचा मिळाला सिक्सर तदनंतर एक 10-15 बॉल नंतर आमके सिक्सर पळोचा मिळतास वार तुम्ही पुढे येता
फुडल्या जीपीएल तुम्ही काढली म्हणजे सह्याद्री ग्राउंड लायक आशिल्ल्या मक्षित न्हय आशिल्ल्या म्हण तुम्ही लेख उपराचे यावय सेम सिच्युएशन आरी ग्राउंड लागी न्हय आसा भारी चंद एक सिच्युएशन भारी संजे एक वातावरण हंग तुम पुढचं मेलता असा ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ राहील तसल बॉल हजोटूची एक लायक एक मुंबई पलतांसाचे एक ओव्हर म्हणत असल एक स्लॉग ओव्हर आणि मस्त प्रेशर असता बॅटर आगे चढती ती चोड स्कोर कोरका म्हणून असता जलारी चरणाला असल एक सिच्युएशन असल एक हंतांत लायक एक बॉलिंग ताणे परफॉर्मन्स दिला म्हणत स ओव्हर हंगाक मुक्ताई जला स ओव्हर नंतर 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आणि एक ओव्हर बाकी भरला 7 ओव्हराच्या या पंद्याटांतू एक ओव्हर बाकी भरला हाची नंतर इनिंग्स ब्रेक अंतू जीआरएस फॅन्टसी पार्क मैसूर टीम आणि वी स्ट्रायकराचे कॅप्टन ते टॉसाक तयार असा म्हणून लेखता तुमगेल्या टॉस आणि टीम रजिस्ट्रेशन इनिंग्स ब्रेक अंतू जाता हाची नंतर मॅचा नंतर खंयचे वेळ करनाशी प्रति एक मॅचाक तुम्ही क्लब समयाचेरी हाजर असून ऑर्गनायझर्स लोटू सहकार दिव का म्हणून निमून घेतास मस्त कडा मॅच जावचा असा बॉलिंग घालूक आता समीर शानबाग स्ट्रायकरी पवन पै नॉन स्ट्रायकरारी अतुल तुम्ही खेळतास समीर शानबाग पवन पैक फुल टू साइड दसल बॉल लाइक एक ड्राइव तई चला सीधा लॉन्ग ऑफ आशिल दसल प्लेयर आलगी एक रन मात्र मिळता एक रन बशी वैरी खंचे अवकाश नाते लास्ट ओव्हर जता तुम गोतस लास्ट ओव्हर 7 ओव्हर चालतील तसं मुंबई पलतांसनी हंग्या 11 आवटू या दोन्ही मॅचाच्या लास्ट ओव्हर जतास बाउंड्री सिक्सर्स कितली पडचा मिळता नाव मुंबई पलतांस हंकी का बंधून घालू का सफलत मिळत की पुळका लाइकिंग स्टॉट लॉंग ऑन अंतू एक रन मात्र मिळता 1-2 रन ಬಹುಶಃ ವಾಪಸ್ ರನ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಮೂಲಕ ಅಂಪೈರ್ ಗಿಲೌಡ್ अपील केला जलारी लाइक एक रन मिडून विकेट ते रन आउट जायनी 2 रन सफल जाऊन परिपूर्ण केलेला बॅट्समॅन आणि नेक्स्ट टीम वापस आम्ही तुम्ही सांगता सची मैसूर वॉरियर्स आणि वी स्ट्रायकर कॅप्टन ते टॉस येऊ का इनिंग्स ब्रेक आवाला तुम्ही टॉस जाता इमिडिएटली तुम्ही येऊ का म्हणून घेता 7 ओव्हर चालतील समीर शानबाग स्ट्रायकर अतुल आला ऑफ साइडाचे मस्त बाहेर तसल बॉल वाईड की म्हणले अतुलाना जलारी अंपायर सन्ना लाईना भितरी अस वाईड दिवच्या जायना बॅट्समॅन अपील करूची सहज जलारी अंपायर लायक परिणात जाऊन असेल एक थंड तीर्पुगाराल थंड आमगेले द्राक असं देखून भाल लायक एक तीर्पू म्हणून सांगू येत समीर शानबाग वापस अतुलाक हार्ड हिट मारूक प्रयत्न केला जलारी सीधा फिल्डरला आता एक रन धाव कम्प्लीट केला दोन्ही रन धावताची बॉल येऊन गॅदर करून कीपरला येऊची भितरी दोन्ही रन धावून कम्प्लीट केलेला असा भारी चंद एक रनिंग तेई जलारी 1-2 रन अंतावळी सांगेल म्हणके मस्त कसं टेन्शन जाय ना म्हणले कुका मुंबई पलटन्स आणि तमळारी 4 ओव्हर तुम्ही पडेल म्हणजे हॉड एक स्कोर एक 70 लागी स्कोर वत की म्हणले केला जलारी आता स्कोर तिथली जायनी पुढं का अनेके बॉल्स बाकी भरला वापस हार्ड सीधा लॉंग ऑफ असेल तसल प्लेयर आले एक रन धावल्याची दोन्ही रन धावता की दोन्ही रन धावचा प्रयत्न केला कीपरला उडीला बॉल या पटी आउट जाऊन अतुल मग स्वतःच पवन नॉन स्ट्रायकर असेल लायक एक रनिंग असेल ते नॉन स्ट्रायकर अरे उडीत की म्हणले की ताना बॉल नॉन स्ट्रायकर उडेल म्हणजे पवन खंडित रन पास जत असेल जलारी लायक एक माती खर्चिताच अतुल ಸ್ವಲ್ಪ स्लो असेल देखून कीपर लागी उडेल बॉल तिथली दूर अगेन्स्ट विंड उडेल म्हणजे बॉल डिले जाऊन मस्त लेट जाऊन कीपरला येता जलारी रनआउट कंचेची चौकी करनाशी लायक एक विकेट सट जलाल तसल बॅट्समॅन अतुल मागशी बत्ताच आता स्ट्राईक केला दीपक 60 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स लास्ट बॉल या इनिंग्साचे लास्ट बॉल कितली स्कोर करताची म्हण पळका कितली रनाची टार्गेट हांग्या 11 त्यांनी मुंबई पलटन्सांक दिताची म्हण पळचा का या बॉल आम्ही राखू का जता लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स समीर शानबाग दीपक
ಎದುರು ಪ್ರಯತ್ನ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ತಾ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸಲಮ ಸಬಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಧೋನಿ ರನ್ ಧೋನಿ ರನ್ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆची ಜಲಾರಿ रन आउट जाऊन 1 रन मात्र मेलता अजित भट मामलांग गेला एका सनवडे 20 फील्ड झाला जलारी 1 रन मात्र त्यांनी दिवचाक साध्य झाला 2 रन दंतना रन आउट झाला हಚ್ಚೋಟುಚಿ स्कोर 62 रनाचा टार्गेट 61 इज द स्कोर 62 इज द टार्गेट 62 रनाचा टार्गेट हंगे 11 त्यांनी मुंबई पलतान अंक दिलेला असा फर्स्ट मॅच तुम्ही पळेल म्हणून जलारी साधारण असले एक टोटल अशिले सुलभ विंजले कोड्याल सुपर किंग्स जलारी प्रति एक गंटे सिच्युएशन चेंज जाता गंटे हंगे का अट्मॉस्फियर चेंज जाता पिच्चा कंडीशन ग्राउंड कंडीशन चेंज देखून खंचे रिझल्ट तवे क्रिकेट अंतू फॉर्मेट अंतू सुरवे कमी रिझल्ट एक्सपेक्ट करू खंडित साध्य 62 रनाच्या टार्गेट चेस करचाक मुंबई पलटन संघ साध्यस्व ना मुंबई पलटन संघ हंगे 11 त्यांनी वग्गी जलतीतलं वग्गी या स्कोर टार्गेट करची बस पुढेची बांधून घालता की म्हणून पुढं मुखारची कमेंटेटर दिवचाक आमगेला या भागाच्या ख्यात कमेंटेटर जाऊन शिला इंग्लिश भाषेत कमेंट्री दिवचा तुमगेला तसा श्रीयुत सतीश सालियान सर हवंका प्रीतीना वेलकम करता ओव्हर टू श्रीयुत सतीश जी. तशीच उपास GRS फॅन्टसी पार्क मैसूर वॉरियर्स आणि 20 स्ट्रायकर मस्तपैकी सांगलाय दैकोरनो आमगेल तुमगेल सहकार दिला मात्र नेक्स्ट मॅच स्टार्ट करू जाता उपास संचितेश दैकोन कोरनकाची टॉस आक इमिडिएटली येऊ का इनिंग्स ब्रेक आवाळा टॉस रजिस्ट्रेशन जाता तस देखून दोन्ही टीमाचे कॅप्टनानं इमिडिएटली आणि मस्त वेल करण्याची स्टेजा लागी मेन स्टेजा लागी येऊ का म्हणून निघून घेतास. Mama said that everyone would know my name. I'm the best you never had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Baby, I'm a fireball. Baby, I'm a fireball. Baby, शिवानंद जी fireball. I saw a king, my conquer, don't shoot a sense. शिवानंद thank you so much Gopi Vatji and good afternoon cricket lovers. Welcome to the match number 2 and innings number 2 of this prestigious second match of GSP Premier League 2026 day number 1 and Kodial Sports Association Mangalore presenting this prestigious cricket tournament. As they're celebrating their glorious 10th year, the 10th edition of the prestigious cricket tournament. And of course, Amgele Abaran GSP Premier League 2026 in this most beautiful and new venue. And we can see this has been a fantastic milestone by GPL. The marks a historical milestone as it celebrates its 10th anniversary with the grand celebration
at a spectacular new venue, Shanbog Kudro Island, Ejmadi, here in Mulki. So everything is set here for this chasing, and the team, the 2 times champion Mumbai Paltans, got a target of exactly 62 runs in 42 balls, and wait and see how well this opening batter will going to lay the foundation. The Ninad as well as Chirag, the opening batters. Here comes the pass for lovely delivery, received with a beautiful outswing delivery. Slight a bit of moment here for the bowler Vinayak Pai, just getting that outswing delivery effectively, almost drawing the batsman onto the front foot. Ninad just tried to get that one in front. Lucky for him, that ball is just missing his outside edge of the bat. The wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Needed such kind of a good start in the opening over, especially in the power play over, is always going to be key for the success for the chasing team. When it's going to be a 60 plus runs to win this match, they have to get good start. Again, one more lovely delivery, almost forcing the batsman to play that one defensively. But this time, Ninad did a good job, just played a soft hand very cleverly to rotate the strike. The first run comes up here for the team Mumbai Paltans. They won without loss of any wicket. Very bright and sunny afternoon. Sun which is came with the full strength and making the conditions slight a bit of hot here. And 30 plus degrees Celsius temperatures are recorded here in Ejmadi, Mulki, one of the most beautiful cricket grounds situated in a branch of river Shambhavi. And altogether, it's been a great moment for all GSP cricket lovers to come and watch the cricket tournament in this most beautiful venue. Left-hand batter is on strike, half-hearted shot for the leg before wicket, and being the fact that ball pitched outside the line of leg stump, umpire rightly so called it leg by. And with that leg by, score moves on to 2 on the board. 2 umpires out there in the middle as a field umpire. Umpire Dinesh Acharya as well as Krishna, the very experienced umpires for this match as a field umpire. And we have another 2 young umpires, Dikshit as well as Pawan as a third umpire. Again, batsman definitely is in a defensive frame of mind. Ninad, even though he got a juicy full toss, almost came in such a height, the batter can enjoy the big shot, but he is in a defensive frame of mind. And the flicks it away down to short square leg region for a single. With the addition of that single, score moves on to 3 on the board. It's not a bad idea to dealing with the singles, because this is the one particular cricket ground I'm just talking about. Even 62 is not a good enough. Again, lovely delivery. Just have a look at extra bounce in the negation there for Vinayak Pai. And batsman almost standing tall on his toes to get under that well-pitched up short pitch delivery. Negotiated very well by playing the soft hand again by the left-hand batter Chirag. He picked up a single. 4 without loss of any wicket. Vinayak Pai will not going to bother about these singles. He know exactly how to restrict the boundaries in this power play overs. Seaming in from the far end. Again, Ninad doing the right job here, just rotating the strike and keeping the strike for the next over. Good start there for Vinayak Pai. Not a bad start. Not a bad start for Hangyo 11, the first time Hangyo 11 participating in the GPL in the 10th edition. And it's not a bad start for the team Hangyo 11. The batter batted very well, put on a competitive total of 62 runs, 61 runs in fact, in 7 overs, and that might be a good total if you bowl well and field well. That can be a dependable total, and just wait and see. It's 5 without loss of any wicket. It's 5 without loss of any wicket. It's been a decent start there from both opening batters. Watchful start. Ninad and Chirag, left and right combination. Atul brought into attack with the jersey number 91 from the commentary box hand. Just I want to see the field set in the power plays number 2, long on and a mid wicket. And the fielder at short mid wicket, short square leg, the onside field set. This time top edge, but played it nicely in the deep mid wicket boundary. Oh, lovely stop. What a great attempt by the fielder. Excellent athletic and gymnastic work done by the fielder in the deep mid wicket. Just I want to see the fielder is absolutely running across from the mid on to mid wicket region, almost into the cow corner.
And Ninad, just have a look at that one in a replay. Is not confident looking shot, but good enough for him to get that one into the corner. Just have a look at the effort there from Wheeler. Excellent one, isn't it? The great save. Lofted. What a handsome looking drive. Stand and delivered. As straight as an arrow. Magnificently struck. Outstanding stroke there from Ninad. This is what I'm just talking about. This one particular cricket ground, we can't say anything in cricket what you're talking about. The target, how much is going to be good enough to defend. This time the ball is in the slot, and have a look at the bat flow from that batter. Ninad played it over that of the bowler as straight as an arrow for a maximum. Once again, try to repeat that one. Chance of here for the bowler himself to take that caught and bowled. This has been outstanding comeback here by Atul. After that six, immediately he's just taken a revenge of getting the same wicket of Ninad. He just wanted to repeat the same stroke, but this time I think the bowler quite deliberately shortening the length, not really getting that ball onto the slot. What he wanted to get that one into the straight long off region. The batter, after getting that six, is just a little bit excited. He wanted to repeat the same stroke, but this time the ball is not in the slot. Pays the penalty for that. Good comeback here by Atul. Wicket number first gone. It's 13 for 1. What a beautiful cricket ground. A newly constructed cricket stadium nestled amidst and breathtaking beauty of the nature on the banks of river. The banks of Shambhavi River, where fashion for cricket meets a paradise. Here comes next delivery. The batter came into bat. Charan Kamath. Outstanding full shot, is it? You can't get better than that. Outstanding. They're getting a position so quickly, and it's absolutely short enough for the batter to push that one handsomely with the direction of the wind with the huge six. That ball is gone many a miles out of the park. You can't do the mistake in this small cricket ground, pitching the ball short. Even the batter is new, but this stroke is not new for the batter. Definitely each and every batter loves to play the full shot. Again drives handsomely towards the long off region, orthodox in the straight region, so that the batter have to settle for a single. With that single scorer now moves on to 20 for the loss of 1 wicket. Absolutely strong breeze is passing in the middle of the ground here in this most beautiful cricket ground, Shambhavi Kudru, Iceland, Ejamadi Mulki, witnessing the prestigious 10th edition of JPL. Amgere Abaran JPL Season 10. Atul, already 15 came from this over. Last time in this over. Again played it nicely into the deep long on region, wideish. Correction, and wideish long on. He will going to keep the strike for the next over. It's been a great over from the point of view of team Mumbai Paltans. They got 16 from this over after completion of over number 2. It's 21 for 1. You're watching GPL Season 10. For the next match, GRS Fantasy Park Mysore Warriors versus V Strikers. The match number 3 will going to commence, and the news here. The toss which is completed, the captain of GRS Fantasy Park Mysore Warriors, they won the toss, and no hesitation in the mind of captain that he wanted to bat second. He just wanted to chase the run. It's always going to be a key for success is winning the toss, especially in this condition. Every captain wanted to chase the runs, because I mentioned about it's very difficult to set a target in this condition. You have witnessed the first match, which is 58 is a target which is chased down quite easily by Kodial Super Kings against Avatar Malpe United. Now is the match number 2 in 62 is a target set for the team Hango 11. Already the 21 runs came from the first 2 overs. That shows this is going to be a batting paradise. This is not for the bowler. But wait and see, once the lights are on, it can become a bowler's paradise. Here comes first delivery.
after the power play. In the last moment, the batter has got a bat onto that, saving him from the leg before wicket. Almost shuffled across the line of the delivery. And he will going to pick the single for that. With that single score, moves on to 22 for 1. Chirag is playing a waiting game, came as an opener for the side. Deepak will going to take the strike now. For the Deepak, the fielders outside the circle, one at deep extra cover and long off, long on, deep in wicket and deep square leg behind the square, short fine leg, the fielder down at short third man, short point and a short extra cover. Switch it is, comes into play and he connected that one absolutely right from the middle of the bat. The footwork is exquisite. He becomes a left-hander so quickly. This is one of the key for the success of that switch it. It's just getting the position so quickly to become the left-hander, to get that line and length so quickly, and right from the middle of the bat, played it down to deep backward point boundary with the direction of the wind. He got the distance. Nothing much wrong with the line of the delivery. Sometime it's not a premeditated switch it. If it is a premeditated switch it, the bat bowler can change the line quickly. But you can see that last moment the batter is changing his position. This has been outstanding cricket stroke there from Charan. It's 28 for loss of 1 wicket. Already I mentioned it's a little for the bowler to survive any small mistake. The batter will going to go after. Deepak Badal. Good cricket, very good cricket. After that 6, very next ball, exactly no need to panic at all after he got a 6. He just wanted to rotate the strike. Another 5 runs in 5 deliveries, take them into 11 in the one over. That is good enough for the team to chasing this run. It's 62 to win this match. It's 29 for 1. Oh, good left, very good left there from Chirag. Watching the ball till the last moment, getting himself away from the line of the ball. Exactly a little margin for error for the bowler to getting the ball into the legs of the batter. Just wanted to cut the ball, but ball is very close to the body of the batter so that he couldn't manage to play that one properly, but good enough for him to rotate the strike. So with that single score, moves on to 31 for the loss of 1 wicket. Hangyo 11, how to break this partnership? I wanted to back in the game. Otherwise, Mumbai Falcons definitely going to be favorite here. Half of the job completed. Yet to complete another half of the job. That means 31 completed, 31 required for the victory. Very quickly they got a 31. Of course, in that 3 overs, 2 overs is a power play. Last time. Full toss, almost... and depending on his knees and getting that low full toss very nicely down to square leg region for a single. So with the addition of that single, Skoban moves on to 32. One more good over from the point of view of team Mumbai Falcons, which is comes to an end. And after completion of over number 3, it's 32 on the board for the loss of 1 wicket. Runs required from 3 overs means 10 runs per over the required run, exactly 10 runs per over the required run. It's not a big ask in this condition for any chasing team. When you got all 9 wickets in hand, I think some good comeback is required from the bowlers of Hangyo 11. Of course, even though it looks like it's going to be very good, easy to chase the runs, but the cricket is game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket. One good over can change the game here. Atul brought into attack. Starts with a wide. This is what sometimes the bowler has to be very careful. Need to be very disciplined, isn't it? When it's a 10 runs per over, the required run rate in this kind of mistakes will make little bit easier for the chasing team. Extra delivery, extra runs. 33 for 1. Charan will go to take the strike. This time, what a connection that one. Absolutely marvelous. Just have a look at the stroke in the replay. The way that batsman picked that one, absolutely amazing.
The line which is outside the line of off limits. Little bit movement here, initial movement of the batter. Just have a look at the swing of the bat. The magnificently struck. Just going back and transferring his weight onto the backward. Just have a look at it in the replay again. That will going to frustrate the bowler. Line is outside the line of off stump. Still the batter manages to send that one into mid wicket for a maximum. Then Scobo jumps into 39 for the loss of 1 wicket. Out of 6 balls in an over, 1 big shot is good enough for the chasing team to catch that required run rate. This is what they just wanted to do here. 40 for 1. Just 22 runs away from the victory. Just like I mentioned, if you wanted to back in the game, I think the best way for the bowlers to pick the wicket, to break the partnership here as quick as possible. Because whenever the new batter coming to the middle, it's the right time for the fielding team to tighten up the screws with some excellent line. Again, off the backward, try to pull that one. Of course, he succeeded, but not really able to take taken that one in the aerial route. Played it along the ground towards the mid-wicket division for a walkable single. With that single, Scobo moves on to 41 for the loss of 1 wicket in the over. Number 4 is in progress. A very good number of spectators gathered either side of this cricket ground, enjoying this first day of cricket tournament. Full toss, and he lofted that one, and it will going to clear the man at deep, wideish long on, almost in the cow corner. He got the distance. Just like I mentioned, little margin for error. If you bowl the full toss delivery, you have to pay the penalty for that. Charan is looking in a very aggressive frame of mind. If you look at his innings, how aggressively he played. 28 runs in just 9 deliveries. Almost a 300 strike rate. This has been one more terrific shot, isn't it? Absolutely mesmerizing. How easily done that one. Again, the ball is in the arc, and he's disappeared that one out of the park. You can't bowl to the arc of this man. He will definitely going to disappear. Again, he's a very strong back foot player. Again, you can see that he's transferring his weight onto the back foot when he's just playing that stroke. So easy for the batter Charan to dispatch. He's batting on 34 now. One more full toss, slashed and straight to the hands of deep cow point. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement. The full toss outside the line of off stump. He smashed that one, slashed that one into the deep cow point region. But he played it on against the direction of the wind, and the fielder is at the deep cow point, making no mistake at all. Taken a comfortable catch. The entertainment innings which comes to an end of Charan. Really played some enterprising cricketing stroke in that 34 runs. But I think it may be too late for the team Hangry 11 to back in this game. $53 for 2. The partnership is just broken, but I think before the partnership is broken, I think Charan did the damage with the explosive 34 runs from his bat. Just 9 needed for the victory. For the team Mumbai Paltons to win this match. One more single has been taken here.
53 for the loss of 2 wicket. Another 8 more runs required for the victory. Ajay Kumar, the bowler, brought into attack to bowl the 5th over. Just 8 more runs required for the victory. The new batter came into middle is Ajay Kamath. Sri Krishna. Ajay Kamath, the bowler. Sri Krishna, the batter, will go into face Chirag, the non-striker. Playing a waiting game in other end. Lovely delivery, change of pace, low and slower one there from Ajay Kamath. Exactly needed some experiment if you wanted to back in the game. Just wanted to get 1 or 2 good overs here. Economical plus wicket taking over, which is badly required to win this match. 8 needed from 16. Swings and miss. Lovely delivery. Excellent one. Extra bounce as well. Hard line delivery came from the hand of Ajay Kamath with the slower one. Again, very effectively bowled. 2 excellent deliveries. His starts fell from the far end. Again off the backward, played it down to extra coverage and for a single. Those are bowling from the far and I think they will going to enjoy because it's not a good condition for the bowler who are coming from commentary box and you have to bowl against the direction of the wind. 55 for the loss of 2 wickets. 7 needed from 14. The first over is a better over from the point of view of Hangyu 11. And after this one considered a much better over. To catch it is a call. We'll go and take this one. And of course, the fielder down at short third man field region, making no mistake at all. 1 more wicket is back in the pavilion. Just like I mentioned about those who are bowling from the far and will going to enjoy the condition, how to bowl with the direction of the wind. And we can see that the batter just tried to get that one away from his body and played it uppishly and pays the penalty for that. The new batter in is Sandeep Kamath. Walks towards the middle, just 7 needed for the victory. Sri Krishna. Another batter. 2 new batters out there in the middle. Fresh legs. I think this is the right time for the team. Hangyu 11 just try to get this match into the last over. Nicely played it down into the square leg region. Uppishly played but safely down to square leg region. With the addition of that single scope and moves on to 56 for the loss of 3 wicket. So over number 5 which is comes to an end. 56 on the board. Then another 6 needed for the victory. In 2 overs, 12 balls, 3 runs per over. The required run rate. It's not a big one. Outstanding cricket tournament is in progress. Broadcast partner Youth of GSB Worldwide having excellent live telecast of this cricket tournament. GPL 2026. The match number 3 is in progress. Jersey number 97 brought into attack to bowl the 6th over. Penultimate over. Deepak Badal. This time doesn't get hold of that properly, good enough for him to rotate the strike. Vinayak, the fielder in the deep long on, to collect that one. Ample time for the batter to collect the single. Just 5 needed for the victory. Deepak to Sri Krishna. Catch it is a call and the bowler himself to take the catch is a highly responsible cricketing stroke there for Mumbai Paltans.
They're very close to the victory mark, but by getting that 5 runs, remaining 5 runs, they're just losing the wickets, giving some opportunity for the fielding team to back in the game. Sri Krishna just wanted to finish the match in a style with a big shot, but couldn't manage to connect that one properly. And Deepak Badal making no mistake at all. He takes the catch on his follow through. Wicket number 3 is back in the pavilion. 57 for 4, in fact. Mumbai Paltans. Nandan Prabhu, the new batter in. The number 6 batter for the side of Mumbai Paltans. The 5 needed from 10 balls. Deepak round the wicket. There again, you can see that one more wicket is back in the pavilion. What really going on here for Mumbai Paltans? The back-to-back 2 wickets in this consecutive 2 deliveries. Deepak Badal not really given up this match. But what Mumbai Paltans are doing here, just wanted to finish the things very quickly. Just have a look at that one in replay. When you are new to the crease, you are playing your first delivery. It's not easy to get that one for the big one. Even the condition seems to be good for the batters, but sometimes even bowlers know exactly what to do. That's why I'm always mentioning about whenever the new batter coming to the middle is always the golden time for the bowler and the fielding team to tighten up the screws. The 57 for 5. So still 5 more runs required for the victory. Off the back foot, very experienced campaigner. Ajit Bhatt picked up a single. With that single scored Namuzan to 58 for 5. 4 needed for the victory. 1 proper cricketing stroke is good enough for the team Mumbai Falcons to win this match. 4 needed from 8. Deepak. Off the back foot. I played it gently down to a cow point region for a single. With that single score was on 59 for 5. The last ball remaining in this over. 3 needed from 7. The next match, the match number 3 between GRS Fantasy Park Mysore versus Wish Strikers. And that will going to commence soon after this match. They played it nicely into the long off region for a single. Ajit will going to retain the strike for the next over. Chance of run out. Umpire says not out. That's it. Over number 5 gone. And 2 required from last over for Mumbai Paltans to win this match. Welcome back once again. Time is exactly 1:15 in the afternoon, and even though very bright sunny afternoon, but still we can see that a strong breeze is passing in the middle of the ground. Even it's making the condition not that much of horrible. And if you're having that kind of wind in the ground, definitely the time for the enjoyment with the nature beauty here in this Shambhavi Kudru Iceland. Newly built cricket stadium. Never looks like this stadium is built in under 2 months. Definitely it's been a great work. Off the back foot, played it nicely in the gap towards the cow point region. That will go into a winning run for the Mumbai Paltans. They will going to complete the couple of runs that will go into good enough for them to win this match. It's the first victory for the Mumbai Paltans in this JPL edition 10. Congratulations for the Mumbai Paltans for winning this match, and hard luck team Hangyo 11. First time they're participating in this tournament.
but it is not a bad start for them because they batted brilliantly, but not good enough to defend this total. They've taken this match till the last over, and that was, I think, is the very positive part of this cricket ground. So now it's time to announce the man of the match of this match. Undoubtedly, the man who scored 34 runs in very quick times in just 13 deliveries is absolutely quick fired and a match winning knock from Charan Kamath, and is well deserved a man of the match award. मुंबई पलटणचा शरद कामत ह्या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच. शरद कामतानं स्टेजला येऊन मॅन ऑफ द मॅचच्या एक प्रशस्ती घेऊ म्हणून घेता चरण कामतानं मॅन ऑफ द मॅचच्या प्रशस्ती घेऊ का इमिडिएटली म्हणून घेता. कंग्रॅच्युलेशन्स. Thank you so much. It's a time to change in voice as well as language. Of course, it's a time to bring one more experienced commentators. Of course, we have Suresh Bhadji along with him Yashwant. Jointly will going to entertain you in this in Kannada as well as in English language. The match between GRS Fantasy Pop Mysore Warriors versus V Strikers. Thank you. Thanks a lot. Hello, check.
GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ 10 ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು. ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನಿರ್ಣಾಯಕರಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಂಗಳೂರು. ಶಾನಭೋಗ್ ಕುದ್ರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ. 3 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕೊಡಿಯಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಮಿತ ಓವಿತು ಅದನ್ನ ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮರಕ್ಕೆ ದಾಟ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮರಕ್ಕೆ ಬಳಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಫೀಲ್ಡರ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. 1+2 2 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಎಸೆದಂತ ಎರಡನೇ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ರಾಕೇಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್. ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಾಕೇಶ್ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಆಭರಣ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೇಸರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಟಸ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 2 ರನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕೇಶ್ಗೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ರಾಕೇಶ್. ಹೀಗಾಗಿ 1 ರನ್ನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7 ರನ್. ಯಶವಂತ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಬಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೈಸೂರು ಪಾರ್ಕ್ 2 ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುಜಿತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಾಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. Thank you, Suresh. Vinayak to Sujit, it's a dot ball outside the leg stick. Umpire calls it wide and extra run being added to the scorecard. Eight on the scorecard. You are witnessing the third match of the day. The toss was won by GRS Mysore Warrior and they opted to field first. And we have Vinayak Prabhu. The bowling is from Abaran and the umpire signals wide from Abaran end. That's an extra run that gets added to the scorecard. With this, we move to the score of 9 without the loss of wicket. We strikers. Batsman Sujit Baliga is on strike with Rakesh on the non-strike.
Vinayak with his last delivery of this over. That's a good ball. The batter just dips the ball to the ground, gets a single run. Ten without the loss of any wicket at the end of one over. ಎಸ್, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳನ್ನ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನುಗಳು ಬಂದಿವೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಕೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಇರುವರು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We have just the bowling to start from Smart Bazaar end. And on the strike, we have Rakesh with Sujit Baliga. Let me give you some brief background of Rakesh Kamath. You might have watched a Konkani movie, Jawan. He is the hero of that movie, an actor himself, who is on the striking end, will be playing requesting 12th man of the team from the fielders team to just join us here. Srijan is the new bowler with the ball. He will be bowling to Sujit Baliga. ಸೃಜನ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸೃಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ GPL ಸೀಸನ್ 10ರ ಆವೃತ್ತಿಯ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದು ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಗಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ತೃತೀಯ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೋ ಬಾಲ್ ಆರ್ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ GPL GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ GSB ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ GSB ಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ? Definitely, I think this is a great opportunity for GSB community, where the Kodial Sports Association Mangaluru, they have put together their entire team and they have developed this ground exclusively for GSB cricket tournaments. In the coming year, we should definitely appreciate their efforts and their commitment and the passion towards the cricket to build this community's youth to develop themselves and grow. You may be also knowing that now tennis ball is not only a part of district or small playground matches. It's getting highlights at the national and international level also. And we should thank this Kodial Sports Association who put forward all their commitment to develop this community's youth here. ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ ಮಾತು. ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೈ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 11 ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ರಾಕೇಶ್ ಗೆಸದಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅದು ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ ಆದ್ರೂ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್.
For we strikers have 11 runs on the scorecard. Shujan to Rakesh again. That's a bit of short pitch ball. The batter pulls it straight towards the long on fielder. Gets a single run. Ball is back to the bowler. ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗಾಡಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 1 ರನ್ನಿನ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 12. That's another delivery, slightly pitched near the batter. The ball raises, the batsman misses it completely. ಸುಜಿತ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ 12 ರನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸೃಜನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಅಲ್ಲೇ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 1 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಅವರು. ಸೊ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ರನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಳಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ? Definitely, looking at this ground, I feel that they should at least target somewhere around 60-65. With this good opening of 13 runs without loss of wicket is a good one, but they have to start getting a couple of big runs now. It's time for them to really move. We are already on the 3rd over. Mainly bowlers like Srujan have made it tough for the batters. We look forward for a good batting and a good bowling from both the teams here. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೃಜನ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. That's perfect. Exactly. That's what it is. He is a bowler of the day probably today. At least as of now, he has shown he is one of the best contender for best bowler in the tournament. That's a good opening. ದಯಾನಂದ್ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕೆ. ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಆಭರಣ್, ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಭರಣ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಎಂಡ್ಗಳಿವೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಭರಣ್. ದೂರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್, ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದರ ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಾತ್ರೆ GSB ಉತ್ಸವ್, ಅಮ್ಗೆಲ್ ಆಭರಣ್ GSB ಉತ್ಸವ್ 2026 ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಶಾನಭೋಗ ಕುದ್ರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ Dhanand Bandari to bowl from Abharan end. That's a good shot towards the long on. Gets a single run. That's a nice ball. Bit of shot, but then the batter could not fully utilize it. He did not get much of the wide width there. Had to be satisfied with that single. Score moves to 15 without the loss of any wicket at this point. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನತ್ತ ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ರನ್ ರಹಿತವಾದಂತ ಎಸೆತ.
The fourth ball is bowled from Aberrandi and the batter drives it straight back to long on fielder. It's again a single run. The batters are not able to clear the boundary here. In fact, they had an advantage of the wind also. Probably the power was not sufficient enough, or the bat was not connected well with the ball. Could not get that loft which required him to reach that ball out of the boundary. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಡರ್ಕರ್ ಅವರು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್. ದಯಾನಂದ್ ಟು ರಾಕೇಶ್ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಅಂಪೈರ್ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಯಶವಂತ್ ಅವರು ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಬೌವ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸುಜಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Definitely this is an opportunity for him to use his muscles now. Batsman bowled. This is going straight to the hands of the fielder on the long on. He had tried all his best, but as it was a free hit, nothing worries the team there. ಒಳ್ಳೆ ಶಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದಿದೆ. 20 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ, 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. Definitely, Suresh, GRS Mysore Warrior, they won the toss and opted to field. They might be happy that they are able to control the score, but let me put this forward. They have the icon player Rakesh Kamath in the center there, and is the man who can turn this match to its big hits. Looking forward for a great batting from both the batters. They need to accelerate their scoring strike rate now. They are still under 100 as of now, and they need to get this. In this format, anything around 100 is not a great start. They need to target somewhere around 120, 130 as a strike rate. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 6.67 ಇದೆ ಇವಾಗ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆಡಿದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 47 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 2-3 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು GPL ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶವಂತ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಂಡ್ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲ ಆಘಾತ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. That was a much required wicket. I think Rakesh got tempted to hit that big shot, could not get the clearance of the boundary. The ball landed straight into the hands of the mid wicket. No chances were given to the batter. No life has been given. He has to leave and he is out of the pitch now. 7 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರು 5 ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೃಜನ್ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. 20ಕ್ಕೆ 1 ಆಫ್ಟರ್ 3.1 ಓವರ್. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ
ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡೋ ಸೂಪರ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. Srujan Kamath to Ashwin B. Kamath. Srujan is bowling from smart buzzer end. Some field adjustment in the middle. The cover has been pulled towards the deep and slightly towards the right also. Srujan to Ashwin, attempt for a Yorker. The batter gets it. Bottom edge, top edge, and they should be out. ಸೃಜನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಲಘುಬಗನೆಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇವೆ. 20ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಜೀವಾಳ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿನ್ ಕಾಮತ್ ಶೂನ್ಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೇವಿಲ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Definitely, Suresh. That was Malia who caught that catch. He usually doesn't make mistakes and he had easy landing sweet into his hand. That was quick enough for him. Srujan gets a second breakthrough. He's just given 2 runs and still yet to complete 4 more deliveries. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋರು ದೀಪಕ್ ಕಾಮತ್ ಬೋಳ. ಬೆಳ್ಮಣ್ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ದೀಪಕ್ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್. Abhinav was the field is there, a nice catch. The ball just landed into his hand. That looks to be an hat-trick wicket. That's a great moment for the bowler. The first hat-trick of this season has been seen in the 3rd match between V Strikers versus GRS Mysore Warrior. ಎಸ್, GPL ಸೀಸನ್ 10ರ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲರ್ ಸೃಜನ್. 3 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಬೌಲರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ GRS ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್. Definitely, Suresh, I feel the owner, Bantwal Subrai Baliga, should be very proud of his team's performance as of now, as same as with the co-owner Pushpalata Kini also. They should be the proud owners at this moment as of the day. And team coordinator. That's a good attempt for a New Yorker, slightly outside the off stick. The batter just puts the bat to the ball, gets a single run there, quickie between the wickets. Team coordinator Ravi Prasad Kamath. All the 3, Bantwal Subrai Baliga, Pushpalata Kini and Ravi Prasad, should be feeling proud about their team performance as of now. Srujan S. Nayak is the hero for them as of the moment, with 3 wickets in his quota. 3.4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 21ಕ್ಕೆ 3. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಸೃಜನ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ? In length, he has kept his line in length very well. Some of the bad balls, when the batters have tried the bad balls, but they could not clear the boundary. If you see the second wicket in his hat-trick was a good shot, but he did not clear the boundary. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ತಡೆದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ 2 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟು ಸೃಜನ್ ಅವರು 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 23ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳು ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸೊ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತವನ್ನ ಸೃಜನ್ ಎಸ್ ನಾಯಕರವರು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೃಜನ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್. 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ
ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧ ತಂಡದ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅವರ ತಂಡ ಈಗ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಆಟಗಾರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಭರಣ್ ಜಾರತ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಭರಣ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರ. ಫುಲ್ ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ನತ್ತ ದಬ್ಬಿ 4 ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+4 ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ 5 ರನ್ಗಳು ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. That's a fantastic shot. Gets couple of more runs to his team. Gets 5 runs. ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಪವನ್ ಶಿರುವ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 30ಕ್ಕೆ 3 ಆಫ್ಟರ್ 4.4 ಓವರ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. That's another ball bowled by Abernian. This time slightly misfield from the bowler. Bowler wanted to stop it. The batters get easily 1 run, but they have failed in their second run. There's a run out on the non-strikers end. Who is this? Sujit Baliga has to return back. He has scored 9 out of 14 balls. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಮಧ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಡ್ ಅತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರೀಸ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಥ್ರೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೌಲರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅತ್ತ. ಸುಜಿತ್ ಬಾಳಿಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ಬಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ 9 ರನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದೀವಿ. 30 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 6.43 ರನ್ ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೀಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಡೆದಿದ್ರು. ಅವರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್, ಮತ್ತೋರ್ವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. We were just talking that slightly misfield on that end. This time you could see that Daya, the fielder there, who just runs around 10 yards from a standing position, jumps himself to the sky, towards the sky, hits the ball back as if a rocket. The other fielder holds the ball tight, gets 1 more wicket for the team. That was a good team performance, but both the fielders there, wonderful effort, and that gives them 1 success. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪವನ್ ತೆಲಾಂಗ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹತ್ತಿನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ರನ್ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ 31ಕ್ಕೆ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ 31 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ.
Prashant to Prashant Rao. That's another sweetly dropping catch into the hands of the fielder there. Daivik is the fielder. He did not have to do much there. He had to just stand, wait for the ball to land into his hand, and he did not make any mistake. It was a sweet catch into the hands of Devi, jersey number 3. That's another fall of wicket for we strikers. We strikers, batters have to think and play. They just have 2 more overs. And they have to stand there. They need one partnership who would at least do something for next 3 to 4 balls and try their bigger arms in the last over. It looks like they are trying to hit every ball towards the boundary, missing it. They are trying their effort towards against the wind, and that's something which they have to think wise, make themselves space and try to get the ball with the support of the wind. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 31 ರನ್ನಿಗೆ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಇವರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎಸೆತ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಬಾಲಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. Let me remind you, the bowler is bowling against the wind here, and that was perfect effort for an Yorker. The ball was slower than what the batter expected. Could not get any connect to the ball. Misses it completely. The ball hits the middle and off stick. Middle and leg stick there, sorry. A complete miss by the batter. Suresh, let me just check with you. Now we are on the 5.2 and 31 is the score. What do you think this team can put forward by 7 overs? ರನ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೊದಲು 6 ಅಬೌವ್ 6 ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 5.8 ರನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ 40ರಿಂದ 41 ರನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ. ಅದು ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಆ ತಂಡ ತೋರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ GPL ಸೀಸನ್ 10ರ 2ನೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಂತ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್. That's a fantastic bowling performance from the bowlers of GRS Mysuru Warriors. 2 bowlers have got hat-trick in this tournament. We are just witnessing the 3rd match of the day, and just the first day. ಸೃಜನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ GRS ಪರವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬೌಲರ್ ಅದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಶವಂತ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೃಜನ್ 5 ಓಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಈಗಿನ ಬೌಲರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ದಾಂಡಿಗರ್ಗಲ್ಲಿ. They have an impact player in the middle now. That's a touch and run, single run there. The bowler runs to the ball. It's a single run that's been taken there. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೌರಭ್ ಭಕ್ತ ಅವರನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಇವಾಗ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಾದ್ ನೋಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಭ್ ಭಕ್ತ ಅವರು. ಸೌರಭ್ ಭಕ್ತ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು GSB ಪಂದ್ಯಾಟಕೂಟಗಳನ್ನ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರನ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ? ಲಘು ಬಗಲುಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ. I think they are taking it very much into their heart. The batter wants to hit it high but misses it completely. They want somehow the score to come. They are not putting their wise and experience in the middle anta ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಸುರೇಶ್.
ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಇವರ ಮೊದಲ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೊದಲು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ GPL ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. Score is 32 for the loss of 8 wickets, 2 more wickets to go. Probably that pressure of playing it for the first time in this season, while they have played many other tournaments, this is a special tournament. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೇರೆಯ ರೀತಿನೇ ಆಟ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಅಂಕಣ ಕೂಡ ಗಾಳಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಿವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಟೈಲ್ ಎಂಡರ್ಸ್ ಗಳು, ಬಾಲಂಗೋಚಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ 33ಕ್ಕೆ 9 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾದಂತಹ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 6 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ 33ಕ್ಕೆ 9 ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 33 is the score. At the end of 6 overs, we have 9 wickets down and the last pair is in the middle. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಾಗೋಡ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ನುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈವಿಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಭರಣ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಕಡೆಯಿಂದ. Daivik to Satvik Baliga. Satvik Baliga is on strike. Daivik is from Aberani end. He'll be bowling his first ball of his quota. The batters team are on 33 for the loss of 9 wickets. They just have this last over to be completed. Daivik from Aberani to Satvik Baliga. That's a full toss, gets an outer edge. A single run towards the first and second slip. On the strike we have Saurabh now. We'll be playing Daivik Nayak bowling from Aberani end. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೌರಭ್, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸೌರಭ್ ಭಕ್ತ, ಇವರಿಗೆ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವೈಡ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 2 ಬಾವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ದೈವಿಕ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೌರಭ್ ಭಕ್ತ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಆಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ದೈವಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಂದ. That's a third ball from Daivik Nayak, pulled straight towards the long on fielder. The fielder doesn't make any mistake there, gets 1 more wicket. The last wicket is down for V Strikers. We have 35 on the scorecard. 36 would be the target for GRS Mysuru Warriors. The team owners should be very proud. Bantwal Subrai Baliga and Pushpata Kini. They own this team. Their team has performed very well in their innings. Opting to field, they had restricted V Strikers to 35 runs. Need 36 to win. All out. ಸೊ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಂತಹ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮೈಸೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು.
ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ GRS ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮೈಸೂರು ತಂಡ. ಸೊ 30ರ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಗುರಿ ಇವಾಗ GRS ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ GRS ಈ ಒಂದು ರನ್ ಅನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು GRS ಮುಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸುರೇಶ್, ಇದೊಂದು ಪಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟರ್, ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬಲ್ಲಂಬೆಟ್ಟು ವರ್ಸಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. दोन टीमाचे कॅप्टन्स दैकोरनु टॉस हाकतीर आमगेले मेन स्टेजला येवक ऑर्गनायझर्स तुमका वेट करता सती. रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू वर्सेस रायझिंग स्टार्स मंगळूर. Yeah, that the one question with that you asked looks like, you know, the batter should try definitely a big shot, and if the bowler is cheeky and smart enough, he may try to deliver some bad balls. I'm sure this is not the right way to say it, tempting the batters to go for a big hit against the wind, and that's where they need to trap those batters. Or else 35 is not a big score for 7 overs, Suresh. With this, we have a change in the commentary, and I'll request Ajay to take over from here. Ajay Raj in Hindi now, with you. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Mic testing 1, 2, 3, check. Hello, check. Mic testing 1, 2, 3, check. Hello, check. थैंक यू यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भट्ट जो आपको विवरण सुनाए थे। और इस वक्त कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगलौर की ये खूबसूरत प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 एक यादगार क्रिकेट श्रृंखला मुकाबला, जैसे कि आपको अब तक दोनों कमेंटेटर्स ने बताया कि जीआरएस फैंटेसी और वी स्ट्राइकर्स के बीच में टॉस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको जीतने के पश्चात पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जीआरएस के कप्तान ने। और बहुत नतीजतली शानदार गेंदबाजी की गई जीआरएस फैंटेसी की तरफ से, और निश्चित तौर पर बल्लेबाजों को बांध कर रखा और विकेट लगातार प्राप्त करते गए दबाव को बढ़ाकर, और उस प्रयास में मात्र 36 रन जो कि वी स्ट्राइकर्स बना चुका है, यानी कि 35 रन 36 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने का। 42 गेंदों का खेल, जबकि 36 रनों की जरूरत है। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। ओपनर्स के रूप में जीआरएस फैंटेसी की तरफ से दैविक नायक और विजय राज, और गेंदबाजी का जिम्मा मुझे लगता है कि इस वक्त वी स्ट्राइकर्स के कप्तान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका स्कोर जो बोर्ड पर बनाया गया वो बहुत छोटा है, और ऐसे में अक्सर देखा जाता है कि लो स्कोरिंग टोटल मैचेस जो बहुत रोमांचकारी होते हैं, इसमें कप्तान की और गेंदबाज की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। तो कप्तान को इस वक्त सोचना चाहिए कि उनके पास ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो मैंडेटरी पावर प्ले में दबाव बना सकता है, रनों पर बिल्कुल अंकुश लगाए और कुछ विकेट्स जो कि लगातार प्राप्त करे, ताकि एक मोमेंटम वो कायम करे गेंदबाजी में खास तौर पर,
और उस पर आने वाले गेंदबाज फिर से दबाव को बढ़ाने का प्रयास करें। आइए खेल की ओर सीधे चलते हैं। इस वक्त IPL 2026 सीजन 10 में इस मुकाबले में दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उनकी ये पहली गेंद दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर दाहिने हाथ से विकेट लेंथ भी ज्यादा थी, लॉफ्ट कर दिया, ड्राइव कर दिया, बहुत खूबसूरत ऑन ड्राइव है। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया लेकिन मुझे लगता है कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई और ये 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक एक अच्छे एक्शन के साथ और हाई आर्म एक्शन है, थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा थी। ऑफ स्टंप के सीट पर आती हुई गेंद जिसको देखा परखा, थोड़ा सा ट्रिगर ऑन हो जाते हैं बल्लेबाज जल्दी। गेंद के लाइन के ऊपर आने का प्रयास किया, गेंद को खूबसूरती के साथ उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ा सा लॉफ्टेड ऑन ड्राइव था। गेंद हवा में पहले रही, फिर लुढ़कती हुई तेजी के साथ हवा के विपरीत दिशा में गेंद गई। तेजी के साथ फील्डर पीछा करते रह गए और अंतिम क्षणों में गेंद जाकर सीमा रेखा को छू गई और इसी के साथ चौके के साथ दैविक नायक ने अपना खाता खोल लिया है। 4.68 का रिक्वायर्ड रन रेट है। एक और गेंद फिर से हवा के रास्ते गेंद को खेल दिया, कैच हो सकता है। फील्डर थोड़ा सा पीछे खड़े हैं, उन्होंने पहले प्रयास किया कि वो गेंद तक पहुंचे लेकिन अंतिम क्षणों में इरादा बदल दिया क्योंकि गेंद बहुत आगे गिरने वाली थी। और ऐसे समय पर आप जानते हैं कि अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचेस में भी होता है, जब क्षेत्ररक्षण के लिए जाते हैं या फिर कैच के लिए जाते हैं तो गेंद हाथ छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर जाने की संभावना हो सकती है। इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोक लिया और बल्लेबाज को समय मिला कि वो आसानी के साथ दौड़ कर एक रन को पूरा कर सके और दैविक नायक बढ़कर 5 पर। विजय राज इस वक्त पहली बार स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 31 रनों की दरकार, 40 गेंदें शेष बची हैं। हवा तेज चल रही है, जैसे मैंने आपको कहा पश्चिम से पूर्व की दिशा में हवा का रुख दिखाई पड़ता हुआ और इस वजह से उस एंड से जो भी गेंदबाज गेंदबाजी करेगा उसके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा हो सकता है। ये गेंद ऑफ स्टंप की सीट पर थी, थोड़ा बाहर ही थी, लाइन के ऊपर आ गए, बल्ले का मुंह खोलते हुए थोड़ा तिरछा गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफसाइड की दिशा में मोड़ दिया। जब तक फील्डर आ जाते एक रन को पूरा कर लिया। विजय राज ने अपना खाता खोल लिया, कुल रन संख्या बढ़ाकर पहुंचा दिए 6 पर बगैर किसी आघात के। दोनों बल्लेबाज एक पॉजिटिव सकारात्मक माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरे हैं और मुझे लगता है कि दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन शुरुआत में ही लाना बल्ले गेंदबाजों के लिए काफी परेशानी का सबब बन सकती है। दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर उस छोर से छोड़ के एक और गेंद लॉफ्ट कर दिया, बहुत करारा स्ट्रोक है। गेंद हवा के रास्ते पंछी की तरह उड़ती हुई गई, टप्पा खाकर बाउंड्री लाइन के अंदर रह गई। फील्डर को अवसर मिला कि वो इस गेंद को रोक पाए। अगर वही स्ट्रोक विपरीत दिशा में होता तो निश्चित तौर पर गेंद को रोका जाना मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस वक्त हवा की विपरीत दिशा में खेला गया स्ट्रोक जिसकी वजह से गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ गई। फील्डर को अवसर मिला कि वो कुछ रनों का गेंद को रोक पाए माफ कीजिएगा और बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया। दैविक बढ़कर पहुंच गए 7 पर जबकि कुल रन संख्या 8 पर है। राकेश आक्रमण पर गार्ड बदल कर राउंड विकेट। इस बार कोई नहीं रोक सकता इस स्ट्रोक को। गेंद लॉफ्टेड स्ट्रोक था, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। दैविक अपने कदमों के, अपने कलाइयों का, अपने आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जिसको कहते हैं बहुत सशक्त दिखाई पड़ते हैं। 23 छक्के लगे हैं, 6 चौके अब तक लगे हैं। ये स्ट्रोक बताता है कि कितने स्ट्रांग टेक्निक के साथ दैविक नायक बल्लेबाजी करते हैं। फ्रंट फुट को गेंद के लाइन तक पहुंचा दिया, गेंद को बहुत जल्दी साइड किया और खूबसूरती के साथ इनफील्ड के ऊपर से कवर की दिशा में लॉफ्टेड कवर ड्राइव कर दिया, खेल दिया 4 रनों के लिए। एक और स्ट्रोक बैकफुट पर गए, पंच किया, गेंद को कवर की दिशा में फील्डर इससे पहले आ जाते, पहले कदमों को आगे बढ़ाया था, ओवर थ्रो के रूप में रन मिल जाएंगे। यही क्रिकेट की अनिश्चितता है, जहां पर रन नहीं था वहां पर 1 रन लेने का अवसर ओवर थ्रो के रूप में मिल चुका है बल्लेबाज के खाते में। नो बॉल का संकेत अंपायर कर रहे हैं तो कुल मिलाकर 2 रन मिल जाएंगे। रन बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 12 पर और इस 12 में अकेले दैविक नायक के 11 रन बन चुके हैं। 14 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर, जिसमें से 12 अकेले दैविक नायक के हैं, लक्ष्य 36 का। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इस मैच को जीआरएस बहुत आसानी के साथ जीतने की ओर बढ़ रहा है। इस छोर पर स्ट्राइक एंड पर इस वक्त विजय राज आ चुके हैं। दूर वाले छोर से फिर से राकेश योजनाबद्ध तरीके से इस फ्री हिट के अवसर को क्या वो जाया होने देंगे।
कोशिश करेंगे। दाहिने हाथ से विकेट, ये गेंद फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस थोड़ी सी डिप हुई, उसको देखा, झुक गए गेंद के लाइन के ऊपर आकर, आड़े बल्ले से गेंद को मोड़ दिया जब तक फील्डर आकर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाए। सिंगल को 2 में कन्वर्ट किया और इन दोनों के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 16 पर बगैर किसी नुकसान के, 16 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। और इसी के साथ ये पहला महंगा खर्चीला ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। और इस ओवर की समाप्ति पर जैसे मैंने आपको बताया 16 रन बगैर किसी नुकसान के। और देख रहे हैं GPL 2026 सीजन 10। समय बड़ा बलवान होता है और इस वक्त मुझे लगता है कि GRS फैंटेसी अच्छी कप्तानी, टॉस को जीतना, उसके अलावा समय जैसे मैंने कहा सब कुछ साथ बन जाए तो सोने पर सुहागा। उस टीम को, उस खिलाड़ी को कोई नहीं रोक सकता है। और इस वक्त दैविक नायक जिसको रोकने का कोई तोड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगले मैच के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कृपया रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर्स बल्लमबेट्टू और राइजिंग स्टार मंगलुरु के बीच में टॉस हो चुका है। अगले मैच के लिए राइजिंग स्टार टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रन 16 पर बगैर किसी नुकसान के। और इस वक्त फिर से बल्ले को थामकर दैविक नायक स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 5 मात्र गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया, 12 रन उनके व्यक्तिगत ही हो गए। लक्ष्य कुल मिलाकर 36 का है। और इस वक्त आक्रमण पर किस गेंदबाज को वी स्ट्राइकर्स की तरफ से मोर्चे पर लगाया जाता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हवा के विपरीत दिशा में गेंद को करना है और उस स्ट्राइकर के पास अच्छा अवसर है कि वो टाइम अगर स्ट्रोक को करते हैं, बल्ले के बीचों बीच लेते हैं, तो गेंद आसानी के साथ बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकल सकती है। गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बात है, क्या कवर का शौक है, इस गेंद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। GPL 2026 सीजन 10 का लाजवाब चौका है। इस स्ट्रोक को अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दैविक नायक कितने शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेंथ में ज्यादा थी, गेंद को जल्दी पड़ गए, मिडलर ऑफ स्टंप के सीट पर थी, उस दिशा में, उस लाइन पर अपने कदमों को फ्रंट फुट को ले गए और खूबसूरती के साथ गेंद को स्क्वाड ड्राइव के अंदाज में कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ रन बढ़कर 20 पर, कोई क्षति, कोई आघात अभी नहीं हुआ है, यानी कि फैंटेसी निश्चित तौर पर मजबूत पकड़ बना चुका है। GRS फैंटेसी पाक मैसूर वॉरियर्स इतना बड़ा नाम है और बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है। दैविक नायक स्ट्राइक पर दाहिना से विकेट उनके लिए गेंद थी और हालांकि गेंदबाज इस छोर से कर रहा है, दैविक नायक स्ट्राइक पर थे। जब तक लॉन्ग ऑफ में फील्डर आकर गेंद को समेट पाए, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो छोर को बदल लें। 1 रन को पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ 16 की व्यक्तिगत योग पर दैविक नायक पहुंच गए। रन बढ़कर 21 पर 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 21 रन बगैर किसी नुकसान के बन चुके हैं। और स्ट्राइक एंड पर काफी देर के पश्चात विजय राज आ चुके हैं। पवन की गेंद राउंड विकेट दाहिने हाथ से स्टंप्स के सीट पर थी, सम्मान दिया इस वक्त विजय राज ने। विजय राज जानते हैं कि पार्टनर अच्छा खेल रहा है तो क्यों जोखिम उठाया जाए, गाड़ी पटरी पर है, इस वक्त उनको एक सपोर्टिंग रोल अदा करना है। हालांकि वो भी सशक्त बल्लेबाज हैं, उन्होंने गेंद के लेन को पहचाना, फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक अपनाते हुए अपने आप को सुरक्षित कर लिया, फिर से स्ट्राइक एंड पर तैयार है। पवन की एक और गेंद विजयराज के लिए दाहिने हाथ से राउंड विकेट, इस वक्त उछलने का प्रयास किया, मिस कर गए, बीट हो गए, दिशा परिवर्तन हो गई, गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, बल्लेबाज को छकाती हुई और फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करने का प्रयास में मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, रन अभी भी 21 पर है, जबकि कोई क्षति, कोई आघात अभी नहीं हुआ है। आस्किंग रन रेट 2.81 का बताता हुआ 2.81 का आस्किंग रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट है। राउंड विकेट एक और गेंद थी, हवा के रास्ते गेंद को लॉफ्ट कर दिया, बहुत लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच लिया गया स्ट्रोक, गेंद टप्पा खाने के बाद मानो गेंद पर 4 रनों की छाप पड़ी हो, एक टप्पा खाकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ कुल रन संख्या
तेजी के साथ बढ़ चुकी है। रन्स बढ़कर 25 पर बगैर किसी नुकसान के। विजयराज, जैसा मैंने आपको कहा कि वो भी बहुत सशक्त बल्लेबाज हैं, इस चौके से उन्होंने साबित किया। थोड़ा सा स्क्वायर रन हो गया और फुल टॉस गेंद को उन्होंने उछाल दिया है, कैच होगा तो फील्डर गेंद के नीचे एक ने गेंद को कैच किया और इसी के साथ पहला झटका लग चुका है। अंपायर से इस वक्त नो बॉल के लिए मुझे लगता है कि शायद अपील की जा रही है और अंपायर ने तीसरे अंपायर को इस वक्त एक्शन में बुलाया, रिव्यू की मांग की है गेंदबाज की तरफ, बल्लेबाज की तरफ से, और उसके पश्चात तीसरे अंपायर देखेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो इसी के साथ बल्लेबाज आउट हो गए और इस विकेट के पास जीपीएल 2026 सीजन 10 नो बॉल के लिए मांग की गई थी बल्लेबाज की तरफ से और मैं समझता हूं कि हालांकि नो बॉल तो नहीं था, शायद बल्लेबाज भी जानते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा थी, आशंका थी, उसको दूर करने के लिए और ऑप्शंस, विकल्प अगर आपके पास हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, रिव्यू कुछ रखे गए हैं हर टीम के लिए, तो इस वजह से उसका सदुपयोग करने के हेतु अंपायर से गुहार लगाई और अंपायर ने कहा कि आपकी मांग को स्वीकार किया जाता है और आखिरकार तीसरे अंपायर ने इस अपील को खारिज किया और रन्स को मिलाकर 25, एक विकेट के नुकसान पर इस वक्त 2.20 का आस्किंग रन रेट है, 2.20 का रिक्वायर्ड रन रेट, 36 का लक्ष्य, 25 रन बन चुके हैं। रवि किरण इस वक्त आ चुके हैं इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में, 9 स्ट्राइक हैंड पर मौजूद है, जबकि स्ट्राइक हैंड पर दैविक नायक गेंद को लेकर दूर वाले छोर से राउंड विकेट, ये गेंद दैविक के लिए अच्छी गेंद थी और इस वक्त दैविक इस गेंद को खेलने के लिए पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए, बहुत अच्छी तकनीक के साथ और शरीर का संतुलन भी बनाया, बल्ले को पीछे बैकफुट पर ले आए, बैकफुट डिफेंस करना चाहते थे लेकिन गेंद उनको बीट करती, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होकर मिस कर गई और विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए। बल्लेबाज के पास समय था कि एक रन को वो दौड़कर पूरा कर लें, इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर 26 for the loss of 1 wicket, 26 रन से एक विकेट का नुकसान पर। दूर वाली छू से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बीट कर गए बल्लेबाज को और इस वक्त इंपैक्ट खिलाड़ी स्ट्राइक कहीं पर है रविकांत, उस गेंद का पीछा करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने गेंद को खेलने का प्रयास किया, मिस कर गए, रन लेने का अवसर नहीं, रन सभी भी 26 पर एक विकेट के नुकसान पर। दीपक दूर वाली छोर से फुलटॉस गेंद और इस गेंद को और इस अपील को स्वीकार किया अंपायर ने, बहुत अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट कर गई, विकेटों को कवर करते हुए गेंद को ऑन साइड की दिशा में घुमाने का प्रयास, लेग बिफोर द विकेट करार दिया और इस विकेट के साथ ही एक और विकेट का पतन और इस विकेट के बाद जीपीएल 2026 सीजन 10। बहुत अच्छी गेंद और मुझे लगता है कि ज्यादा फ्लाइट देने के अंदाज में गेंद थोड़ा सा फुल टॉस रह गई लेकिन बिल्कुल मिडिल स्टंप के लाइन पर थी, उस गेंद को कवर करते हुए ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, आकर गेंद घुटने से टकराई और इस अपील को स्वीकार किया अंपायर ने, बल्लेबाज को जाने के लिए संकेत किया, तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो चुका है। अंतिम चरणों में मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं कुछ रोमांच, कुछ टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन जब तक दैविक नायक रहेंगे वो अपनी टीम की जीत को सुनिश्चित कर लेंगे। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक और गेंद थी, इस वक्त गेंद को पलट कर खेलने का प्रयास था, 1 रन मिल जाएगा, बल्लेबाज को लेने का अवसर मिला। इस 1 रन के साथ उन्होंने अपना खाता खोल लिया, रन बढ़कर 27 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सृजन अपना खाता खोल चुके हैं दैविक नायक स्ट्राइक एंड पर। इस वक्त वो हवा के विपरीत दिशा में खड़े हैं और उनको सोचना होगा कि स्ट्रोक कितना सही होगा। दीपक की गेंद, राउंड विकेट, अच्छी गेंद, जोरदार अपील करना, थोड़ा सा आगे निकल गया, रन आउट का मौका शायद बन जाता, लेकिन बच गए, किस्मत वाले निकले। अपील के साथ साथ दैविक थोड़ा सा आगे निकल गए थे, लगभग आधा पिच तय ही करने वाले थे कि नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन ने मना कर दिया। पलट कर लौटने का अवसर थोड़ा कम ही था क्योंकि फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके थे, लेकिन सही समय पर थ्रो होना बहुत जरूरी था। बहरहाल आप अंतिम क्षणों में बल्ले को ड्रैग करते हुए पहुंच गए क्रीज में और अपने आप को बचा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से मुझे लगता है कि एक शायद बल्ले का सिरा लेकर गई थी। थर्ड बॉल बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर गेंद का पीछा करे जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के पास रन लेने का, कुछ बटोरने का, कुछ रनों को बटोरने का समय था और इन रनों के साथ रन बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर समाप्त हो चुका है, तो कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स को रिजल्ट 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थर्ड अंपायर की मांग की गई है, मुझे लगता है शायद बाउंड्री चेक करने के लिए। जी नहीं, ऑल राइट। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। हर रन के पश्चात, हर ओवर के पश्चात हिंदी और अंग्रेजी में 2 बार स्कोर आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। थैंक यू सो मच, सहयोग की उम्मीद करते हैं। रिक्वायर्ड 6 रनों की और दरकार है, 36 का टारगेट है और मुझे लगता है कि 30 रन अगर बनते हैं तो मात्र 6 ही रन बन सकते हैं। बिल्कुल सिंपल हिसाब है और मुझे लगता है कि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस वक्त गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है। कुछ जादूगरी अगर करते हैं, 2-4 विकेट वो लगातार प्राप्त करते हैं तो शायद रास्ता बन जाए। क्रिकेट में होनी या न होनी बन जाता है, अनहोनी होनी बन जाता है, तो क्या इस वक्त ऐसा कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। गेंद को लेकर आक्रमण पर पवन तैयार हो रहे, दाहिने हाथ से विकेट उनके, गेंद हवा के रास्ते, गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता है, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। डीप से जब तक फील्डर गेंद को कवर के दिशा में आकर गेंद को समेट ले, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को आसानी के साथ पूरा कर लिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 31 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। सृजन स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सृजन और दैविक नायक आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त मामला कोई गंभीर नहीं है, वो जीत की ओर अग्रसर है, फिर भी औपचारिकता के रूप में एक दूसरे का हौसला बढ़ाना उनका जिम्मा बनता है और इस वक्त बातचीत करने के पश्चात फिर से तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। सृजन स्ट्राइक पर 1 रन बना चुके हैं, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। पवन 10 रन अब तक खर्च कर चुके हैं, अपने कोटे का दूसरा ओवर वो कर रहे हैं, जबकि 1 बहुमूल्य विकेट उनके खाते में आ चुका है। 28 नंबर के जर्सी में पवन की गेंद, राउंड विकेट, दाहिने हाथ से विकेट, इस गेंद को थोड़ा सा ऑन दी अप ड्राइव कर दिया, स्टंप्स के सीट पर थे, फील्डर डीप में आ रहे हैं, वाइडिश मिड विकेट में, जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया और जिम्मेदारी फिर से दैविक नायक पर आ चुकी है। 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 32 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 9.60 का करंट रन रेट इस वक्त चल रहा है। बहुत आसान सा लक्ष्य इस वक्त जीआरएस फैंटेसी को दिखाई पड़ता हुआ। पवन आक्रमण पर, अब गार्ड बदलकर उनके गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और अंपायर कह रहे हैं कि पंछी उड़ गया, यानी कि संकेत है उनका कि वाइड है। वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 33 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
दीक्षित और पवन इस वक्त ऑन फील्ड जिम्मेदारी के साथ काम को निभा रहे हैं। 33 रन हो चुके हैं और अभी 3 रनों की जरूरत है। एक और गेंद ड्राइव की आसानी के साथ स्ट्रोक में गेंद को बदल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ वो मैच को जीतने के लिए जा रहे हैं। कोई दबाव, कोई संघर्ष उनको करना नहीं पड़ रहा है। बहुत आसानी के साथ वो सिंगल को बटोर रहे हैं और इस वक्त कुल को उन्होंने बढ़ाकर पहुंचा दिया 34 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। सिर्फ 2 रनों की जरूरत है और सृजन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। पवन की एक और गेंद फिर से राउंड विकेट को कर रहे हैं। उनके गेंद को लॉफ्ट कर दिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर ने कहा कि 6 रन। जीपीएल 2026 सीजन 10 का एक और जबरदस्त छक्का। एक छक्के के साथ जीआरएस फैंटेसी पाक मैसूर वॉरियर्स जो कि इस मैच को 8 विकेटों से जीत चुका है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। तो वी स्ट्राइकर्स इस मैच में परास्त हो चुका है। उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं उनको अगले मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो हर एक टीम को 3 मैचेस हैं, तो मुझे लगता है कि वी स्ट्राइकर्स को इस मैच में जो गलती की है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, उस पर सोचना होगा और उस गलती की भरपाई उनको करते हुए अगले मैच में बहुत सशक्त होकर उनको उतरना पड़ेगा। ये शुभकामनाएं उनको देते हैं। आइए इस वक्त अगले मैच की ओर बढ़ते हैं। अगला मैच जैसा मैंने आपको कहा, रॉयल चैलेंजर्स बल्लंबर 2 और राइजिंग स्टार मंगलोर के बीच में खेला जाएगा। और विवरण के लिए फिर से आमंत्रित करता हूं, जी हाँ, कोंकणी में श्री गोपी भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद अजय सर. तशीच जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 2026 तीन मॅच जावन आता चारवी मॅच तुम्ही जावचे आसत. फर्स्ट कोडियाल सुपर किंग्स आणि अवतार्स मल्पे युनायटेड हांगेल मध्ये जलल मॅच अंतु कोडियाल सुपर किंग्स विंजल है. तदनंतर मुंबई पल्तान्स आणि हंग्यो 11 अंतु मुंबई पल्तान्स विंजल है. तदनंतर पुढली मॅच जीआरएस फॅंटसी पार्क आणि वी स्ट्राइकर मध्ये जलल मॅच अंतु जीआरएस फॅंटसी पार्क मैसूर विंजल है. तदनंतर आता चारवी मॅच रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू आणि राइजिंग स्टार्स मंगळूर हांगेल मध्ये तो जावचो आसा. 7 ओव्हर आता पंद्याट अंतु तीन मॅच ऑलरेडी मुक्ताय झालेला आसा. चारवी मॅच अंतु आता मॅचची 1 गंटे प्रारंभ जावक आशिल्ला. मॅच ಸ್ವಲ್ಪ डिले आसा देखून प्रत्येक टीमाच्या तांगेल समयानुसार हांगा येवका म्हणून घेता. राइजिंग स्टार्स टॉस विन जावन फील्डिंग तांणी चूज केलेलो आसा. तशी हाजी नंतर इनिंग्स ब्रेक अंतु ಒಳಲಂಕೆ फायटर्स मुल्की आणि सुप्रीम गोल्डन गरुडास गोश्रीपुरम हाजी दोन टीमाचे कॅप्टनान अगत्य जावन इनिंग्स ब्रेक वळारीची टॉस येवका प्रत्येक टीमाक 30 मिनिट निगत केलेला आसा अंपायर्सान. तस देखून होता क्लब समयाचेर तुम्ही जावचाक सहकार कोरका म्हणून निमून घेतास. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगळूर प्रेजेंट्स जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 या धनची सीजन जलारी ह्या ग्राउंड अंतु म्हळ्यार शानबाग कुद्र ग्राउंड अंतु प्रथम सीजन हंगा जतास टूर्नामेंटाचे धनची सीजन जलारी या एक शानबाग कुद्रंतु फर्स्ट टूर्नामेंट हंग ह्या पाटी धनची वर्षाच्या एक उडगा सागतीर एक प्रथम जावन हंगा चलता अशें तुम्ही सगळ्यांनी पळोवन अशा बरो एक लायक एक ग्राउंड
ताची बरीनाची पवित्र जावन आशिल्लें एक शांभवी न्हंय आसा तशी जी बप्पनाडू दुर्गा परमेश्वरी क्षेत्र आसा कालच्या दिवसाक म्हळ्यार 9 तारीखेक रात्री देवी हंगाची लगी जाग्यांतू जळका म्हूण येवन उत्सवा म्हूण येयले एक पवित्र संदर्भा वेळारी आज सकाळी GPL पंद्याट प्रारंभ जाता आसा हे एक पवित्र जावन आशिल्लें एक क्षेत्र म्हूण येता खाली एक ग्राउंड मात न्ही हाका एक व्हड एक इतिहास आसा ह्या ऐतिहासीक जावन आशिल्ल्या प्रदेशांत कोडियाल स्पोर्ट्सांत तांणी स्ವಂತ जागो कोडियाल स्पोर्ट्साचे सदस्य तांणी घेवन आज आत्मनिर्भर म्हणला म्हणकेची या आत्मनिर्भरता स्वीकार करून आज GSB प्रीमियर लीग 2026 इसवीचे धाकटे सीझन स्ವಂತ ग्राउंडांतू हांगा जातारस तशीच रायझिंग स्टार्साचे 12th एक्स्ट्रा प्लेयर रायझिंग स्टार्साचे एक्स्ट्रा प्लेयर इमिडिएटली हांगा येवका कमेंट्री बॉक्सांतू तुम्ही नाव सांगना अशें हांगा मुखार वचचें जायना स्कोर ऍपांतू नाव सांगून जत्तरीची मुखार वचचें जावचें मॅच स्टार्ट जावचें तशें देखून इमिडिएटली रायझिंग स्टार्स मंगळूर हाचे एक्स्ट्रा प्लेयर आहा इमिडिएटली हांगा कमेंट्री बॉक्सांत येवका तदनंतरच मॅच स्टार्ट जावचें तशीच रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू दोन्ही टीमाचे स्ट्राईक बॅट्समॅन येऊन पविलसाची स्ट्राईक घेता आसा आदित्य नॉन स्ट्रायकरारी गिरीश कामत बॉलिंग घालूका गौतम पाय एक्स्ट्रा प्लेयर रायझिंग स्टार्साचे येता आसा थँक्यू व्हेरी मच फर्स्ट बॉलिंग घालूका गौतम बैटिंग करूका लेफ्ट हँडेड बैटर आदित्य मैच प्रारंभ जाता आसा फर्स्ट बॉल बाहेरच्यान एक बॉल लेग साइड हाका पडला तसलो बॉल लेग ग्लाउज जाला म्हणला म्हण केची पाया लागून एक अपील केला एक चान्स घेवया म्हण गौतमान जाल्यार लेग स्टंपाचे ಸ್ವಲ್ಪ भायर वतशील तसलो बॉल म्हण अंपायर सांगताची खंयचे ताका पुरस्कार करनी चारी मैच तुमगेले जाता आसा रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू आनी रायझिंग स्टार्स मंगळूरा मध्ये तुलान भारी संदेश बॉल गौतमान एक रन जाऊन कंप्लीट केला पळका रनआउट अवकाश म्हणणार रायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते आदित्य आणि गिरीश कामत मध्ये तू तवलच्या मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच GRS फॅन्टसी पार्क मैसूरातुलान सृजनान खंय असल्यारी कमेंट्री बॉक्साला येवन म्हळ्यार हांगा मेन स्टेजला येवन तुगेल प्रशस्ती स्वीकार करका म्हण निमून घेता आसा GRS फॅन्टसी पार्कातुलान लायक एक परफॉर्मन्स दिला तर चला सृजन तवलच्या पंद्याच्या पंद्य पुरुषोत्तम प्रशस्ती मॅन ऑफ द मॅच प्रशस्ती स्वीकार करतास तशीच तुमकां उडगास करता आसा चारय मॅच तुमगेले एद्राक जाता आसा गौतम पै बॉलिंग घालता असल्यारी आता नवो बॅटर गिरीश कामत स्ट्रायकाक फुल टच येईल तसलो बॉल मस्त वयर तसलो बॉल अंपायर कसले चुकी करी नो बॉल दिवचाका ताजोटूची 4 बाउंड्री ताजोटूची नो बॉल आउट तुम गोतसा फ्री हिट मेलता आसा रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू तांकां बहुशा गौतमान हातातुलान स्लिप जाले ओवर दी बेस्ट मस्त वयर आशिल्लो तसलो बॉल अंपायर कसले एक डाउट जायन ते नो बॉल दिवचाका नो बॉल आउट होची एक बाउंड्री मेळ्ळा बाउंड्री होची एक फ्री हिट तुमकां मेलता आसा या एक पवर प्ले ओव्हर अंतू या फ्री हिटाचे एक अवकाश लायक एक अवकाश रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटू तांकां मेळ्ळा आसा कशी अवकाश सदुपयोग करून घेता पळका गिरीश कामत स्ट्रायकाक लेफ्ट गोल पळयता जीद पाड्यार पळयला तसलो बॉल खंडीत गुड डेलिव्हरी जाल्यार एक लाऊड अपील आमकां खंडीत पळोवचा मेळता आशिल्लें बहुशा विकेट टू विकेट घालला तसलो बॉल लो जावन सीधा पायार पडला जाल्यार नो बॉल फ्री टच निमित्त लेग बिफोर द विकेटाक ते खंयचे अवकाश ना लायक एक बॉलिंग कम बॅक म्हणिता गौतम पैला वापस गौतम पै गिरीशाक चंदेक लॉफ्ट केला खंयचे फिल्डर ना ते बॉल बाउंड्री ड्राइव्ह जाता आसा 4 रन बाउंड्री रॉयल चॅलेंजर्स बळंबेटूला लायक एक बाउंड्री ಮೂಲಕ स्कोर येऊन पावला 10 विदाउट लॉस 0.4 ओव्हर्स 10 रन 2 बाउंड्री आशिल्ल्या नो बॉल आशिल्ल्या एक एक्स्ट्रा ಮೂಲಕ ते पुरे सेल्सून आता
खंयचे विकेट काढून घेऊन अशी धार नाही रॉयल चॅलेंजर्स बॉलमटी येऊन पावला युथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड आणि लाईव्ह तुमका पळोवपाक मेळटा सर युट्यूबान तू ನೇರ प्रसार तुम्ही पळय येता ಗೌತಮೇಲ ಅಪಾಸ ಚಂದ एक बॉल ते यॉर्कलिन ತರ ಇಲ್ತಸಲ್ ಬಾಲ್ 1 रन ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ದೌತಾಸಚ್ಚಿ ತರುಣ नहीं लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट ते गिरीश आणि आदित्याला सनोबट मिसफील्ड जल्ला बॉल मिसफील्ड जल्लारी त्या एक सदुपयोग कोण घेऊन अनेक रन धावलीची मात्र सफलता अंतु पविलसची लाइक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते आदित्याला गिरीश कामतील 5 बॉल जल्ला एक अधिकृत जाऊन असेला एक मात्र बॉल आणि या ओव्हर अंतु वरला 5 बॉल अंतु 12 रन खंचे विकेट काढून घेण्याशी रॉयल चॅलेंजर्स बलम बिಟ್ಟು गौतम वापास गिरीशाक यात्रा लॉफ्ट करू प्रयत्न जलारी 1 रन मात्र मिळता 1 रन आरामेरी धावून कंप्लीट केलेला साथ जोटूची 1 ओव्हराच्या मुक्ताई झाला 1 ओव्हर मुक्तायानंतर स्कोअर 13 विदाउट लॉस या चारही पंद्याट ತುಂಬಿಲೆದ್ದ ಜತ್ತಾಸ हजनंतर ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ आणि सुप्रीम गोल्डन गौडास गोश्रीपुरम हंगेल मध्ये जाऊचा असा संच मॅच GSB बुल्स खोडियाल बैल आणि वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्स 7 मॅच आभरण डायमंड्स बॅट्स मणिपाल युनायटेड टायगर्स 8 मॅच टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूर आणि उडुपी ब्लास्टर्स 9 मॅच खोडियाल सुपर किंग्सच्या दोन्ही मॅच ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुलकी ओटू तशीची धंच मॅच मुंबई पलटन्स आणि GSB बुल्स खोडियाल बैल हंगेले दोन्ही मॅच तशीची 11 मॅच आजच्या दिवसाच्या GRS फॅन्टसी पार्क मैसूर आणि आभरण डायमंड्स तशीची लास्ट मॅच आता गेलता रॉयल चॅलेंजर्स बॉलम बेटोनी टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूरामध्ये तो जाऊचा असा टोटल आजच्या दिवसाक 12 मॅचेस क्लब समयाचेरी 12 मॅच जाऊ का मंजुलारी सकड आमगेला टीमा चांगेला सहकारू अत्यगत जाऊन जाऊ का जाता क्लब समयाचेर तुम्ही येऊन आमक सहकार केलारी इनिंग्स ब्रेक आवळारी टॉसाक रजिस्ट्रेशनाक सहकार केलारी खंडिते आईच्या मॅच आम्ही क्लब समयाचेरी मुक्सूच्या साथ दिजाता इता म्हणारी पाय वापास सकाळीची 9:30 घंट्याक फर्स्ट मॅच प्रारंभ जाता पाय तसे देखून फाई मस्त मॅच जाऊचा असा फाई सकाळ प्रारंभ झाला मॅच मध्यरात्री पर्यंत चालू असा तशी परा दिवस आम्ही सकडान रखच्या क्वार्टर फायनल्स सेमीफायनल्स फायनल्स पंद्या ह्या पुराई आयतार दिवस जाऊचा असा मस्त मॅच जाऊचा तुम्ही सकडान सकारा सोपासा प्रारंभ करता लेफ्ट केला सीधा फील्डर आता दसकी बॉल का लाइक एक चान्स ट्राय केला मस्त कष्ट आशिल्ल्या बॉल जर्जी करून तितली सुलभ ना आशिल्ल्या फिल्डराक एक पटीक सुलभ हातार की म्हणले केल्या जलारी वार निमित्त मुखारी बॉल पिच झाला लाइक एक ट्राय केली त्याने जलारी खंचे अवकाश मिळली कॅच ಸ್ವಲ್ಪ ड्रॉप झाला जलारी तजोटूची बाउंड्री मिळाल निमित्त लाइक एक स्कोर हे अवकाश सदुपयोग करून घेतला रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळम बेटूतनी स्कोर बोर्ड आरी तुमका स्कोर दिसता 17 विदाउट लॉस 1.1 ओव्हर्स लाइक एक सिच्युएशन अंत लाइक एक हंतारे समोर रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळम बेटू दोन्ही ओव्हर जातास रिव्हर्स मारू प्रयत्न केला अंपायरला निमित्तास वाईड म्हणून ना रिव्हर्स मारू प्रयत्न केला निमित्त खंचे ते वाईडाक अवकाश ना प्रज्वल बॉलिंग घालतार असं स्ट्राईक घेतास गिरीश कामत तुम्ही ऑलरेडी लायक हिट तगेल बॅटर तुला पडेल 7 बॉलाक 15 रनर खेळता असणारी आदित्य 2 बॉल खेळलो 1 रनणारी नॉन स्ट्रायकर रस प्रज्वल वापस गिरीशाक वापस लॉफ्ट करू प्रयत्न सीधा कॉट बिहाइंड द विकेट ह्या पटी कीपरान खंचे ते एक चूकी करनाशी लायक एक विकेट हे मुलक कळून घेतास बाउंड्री मारनो लायक एक 2-3 बाउंड्री मारनो टीमाचे एक स्कोर लायक एक अंतर पाविल तसला गिरीश आउट जाऊन मागशी होता लायक एक सफलता रायझिंग स्टार्स मंगळूराक ह्या पटी मेळला म्हणून खंडित जाऊन सांगू येता प्रज्वलाक प्रथम सफलता खंचे विकेट काढून घेण्याशिल्या जलारी ह्या मुलक गिरीशाल मुलक 1 विकेट पतन जलाल रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळम बेटून गेला आता 1 डाऊन म्हणारी 3rd पोझिशन आरी खेळू येतास कारकड श्रीनिवास शिनी बंटवाळ शिनी 6 शिनी म्हणून सांगून घेता आता कोडियाला अंतसियो तेच देखून शिनी प्रति एक GPL फर्स्ट सीझन तुलान लास्ट सीझन म्हणारी आत्ता सीझन तई तो प्रति एक टुर्नामेंट खेळला 6 शिन्नी म्हणून नाव घेते झालाय शिन्नी आता स्ट्राईक घेतास राईट हँड बॅटर उर्वांतू
सिक्स मारलाल तसला प्लेयराच देखून तका सिक्स शिन्नी म्हणून नाव पडले ते आजी काही नाव अजरामर जाऊन थगेला नावा ಒಟ್ಟಸ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲುಕಾತ ಶಿನ್ನಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅಸಿ ಲೀವ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಲ ವೈಡ್ ಓಮಂಡಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ ಅನ್ನು ವೈಡ್ ದೀನಿ वाईड आखरी लगी लाईन लगी असेल तसं बॉल वाईड होचा पुरा म्हणून बॉल सोडला जलारी वाईड दिनी लाईक एक डिलिव्हरी म्हणत प्रज्वलाला स्ट्राईक शिनी लॉफ्ट केला या बडी नावा तकीत सिक्स शिनी म्हणून आम्ही म्हणता शिलेची फर्स्ट बॉल वाईड क्रीज लगे शिली मी तंतान सोडले वाईड शापुरा म्हणून दोन्ही बॉल वेट करनी पॉवर प्ले जतास तिन्ही पोझिशन राहिला टीमाची स्कोर बिल्ड कोर का टीमा स्कोर वैदोर का जलतीतली 7 ओव्हर कितली जत कितली स्कोर कोर का म्हणाल उद्देशान थर्ड पोझिशन अर्थ कंची रुपारी कंची उद्देशान पेटेला की त्या उद्देश परिपूर्ण करताची सिक्सर भारी चंदे का स्ट्रेट ड्राइव्ह ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾಯಿ ಪೆಟ್ಟನು ಸರ್ ಅನ್ನ ದಿವಲಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ಭಾರಿ ಚಂದಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ते यापटी लाऊड अपीला अंपायर लगी जलारी अंपायर पुरस्कार करनी बॅट लगनी म्हणून सांगता जोटूची दोन्ही ओव्हर मुक्ताय झाला दोन्ही ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्कोर बोर्ड आरी तुमका लाईव्ह अंतू दिसतास यूट्यूब ಚಾನಲ್ ಯೂತ್ ಜೆಎಸ್ಬಿ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತೂ मी पळयता सची ನೇರ ಪ್ರಸಾರ सीधा प्रसार यूथ जेएसबी ಚಾನಲ್ ಅನ್ जतास तजोटूची हंगा तुम्ही शानबा कुद्रू ग्राउंड ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಜಲರಿ भारी चंदेक एक वातावरण ಅಂತೂ तुम्ही एक जेएसबी प्रीमियर लीग 2024 च्या पंजाड तुम्ही पळयता लगी लगीच विंगड आमगेला फूड कोर्ट आवटूची कॅफेटेरियास पंचायतीके कट्टे म्हणस तशीची व्हीआयपीच्या फूड झोन असा विंगड एंटरटेनमेंट असा करोके सिंगिंग क्रीडा हौजी असा परा दिवस तशीची क्रिकेट मातने मत्सकड जाऊचा असा एक पंचायतीके कट्ट्यांतू पंचायतीक हरटे म्हणाले कार्यक्रम तुंबळून नष्टपुर तशी कवी गोष्टी आहे ते पुरे जलारी दीपसन्निधी म्हणाले का नवे कॉन्सेप्ट त्या दीपसन्निधींतू विंगड आमगेल देशाच्या धर्माच्या समाजाच्या संस्कृती अनावरण करतसला नृत्य संगीत प्रदर्शन सकट जाऊचा असा तशा तुम्ही पळिता सची लई वारी क्रिकेट 2.0 ओव्हर्स मला 2 ओव्हर नंतर 23 रन आता बॉलिंग आलो कोपासईला गौतम पाई स्ट्राईकाक आदित्य आदित्यानं चंदेक ड्राईव्ह केलेला असा एक रन वाचून मिळता बारीक चंदेक कव्हर ड्राईव्ह ते 2 ओव्हर पॉवर प्ले नंतर मस्त रिस्क घेणं अशी वारी तुम्ही पुढे येता मी कमेंट्री बॉक्सवर बेसलाची म्हणारी ईस्ट साइड अंत बेसलारी अशाण भारी चंदेक वार येतास म्हणारी बेस्ट तुला ईस्ट साइड वार येतास बॅट्समॅन कमी संक मंजुलरी एक अगेन्स्ट द विंड स्ट्राईक घेतास बॅट्समॅन म्हणून सांगू येतं म्हणारे हंग वार येईल मी दिक्कांग सांगली मंजुलारी बाउंड्री लाईन तुम्ही पुढे येतात प्रति एक कडेनं फ्लॅग घालला फ्लॅग तुम्ही सांगतास त्या ध्वजाचे दिक्कू कसे फ्लॅग कशी दिकारी म्हणारी वतास की त्या अधिकारी वार असं म्हणून सांगू हंगा ईस्टर्न साइड पूर्व दिक्कांतू वार आहे जोरशे लिमित अगेन्स्ट द विंड बॅट्समॅन खेळता असं म्हणून सांगू येतं तिन्ही ओव्हर चालती असं दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले नंतर तिन्ही ओव्हर तुम्ही चालती गौतम पै स्ट्राईकाक श्रीनिवास दिवसभर प्रयत्न कच्ची फिल्डर राहते बॉल बाउंड्री 4 रन भारी संधी एक बॅटिंग ते श्रीनीला पळेल ताडे फिल्डर कंची साइड असं म्हणून सांगून लेग साइड म्हणारी ऑन साइड खंडाबडी स्ट्रॉंग केला कॅप्टनानं ऑन साइड मारू पूर्व म्हणून सांगून जलारी ऑफ साइड आता पळेला कंची फिल्डर कंची पोझिशन असं म्हणून बॉलिंग घालायला ऑफ स्टंप बाहेर येईल तसल बॉल कंचे चुकी करणं अशी रिव्हर्स मारू कंचे फिल्डर नतील कडेनं बॉल पेटवून होती 4 रन टीमा कतीर रॉयल चॅलेंजर्स बलम बेटू कतीर शिनीनं दिवायला वापस स्ट्राईक का शिनी बॉलिंग आलो का गौतम पाय भारी संदेश बॅटिंग ते रिस्क घ्यायच्या उच्चानी पळया 1-2 बॉल पळया बाउंड्री सिक्सर्स कशी येता कई रीते रबलारी टीमाचे स्कोर आणखी
मुखार वरूक साध्य आसा जाल्यार ह्या हंतांत विकेट एक कळून घेवन अशें विकेट एक रब्बो का ताजे वटू स्कोर जावका दोन्ही विशयी बॅट्समॅन मातांतू खंडितय आसा ಗೌತಮ್ ಪೈ ಚಂದ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀದಾ ಫೀಲ್ಡರ್ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಶಿಲ್ತೆ ಫೀಲ್ಡರಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ केली म्हणून जलारी बॅट्समॅन पिच्चा मध्ये तशेलेची जलारी लायक एक सुलभ अवकाश म्हणून सांगू जायना रनिंग बिटवीन दी विकेट ते आदित्याला आणि शिन्नीला तिथले लायक आशिल्ला ಸ್ವಲ್ಪ रिस्की रन मोणेत या पटी जलारी सफलता खंडित जावन बॅट्समॅनाक मेळल आसा आदित्य तक स्ट्राईक मेळल ऋण ओपनिंग बॅटिंग आयलो जलारी तक 3 बॉल मात्र स्ट्राईक मिळाल 3 बॉलांतू 2 रनर खेळतास शिन्नी 6 बॉलांतू 1 रनर खेळतास गौतम पै लेफ्ट हँड बॅटर आदित्य स्ट्राईक घेवच्याक आता लॉफ्ट गोल पळयता बॅट लागला की पळो कना ऑफ स्टंप आज मस्त वायर येईल तसर बॉल वाईड सिग्नल अंपायर आला एक एक्स्ट्रा रन ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ ಆಡ್ ಜತ್ತಾಚಿ 30 ರನ್ ರೇವನ್ ಪೌಲ 30 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್ तिन्ही ओव्हर चाल 3 तास गौतम पाई आदित्याना एक चिकी सिंगल काढू प्रयत्न डिफेन्स केलते जलारी फिल्डर ते आशिल्ली मिता खंचे रन्ना कते अवकाश मेळ्ळी 2.5 ओव्हर्स तुम्ही लाईव्ह अंत पळयतास स्कोर आता हंग आशिल्ल्यांक आउट गा स्कोर प्रयत्न करता 2.5 ओव्हर्स 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 30 रन दांचे एवरेज जारी खेळतास रॉयल चॅलेंजर्स बळ्ळेंबेट तानी वापस एक चिकी चिकल करून पडेला बॅट लागला की बळका बॅट लागला म्हणून सांगला अंपायराना या ಮೂಲಕ आदित्याला विकेट ओपनिंग बॅटर आदित्याला विकेट कळून घेतला रॉयल चॅलेंजर्स बॉल भेटून ह्या ಮೂಲಕ दोन्हीच्या एक सफलता बॅट्समॅन आला निमित्त रायझिंग स्टार्स मंगळूराक मेळतास 3 ओव्हराच्या मुक्तायानंतर स्कोर 30 रन 2 विकेट कळून घेऊन ಹಜ್ಜೆ ತಶಿಜಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಯೋ ತಂಡ ಕೆಎಂಸಿ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫಿಸಿಯೋ ತಂಡ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಿಸಿಯೋ ತಂಡ ಕೆಎಂಸಿ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಫಿಸಿಯೋ ತಂಡ ತಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 3 ಓವರ್ ನಂತರ 30 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ तशीच 7 ओव्हराच्या पंद्याट हंगा चलता असा 7 ओव्हर पंद्याट अंतू तुम्ही 7 ओव्हराच्या एक इनिंग्स अंतू 30 निमिषाच्या हंगा तुमका कालावकाश अंपायर सान दिलेला असा या 30 निमिष भितरी तुम्ही तुमगेल इनिंग्स कंप्लीट करका जाता ना म्हणजे तुमको तसं एक स्ट्रिक्ट रूल्स प्रकार अंपायर्स थर्ड अंपायर्स आणि कंचे डिसिशन घेताच त्या डिसिशनाक पेनल्टी तुम्ही बद्ध जाऊन असू का जाता 3 ओव्हराच्या मुक्तायानंतर स्कोर 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इथे पण परा तशीच मुखारच्या कमेंट्री दिवच्याक श्रीयुत सतीश सालिया हांका प्रीतीनं आमंत्रण करतास ओव्हर टू श्री सतीश जी Thank you so much, Govibaji. The match number 4 is in progress between Team GS Royal Challengers Balambettu versus Rising Star Mangalore. Winning the toss, selected to field first. Rising Star Mangalore. The equal battle is on. 30 for the loss of 2 wicket. Royal Challengers and 2 batters out there in the middle. Story just wanted to get the partnership. They have to build after losing 2 quick wickets. The Srinivas is the one batter. There might be the big expectation from him that he will going to play a big innings for his team to get into the good total against team Rising Stars Mangalore. The bowler brought into attack to bowl the 4th over. Vikrant from the commentary box end. Right, I'm over the wicket. Yes, we're talking about a lot of expectation from this man, but he's not really disappointing that expectation by hitting the first delivery of Vikrant into the deep mid-wicket boundary for a maximum. What a magnificent stroke. Just have a look at it in replay. Just going back, just using the depthness of the crease very well, making that ball very short and swings it away down to deep mid-wicket boundary for a maximum. I've already mentioned this is not the bowler's paradise. It is definitely going to be a batter's paradise.
Any little mistake, have to pay the penalty for that. When you're having a batter like a Srinivas in the strikers end, I think a lot of hard work need to be done. And this ball is absolutely disappear into the roof of the spectators gallery, and it's very hard to find the ball. Asking for another ball, umpire Dinesh Acharya, and along with him Krishna at square leg. So umpire just wanted to change the ball there after that ball which is stuck in the roof of spectators gallery. And still it's a strong wind is passing in the middle of the ground. Time is almost 3 o'clock in the evening. But still the condition is very good for the batting. The Vikrant. This time short pitch delivery just outside the line of black stamp, full Z1. But this time he played it along the ground towards a deep square leg boundary for a single. There is a protection in the deep. With that single scope moves on to 36 for the loss of 2 wicket. The ball which is used for this particular tournament, Wilson 4. And probably the Wilson 4, not that much of hard. We can see that just like what we are using for the hard tennis ball. This is not hard tennis ball, the soft tennis ball. The only reason that the dimension of this cricket ground, just like I mentioned earlier, it's not a big one. And using Vicky means is always one more big problem for the bowlers. So they used the Wilson 4, but Wilson 4 is also a little bit hard as far as a soft ball is concerned. And that's why the batters really enjoying the condition here. 37 for 2. Once again, lovely shot. Harish Kamath just wanted to do the same job that he wanted to get the single and try to bring Srinivas into the strike. And this is what the sensible thing to do for the new batter. 38 for 2. And Srinivas was batting on 18 in fact, and he faced only 8 deliveries to get that 18 runs from his bat. Vikrant away from us. Shot outside the line of off stump, and Srinivas just wanted to reach to the pitch of the delivery. Because of that, he just wanted to get that one away from his body. Doesn't get a proper connection inner part of the bat, and wicketkeeper behind the stump collects it. No chance of any run. Vikrant quickly realizing that the kind of line and length which is required for Srinivas. Shot outside the line of off time. Once again, well directed, slow short pitch delivery. Again, Srinivas so excited of watching the ball which is far outside the line of off time. This is what the sense you have to use the condition like this. Just like I mentioned earlier, you need to see that which direction the wind is flowing. And you have to get that line against the direction. To force the batsman to go for the big shot against the wind so that they can get some the wicket in the form of a catch out. So one more extra fielder has been added to the offside region. That means Vikrant try to get that line which is outside the line of off stump, but the better to ball to Srinivas. Shuffled across, swings it away. The fielder is underneath it and he takes it. This has been a great piece of bowling there by Vikrant. He deserved this wicket. Why I'm telling this? Because after that 2 very good deliveries which is pitched outside the line of off stump, the making the batsman to think differently. He just Srinivas wanted to play against the line. Almost drags it from outside the line of off stump to get the big one on the onside region. When you try to do that, timing is not going to come proper. And that's what the result. You can see that he shuffled across the line of delivery. Still, he just wanted to drag that one from the outside the line of off stump. That's why he couldn't manage that, connect that one very well. And deep square leg fielder making no mistake at all. Takes the catch. And this is what the wicket team is wanted desperately. Rising Star Mangalore wanted this wicket, just like I mentioned about.
if you wanted to restrict their opposition from the big run, the wicket of Srinivas is so important. 38 for 3. Just like Gopi Bhattji has mentioned about sixer Sino, who is knowing for his big innings. One who hit 6 sixes in an over. Has got a tremendous record from his bat. Is back in the pavilion after scored 18 runs in 9 deliveries. Harish Kamath, correction, Varun Kamath, the new batter in. Shanbag, it's not a Kamath. Varun Shanbag, one more very good striker of the ball, who plays both underarm and overarm cricket very well. Varun Shanbag. There's some chance of run out. Easy opportunity for Vikrant, but he need to have a bull eye to get that stumps. Just wanted to get the single, but ball went straight to the hands of bowler on his follow through. Turns back, tried to hit the ball, hit the stumps, but he missed it. Lakshmesh Baliga brought it the attack from the far end to bowl the 5th over. Is 39 for 3. Right, Amavati gets shot outside the line of off stump and wide call by umpire. Evening exercise here for umpire Krishna in the evening. Skubana moves on to 40 on the board for the loss of 3 wicket. Lakshmesh again shot on up. Once again pulls it away, just like a forearm tennis stroke there from the batter Varun Kamath, getting that short pitch delivery, hit that one down to mid-wicket region, almost drags it from outside the line of off stump. It's 41 for 3. Youth of GSP Worldwide having a live telecast of this cricket tournament. The very good screaming there from youth of GSP. And again outside the line of off-stump batter Harish Kamath wanted to get that one on the onside region. Good line to ball when you're coming from the far end outside the line of off-stump for the left-hand batter. Again off the backward, pulls it down to mid-wicket region. We can see that 3 protection has been given, 4 protection has been given in the onside region. It's not so easy to find the gap when you try to get the ball along the ground. 42 for 3. Good comeback here by the bowlers of Rising Star Mangalore. Especially in this over, Lakshmesh is absolutely tighten up the screws. Lovely Yorker and delivery, negotiated very well by Varun. Not really let the bowler to settle for the Yorker and delivery. Getting his bat right in time, and just a roll of the wrist which comes into play to pick the single down to deep square leg region. It's 43 for 3. The runs are coming in the form of singles here, and the bowler will not going to bother about that. In this particular round, I think you are conceding a singles is not a big deal. This sample toss looks like chance here for the fielder to get the catch there in the long on. The catching practice here for the fielder at Whitish long on. One more wicket back in the pavilion. Well, all in sudden, Royal Challengers just lost the momentum what they got in the first 2 overs. First 3 overs, in fact, they're really going with a big gun. Looks like they will going to score 75 to 80 runs at one stage. But once the Srinivas was back in the hut, we can see that the Rising Stars Mangalore are back in the game very strongly here with the wickets. It's 43 for 4. Harish Kamath departs. Lakshmesh strikes. Well-deserved wicket for Lakshmesh in this over. Outstanding over. The 5 runs and a wicket. Lakshmesh Baliga. Another 2 overs remaining. Exactly 12 deliveries excluding wides and no balls. So wait and see how many runs Royal Challengers will going to get. The runs here for the team. 2 new and fresh legs in the middle. Varun Shanbag and Ari Kedar. Swings and misses. Blind attempt from Varun Shanbag.
The line is outside the line of off stump. The front foot is not nowhere near the pitch of the delivery. Try to get that one against the line. Misses the line complete. The wicketkeeper behind the stump did the rest. The back to bowler. Slowly the spectators are gathering here with a big number to enjoy this day number 1 here in evening. Again, driven up easily but safely down to mid-wicket region for a walkable single for Varun Shanbag. All we can see the Nelson 4-4-4 in the scoreboard. .44 for the loss of 4 wicket in the over number 6 is in progress. Prajwal is in action. Even though slight bit of expensive in his first over, not a big deal. The 9 runs in over, not a bad one. But so far he's looking so good. There's Sam, catch it is a call, catch it is a white ball, going and sailing over towards the deep long of boundary for a maximum. With the direction of the wind. Kedar just caught that one. Looks like he's not really able to connect that one properly, but just like I mentioned about with the direction of the wind, ball is going and he got the distance as well. This is all happening when you are playing with the direction of the wind. Frustration. 50 comes off here for a loyal challenge with that 6 from the bat of Kedar. This has been a great shot, isn't it? Leaning into the drive. Lofted one into the deep long off for a maximum. Much deserved 6 after a long time. Again, full toss delivery. They played it down to cover point. Oh, collision. There is absolutely collision between these two fielders, but hopefully no damage done. One fielder is rushing from the deep extra cover region. Another fielder coming from the short extra cover region. Both are not watching each other, but they just wanted to watch the ball by doing that slight bit of collision, but no damage done. 52 for 4. Prajwal, 5th time in this over. Kedar, the batter, you know exactly what the role he need to play in this penultimate over. Away from us. Shot outside the off stump and going to be a punishable, not from the batter but from the umpire. Dinesh Acharya, one more experienced umpire, the multi-talented, the very good singer, good cricketer. As an umpire, it's 53 for 4. Right above the wicket ball, swings and miss, lovely delivery. This is a good line. Just getting that one little bit inches inside that the frame line which is about the previous delivery. And getting the batsman to go for the big shot, but missed it completely. 53 for 4. Final delivery of the over number 6. Again, going to be a wide, one more extra. This is clearly we can see that Prajwal is concentrating what we are concentrating. You know exactly that we can't bowl to that line which is midland leg stump, and even around the off stump it's going to be punishable. So he wanted to get away from that line. He just wanted ball a wide outside the run of off stump so that he can get some dot delivery. But in this particular, he bowled 2 wide deliveries while trying to that. Shuffled across, lovely short pitch delivery, slower one, good way to finish the over number 6. After completion of over number 6, Royal Challengers are 54 for the loss of 4 wicket. You are watching GPL Season 10, which is proudly presented by Kodial Sports Association Mangalore, which is proudly presented by the Amgele Abharan GPL 2026 Season 10. Still, it's a hot condition. Even the time is exactly 5:03. With some huge wind which is passing in the middle of the ground. The beautiful cricket ground which is situated in a branch of the holy river Shambhavi is passing just beside this cricket ground. The Highland which is absolutely situated
with the nature beauty, the greeneries all around. Last over will going to start from the far end. And wait and see which bowler going to bowl the last over. The spin bowler is in operation. For now, brought into attack to bowl the last over. I think it's always the bowler will going to enjoy the bowling from far end, because they, just like I mentioned about, they need to bowl against the direction of the wind and with the direction of the wind, in fact, so that will going to help them to get some movement, as well as not easy for the batter to get the very big shots. Driven down to deep long on region. Orthodox long on will go in to collect the ball, and ample time for the batter to complete the single. It's 55 for 4. The last 5 balls remaining. This is not just a cricket. It's just, I'm just wanted to tell you, this is the festival of cricket, isn't it? GPL. All we can see some entertainment programs is going on. Along with the cricket, it absolutely disturbed the furniture. Batter just wanted to go for the big one on the onside region, exposing his stump, and the bowler has a great idea to where to pitch the ball. Pranav is just targeting the middle stump. Free meditated before the bowler will go into deliver the ball. You have a look at the batsman shuffle, exposing the stumps, and the batter just aiming the middle stump here. That's all happening in the last, when you are dealing with the last final deliveries. The batter will going to try for something different. Improvising cricketing stroke, which is fun, attempted, and just pays the penalty for that. The over number last is in progress. We are just talking about the next match. Olalanke Fighters Mulki will going to take Supreme Golden Garudas for the next match, so that I request the captains of both the teams to be report here immediately for the tossing ceremony. The match number 5 of day number 1. Second time in this over, full toss delivery for the new batter Sandeep Kamath, played it gently down to square leg region for a single. One more experienced campaigner, Sandeep Sandy, the famously known as Sandy, the very good all-rounder, useful middle-order batter and a very good bowler and better fielder. 56 for 5. Pranav is in the last over so far, looking so good. Again bowled it outside the line of leg stump and going to be a wide. One more extra with that extra score and moves on to 56 for 5. Pranav to continue from the far end. Last 3 deliveries left in their innings. Varun Shanbag swings and missed, and looks like he is walking. Absolutely good sportsman spirit shown by Varun Shanbag. Even though slight a bit of doubt in the mind of umpires, but Varun knows that he nicked it, and he walks. This is what the true spirit of the game, isn't it? Sometimes we can see that umpire yet to raise his finger, but Varun saying that I nicked it. So this is what really the good sportsman spirit, why the cricket is a gentleman game. He is absolutely walking. Sometimes is a feather touch. It's very difficult for umpire to hear the sound. Sometimes even the sound of the commentators are going to disturb. Quite understandable. Hopefully there is no noises of crowds, but there will be noises in the coming days. Saturday and Sunday, hopefully this ground will go into have a jam-packed stadium, just like what we are always witnessing in Sahyadri cricket ground. The some it is attempted, but protection has been given in the deep, and the Gautam, the fielder, he is a very quick fielder and he has got a good arm. Against his good arm, asking for trouble if he wanted to get a couple of runs. So that settled for a single. With that single scope, and moves on to 58 for loss of 6 wicket. This has been a great last over from the point of view of Rising Star Mangalore. Just from 4 from this, and they got a 2 wickets. The last delivery of their innings, and wait and see how Sandeep Kamath will go in to get this last ball. Definitely wanted to send that one out of the park. Again, lovely delivery, beautifully bowled, executed that beautiful Yorker landed just outside the line of off stump.
Good enough for the batsman to settle for a single. Great over which is comes in hand here from Pranav. The 6 from this over. It's not a bad over. And after completion of over number 7, Rising Star Mangaluru not really rises that much what is really looking for when they started their innings with some big guns, some big innings. Everyone thought it might be a 70 plus runs, but now they're restricting their opposition for just 59. And they set a target of exactly 60 to win the match in stipulated 7 overs with a required run rate of 8.57 runs per over. And wait and see how Rising Star Mangalore will going to rise here in the afternoon. And just wait and see. And altogether, I think it's going to be a competitive total put on and by Royal Challengers. And before the winnings will going to start here, it's a time to change in voice as well as language. I will proudly invite once again, for the commentary box, Suresh Bhatji and Yashwantji for the further explanation of the match. Thank you. Thank you, Satish ji. Welcome back to Shanbo Kudru Ground. GSB Premier League 2026 अच्छा मैच नंबर 4 ही चलते रस रॉयल चैलेंजर्स बल्लंबेट्टू वर्सेस रೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅವರು ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರನ್ನ ಸುರುವೇಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಕ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೆಲ್ಲ रॉयल चैलेंजर्स बल्लंबेट्टूक 59 रन्स स्कोर केला 7 ओव्हर अंतू 60 रन्साचे टार्गेट रायझिंग स्टार्स मँगलोराक मस्त एक हॉट टार्गेट नाही 8.43 रन रेटारी केली म्हणजे या मॅच इझिली विन जाऊचे चान्सेस रायझिंग स्टार्स मँगलोराक लायक बॅट्समन असती रिसेंट डेज अंतू मस्त एक स्ट्रॉंग टीम जाऊन डेव्हलप जातचे टीम रायझिंग स्टार्स मँगलोर तशींची मॅच नंबर 5 वळलंके फायटर्स मुल्की वर्सेस गोल्डन सुप्रीम गोल्डन गरुडास कोची दोन टीमाचे कॅप्टन्स टॉसाक येवका सेकंड कॉल फॉर द कॅप्टन्स ऑफ वळलंके फायटर्स मुल्की अँड सुप्रीम गोल्डन गरुडास गोश्रीपुरम ऑर्गनायझर्स वेट करत असती दैकोर जलतीतलं बगी आम्ही मेन स्टेजला येवका टॉसाकतीर यशवंत जी मगे ಒಟ್ಟು ಕಾಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಜಾಯಿನ್ ಜತಸ್ वेलकम बैक यशवंत लायक एक टूर्नामेंट चलतस एदोलते 3 मैच कंप्लीट जाला चेस केला टीमांची 3 मैच विन जालेलस सो अत अनेक चान्सेस रायझिंग स्टार्स मँगलोराक ऑलरेडी सांगेल म्हणजे 8.43 रन रेट केली म्हणून जाल्यार या मॅच रायझिंग स्टार्साक विन जाऊ चान्सेस तशें जोन गोल्ड रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टूची टीमाचे बॉलर्स मस्त परिश्रम कोरका हार्ड वर्क कोरका सुरवेकची पॉवर प्ले ओव्हर अंतू विकेट काढली म्हणजे जाल्यार तांकां एक लायक स्टार्ट मेळता सो पळोवया कसं करता ती बॉलर्स कंटिन्यू स्ट्रॅटेजी हांगा अडॉप्ट करता ती म्हणून दोग जण ओपनर्स रायझिंग स्टार्स तर्फेन क्रीस आयिल असती दोग जण प्लेयर्स सेट जावचेक तयार जात असती सो एदोळते जाल्यार टुर्नामेंटा ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಾ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋದ್ जाल्यार यशवंत कसं सांगच्या इच्छा पावता That's a fantastic experience, especially हंगा तुम्ही मुल्कीन ते एक टूर्नामेंट हंगा ऑर्गनाइज करून तुमगेले ग्राउंड करून खेळता अशें विशेश जावन दिसता सर and mostly as rightly एक आयलैंड म्हणचे आनी एक important fact जाता म्हाका this is probably the first time I'm witnessing a match in an island, especially in a place like Mulki. It looks to be very interesting and a good proposal for the players also to come here and play this tournament. सो खंडीत जावन आम्ही एप्रिशिएट करका कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाक इथे म्हळ्यार असल एक टुर्नामेंट करचे तितले इजी काम नाही मस्त एफर्ट जावका अंतू
जलरी 10 वर्ष दुकुनु ते करता आयलेंती सो बिग हॅट्स ऑफ हॉड एक सलाम कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आमगेल्या कमेंट्री पॅनल तर्फेन सो मॅच स्टार्ट जातस चेस बिगिन्स रायझिंग स्टार्स मँगलोर तर्फेन दोग जण ओपनर्स प्रज्वल आणि प्रणव लेफ्ट हँडेड बॅटर प्रज्वल क्रीसरस प्रणव भट नॉन स्ट्रायकर सेंटर प्रज्वल शणा इज ऑन स्ट्राइक ओपनर बೌಲರ್ जावनु रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू तर्फेन ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು गेल्यार बॉल अगूर ऑफ साइड ऑन साइड टॅप केले प्रज्वलान एक रन काढून तेगेले अकाउंट ओपन केलेलो आसा रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू ಬಗ್ಗೆ सांगचे म्हणजे जाल्यार सुमार एक 3-4 सीझन देखून खेळतस दोन्ही पटी रनर अप जाल्या टीम आरसीबी म्हळ्यार नावारी खेळतस रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टू फुडली सीझनांत सेमीफायनलांत डिफीट जाल्ले ताजे दोन्ही सीझनांत रनर्स प्रशस्ती घेतील टीम वेंकटेश पासून गेल्यार बॉल हुगूर फ्लिक केले ऑन साइडांत सो प्रणव भट्टाने सिंगल काढला दोग जण ओपनर्स अकाउंट ओपन जाल्यार दोग जण ओपनिंग बॅट्समॅनाने तांगेले अकाउंट ओपन करून हांगा खेळत ती ओपास स्ट्राईक मेळत लेफ्ट हँडेड बॅटर प्रज्वल शणायक We have Venkatesh Prabhu bowling to Prajwal Shanai from Abrani end. That was slightly pitched outside the off-stick. The batter finds a good drive there towards the point and gets a single run. That was quick enough between the wickets. There was a fielder to protect that run, but still the batters were able to get a single. ओपास बॉल बॉलर वेंकटेश प्रभू हातास नेक्स्ट बॉल घालूक रेडी जातस तशीची क्रीसार वेट करतस प्रणव भट लाइक एक बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल बैट्समैन प्रणव भट कंप्लीटली बीट जातस बॅट आणि बॉलामध्ये कंचे कनेक्शन ना सो बॉल सीधा गेला विकेट कीपर आदित्य सकरदंडे हातांतू कंचे रन येतरा डॉट बॉल प्रति एक डॉट बॉल बैटिंग टीमावरी मस्त प्रेशर क्रिएट करता असले डॉट बॉल आता कंटिन्यू जाऊन अगत्यते अस रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टूक इथे म्हळ्यार सुरवे ओव्हर ಅಂತೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಗಲ್ಲಿ म्हणून तांकां लायक एक स्टार्ट मेळता या पेटी ऑफ साइड ಅಂತ मस्त रूम आशिल्ले ऑफ साइड ड्राइव केले ते फिल्डर आस जाल्यार फिल्डरान येवन बॉल करेक्ट करपी फुडेची एक रन जावचे भरपूर टाइम आशिल्ले एक रन कंप्लीट केला प्रणवान That was a nice shot from the batter there. Had to stretch himself, expose his arms and hit it towards the covers. Gets a single run. Rightly said Suresh, every dot ball makes this match tougher for the batter team. They already need more than 9 runs in an over. That means that they have to keep rotating the strike as much as possible. 2 रन स्कोर करून खेळतस प्रज्वल शणाय नेक्स्ट बॉल फेस करतस फील्डिंग थोडे चेंजेस करतस बॉलर वेंकटेश प्रभू फ्रॉम द फार एंड दॅट इज फ्रॉम द आबरण एंड भारी लायक बॉल ऑफ स्टंप गिदोकून बॉल पास जाल्लो बॅट्समॅन खेळू जाय न्ही ताका खंयचे क्लू ना आशिल्ले प्रज्वलाक कशी खेळची म्हणून कळणी सोडून दिल्ले बॉल सीधा विकेट किपरा लागे वतस विकेट किपर आदित्य सकरदंडेने वरल्याल काम केलेलं आसा जोटूची लायक एक ओव्हर एंड आयला सो वेंकटेशान ह्या ओव्हरांत खाली 4 रन मात्र सोडून दिल्ले हॉड एक टार्गेट असत 60 रनांचे टार्गेट आशिल्ले टीम रायझिंग स्टार्स मंगळूराक हाका रिप्लाय जावन सुरवे ओव्हर एंडांत खाली 4 रन मात्र स्कोर करूंक यशस्वी जाल्ली ती प्रज्वल शणाय आणि प्रणव भट दोग जण बॅटर्स वयरी मस्त एक निरीक्षस मस्त एक्सपेक्टेशन आसा तांगेल्या टीमाक सो पळोवया कशी तांणी तांगेले इनिंग्स स्टेबिलायज करतात म्हणून मस्त कॉशियस जावन खेळतस ती प्रज्वल शणाय खेळतस 2 रनारी हेजोल ते 3 बॉल फेस केला प्रणव भट 2 रन करून स्कोर करून खेळतस प्रणव भट्टाने 3 बॉल फेस केला कंचे बाउंड्री हेजोल ते पळोवचे मेळ्ळी यशवंत Perfect, Suresh. Both the batsmen have 2 runs on the scorecard, playing exactly 3 balls each, and we have new bowler Sandeep Nayak, who will be bowling from Smart Bazaar end. He's a left-arm medium pace bowler, fast bowler. 43 is the jersey, bowling from Smart Bazaar end. संदीप नायक अनेक अनुभवी बौलर रेडी जातस स्मार्ट बाजार एंडा दखून लेफ्ट आर्म मीडियम फेस बौलर संदीपान गेल्यार बॉल प्रणवान ड्राइव केला चान्स ऑफ रन आउट पडोक बट आय थिंक
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೀಸ್ ಐಲಾಕಿ ಪಡೋಕ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಒತ್ತಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಿನೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೆಫರ್ ಕೆಲ್ಲ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರನ್ ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೇಂಜರ್ ಎಂಟ ದೌಂತ ಶೀಲೋ ಫೀಲ್ಡರ್ लायक और मस्त क्लेवर फील्डिंग मडयत मस्त चुरुकु जावन शिलो कूडले बॉल क्विकली गॅदर केले आणि थ्रो केले डेंजर एंड दावंत शिलो बैट्समैन प्रणव सो पडोकात कंचिडम डिसिजन थर्ड अंपायर ला एत्ता म्हणून. That was a nice fielding from the fielder there on the mid wicket. Just collects the ball, throws it back to the bowler. The bowler does not make any mistake. He lifts the stumps there, and an appeal has been made for the third umpire. DRS is pending now. We have 4 on the scorecard. अद्भुत जेवण दिस यशवंत मस्त छंदशील ग्राउंड लायक एक पिच तशीची लायक कंडिशन्स बॅटर्स आकरी बॉलर्स आक क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण सृष्टी जाला म्हणत GPL सीजन 10 नांतू. Definitely. At GSB Premier League 2026, this is 10th year of successful running of this tournament. This has been organized by Kodial Sports Association, Mangaluru, and the broadcast partners has been Youth of GSB Worldwide. तुम्ही live पळयता आसा, this is the 4th match which we are witnessing here. थर्ड अंपायर डिसिजन पेंडिंग असं पडोका एक्झॅक्टली कसं झालेलं ते म्हणू. Royal Belambettu batted first and they were able to score 59 for the loss of 6 wickets, playing that 7 overs. And chasing is now Rising Stars Mangalore. There is an appeal for a fall of wicket. It's a run out attempt that has been made by the bowler. DRS is pending and the review is yet to be reverted. Looks like some technical issue. They are looking at some more closely. युथ ऑफ GSB वर्ल्ड एक टूर्नामेंटाचे लाईव्ह टेलिकास्ट ನೇರ ಪ್ರಸಾರ करत सती सो मस्त जन व्यूवर्स युथ ऑफ GSB यूट्यूब चॅनल मुखांतर जाऊन एक टूर्नामेंट पळयत सती तंग तक्कडंके वापस एक पटी स्वागत करत कोडिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन आभरण दी ओरिजिनल या टूर्नामेंटाचे टायटल स्पॉन्सर कोर जाऊन सहकार दित सती सो GPL 2026 is brought to you by Kodia Sports Association. Broadcast partners are Youth of GSB Worldwide. खंडित जाऊन Youth of GSB Worldwide तशीची कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशन आम्ही एप्रिशिएट करूक जाता. लायक एक टूर्नामेंट 3 दिवसाचे क्रिकेट फेस्टिवल क्रिकेट कार्निवल एक मेगा क्रिकेट एक्स्ट्रावेगांजा शानभोगाचे कुद्रूचे एक ग्राउंड हेजमाडी मुलकी लगेचचे सुंदर जावन आशिल्ले ग्राउंडांतू हे टूर्नामेंट चलतर आसा. आज मध्ये थर्ड अंपायर डिसिजन इज आउट. Batsman Pranav Bhatt is run out. First wicket आघात हांगा Rising Stars Mangalore टीमाच्या backbone Pranav Bhatt departs. That's a good call from Royal Belambettu. They had all the doubt that they wanted that wicket while umpire could not get that decision as they was very close to the wicket and it was quick enough to get his attention. He had the support of DRS system where the DRS is given that the batsman is out. The last ball was bowled from Smart Bazaar end and it was Sandeep who bowled that the batter tried to hit a good shot towards the mid wicket and long on could not get the depth into the ball. The fielder there was quick enough to hold the ball and return it back to the bowler. The bowler did not make any mistakes. Sandeep is the bowler. 43 had all the time to collect the ball and lift the wicket. That ends up with 1 wicket down for Rising Star Mangaluru. सो रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेटूची फिल्डिंग ಬಗ್ಗೆ आम्ही खंडित एप्रिशिएट करू का. मस्त शार्प जावन आशिल्लो फिल्डर कितली क्विक आशिल्ली म्हणणारी बॅट्समॅनाक खंयचे चान्स दिनी क्रीस येवन पोवचेक कूडले बॉल थ्रो केले. थ्रो रिसीव्ड बाय संदीप नायक कलेक्ट जावन थ्रो रिसीव करून बॉल येवन स्टंप्साला गेला. तशें जावन प्रणव भट्ट आउट जाला. सुरवे विकेट पडता सांगा रायझिंग स्टार्स मंगळूराक हॉड एक बिग ब्लो म्हणून दिसता या संदर्भात यशवंत. I'm sure it would be disappointing for the batters team that any fall of wicket in the first over is something which they would not want to digest. That's a good ball towards the middle end off. This time the batter pulls it towards the mid wicket. A left-hand batsman Vikrant Prabhu did not spare that ball. Sorry, it was Prajwal Shenoy. He did not spare that ball. A left-hand batsman pulls it neatly towards the mid wicket. Gets boundary for his team.
लाख एक शॉट जाऊन आशिल्ल्या प्रज्वलाला सीधा येऊन स्लॉट येऊन पिक करून खंयचे फिल्डर तील जाग्यार मारला 1 बाउन्स जाऊन मिड विकेटा बॉल गेला 4 रन मेळतस व्हॅल्युएबल 4 रन्स ऍड जाऊन रायझिंग स्टार्स मंगळुराचे स्कोर जंप जाला 8 रनाक हॉड एक रेस्पॉन्सिबिलिटी असत टीमाच्या ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಜಾವನ ಆशिल्ल्या ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಬೈರಿ 1.2 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 8 ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ರವರು ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 4 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ರವರಿಂದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಖಾಂತರ. लायक एक शॉट अत्यद्भुत जेवण आशिल्ले शॉट आशिल्ले पॉवर प्लेचे एडवांटेज घेतले खंयचे फिल्डरातील जाग्याक मारला फिल्डराक चान्स नाशिल्ले पुरा फिल्डर्स स्पेक्टेटर्स आमगे पळयतना ती बॉल सीधा गेला ऑफ साइड देखून भायर 4 रनाक मैग्निफिशंट बाउंड्री. That was a full toss. The batter identified the gap and definitely got that hit towards no man's land. It was an interesting shot there. The ball was full toss, had enough space for the batter, could open the face and get that drive towards the covers. स्कोर जंप जाऊन बार जाला. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. संदीप नायकाल नेक्स्ट बॉल. प्रज्वल बॉल उबर मारला बॉल गेला सीधा वैरी बायरी आणि दूर सरनाक मॅक्सिमम. That's right behind the heads of the bowler and the fielder on the long on. A left-hand batsman is showing all his power in the middle. Let me remind you, it's not easy for the bowler to bowl when you have a combination of right and left in the middle, and that's where Sandeep and the fielders are trying it difficult. Sandeep should avoid full tosses or over-pitch balls. This was something which they should definitely avoid to get this match leaning towards them. टरिफिक फॉर्म असत प्रज्वल शೆಣೈ तागेले नॅचरल गेम खेळतस आक्रमणकारी बॅटिंग शैलींतू खेळचा स्टार्ट केला वापस एक पटी फुल टॉस जाऊन कन्वर्ट केला यासाठी ऑफ साइड वयर दखून लॉंग ऑफ वयर दखून बाहेर अनेक 6 रन 1 more 6 run. Sandeep attempting to bowl the faster ball. He's definitely getting it wrong. He's giving the ball full toss to the batsman, and the batsman is sure about the shot. He did not make any mistake. He was able to cover the ground here and definitely is getting an advantage. Let me remind you, the batter has an advantage of the wind at this over, and the bowler has to put his all muzzle into the ball to ensure that he get the pace and also drop the ball into the pitch without bowling it full toss. मस्त एक्सपेन्सिव्ह ओव्हर अंगा संदीप नायकाला 5 बॉलांत 16 रन सोडून दिलेला संदीप नायकानं कडे बॉल बाकीस सेकंड ओव्हराचे. प्रज्वलन वापस और एक शॉट मारचे प्रयत्न केला बॉल वर कॅच जाऊ चान्सेस की ना बॉल गेला लॉंग ऑन देखून बाहेरी थर्ड सिक्सर फ्रॉम द बॅट ऑफ प्रज्वल शೆಣೈ. With this, Prajwal moves to 28 playing 8 deliveries with 2 boundaries and 3 sixes. He has 28 of 30 on the scorecard in his individual record. That's a wonderful and interesting opening for their team. They should be happy. Rising Stars Mangaluru should be happy at this moment. They have a good opening that has been given by Prajwal Shెಣై, and he has Vikrant Prabhu on the non-striker and just standing there and watching beautiful and excellent shots from Prajwal. Getting them bigger shots. They are 30 for the loss of 1 wicket at the end of 2 overs. दोन्ही ओव्हर अंतू 30 रन नायला हांगा रायझिंग स्टार्स मंगळुराक या 30 रन अंतू प्रज्वल शೆಣೈನ 28 रन्स कॉन्ट्रीब्यूट केला. खंडीत जावन आम्ही श्लाघन करता तागेले एक धमाकेदार बॅटिंगाक प्रज्वल शೆಣೈला बॅटिंग कदर आमकां प्रोत्साहन मेळतस. खतरनाक बॅटिंग सुरवे देखून खतरनाक साबित जातस हांगा दनादन सिक्सर आयलस. प्रज्वल शೆಣೈला स्पेशल बॅटिंग परफॉर्मन्स सकड स्पेक्टेटर्स मस्त खुश दिसतस म्हणून म्हाका दिसतस. Definitely Suresh, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ಉತ್ತಮವಾದ ಫುಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಣೈ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ येतस तिन्ही ओव्हर घालूक ऑलराउंडर क्रिकेटर रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेटी तर्फेन श्रीनिवास पाय रेडी जातस. फुल टॉस बॉल फिनिश केला बॉल गेला सीधा फाईन लेग देखून बाहेरी सरनाक नो बॉल जावन आशिल्ले अबाव दी वेस्ट लेवल आशिल्ले इजी फुल टॉस असल एक फुल टॉस बॉल मेळ्ळ्यार विक्रांत प्रभू सोड दिना सीधा पेटयले सरनाक 1+6
7 runs added just moreover it's a free hit ball now. Vikrant Prabhu Nitlu, Prajwal Shanal, al game palal to me. Miguel Polakam on Marle Varashil, the shot. That's a dot ball. This is much required at this moment. Couple of more dot balls can bring little bit of expectations into this game. That's a nice touch and run. Single run for the batters team. Match number 4 चलता रहा रॉयल चैलेंजर्स बल्लंबेट्टु वर्सेस राइजिंग स्टार्स मैंगलोर खाली एक विकेट मात्र लॉस जल्ला राइजिंग स्टार्स मैंगलोर प्रज्वल शनायानी विक्रांत प्रभु डॉग जनु क्रीसार सती नेक्स्ट बॉल होगूर लेफ्ट हैंडेड बैटर प्रज्वलन ग्लाइड केले ऑफसाइड मारनु एक रन काणु स्ट्राइक रोटेट जल्ला so almost at the rising stars Mangalore at match antu like a comeback mella even though tangal first wicket run out per pallale Pranav Battale mukantara taji nantara Prajwal Shanay mast ek akramanakari batting takate so yapati attractive stroke cover drive generation but outfield ticket slow as tashan boundary vachana अज्जी मध्ये 2 रन धावन कंप्लीट केला हांगा लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट सो फिल्डरान येवन बॉल कलेक्ट करून थ्रो करचे फुडेची भरपूर टाइम आशिल्ले 2 रन मेळतस रायझिंग स्टार्स मंगलोराक. Srinivas Pai from Auburn. There's an appeal for LBW. Umpire goes on mode. That's a dot ball. That's a nice delivery. I think the bowler is putting all his wise now into the ball. And he is knowing that he cannot give any space towards the leg side where the wind is also supporting the batter. तिन्नी ओवर ಅಂತ ಮೆತ್ತಸತಿ ಇಕ್ರ ರನ್ ಐಲ ಯಾವ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಚಾರಿ ಬಾಲ್ ಅಂತೂ ಯಾಪಟಿ ಕಟ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗರ್ ಕೋನ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ ವತ್ತಸ ತೈ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ದವರ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಬಟ್ ತೈ ಯಶಲ್ ಫೀಲ್ಡರ್ आणि ಅವನು ಬಾಲ್ ಕಡೆ करची पुढेची एक रन धावून कंप्लीट केला सो प्रिव्हेंट करून जॉइन इथे सिंगल सो one more run got added to the tally of Rising Stars Mangalore which takes their full score to 42 on the scoreboard now. On the scoreboard. That means the equation is now Yashwant 24 balls are remaining and 17 more runs required. So I think it is a easy target for Rising Stars Mangalore. They have got all the wickets. I mean 9 wickets safe in their hands. I think they can win this match easily. What do you say? That looks like Suresh. In fact, Prajwal Shanay destroyed the dreams of winning this match for the opponents. But as luck favors the brave and the cricket is a game where anything can happen in the last over. Couple of good hat-tricks. We said 2 hat-tricks in the previous match. Probably why not in this match? If the bowlers can perform and put that performance of what we saw in the last match, we still have this match in their favor. Couple of hat-tricks, couple of dot balls. Good over is what is a must here now. Aditya Sakradande is left arm medium fist bowler. Mumbai player Aditya Sakradande. Like ball मस्त नेला राहील बॉल स्लॉट आयवन पडला करेक्ट परफेक्ट स्पॉट आरी वेल डिसिप्लिन लाइन म्हणून येत असले बॉलिंग जावकात रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेट्टुक अनेक विषय कसमळा रेशवंत विकेट काढचे मस्त अनिवार्य अस इथे म्हणजे डॉग जन बॅट्समॅन सेट जल्ली ती प्रज्वल शनाय 30 रन स्कोर करून केलतस विक्रांत प्रभून 5 बॉल 10 रन स्कोर केला सो विकेट पडली म्हणजे खंडित एक कमबॅक मिळता आरसीबी क Definitely. In fact, at the latest format and to me, impact players mona aikata sachi. The biggest stance of impact player is that the batter who comes earlier and plays quickly, couple of big shots within first ball is always considered as an impact player in IPL seasons. They are kept as a standby. Hunk impact player avashyakate sana. The opening batsman itself is playing as a fully impactful here. Is fully impactful. Prajwal Shanay on 31 with his 12 balls. Kandit Javnu like a terrific player moneta. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶನಾಯ್ ಎಸ್ಟಾನಿಶಿಂಗ್ ನಾಕರಿ ಕೆಳ್ತಸ್ 31 ರನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರನ್ಸ್ 44 ರನ್ ತಂಗೆಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಂತು 31 ರನ್ ತಾಣೆ ಕೊಡುಗೆ ಜವನ್ ದಿಲ್ಲಲಸ್ लायक एक फॉर्मर असा प्रज्वल शनाय विकेट काढचे मस्त इम्पॉर्टंट जावन अस आरसीबी का फुल टॉस जावन कन्वर्ट केला लोअर फुल टॉस फील्डिंग चिक्के चुकलो ताजी एडवांटेज घेतले सिंगल आशिल्ले डबल जावन कन्वर्ट केला
Definitely, Suresh Ang आणि एक राईट अँड लेफ्ट हँड बॅट्समॅन कॉम्बिनेशन केदना एक बॉलराक चॅलेंज जावन आसता आणि ताजे वटांगा वारे सहाय वरना बॉलर्सांक दिस would make a bit of difficult for the bowling team, but however it's a part of game. You have to play this the way it is as for you. Aditya Sakradante. Boss, this one to Prajwal, goes for a big one. It could be 6, and that's a mighty 6. Lovely, charming, and nice footwork by Prajwal Shadai. Down the track he goes, picked it up very nicely, and hits that one over the cow corner region for a maximum. What a terrific shot it was. That one just went like a razor bullet. There was nothing much that the batter had to do. The bowler had all his effort. It was slightly slower ball than the previous. And was also overpushed. This time the ball pitches outside the off stick. A good attempt for a New Yorker. There's an appeal for an edge there. Both the umpires are unmoved as of now. There is some quick discussion between the umpires. लाईक एक इम्प्रोव्हायझेशन दाखवलं आदित्य सकरदंडेनं. प्रिव्हियस बॉल तुम्ही पळायला सीधा बाहेर गेलेला, बट त्याच्या नंतर लाईक कम बॅक केला. सो आता दोग जण अंपायर मध्ये डिस्कशन जातस. विल हॅव टू वेट अँड सी वेदर द बॅटर इज आउट ऑर नॉट. एड्ज जल्ला के बॅट कसं पळोका एक हॉड एक शॉट आयले अजी मध्ये आउट पण पडला अंपायरानं. सो प्रज्वल शर्मा इज आउट. रायझिंग स्टार्स मँगलोर हॅव लॉस्ट देअर सेकंड विकेट. या विकेट अगत्य ते आशिल्ले. टीम रॉयल चॅलेंजर्स बल्लंबेಟ್ಟುಕ ब्रेक दिला. टीम रायझिंग स्टार रॉयल चॅलेंजर्स मंगळूराक बल्लंबेಟ್ಟುಕ लायक एक कम बॅक मेळतं संघ. सो आता आमगे परिस्थिती सिच्युएशन करंट सिच्युएशन पळेल म्हणजे 19 बॉल बाकी असं यशवंत 8 रन्स जाऊ का विन जाऊ चेक. I think couple of more wickets can put them into some more pressure actually. आणि एक 2 विकेट जो 3 विकेट पडका त्यांना they can just come up of little bit of hope to see if they can win. Rising Star are on the upper hand as of the moment. They need ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಡೈಲ ಧಮಾಕೆದಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೌಲರ್ ಆದಿತ್ಯ ಸಕ್ರದಂಡೆನ 39 रन कॉन्ट्रीब्यूट केला प्रज्वल शेडायनं. ओपनर बॅट्समॅन जाऊन आयलो. 4 ओव्हर ते राबून आशिल्लो. 15 बॉल फेस करून 4 6 आमकां पळोवचें मेळ्ळें. 2 बाउंड्री मारलेले ताणें. सो 39 रन ಕೊಡುಗೆ जावन दिवन आतां सेकंड विकेट लॉस्ट जाला रायझिंग स्टार्स मंगळूराक. सक्सेसफुल बॉलर आदित्य सकरदंडे कंटिन्यू करता. नवे बॅटराक गौतम पाय. Gautam Pai is clean bowled. What a fantastic perfect delivery that was. The batter Gautam Pai had no clue about that one whatsoever. The middle stump has been uprooted. One more wicket is down. Aditya Sakardande has been a cheeky bowler here. He is varying his bowling deliverables. The previous was quickie outside the off stick for a left hand batsman. This time it was straight into the stick actually. Score 52 for the loss of 3 wickets. Need 52 for the loss of 3 wickets. Need 7 more runs to equal and 8 more runs to win here. Vikrant Prabhu is the batter, standing there and watching the other end, getting their wickets dropped. He is on 10, playing 5 balls with 1-6. 4 ओव्हर कंप्लीट जाला रायझिंग स्टार्स मंगळूरच्यानं 52 रन्स स्कोर केला आणि 3 ओव्हर बाकी असताना इनिंग्स अंतू खाली 8 रन मात्र जाऊ का. सो म्हाका दिसता रायझिंग स्टार्स मंगळूर एक साइड पळेल म्हणून जाल्यार दे आर इन ए ड्रायव्हर सीट नाव. Definitely, एक over Sandesh, whatever Sandesh bowled, that was little bit very expensive for the team, and that's where probably that really got their match out of their hands. Aditya tried his best to get couple of wickets, but still it doesn't help at this point. They have more wickets which they can play. They have 7 more wickets. Rising Stars are on the way towards their winning this match unless some magic happens here in the field. Yes, Venkatesh Prabhu has been brought back into attack now. या तागेला सेकंड ओव्हर फर्स्ट ओव्हर अंतु खाली 4 रन मात्र सोडून दिलेला. तागेला टाइटी लाइन एंड लेंथर बॉलिंग कोरनु तान बॅट्समॅन बांधून गेलेला. आता पळवा नेक्स्ट ओव्हर अंतु वेंकटेश प्रभू कसं करता म्हणून रेडी जातस आभरण एंडा दुकुन लायकोनो कॅच जावचेक चान्स आशिल ते फिल्डरान ट्राय केले, but desperate effort at the end
जंप करून त्या कॅच जाऊन कन्वर्ट केलं करचे प्रयत्न केला बट द बॅट्समॅन प्लेड द शॉट ओव्हर द हेड ऑफ द फिल्डर आला मात्या वयर दोकून मारलेला मित्र खंयचे डॅमेज जायनी 1 रन मेळतस ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೆ ಜತ್ತಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ್ಲೆ 53. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ. ಆಭರಣ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕಿ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಓಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಈ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಇವರು 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಓಟಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರಿಂದ. ಖಂಡಿತ ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಣಿಯತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಭುಲ. यापटी लायक एक बॉल परफेक्ट लाइन एंड लेंथ मेंटेन करून बॉलिंग करतस. विकेट टू विकेट बॉलिंग असले बॉलिंग जावक आशिल्ले बट खंय की the match already slipped away from the hands of hands of the fielding team Royal Challengers बल्लंबेटू म्हणत. इथे म्हणारी संदीप नायक एक ओव्हर सगळे मॅचाच्या डायरेक्शन चेंज केला. Almost 26 runs is what he gave in his over. That's part of the game. Back again, Venkatesh Prabhu bowling from Abaran end. Will be bowling to Siddesh Ramani. Batsman driven towards the cover drive. This should be 2 runs minimum. Will they run for the third one? That's the fielder who's trying to stop the ball entering the boundary line. They get easily 3 runs. Siddesh gets his account open with 3 runs. लायक एक शॉट जावन आशिल्लो ऑफ साइड तो खंयचे फिल्डर नातील जाग्याक मारला. लॉंग चेस आशिल फिल्डर आगते बट फिल्डरान येवन बॉल कलेक्ट करून थ्रो करचे फुडेची हांगा 3 रन धांवन कंप्लीट केला. लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट, एग्रेसिव्ह रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणत असले रनिंग बिटवीन द विकेट जावका असले एक शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट अंतु. 56 is the score. 4 more is required in 14 balls. That's an attempt for a switch shot. Misses it completely. The keeper also misses it. The fielder from the fine leg gets to the ball, collects the ball and returns it back to the keeper. So reverse shot attempt केला but completely fail झालो. स्कोर जल्ले 57, 60 रनाचे टार्गेट आणि खाली 3 रन जावका होगूर ವಿಜಯದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಳ್ಳಾರಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೆ ಚೂಕಿ ಜಾಯ್ನ. Rightly said Suresh, they have leaped towards the win and they complete their innings with a boundary, getting them to play the next match. Rising Stars Mangaluru has conveniently won this match. They have been playing all well right from the beginning of this innings. The top scorer Prajwal Shanai, who just blasted 39 runs with powerful 4 sixers and 2 boundaries, playing just around 15 ball, is the trump card of the match. He's been the highlight. प्रज्वल शेणेल बॅटिंग परफॉर्मन्स आम्ही अप्रिशिएट करू का. अत्यद्भुत जावन आशिल्ल्या बॅटिंग परफॉर्मन्स तागेले एक दनादन सिक्सर या मॅच अंत आमकां पळोवचें मेळ्ळें. प्रज्वल शेणेल धमाकेदार बॅटिंग कदर ताजे निमित्त इजिली ए मॅच विन जाल्ला. रायझिंग स्टार्स बँगलोर 7 विकेटानं ए मॅच विन जाल्ले. 60 रन्साचे टार्गेट आशिल्ले, इजिली चेस केला रायझिंग स्टार्स बँगलोरनं खाली 3 विकेट मात्र कळवून गेलो. आणि थोड्या वेळानं येतस मॅच नंबर 5 विच विल बी बिटवीन वॉलंके फायटर्स मुलकी वर्सेस सुप्रीम गोल्डन गरुडास कोची. Well, it's time for us to announce the man of the match. The match just got concluded. It goes to none other than Prajwal Shanai for his astonishing knock of 39 runs. Brilliant batting performance we have seen. So, Yashwant, finally, at the end, what would you like to say about Prajwal Shanai's batting performance? You should look for this batter. He's the man who has been there for his team. He has protected his team. Probably a contender for man of the series, Manishit Makanga. Let's hope that their team keeps winning this match.
regularly and they reach the finals where they have a chance for man of the series. That's an interesting proposition. If you look at Prajwal's style of batting, he had two bat balls which were full tosses, which he converted completely to sixes, but all others were a beautiful drive with a good footwork being played there. That's an interesting observation that we should also note, that he is not only a batter who hits, he hits with a style. We have now Ajay Raj with his voice in Hindi. फुडली मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच रायझिंग स्टार्स मंगळुराच्या प्रज्वल शणै. प्रज्वलानं जलतीतली वगी स्टेजाला येऊ का म्हणून घेत असच. स्टेजाला येऊन तू गेले का मॅन ऑफ द मॅचाच्या प्रशस्ती स्वीकार कर का. कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मंगळूरू प्रस्तुत करता जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 जीपीएल धनची सीझन जत्ता असल्यारी शानबा कुदरंतु हे एक क्षेत्रांतू फर्स्ट सीझन धनची वर्षाची हुडगासाक विशेष जावन आशिल्ल्या एक क्रीडा पंद्याट हांगा आयोजन जत्तास. तशीची पवित्र जावन आशिल्ल्या शांभवी न्हय हे ग्राउंडा मागशी असा. परमपूज्य श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलाय जन्मशताब्दी आचरणेचे एक सुसंदर्भांत सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक ह्याची शांभवी नदी तट्यांतू दीक्ष दिलाय. तसले एक पवित्र जावन आशिल्ल्या शांभवी नदी तटा बरींतू कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशना तर्फे जेवचे जीपीएलाचे धनची वर्षाचे सीझन हे शानबा कुदरंतु प्रथम सीझन जत्ताशे आम सगळ्यांक एक व्हड एक भाग्य एक प्राऊड फिलिंग एक स्मरणीय जावन आशिल्ले विषय म्हणून खंडितय सांगू इच्छिता. तशे मुखारच्या मॅचाचे कमेंट्री दिवच्याक हिंदी कमेंट्रेटर श्रीयुत अजय राज हांका स्वागत करतास. हेलो चेक. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. गोपीबंजी जीपीएल 2026 सीजन 10 में सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं. इस वक्त वोलोलैंग के फाइटर्स मुल्की और सुप्रीम गोल्डन गरुडास के बीच में मुकाबला. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गोल्डन गरुडास का. दोनों तरह की श्रृंखला में अब तक की सारी टीमों ने पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेस करते हुए सभी टीमों ने मैच को जीता है. तो इस वक्त ये पहला ऐसा मुकाबला जिसमें सुप्रीम गोल्डन गरुडास ने वोलोलैंग के फाइटर्स के मुकाबले में हालांकि टॉस जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. आक्रमण पर दूर वाली छोर से गिरीश तैयार हो रहे हैं. पहली सफलता के बाद उनकी गेंद अच्छी गेंद और इसी के साथ चारों खाने चित कर गए. बल्लेबाज बिल्कुल बीट हो गए और गेंद स्तंभ से जाकर टकरा गए. इसी के साथ एक और विकेट का पतन.
कमाल की गेंद गिरीश, शुरुआत में ही योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अच्छी, कहना होगा कि अच्छी तकनीक के साथ, लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। लगातार 3 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं। पहली गेंद डॉट में, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर विकेट, और इस वक्त क्या वो हैट्रिक प्राप्त कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। गिरीश योजना बनाकर तैयार हो रहे हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। एक छोर पर श्रीकेश नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। नए बल्लेबाज इस वक्त त्रिविक्रम स्ट्राइक एंड पर, अंतर से गाल लेने के पश्चात स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तेज हवा की वजह से गिल्लियां और स्टंप्स उड़ रहे हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी तेज गति से हवा चल रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर हवा का रुख दिखाई पड़ता हुआ, और इस वजह से स्ट्राइक एंड जब भी इस छोर पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं कहना होगा गेंदबाजों के लिए भी अच्छा है। हालांकि उनको थोड़ी सी सहायता होती है, लाइन पर उनको ध्यान देना होता है, रफ्तार बिल्कुल अपने आप हवा की तेज गति से मिल जाता है। तो विकेटों को दुरुस्त करने के पश्चात अंपायर फिर से तैयार हो रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। ऑफ साइड पर अगर देखें, थर्ड मैन शॉट में रखा गया है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद है, कवर नजदीक रखा गया है और मिड ऑफ को थोड़ा सा डीप। ये स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड का दृश्य। 2 वाली छोर से गिरीश की एक और गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, इसको थोड़ा सा घूमकर उछलना चाहते थे। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज थोड़ा सा आगे निकल गए, लेकिन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज त्रिविक्रम ने उनको मना कर दिया, लौटने पर मजबूर किया और अपने आप को नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंचाकर श्रीकृष्ण ने सुरक्षित कर लिया। रन अभी नहीं बने हैं। 0 पर 2 विकेट, किसको क्रेडिट दें? कहना होगा कि होलालैंड के फाइटर्स मिल्की सशक्त गेंदबाजी का क्रम रखता है। उस छोर से आवरण बैनर छोर से उनकी ये गेंद, और फ्रंट फुट पर ड्राइव किया, लेंथ में अच्छी थी और मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर सीधे बल्ले से थ्रू द लाइन गेंद को ड्राइव कर दिया। रन चुराने का जो एक अवसर में हो सकता था उसको पूरा कर लिया और अपना खाता खोल लिया बल्लेबाज त्रिविक्रम ने, और कुल मिलाकर रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर गिरीश आक्रमण पर तैयार इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर। बेहतरीन गेंदबाजी का उदाहरण उन्होंने दिया। शुरुआत का ही पहला ओवर दबाव बनाकर रखा है। उस छोर से गेंद स्टंप्स के सीट पर थी, उस गेंद को देखा, थोड़ा सा पीछे हटे, बल्ले पर आने दिया, वह कलाई को धीरे से घुमाकर गेंद को ऑफ साइड की दिशा में स्क्वायर ऑफ द विकेट ढकेल दिया। जब तक फील्डर आ जाते, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर पहले ओवर की समाप्ति पर 2 रन और 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर चुके हैं। करंट रन रेट 2 का चलता हुआ। क्या कहीं टॉस जीतकर जो महत्वपूर्ण टॉस होता है उसको जीतने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, 2 विकेट गंवाना दबाव की स्थिति बनेगी, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने इस डिसीजन से निराश हुए होंगे कप्तान। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बल्लेबाजी का क्रम बचा हुआ है। मध्यम क्रम में सुप्रीम गोल्डन गिरवास के पास सभी और सशक्त बल्लेबाज हैं, तो निश्चित तौर पर बात बना ली जा सकती है। लेकिन थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, एक पार्टनरशिप, दोनों के बल्लेबाजों के बीच में आपस में तालमेल, तभी जाकर सम्मानजनक लक्ष्य को पाया जा सकता है। रतन कामत आक्रमण पर, एक छोर से स्मार्ट बाजार विज्ञापन छोर से उनके इस पहले ओवर की पहली गेंद, पारी का दूसरा ओवर, स्ट्राइक पर श्रीकेश है। उनके लिए गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट होगा, जोरदार अपील और अपील को पुरस्कार भी मिला। क्या कमाल की गेंद स्टंप्स के सीट पर थी, थोड़ा सा विकेटों को कवर किया, ऑन साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, बीट हो गए, गेंद जाकर पैरों से टकराई जो बिल्कुल स्टंप्स के सामने थी। इस अपील को अंपायर ने विश्वास के साथ उंगली को उठाते हुए संकेत किया कि बल्लेबाज आउट हो गए और तीसरे विकेट का पतन। और इस विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2026 सीजन 10। गिरीश के पश्चात रतन, एक ऐसे रतन हैं, डायमंड हैं
जो निश्चित तौर पर अपनी टीम को निखारना चाहते हैं, निखार कर ले आ रहे हैं। शानदार 3 विकेट अब तक प्राप्त कर लिए गए। गिरीश ने पहले ओवर में 2 विकेट चटका लिए, प्राप्त कर लिए। इस वक्त रतन अपने इस कोटे के पहले ओवर में एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लेग बिफोर द विकेट के रूप में प्राप्त कर लिया। यानी कि इस वक्त बहुत सतर्कता के साथ, योजनाबद्ध तरीके से, चतुराई के साथ गेंदबाजी की जा रही है, दबाव को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। दाहिने से विकेट रतन की गेंद इस वक्त फिर से बाहर निकली और अंपायर दीक्षित जी ने फिर से अपने अंदाज में पंछी के उड़ने का संकेत किया, यानी कि हक की गेंद बाहर जा चुकी है, उस गेंद को अतिरिक्त करार देना होगा और वाइड के इस रन के साथ रन बढ़कर 3 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। रतन स्मार्ट बाजार बैनर छोर से दाहिने से विकेट शॉट ऑफ लेंथ थे, हवा में उछाल दिया, 3 फील्डर गेंद के नीचे आ गए, एक ने हथेलियों में कैद किया और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन। और इस विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2026 सीजन 10। सुप्रीम गोल्डन गरुडास नाम निश्चित तौर पर सही है, परिस्थिति बदल जाती है, समय बदलता है और ऐसे में इस वक्त समय निश्चित तौर पर वॉलन के फाइटर्स के साथ चलता हुआ क्या कमाल की गेंदबाजी, 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं और ऐसे में कहना होगा सुप्रीम गोल्डन गरुडास के आने वाले बल्लेबाजों को इस वक्त सोचना होगा कि उनको क्या करना होगा। थैंक यू सो मच। उनको क्या करना होगा, किस योजना के साथ, किस रणनीति के साथ उनको बल्लेबाजी करनी होगी, ये उनको इस वक्त निश्चित तौर पर बुनना होगा, योजना बनानी होगी, क्योंकि 3 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। इस छोर पर रतन जो कि अपनी टीम के एक अनमोल रतन है, 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, मात्र 1 रन उन्होंने खर्च किया है। बड़े मंच पर इस वक्त नरेश शनाई जी दिखाई पड़ रहे हैं, वो अपने मित्र के साथ बहुत ही गहन अध्ययन में, चर्चा में लगे हुए हैं और उनका टोपी बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता हुआ, जो कि इस क्रिकेट श्रृंखला के करता धरता है। इस वक्त ये गेंद ऑफ लेग स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा दिशा परिवर्तन होकर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला और उसको थोड़ा टो पर उछलकर ग्लांस के अंदाज में खेलना चाहते थे, चूक गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और फिर से रतन को सौंप दिया है। अंजन स्ट्राइक एंड पर उनके लगे लेग स्टंप के बाहर, फिर से अंपायर कह रहे हैं कि वाइड हो सकता है, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में रन आउट का मौका बनेगा। बल्लेबाज खुद अपने भारी कदमों को डगआउट की दिशा में ले जा रहे हैं और अंपायर दीक्षित जी इस वक्त बहुत धीरे धीरे तीसरे अंपायर का संकेत कर रहे हैं। बल्लेबाज को उन्होंने रोका है, कहीं ना कहीं कुछ शुभ शंका या फिर आशंका हो सकती है, जिसकी वजह से वो तीसरे अंपायर का सहारा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिल्कुल फेयर डिसीजन हो, कोई पक्षपात ना हो। इस वजह से तीसरे अंपायर इस वक्त एक्शन में आ जाएंगे और फिर जैसा मैं कहता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ और रन्स को मिलाकर 3-4 विकेटों के नुकसान पर। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम गोल्डन गरुडास के कप्तान ने शायद सोचा भी नहीं होगा, सपने में नहीं सोचा होगा कि इन परिस्थितियों में इस तरह से विकेट गिरेंगे। जब टॉस महत्वपूर्ण उन्होंने जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बात नहीं बन रही है। बल्लेबाज बिल्कुल सस्ते में निपटते जा रहे हैं और उनका बल्लेबाजी का क्रम बिल्कुल ढीला पड़ता हुआ विकेट्स निरंतर अंतरालों में गिरते जा रहे हैं। मात्र 3 के कुल योग पर चौथा विकेट जो कि गिर चुका है और 5वां विकेट गिरने की कगार पर है। करंट रन रेट 2 का चलता हुआ तीसरे अंपायर इस वक्त कैप्चर किए गए दृश्य को देखकर निर्णय निकालने में लगे हुए हैं। ऑन फील्ड अंपायर इस वक्त इंतजार में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो सारे फील्डरों की निगाहें, बल्लेबाज की निगाहें वहां पर जमी हुई हैं कि आखिर होगा क्या। दोनों बल्लेबाज में हालांकि जो नॉन स्ट्राइक एंड पर थे वो खुद चाहते थे कि वो जाए, निकल जाए, निराश हो चुके थे, लेकिन अंपायर दीक्षित जी ने उनको रोका क्योंकि अभी निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी और उसके पश्चात
निकल जाए तो बात बनेगी, लेकिन इस वक्त क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अंपायर ने इस वक्त रोकने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ नजदीकी मामला हो सकता है। समय का काटा जो कि निकलते ही जा रहा है, दोपहर का प्रहर ढलकर इस वक्त शाम की ओर बढ़ता हुआ, शाम के 4:05 हो चुके हैं और सूरज अपने तेज रोशनी को मध्यम करता हुआ अभी भी पूर्वैया तेज बह रही है। चारों ओर घने दूर दूर लगे हुए लदे हुए पेड़ जो कि गवाह हो रहे हैं कि इस खूबसूरत मैदान पर शानबाग कुदरू आइलैंड के हिजवाड़ी मुल्की के इस मैदान पर जीपीएल 2026 सीजन 10 की रचना की गई थी। एक नया इतिहास इस मैदान पर रचा गया। यह मैदान ही एक इतिहास कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैदान था ही नहीं। इस क्षेत्र को बहुत मेहनत मशक्कत करने के पश्चात मैदान के रूप में परिवर्तित किया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, इसीलिए आयोजनकर्ताओं को, कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैंगलोर के आयोजनकर्ताओं को हैट्स ऑफ कहते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टीम इतनी स्ट्रांग है। जब देखते हैं कि 3 आगे से नेतृत्व करते हैं और पीछे लगभग जिस तरह से अक्षोणी सेना कहते हैं, उस अंदाज में बहुत सारे आयोजनकर्ता साथ में मिलकर यूनिटी के साथ काम करते हैं। गहन चर्चा का विषय अभी भी नरेश जी कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाला जाएगा। इससे पहले अंपायर इस वक्त इस निष्कर्ष को निकालें तो मुझे लगता है कि खेल आगे बढ़ेगा। कैमरामैन टेक्नीशियंस अपने काम को बहुत शानदार तरीके से अंजाम दे रहे हैं और वाहनों का आना जाना दिखाई पड़ता हुआ। जीपीएल 2026 सीजन 10 की रचना मात्र क्रिकेट नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में एंटरटेनमेंट का अलग अलग साधन आपके लिए उपलब्ध है। जीएसपी समाज के उन सभी बंधु भगिनियों के लिए, पूरे परिवार के लिए, और कराओके म्यूजिक क्लब जहां पर आपको बीच बीच में धुन सुनाई पड़ती है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे जीएसपी समाज के लिए। आइए इस वक्त मैदान की ओर बढ़ते हैं। थक हार कर सारे फील्डर्स इस वक्त जलपान करने में लगे हुए हैं, क्योंकि प्रतीक्षा कुछ ज्यादा हो गई है। दोनों बल्लेबाज आपस में गुटरगू कर रहे हैं। अंपायर अभी आश्वस्त नहीं हुए हैं, पुष्टि करने में लगे हुए हैं कि इस नतीजे को किसके फेवर में दें। अंजन 0 पर हैं, जबकि त्रिविक्रम 1 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे। 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और इस वक्त नतीजा शायद निकल आए जल्दी, और इसी के साथ बल्लेबाज शायद आउट होगा। एक और विकेट का पतन और इस विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2026 सीजन 10। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम गोल्डन जो कि इस वक्त 3 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, नए बल्लेबाज का आगमन। प्रोजेक्टेड स्कोर को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर आश्चर्य होगा आपको, क्योंकि मात्र 13 बता रहा है। यानी कि जिस तरह से विकेट गिरे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज परास्त होते जा रहे हैं, उनका हौसला टूट चुका है। लेकिन अभी हौसला रखना होगा, विश्वास रखना होगा, क्योंकि खेल कभी भी बदल सकता है, क्योंकि आखिर ये क्रिकेट का खेल है जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। रतन आक्रमण पर फिर से इस छोर से तैयार, स्मार्ट बाजार एम से उनकी गेंद अंजन के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को चलाया, बल्लेबाज ने मिस कर गए। थोड़ा सा ब्लाइंड शॉट था, गेंद को जज नहीं कर पाए और आड़े बल्ले से गेंद को थोड़ा सा तिरछा घुमाकर खेलने के प्रयास में बीट हो गए। इस वक्त मैं समझता हूं कि एक्सपर्ट्स अगर राय दें, दोनों बल्लेबाजों को थोड़ा सा संयम की जरूरत है, क्योंकि 4 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। बीचों से गेंद लेग स्टंप के बाहर थे, तेज गेंद को करने के प्रयास में गेंद दिशा से भटक गई और अंपायर दीक्षित जी ने फिर से हाथों से संकेत किया कि वाइड है, एक अतिरिक्त रन और मिल जाएंगे। कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया है। Nine runs over the wicket, एक और गेंद।
शॉट ऑफ लेंथ थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और गेंद को थोड़ा सा बल्ले पर सीधे बल्ले से पुश बार कर दिया। मिड ऑफ के फील्डर जल्दी जल्दी गेंद के ऊपर आकर झपट पड़े, लेकिन इसके बीच में नाक के नीचे से एक रन को तेज कदमों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और कुल रन संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया। वन मोर बॉल टू गो अंपायर, काइंडली नोट, वन मोर बॉल टू गो, एक गेंद शेष बचा हुआ। छह रन कुल मिलाकर 5 विकेटों के नुकसान पर, 6 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक गेंद इस ओवर में अभी शेष बचा हुआ है। रतन 2 विकेट्स 3 रन खर्च करते हुए अभी एक गेंद इस ओवर में शेष बचा हुआ है। इस ओवर के आखिरी गेंद दाहिने हाथ से विकेट बैकफुट पर गए, गेंद को थोड़ा सा पंच के अंदाज में खेलना चाहते थे, कवर की दिशा में शॉट में गई, फील्डर गेंद को संभाल लिया। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका, तो दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन 5 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हैं कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। वेलकम बैक जीपीएल 2026 सीजन 10 में वड़ोलंकी फाइटर्स मुल्की के कप्तान, उनके टीममेट्स इस वक्त बहुत खुश हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, उनकी शारीरिक भाषा बता रही है कि वो अच्छा कर चुके हैं और अच्छा बरकरार रखने का उनका प्रयास है। और इस वक्त इस दबाव की स्थिति को ज्यादा बढ़ाने के लिए आक्रमण पर गिरीश फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। पहले ओवर में 2 शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस छोर से आभरण बैनर छोर से उनकी गेंद ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास था, गेंद को पूरी तरह से जज तो नहीं कर पाए। 1 रन शायद लेग बाय के रूप में मिल जाएंगे, अंपायर ने संकेत किया। 1 रन के 7 रन का कुल रन संख्या में बढ़ोतरी हुई है। रन बढ़कर इस वक्त 7 पर 5 विकेटों के नुकसान पर, 7 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। रामनाथ स्ट्राइक एंड पर त्रिविक्रम 3 की व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहा है। आवरण छोर से गिरीश की इस ओवर की एक और गेंद शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया आउटसाइड की दिशा में, हवा के रास्ते स्क्वायर लेग में फील्डर ने हथेलियों को झोली बनाया। शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन और इस विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2026 सीजन 10। तो रिप्ले में देखा जा सकता है ऑफ स्टंप के सीट पर थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टप्पा खाकर जैसे ही आई थोड़ा सा शफल किया बल्लेबाज ने, अपने बैकफुट को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर निकाला। हॉरिजॉन्टल बल्ले से गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल के अंदाज में खेलना चाहते थे और सीधे आसान सा कैच फील्ड डीप में प्राप्त हुआ। इस वक्त दर्शकों की तादाद देखने को मिल रही है, कैमरामैन हर उस दृश्य को कैप्चर कर रहा है। सात रन 6 विकेटों के नुकसान पर एक और विकेट का पतन और गिरीश आज खुश तो बहुत होंगे क्योंकि 3 शानदार विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, 3 मात्र रन खर्च किए हैं। निश्चित तौर पर बहुत ही किफायती और महत्वपूर्ण गेंदबाजी उनकी चल रही है और ऐसे में नए बल्लेबाज का आगमन राकेश कुमार स्ट्राइक एंड पर, प्रोजेक्टेड स्कोर 20 का बताता हुआ और रन्स मात्र 7 पर हैं। तेज हवा चलती हुई ऐसे में गेंदबाज को इसका लाभ हो रहा है। गिरीश की एक और गेंद उस छोर से फ्रंट फुट पर गेंद को डिफेंस किया, स्टंप्स के सीट पर आती हुई गेंद बल्ले और पैर को साथ में ले आए, अच्छी तकनीक के साथ फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक गेंद को खेलते हुए रक्षात्मक तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर लिया और इस वक्त थोड़ा सा देख रहे हैं, जज कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से खेल का टेंपो चल रहा है, विकेट्स निरंतर अंतरालों में गिरते जा रहे हैं। अंतिम क्षणों में गेंद को खेलने का प्रयास, बल्ले का शॉट सिरा दिया था, बात नहीं बनी। फील्डर शॉट थर्ड मैन में स्लिप कॉर्डन में मौजूद थे, उन्होंने गेंद को संभाल लिया। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं किया, रन अभी भी 7 पर है। तो मानो
रनों पर ब्रेक लगाया हुआ हो और गेंदबाजों का विश्वास का पारा चढ़ चुका है। हर एक गेंद को वो बहुत सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। गिरीश दाहिने हाथ से विकेट, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया बल्लेबाज ने गेंद को, कोई रुचि नहीं दिखाई गेंद को खेलने में और कहीं ना कहीं मन में सोच रहे थे कि इस गेंद को शायद अंपायर अतिरिक्त करा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रन अभी भी 7 पर स्थिर 6 विकेटों के नुकसान पर, जबकि गिरीश दूसरे ओवर की आखिरी गेंद को लेकर तैयार हुआ है। दाहिने हाथ से उधर गेंद को ब्लॉक होल में करने का प्रयास, इस गेंद को दबाकर पुश भर कर दिया। ओवर समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 7 रन 6 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हैं जीपीएल 2026 सीजन 10। राकेश कुमार और त्रिविक्रम इस वक्त आपस में बातचीत कर चुके हैं। मुझे लगता है कि दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त सोचना होगा, आपस में विचार विमर्श तो निश्चित तौर पर वो कर चुके हैं, क्योंकि मात्र 4 ओवर शेष बचे हुए हैं। 4 ओवर्स में अगर वो अपनी टीम को सम्मानजनक लक्ष्य देना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गेम प्लान होना चाहिए और मानसिक तौर पर क्या योजना आपको बनानी होगी। सकारात्मक सोच के साथ खेल को आगे बढ़ाना होगा। जो बीत गया वो भूतकाल था। 6 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं, उसके बारे में उनको भूलना होगा। इस वक्त नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बचे हुए 4 ओवर्स में अगर 24 रन भी बनते हैं तो निश्चित तौर पर 30 के आसपास, 30 के ऊपर रन बनते हैं, लेकिन ये काफी नहीं होगा। तो ऐसे में सिंगल्स के साथ बीच बीच में चौके और छक्कों की बरसात होगी तो सम्मानजनक लक्ष्य निश्चित तौर से पाया जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा होने देंगे गेंदबाज वोडालैंड के फाइटर्स के। इस ओर से नया ताजा वार हवा के रास्ते गेंद को खेल दिया, क्या बात है, और गेंद गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जीपीएल 2026 सीजन 10 का जबरदस्त छक्का और इस छक्के के साथ ही रन्स बढ़कर 13 पर पहुंच चुका है। त्रिविक्रम ने शायद मेरी बात सुन ली, योजना बना ली, मन में अपने विश्वास को झंझोड़ कर एकत्रित किया और खूबसूरती के साथ थोड़ा सा ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था। बिल्कुल अच्छा प्रेडिक्शन था, अनुमान सही था कि इनकी लाइन का, और गेंद को उछाल दिया। एक और स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस वक्त गेंद में काफी परिवर्तन था, लेंथ में ज्यादा थी ये गेंद, इसको खेलने के प्रयास में बीट हो गए और विकेट कीपर, हालांकि फील्डर गेंद को संभाल चुके हैं। रन्स नहीं मिलेंगे, रन्स बढ़कर 13 पर अभी भी वहीं पर स्थिर 6 विकेटों के नुकसान पर। त्रिविक्रम 9 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया। प्रदीप नायक पिछले 4 ओवर्स 3 ओवर्स के मुकाबले में थोड़े से खर्चीले साबित हो रहे हैं। उनकी एक और गेंद अच्छी गेंद थी, वुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात तेजी के साथ थोड़ा सा हल्का सा डिविएशन था, उसको ऑन साइड पर आड़े बल्ले से घुमाने के प्रयास में त्रिविक्रम बीट होगा। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। 3.71 का औसत इस वक्त चल रहा है। प्रदीप कुमार 2 गेंदें फेंक चुके हैं और 6 रन्स अब तक वो कर चुके हैं। 4 गेंदों को किस योजना के साथ वो गेंद करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया गया था। वो विकेट गेंद फुल टॉस से गेंद को हवा के रास्ते उछाला, लेकिन स्टोक के पीछे पावर कम पड़ गया और फील्डर गेंद को काउ कॉर्नर की दिशा में कैच कर गए। एक और महत्वपूर्ण विकेट और इसी के साथ 7वें विकेट का पतन, और इस विकेट के प्रायोजक थे जीपीएल 2026 सीजन 10। वेलकम बैक। जीपीएल 2026 सीजन 10 में महत्वपूर्ण विकेट निरंतर गिरते गए। 13 का नंबर, जो कि आमतौर पर कुछ लोग
जो अंधविश्वास में कहें या कुछ अपने विश्वास में कहें, 13 को अनलकी कहते हैं, अशुभ कहते हैं। 13 के कुल योग पर 7 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। आज निश्चित तौर पर सुप्रीम गोल्डन गरुड़ास के कप्तान अपने निर्णय पर पछता रहे होंगे। टॉस जीतकर उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला आखिर क्यों किया? अगर क्षेत्ररक्षण किया होता, गेंदबाजी की होती तो बात कुछ और होती। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए वाली क्या बात बनेगी, ये सोचने वाली बात है। एक छोर पर गेंद को लेकर प्रदीप को नायक तैयार और सामने वाले छोर पर सृजित नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दाहिने हाथ से विकेट, ये गेंद और पुल करने का प्रयास था, मिस कर गए। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमी रह गई, उछाल ज्यादा नहीं था और बिल्कुल बेखौफ गेंद को पुल करने के प्रयास में बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया और वापस लौटा दिया गेंदबाज को। 13 रन 7 विकेटों के नुकसान पर प्रदीप की एक और गेंद फिर से पुल किया। इस वक्त पिछले गेंद के मुकाबले में थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, उसको आड़े बल्ले से ऑन द पुल कर दिया जब तक फील्डर आ जाते। 1 रन को पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 7 विकेटों के नुकसान पर, जबकि 3 ओवर शेष बचे हैं और 3 ओवर्स में सुप्रीम गोल्डन गरुड़ास क्या कुछ चमत्कार कर सकता है। दोनों बल्लेबाजों का हौसला बढ़ाते हैं। मैच में रोमांच हो, जीते वही जो डिजर्व करता है, इसलिए कमेंटेटर्स हमेशा प्रयास करते हैं कि दोनों का हौसला बढ़ाए। आइए विवरण में बदलाव करते हैं। फिर से मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे कमेंटेटर को जो शुरुआत के जीपीएल के पहले सीजन में और दूसरे सीजन में थोड़े कतरा रहे थे कोंकणी में कमेंट्री सुनाने के लिए। हालांकि बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा किया है। धीरे धीरे हालांकि मैं उनको पुश करता रहा। आज जिस तरह से, जिस अंदाज में, जिस विश्वास के साथ वो वाणी को आपके सामने पेश करते हैं, वो बहुत ही शानदार सुनाई पड़ता है। फेसबुक में कुछ वीडियोस भी उनके देखने को मिलते हैं। चेहरे का हाव भाव, एक्सप्रेशन बिल्कुल बेखौफ और बिल्कुल बेझिझक आत्मविश्वास से भरे हुए गोपी भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू सो मच। तुमगेल्या प्रोत्साहदायक उत्तराक हार्दिक धन्यवाद अजय सर. तशीच मॅचा विषयी का मुंजलारी स्कोर तुम्ही पळयत 15 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. वळलंके फायटर्स मुल्की एक लायक एक सिच्युएशन ಅಂತ म्हणून सांगू येत या संदर्भात भारी चंदेक बॅटिंग ते सनाम अटॅक एक कन्फ्युजन झालं फील्डर आका 1 रन धावून कंप्लीट केला. 2 रन धावता पळक ना 2 रन धावली मोंजला अनेक विकेट खंडित कळून घेऊचे म्हणाले एक रिस्क आशिल्ले तस देखून 1 रन नंतरची संतुष्ट जावक जाता. 7 ओव्हराचे पंद्याट 7 ओव्हर पंद्याट एद्दोळू तुम्ही सुरवे 4 मॅचेस पळयलारी ह्या एक लो स्कोरिंग मॅच हाका कारण वळलंके फायटर्स मुल्की तांगेले एक जबरदस्त बॉलिंग म्हणून सांगलारी खंडित चौकी जयेशना तशीची गोल्डन गरुडास कोची हंगेला एक बॅटिंग अंतू वैफल्य उद्दवून दिसता. तस देखून वळलंके फायटर्स मुल्की ह्या एक सिच्युएशन 4.3 ओव्हर्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स लायक एक हंतान तो असं म्हणून खंडित सांगू येता. वळलंके फायटर्स मुल्की तशीची लायक बॉलिंग परफॉर्मन्स दिताच लायक फील्डिंग परफॉर्मन्स दिताच बॅट्समॅन आला चूक त्यांनी कंचे अवकाश दिता नाशी एक लायक प्रमुख जावन आशिल्ल्या सुरवेची 7 विकेट कळून घेवच्याक वळलंके फायटर्स मुल्की खंडित यशस्वी जावन शान भाकुद्रू हांग जावचे प्रथम सीझनात लॉफ्ट केला पळक अनेक विकेट पडतकी म्हणून सांगून मस्त कष्ट आशिल्ले भारी लायक एक प्रयत्न केले ते फिल्डरान जलारी वार निमित्त जर्जी कोड तितली सुलभ ना अगेन्स्ट विंड शॉट मारलेल्या बॅट्समॅनान तस देखून जर्जी कोडचे की स्वल्प कष्ट जाला प्रयत्न खंडित लायक आशिल फिल्डर आला मस्त कष्ट आशिल कॅच धरलेला म्हणजे एक अद्भुत जावन आशिल कॅच तुमगेले इतराक पळोवच्याक मेळत आशिल्ले. 18 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स गोल्डन गरुडास भारी चंदेक शॉट ते फिल्डर आला आता बॉल वत्ताची 1 रन मात्र मेळता खंचे रन 2 रन ते अवकाश ना. हजोटूची 5 ओव्हर मुक्ताय जाला 5 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 19 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. केवल 4 रन एवरेज आरी गोल्डन गरुडास
कोश्रीपुरम तुमगेला इधर खेळता असं मस्त लोएस्ट स्कोर म्हणून सांगू येतं इथं मला रे तवलची मॅच तुम्ही पळेलार एव्हरेज लगी लगी 10 इल म्हणून जलार मात्र एक लाईक एक चेजेबल टोटल म्हणून सांगू येतं जलारी ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸ ಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋರುಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಸಲ ಸಂಗು ಜಾಯಿನ ಮೊಣೆ येतं ಅನೇಕೆ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು ಏಕೇಕ ಟೀಮ್ ಮಾಕ 3 मॅच असता हाजे नंतर अनेक 2 मॅच अवकाश असा वळलंके फायटर्स मुलकी हंगेल विषयी सांगू का म्हणून जलारी तुमको तसं प्रशस्ती घेतील तसं एक टीम सह्याद्री कॉलेज ಅಂತೂ ಮಂಗಳೂರು येऊन त्यांनी प्रशस्ती मारलावंतना ह्या ತಂಗೆಲೆ होम ग्राउंड शानबा कुद्रू वळलंके मुलकीचे होम ग्राउंड हंगा आम्ही सोडताच वेळा म्हणाल प्रश्न ತಂಗೆला ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ यस पुळಕ वळलंके फायटर्स मुलकी नावा तकीत फाईट करता असची उग्र नरसिंह अवतार मणकेची उग्र जाऊन त्यांनी एदोळू खेळलं असं प्रमुख जाऊन असेल 7 विकेट त्यांनी कळून घेतली असं लाईक एक 2 फिल्डर मध्ये तुला न्यापटी एक बाउंड्री मेलता बाउंड्री ಮೂಲಕ एक ಸ್ವಲ್ಪ मर्यादस्त टोटल कोरिया म्हणून गोष्टीपुरा मतांनी राखता असची 20 ದಂಟೋಲ स्कोर 23 येऊन पोला तशी वळलंके फायटर्स मुलकीच्या प्रति एक टूर्नामेंट तुम्ही बोलू नशापुरा सह्याद्री जवाब हे कोडियाला अंतू जलाले टूर्नामेंट समेत तंगेले का अर्ध गावचे एक फायनल येऊन पविल की म्हणले का तसं एक हॉड फॅन फॉलोईंग वळलंके फायटर्स मुलकी तंका खंडित जाऊन असं तशा म्हणून या फर्स्ट मॅच इथलेची अनेक लीग अंत जाऊचा असं क्वार्टर फायनल सेमीफायनल मस्त कडपंदी जाऊचा असं वळलंके फायटर्स मुलकी सपोर्टर्स खंडित या संदर्भात मॅच वळारी उपस्थित असतात म्हणून खंडित लेखता वापस 2 फिल्डरामध्ये तुला गेलं तसं बॉल बाउंड्री साधारण मटाक एक मर्यादस्त एक अंक घेऊ का विकेट गेला रोडना एक मॅच पळत शासू का म्हणून प्रयत्न गोष्टीपुरमाचे खंडित जाऊन असं गोष्टीपुरम कोच्चीचे एक टीम आहे कोच्ची तुलान जलारी प्रति वर्ष सह्याद्री ग्राउंड तुलाना म्हळ्यार जीपीएल आची पुढली सीझन तुलाना पुढ तुलाना एक जीपीएल ಒಟ್ಟು आमगेले एक टीम असुका केरळ तुलाना एक टीम असुका म्हळाल कतिर जाऊन गोष्टीपुरमा तुलाना पुढ तुलाना त्यांनी टीम दिता इली तशीची शान बकुद्रून जावचे हे दांची सीझन जलारी त्यांनी तंगेल टीम हंग दिलेलं असं आयोजकाल तर्फे तुमका धन्यवाद समर्पण करता असची वापस लॉफ्ट करू प्रयत्न जलारी बैट का बॉल कनेक्ट जायनी 1 रन मात्र मिळता चंद एक फील्डिंग ते फील्डर आलाय भारी चंद एक फील्डिंग 5 पॉइंट संची ओव्हर चालतीन तसं स्कोर बोर्ड कमेंट्री बॉक्स लगीच तुमका एलईडी डिस्प्ले तू स्कोर बोर्ड दिसता आणि संजवाळा काळोख जता जताची ग्राउंड सुत्तू बाउंड्री लाईन बाहेर असेल एलईडी डिस्प्ले पुरे ऑन जता तदनंतर थई तुमका स्कोर कार्ड लाईव्ह हे पुरे बाउंड्री लाईन बाहेर जलारी तुमका पळोवच्याक अवकाश असा वापस लॉफ्ट केला जलारी 2 फिल्डर मध्ये तुला बॉल बाउंड्री लाईन वताचा बॉल बाउंड्री लाईन दांडून 4 रन मिळता अत्यगती जाऊन शिलाय अत्यमूल्य जाऊन शिलाय 4 रन यापटी गोष्टीपुरम हंका मिळतास वळलंके फायटर्स मुलकी आणि गोष्टीपुरम गोल्डन गौडा सांगेल मध्ये तू आईच्या दिवसाचे पंचापंजी आठ जता असं सकड वीक्षकांक हे एक पंद्याट सकान तुलाना त्यांनी पळिता असची त्या प्रकार लायक एक पंद्याट पळोका लायक एक मॅच पळोका म्हणून प्रति एक वीक्षकांगा येऊन असताच त्या प्रकार गोष्टीपुरम हंगा उगुर स्कोर मुखार वर्तास आता 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स 7 प्रमुख विकेट कडून घेतला आणि अधिकृत जाऊन बॉलाचा मी सांगू का म्हणून जला आणि एक 7 बॉलवरला या ओव्हरच्या अखेरी बॉल असं भारीचं ते डायरेक्ट पाहिजे पडत असेल यॉर्कलेनचा बॉल अंपायर पुरस्कार दिन यापटी बनविका दोन्ही रन दौता दोन्ही रन धावली बोंजलारी खंडित अनेक विकेट कळून घेता असेल तुम्ही हा जोटूची ओव्हर मुक्ताय झालेलं असं 6 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स तशीच कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मंगळूरू प्रस्तुत करता जीएसबी प्रीमियर लीग 2024 इसवीचे 55 हंतू जत्ता असलारी हाजनंतर इनिंग्स ब्रेक आवडणारे आम्ही तुमका जीएसबी बुल्स कोडियाल बैलनी वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्स दोन्ही टीमाचे कॅप्टन आतंका इनिंग्स ब्रेक अंत इमिडिएटली तुम्ही स्टेजला येऊ का टॉस सहकार कोर का रजिस्ट्रेशन कोर का म्हणून निमून घेता सची तशीची 7 मॅच आभरण डायमंड्स आणि मणिपाल युनायटेड टायगर्स अंगेल मध्ये जाऊच्या असं 8 मॅच टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूर मस्त वर्ष पुढे आहेत आणि टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूर म्हणून नाव दिलेलं आहे यावर सोपास
ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪುತ್ತೂರ ನಾವಾರಿ ತನ್नी ಟೀम दिलेलं असं तंगेला यद्रा कंची टीम मळारी उडुपी ब्लास्टर्स आयच दिवसाच्या 8 मॅच तशी तदनंतर सेकंड राउंड स्टार्ट जाता सेकंड राउंड मळारी फर्स्ट राउंडची प्रति टीमाक 3 मॅचेस देखून दोन्ही मॅच प्रारंभ जाता कोडियाल सुपर किंग्स आणि वळलंके फायटर्स मुलकी मध्ये अंतू त्या टीमाची दोन्ही मॅच रात्री 8:30 गंटनंतर 9वा मॅच तशीची लास्ट ओव्हर वळलंके फायटर्स तुलना घालू का अभिजित भारी संधिक बार बॅटिंग रिव्हर्स मान प्रयत्न केला कंचे फिल्डर ना असेल ते बॉल बाउंड्रीला बाहेर होत असं 4 रन मिळतात यापटी अभिजिताला फर्स्ट बॉल वळलंके फायटर्स मुलकी जलारी लायके घंटा तसं म्हणून सांगायचं तवलच्या तुम्ही एक सुरवे 4 मॅच पडेल म्हणून जलारी लगी 60 लाईला पुराई टीमा स्कोर जलारी सांगू जायना कसले क्रिकेट म्हणताना लो स्कोर मॅच मस्त फाईट आमका खंडित पळोचा मेलता क्रिकेट अंतू कसले सांगू जायना अनिश्चितते खेळू म्हणून ताजी गतीर आम्ही सांगच्या 7 ओव्हर जत्तास वळलंके फायटर्स मुलकी तर्फेन इनिंग्साच्या तशीची टीमाच्या या मॅचाच्या लास्ट ओव्हर घालू का अभिजित तंगा आईलस बॅटिंग करता सची श्रीजित एम आणि राकेश कुमार अभिजित बॉलिंग घालू तयार ಭಾರಿ ಚಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ತಜೋಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಿನ್ ಅಶಿಲ್ಲ ಏಕ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಾ एक रन ना खंडित मस्त कसले एक ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನ ಒಳಲಂಕೆ ಟೀಮ್ ಆತಂಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಜಲ್ದಿತ್ಲೆ ರಬ್ಬೋ का ಮಳಲೆ ಅನಿವಾರ್ಯता खंडित यस एक हंतांद गोल्डन गोश्रीपुरम मस्त लोवेस्ट स्कोर आजत की म्हणले केला जलारी एक ओगुर कम बॅक करताच एक लायक एक यापटी कॅच का प्रयत्न करू जायना मस्त मुखार असेल दसल बॉल ओपास 1 रन मात्र मिळता लास्ट ओव्हर जाता 7 ओव्हराची पंद्याट 2 ओव्हर पॉवर प्ले असता 7 ओव्हराक एक टीमाक 30 निमिष निगत केलेलं संपायरानं ओपासोपास तुम गुडगा स्कोरची कसं लायक म्हणारी एक समयाक तुम्ही मर्याद देऊन समयाक मॉल देऊन त्या समयात कीत खेळका म्हणून तुम्ही लागी अनिवार्य टीम जला लाईव्ह अंत फळिता समोर क्लब समयाक येऊन तुम्ही टॉस रिजिस्ट्रेशन मॅच कंप्लीट देऊ कोण देऊ का म्हणून तुम्ही लागी निमून घेता असायचे आईच दिवसाक ಒಟ್ಟು 12 मॅच जाऊच्या अस ते 12 मॅच मध्यरात्री ದಂಟೂನು जत देखून तुमगे सगळ्याला सहकार असो वापसा बोलीन सांगल्या ऑप्शन बाहेर गाली म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ बाहेर गेला जलारी बॅट्समॅन बीट झालेला असा अनेक विकेट कळून घेतला ह्या ಮೂಲಕ वाईड सिग्नल अंपायर आला एक अधिकृत जाऊनशिला रन मिळता जलारी एक रन आउट मुखांतर एक विकेट कळून घेतला जलारी नॉन स्ट्रायकर देखून मस्त कसले चिंते विषय नाही गोल्डन गरुडा असा कोची तंका काही जो एव्हरेज रन रेट राहील मोंजला मात्र विकेट्स प्रति एक बॉल प्रति एक रन काउंट जाता इथल्या विकेट कळून घेऊच्या खंडित चांग नाही काही जो रन रेट गेली मोंजलारी खंचे टीम आक कीपर शरद प्रभू फुल टॉस बॉल लॉफ्ट केला सीधा फील्ड बंदा तो यापटी कॅच ड्रॉप जल्ला 1 रन धावून 2 रन धावून कंप्लीट केला 3 रन दौतासाठी बुलीला बॉल डायरेक्ट विकेट पडला अंपायर सिग्नल थर्ड अंपायर दिला ಸ್ವಲ್ಪ वेट कोरका जत्त मी आउट की नहीं मोन पळोचाक आउट नहीं मोन जलारी 3 रन मिलता गोल्डन गरुडा साक आउट जलारी एक विकेट आउटची 2 रन कची संतुष्ट जावक जत्ता गोल्डन गरुडा कोचितानी सिग्नल येऊचाक अंपायर डिसिजन येऊचाक बाकी आम्ही स्कोर बोर्डात पडेल मोन जलारी 6.5 ओव्हर्स म्हणारी ओव्हर जाऊन शापूर जलारी लास्ट अंपायर लास्ट बॉल डिसिजन पेंडिंग असते कोण आम्ही स्कोर बोर्डार तुमका तिथले दिसता आउट की नॉट आउट म्हणून पळो का 3 रन दवील वळारी रन आउट अपील आशिल्लें अपीलाक ಸ್ವಲ್ಪ क्लोज डिसिजन आशिल्लें देखून थर्ड अंपायराक मनवी दिवचाक अंपायर तांणी मनवी केलेलं असं पळो का थर्ड अंपायर आलाय तिन्ही अंपायर आला डिसिजन कसा येता म्हणून सांगून तशीच मुखारच्या मॅचाच्या जीएसबी बुल्स कोडियाल बैलांनी वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्स हांगेल मध्यंतू जाऊच्या पंद्याटाक 2 टीमा कॅप्टन आणि इमिडिएटली स्टेजाला येऊ का टॉसाक जीएसबी बुल्स आणि वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्स 2 टीमा कॅप्टन आणि जलतीतले बग्गी
स्टेजा लागी टॉस घेऊ का तुमगे टीम ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ का ಮುಂದೆ ಮುನ್ಗೆತಾ ಸಚ್ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ನ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವೀಗ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಪೈರ್ನ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಇನ್ನು ಸಹ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ आउट अंपायर डिसिशन आउट म्हणा 2 रनांत मात्र संतुष्ट जावका जाता तश म्हळ्यार स्कोर कितली जाता म्हूण सांगल्यार टार्गेट आता मोजी 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 बलती मोजी बलती तिन्ही रन आउट दिसतो सुप्रीम गोल्डन गरुडाचे स्कोर 44 रन्साचे टार्गेट ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಮುಲ್ಕಿ ತನಕ 44 ರನ್ನಾचे टार्गेट ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्की तंका ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्कीचे एक सपोर्टर्स तांकां सपोर्ट करूक सगळे टीम मॅनेजमेंट पुरा येईल सर गोल्डन गरुडास कोची आणि ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ मुल्की मध्ये ಅಂತೂ जावचे पंद्याटांत खंयची टीम विन जाता म्हूण कळूक आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळू राखूक जाता मुखारचे वीक्षक विवरण दिवचाक श्रीयुत सतीश सालियान हांका आमंत्रण करतास. So thank you so much. Hello, check. Thank you so much, Gopi Bhaji. Good evening, cricket lovers. And this is the battle between Walalanki Fighters. Walalanki Fighters versus a team Supreme Gold Garudas goes Tripuram. But unfortunately, the Supreme Golden Garudas couldn't manage to bat it properly. But good recovery, even though they got a very shackling start in the beginning, but in the end the Tailenders did a lovely job to get into the fighting total of 43 runs exactly they scored in the stipulated 7 hours, and they set a target of 44 to win the match for the team Walalanki Fighters Mulki, and two-time champions Walalanki Fighters Mulki. And then the wait and see how well the opening batters will go into lay the foundation for the team, the Fighters. And at the same time, wait and see how well the bowlers of the team Supreme Golden Garudas will go in to get the start. They needed some attacking bowling performance, and they have to pick the wickets quickly. And if they wanted to win this match, they needed some good bowling performance in the bowling department. Yeah, even they needed to field well. And let's wait and see. The opening batters already they're occupying their respective places. The strikers Daya, and non-striker will be Ravindra. And here comes the first ball. Appeal for leg before wicket, and the ball is almost dripping down the leg side. That's why umpire is not interested. Rightly called, it's a leg bye. And umpire Pawan and Dikshit are the umpires, the field umpires for this match. And straight away the evening exercise here for umpire Pawan as a given leg by signal. One without loss of any wicket. Ramanath brought into attack to bowl the first over. Very young and energetic bowler for the side of team Golden Garudas.
needed some energetic bowling as well if they wanted to win the match. They clearly can see that. Not a bad appeal there from the bowler, but the ball certainly will going to miss the leg stump. After ball just shaping into the batters, coming into the batters, pitched on the middle stump, but probably the incoming delivery going to miss the leg stump, and the right call from umpire. Ramanath, second time in this over from the Abaran Jewelers end. Left hand batter is on strike, Ravindra. Oh, beamer, absolutely the beamer. Appeal came from a wicket keeper behind the stump, but umpire rightly and called it's a no ball. The free hit delivery there now for the batters, and this is not a good sign. And because whenever you are bowling the no ball in the free hit in the power play overs, always the golden opportunity for the batters to grab this opportunity. Ravindra, left hand batter, wait and see how well you're going to capitalize this delivery. You can see there are two fielders outside the circle, saving the boundaries. One at deep square, like in front of square. One at deep extra cover. The two fielders outside the circle, saving the boundaries. Free hit delivery. Lovely delivery, lovely one in that. This time from Ramanath is just get away from this free hit delivery, as the batter didn't got that much of room to play the big shots. Ravindra picked up a single, and scoreboard now moves on to 3 without loss of any wicket. All we can see in the morning to till evening, the batters are really dominating. One match which is a low scoring game. Otherwise, this match is certainly, I'm not saying it's a low scoring game, because just seeing the condition of the weather. Again, lovely delivery indeed. The well pitched up delivery. Looks like the short pitch delivery, but not that much of shot enough for the batter to go for the full shot, because he's got some pace in his bowling, isn't it? Quicker one, even though that ball is little bit short, but batsman couldn't manage to get the position quickly to get that one into the square leg region, but he missed it completely. Good start, Ramanath again from the far end. This time he pulls a chance here for the field. It is square leg region. Lovely catch has been taken. This has been a stunner. What we are talking about, the catch has been the matches. This is what outstanding effort there from the fielder in the deep square leg region. As the batter Daya tried to pull that one again, the short pitch delivery, but little bit extra bounce in the occasion. Batsman couldn't manage to get hold of that one properly. Trying for the full shot, mistimed it, and square leg fielder making no mistake at all. Almost running from the deep square leg region, and very quickly to that position, and taken a wonderful running catch to his friend. Anand, the catcher at deep square leg, making no mistake at all. This is what the kind of start which is needed for the team of Golden Garudas. They have to get some golden wickets. Golden Garudas. Now, this is the one golden wicket here they're searching for. Off there is back in the pavilion. It's 3 for 1. Suhas, the new batter in. Came to the crease with a lot of responsibility in shoulder. Not a big target set for the opposition, but in cricket, I think you cannot say anything. It's too early to tell anything about the cricket, isn't it? Whether it is going to be a big or it is going to be a small. Ramanath from the far end. Lovely Yorker line delivery, beautifully ball. Perfect delivery to ball to the fresh leg. Isn't it? Lovely delivery from Ramanath. This all happening when the fielder will go in to contribute you to get the wicket. The level of confidence is going to be different. He will going to galvanize this level of confidence. That's what the result in the previous delivery. Bowled a beautiful Yorker line delivery, which is negotiated very well by Suhas to get the bat into the line of the delivery. It's 4 for 1. Not so easy to come and bowl in the power play overs. Raman the ball, sensible batting there from Ravindra. Just taps the ball down to short point region for a single. He will going to retain the strike here. Lovely over, fantastic and successful over which is comes in here from Ramanath. He picked up a wicket for 5 runs. This is what Golden Garudas wanted to get the start here. Time is exactly 4:40 in the evening, the day number 1 of the prestigious GSP Premier League 2026.
which is proudly presented by Kodial Sports Association Mangalore as they're celebrating their very successful golden 10 years. And it is like absolutely glorious 10 years for this prestigious cricket tournament. For the next match, the match number 6 will be played between GSP Bulls Kodial Bile versus Veera Venkatesha cricketers. The news came here, the Veera Venkatesh captain won the toss and elected to ball first in this beautiful evening. Srijit Kinney brought into attack to bowl the second over of the last over of the power play. Swings and oh my goodness, it looks like maybe the chance here for the wicket keeper. This just watching the excitement from the closing fielder. Looks like it may be something there, and the batter may got a bat onto that. The opportunity has been missed out by the wicket keeper behind the stump. Srijit Kinney, very unlucky. Full toss and slashed it away down to deep extra cover region, and probably they wanted to come back for the second, and easily they completed a couple of runs because the placement is good enough to come back for the second. With that couple of runs, Kopan moves on to 7 for the loss of 1 wicket. And the over number second is in progress. This time he lofted it. He lofted land somebody and he got a distance as well. What a classic stroke that came from the batter. Ravindra in the negation. He know exactly this is last out of the power play. At least 1 or 2 big shots is badly required. This time he drags it from the outside the line of off stump. Nothing much wrong with the line of the Delhi. Almost shaping away from the left-hand batter. But Ravindra knows that this is the one delivery I want to capitalize. And he just got that one right from the middle of the bat, isn't it? You can hear the instrumental sound when he got a contact with the ball. And you can say that that was a clean, it has clean as a whistle. And it dispatched that one into deep mid-wicket boundary for a maximum. The first confident looking stroke came from the bat in the power play. It's 13 for 1. Srijit. Oh, lovely delivery. Appeal for caught behind is gone. Is given him. What outstanding comeback here from Srijit Kinney. The very next delivery, he got the wicket of Ravindra. This is what a good sign of the good bowler, isn't it? The punishment is common, but comeback is very, very important. It's absolutely back of line delivery, which is a slower one. Received. Srijit Kinney looks like it's been, he just used his mind, isn't it? And the batsman Ravindra not expecting that kind of slow delivery from the bowler. Beautifully executed, isn't it? Just shaping away from the left-hand batter. Not ball is out, not a puller line delivery where batsman can hit a big shot again. Shortening the lane quite deliberately. Just getting a shape away from the left-hand batter. Lovely delivery. It's 13 for 2. The new batter in is Sanath walks towards the middle. Here comes. Lofted. It's going to be a loose delivery and looks like the fielder going and oh, just missed it. One bounce and looks like he saved it. No, as he's saying that is a boundary. Umpire is also Dikshit in his own style. Signal the boundary. The full toss delivery, we can see that the fielder's effort, the fielder from mid-off is run a lot, almost towards a long off. It's been a great attempt, isn't it? Almost they played it very high, but ball just landed inside the boundary line. One bounce into the fence for 4 runs. The 17 for the loss of 2 wicket. Even though wicket which have fallen in this over, but a boundary and a 6, I think is good enough for the chasing team to back in the game strongly. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested. He's now raising his finger. And Dikshit took his own time. Dikshit took his own time. He had to realize that where the ball pitch and where the ball is going to hit. And after he's been judging well, it's not necessary that umpire have to give the decision immediately. Umpire can take his own time to get the decision because umpiring is all about the fair decision. So he can
take some time because you need to realize where the ball is going to hit, whether going to hit the midline leg stump. And Dikshit, after taking a little bit seconds, you know exactly the ball we're going to hit the leg stump, and he's raised his finger. It's 17-3 now. The 3 wickets back in the pavilion. The equal battle is on. The wickets are falling. Runs are coming in this particular over. Srijit Kini picked up 2 wickets, but a little bit expensive, I think so. The 2 wickets in this over. And I don't think it is good enough for the team to win this match. And if they couldn't manage to pick the wickets in a frequent intervals, definitely the game is on. The bowler brought into attack. Abhijit, the new batter, walks towards the middle. The captain himself, Sharath Prabhu, one of the most successful player in the GPL as a captain, and he won 2-3 man of the series in this GPL in the edition altogether. Edition 10 is the most successful one, who won the 2-wheelers twice for the man of the series. Now 2 brothers out there in the middle, Suhas and Sharath. First ball, lovely delivery. The wicketkeeper ways up to the stump. They're very close to the stump, so that makes them a little bit wanted to make it uncertain, the batter, when the wicketkeeper very close to the stumps. It's not a fast bowler, the medium fast bowler, Ramanath. So the wicketkeeper stands up to the stumps. Ramnath. Again, lovely delivery. They're going for the quick single. Of course, brothers always having a good understanding, isn't it? Even at home, even at ground, definitely they got a very good understanding, being the brothers. No hesitation to get that quick single. It's 18 for loss of 3 wickets. Now that brings Sharath into strike now. Sharath Prabhu. Ramanath knows that this is the last over of his bowling spell. Have to get 1 or 2 in this over. Will going to open the gate for the team to back in the game. Ramanath. Again, short pitch delivery. Sharath nicely behind the bounce of the delivery. Controlled pull shot, even though it's not really tried to hit it too hard, but good enough for him to rotate the strike. And Skubana moves on to 19 for the loss of 3 wicket in the over. Number 3 is in progress. GPL Utsav 2026 season 10 under progress. It is most beautiful Shanbag Kudro Island Ejimadi Mulki. Lovely Yorker and delivery. Ramanath is using that Yorker and delivery very well, very effectively. And just have a look at the running bit of the wicket. Absolutely fantastic. Immediately the batter, as Shuhas has placed the ball into the mid wicket, they already realized that there will be a couple of runs. So that's the main reason that when you complete your first run very quickly, that makes so easy for you to come back for the second. So this is always the key to see that when you are placing the ball, you need to judge that it's going to be a couple of runs there. Outside and off stump, but within the reach of the batters, maybe that ball is for the batters. That's why umpire is not interested for one. Suhas and Sharath, the batters out there in the middle, have got a responsibility in the shoulder of 2 brothers for the team of Olalanki Fighters, Mulki. Ramanath, final time in this over. Once again, lovely delivery, chance of run out. No second, direct, it might be all over. Directed, it might be definitely going to be a curtain in the innings. I think the ball hits the stump. I don't know for what they're appealing for. The bails is still in a place, but I don't know why umpire is asking for the third umpire. Bails which is not dislodged from the stump. It's withdrawn the third umpire decision, isn't it? No question of asking for the third umpire. Sometime when it's going to be luck in your favor, no one can stop you, isn't it?
The luck is a fundamental ingredient in success. Even though direct hit, the bales which is not dislodged from the stump, and batter is safe. (22) for the loss of 3 wicket. 3 overs comes to an end. So 3 overs comes to an end. It's 22 for the loss of 3 wickets. Still the match is in balance. And still that opposition team, the fielding team, has got opportunity to back in the game. For that, I have to get some wickets. The Golden Garudas and versus the two-time champions Olalanki Fighters. They become the champion way back in 2019 at first, and then 2021. Twice they become the man of the. They are the winners, the champion of the prestigious JPL. Here comes over number 4, the bowler just in number 10. Down the wicket, switch, it is attempted, chance here for the fielder at cow point. Oh, he drops it, my goodness. This is not a good technique of taking a catch when the ball looks like going your back. It's not a good technique. We can see that when the ball is traveling over your head, it's not the right technique of going back. You have to get the position so quickly to get that catch. It's not easy when you're trying to get the catch by running back, not looking towards the ball. Just pays the penalty for that. This is one more golden opportunity is missed by the Golden Garudas. Because the fall of wickets will going to put some pressure on the chasing team. Srijit. Once again, switch it is attempted, but not really able to get that one. Looking for second. This has been really a sloppy cricket here from the fielding side. Getting 2 runs for the leg by. The fielding which is not really up to the mark. The catch which is taken in the deep square, like in the beginning, it's been a fantastic catch. But afterwards, we can see that they missed out some opportunity. 26 for loss of 3 wicket. Full toss. Played it nicely into the deep square leg region. The fielder then the deep square leg will go to return the ball. But ample time for the batter Suhas to come back for the second. Suhas is really playing a very good cricket here so far. (28) for the loss of 3 wicket. Nicely driven towards a deep long off region. Once again, nice placement and good running with the wicket. This is what the cricket is all about. We are witnessed some high scoring game. Boundaries and sixes are coming very easily. But the cricket is absolutely a good one to watch from this to batter. The cricket is not only about the boundaries and sixes, but this kind of sensible cricket, isn't it? Placing the ball here and there, getting singles and converting single into two into threes. This is also one kind of getting the runs. It's 30 for the loss of 3 wicket. This time switch it comes into play. After that, all single and couple. Here comes the boundary. Suhas is really well controlled. Switch it. Well controlled switch it. We can see that he's tried this before, but he didn't got that much of success. But this time he's absolutely got that one right from the middle of the bat. That will going to frustrate the bowler, Srijit, because he picked that one right from the middle of the bat and from the middle of the stump. Absolutely from the middle stump. It dispatched that one down to deep backward point. 44 for the loss of 3 wicket. Now just 10 runs away from the victory. Once again, try to repeat that same stroke, but bowler is so intelligent to bowl that one down the leg side. 34 for the loss of 3 wicket. 4 overs completed. 3 remaining. So before the next over going to start here, and the time to change in voice as well as language, once again, I would like to invite
Suresh Bhatti and Yashwant sir to take over the microphone. The remaining 3 overs, 10 required from 3, 18 ball, the 10 runs required for the victory. Thank you. Thank you, Satish ji. Welcome back. GSB Premier League 2026 च्या फर्स्ट राउंड मॅच हंगा चलतरस वळलंके फाइटर्स मुल्की वर्सेस सुप्रीम गोल्डन गरुडास गोश्रीपुरम 3 ओवर बाकीस दारन जौका वळलंकेक होगूर ऑफ साइड टॅप केला गॅप मारनो 1 रन इझिली धावनो कंप्लीट केला स्ट्राइक रोटेट जतस शरद प्रभुन 1 सिंगल काढो सुहास प्रभुक स्ट्राइक दिला लायक एक सेट बॅट्समॅन सुहास प्रभु 12 बॉल फेस करून 15 रनार खेळतस फुल टॉस जावन कन्वर्ट केला मस्त एक हॉट शॉट प्रयत्न करनी डाऊन द ग्राउंड जावन आशिल्ले स्ट्रोक 1 सिंगल इझिली कंप्लीट करून वळलंके फायटर्साचे वोट स्कोर जाल्ले 36 ऑन द स्कोर बोर्ड विथ 3 विकेट्स डाऊन तशें म्हणटाना आनी काही 16 बॉल बाकी 8 रन जेवका यशवंत करंट सिच्युएशन पळयतना तुमकां कशी दिसता 8 रन जेवका वळलंके फायटर्साक This looks check. This should be an easy go for Wadalanke fighters if they don't lose the wicket. In fact, I'm a bit surprised that these guys are taking chances of having a switch hit at this hour of the game, which is interesting. Probably tempting the bowler to get a bad ball. That's another attempt. This time the batter is successful there. He gets it. Good run towards the third man. Completely 4 runs. For the batter between third man and the deep point. स्विच इटा प्रयत्न केलेला कंप्लीट सक्सेस मेळ्ळा सुहास प्रभुक सेकंड बाउंड्री पळोवचे मेळ्ळा तागेले इनिंग्स तू 20 रनार खेळतस सुहास प्रभु लायक एक टेरिफिक फॉर्म आरस तागेले टीम टवर्ड्स द विक्टरी मुखार वरचे प्रयत्न सुहास प्रभु करतस 20 रनार खेळतस ಒಟ್ಟು 41 जाल्ले आनी खाली 3 रन जेवका वळलंकेक आ मैच विन जेवचेक Definitely 13 balls ಸನಿಕೆ 13 ಬಾಲ್ ಎಸೆತಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಹಾಸ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ ನಾಯಕ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತದು ರೋಹನ್ ನಾಯಕ್ರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ನ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡಿಗ ಸುಹಾಸ್ 20 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 15 ಎಸೆತಗಳು ಇವರು ಆಡಿದ್ರು 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಇದೊಂದು 20 ಓಟಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ತಂಡ ಮೊತ್ತ 41 4 ವಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ One down batter John Suhas Prabhu like a batting koro tayalta karma tanakella mak distance Yashwant like a position ayon because of his great batting performance so it is 41 for 4 now definitely Suresh score padalari if you see that they had almost 3 wickets for 17 runs at the end of 1.6 overs and it's a good partnership which these guys have put in and they are now on 41 which is much more convenient for them. Just imagine 17 at 1.6 with 3 wickets down was little bit of pressure on the batters there. ಖಂಡಿತ ಅವರು ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಡ್ಜಲಿಂತಿ यापटी स्विच प्रयत्न केले बॉल वारस बट कंचे फील्डर नाते नो मॅन्स एरिया वचून बॉल लँड जातस बॉल बाउंड्रीला वतस अजोटूची बाउंड्री मेळ्ळा and वळलंके fighters have won their first match against Supreme Golden Garudas Kochi. What an amazing, magnificent and deserving victory for वळलंके fighters Mulki. They have pulled a sensational victory over Golden Garudas Kochi and वळलंके fighters have won this match by 6 wickets. Definitely it is none other than Suhas. Fantastic performance here, scoring 20 of the required score. Has got their team towards the next match. They are on this innings. They are the winners of this match here. Suhas scored 20 of 16.
सो आता मी मॅन ऑफ द मॅच पळोवच म्हणून गेले सुहास प्रभू बॅटिंग लायक आशिल्लें यशवंत बट इनिशियल स्टेज अंतू फिल्डिंग करता आसतना बौलिंग अंतू बारी लायक एक शिस्तबद्ध बौलिंग दाडी म्हणटा ती नियंत्रणकारी बौलिंग केलेल्या गिरीश पै तक्क आई थिंक ही डिजर्व्स द मॅन ऑफ द मॅच पळोवया कसो डिसिशन येता म्हणून सो दोग जण एक वेदर द मॅन ऑफ द मॅच विल गो टू द बौलर और बैटर सुहास प्रभू पळोवया सो गिरीश पै बौलिंग परफॉर्मन्स पळयले म्हणजे 2 ओव्हर अंतू एक मेडन आशिल्ले खाली 2 रन मात सोडून 3 इम्पॉर्टंट विकेट घेतला सो मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड गोज टू गिरीश पै ऑफ वळंके फायटर्स. That's fantastic. It's an amazing to see that the first maiden over of this day, and it's been Girish Pai who also deserves the man of the match award for this match. He bowled 2 overs with 1 maiden, giving 2 runs and getting those most crucial 3 wickets. In fact, that has psychologically put a lot of pressures on the batters team, which they could not go beyond the score of around 40-41 what they scored. So may I request Girish Pai to come on to the presentation area to collect your man of the match award from our chief guest. And meanwhile, we are all set for the next match. Match number 6 is coming up now between GSB Bulls Kodiyal Bail versus Veera Venkatesh Cricketers. I request the extra players of both the teams to be here in the commentary box. दोन टीमांचे एक्स्ट्रा प्लेयर्स वीरा व्यंकटेश क्रिकेटर्स आणि GSB बुल्स कोडियल दोन टीमांचे 12th मॅन प्लीज कम ऑन टू द कमेंट्री बॉक्स इमिडिएटली टू असिस्ट अवर स्कोरर्स. ದಿನದ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕುಡಿಯಾಳ್ ಬೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 12th ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕುಡಿಯಾಳ್ ಬೈಲ್ ವರ್ಸಸ್ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 12th man to join us here. Well, the news from the center is the captain of Veera Venkatesh Cricketers Mangalore, after having won the toss, elected to field first. Meanwhile, the players of fielders of Veera Venkatesh Cricketers, VB Cricketers, are slowly entering into the ground to set their field placement. We have one sunshades left here by the umpires with us, which is of yellow clover with yellow with a silver shades. Requesting a player who has left it with the umpires to come and collect it from us. तवळ जिल्ह्याला मॅचाच्या एक प्लेयर आला सनग्लास अंपायर आला असं दय करून त्या येऊन प्लेयरानं कमेंट्री बॉक्स येऊन कलेक्ट करूयात. So Veera Venkatesh Cricketers versus GSB Bulls Kodiyal Bail match number 6 कमी रेडी जात असती. यशवंत वीरा वेंकटेश क्रिकेटर्स म्हणणारी एक मस्त एक ओल्डेस्ट टीम मस्त काळदकोनु लायक नाव घेतलेली टीम खाली ओव्हर आर्म मात नाही अशी अंडर आर्म क्रिकेट अंतू मस्त प्रशस्ती घेतलेली टीम VB क्रिकेटर्स. आता GSB बुल्स कोडियाल इधर खेळत असं GSB बुल कोडियाल बायल फॉर द फर्स्ट टाइम त्यांनी खेळत असती एक बलिष्ठ टीम या टुर्नामेंटाच्या टॉप फेवरेट टीम्स तो पळईल लिस्ट काढली म्हणून गेले तंतु येऊच तसं एक स्ट्रॉंगेस्ट साइड बळा त्या GSB बुल्स कोडियाल बायल. आता वीरा वेंकटेश क्रिकेटर्स इधर खेळच्या रेडी जल्ली ती डॉग जण ओपनर्स क्रीस आईल असती. Right, Suresh, and Veera Venkatesh Cricketers toss win जाऊन fielding एक high kick on घेतलेला संघा त्यांनी GSB Bulls कोडियाल बाईल तांगेल batters अंक ball करका असता. They are just getting prepared in the middle there. The ground has been cleaned by the groundsman. विघ्नेश भट्ट आणि रमेश पाय डॉग जण ओपनर्स जाऊन
GSB बुल्स कोडियाला तर्फेनं क्रिस आईल असती दयकोर्नु VV क्रिकेट असाच्या एक्स्ट्रा प्लेयर अन्न जलतीतले ಬಗ್ಗೆ कमेंट्री बॉक्स येवक वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स तुमगे 12th मॅनाक कमेंट्री बॉक्स पेटायती VV क्रीडाचा तर्फेनं विघ्नेश भट मुलकी तयार जातस बौलिंग करूक तशींची स्ट्रायकर्स आक्रमणकारी स्ट्रोक्स खेळचित असल प्लेयर विध्वंसक बॅटर विघ्नेश भट कोटेश्वर लेफ्ट हँडेड बॅटर रेडी जातस फर्स्ट बॉल फेस करूक आबरण एंड दकुनु विघ्नेश भट टू विघ्नेश भट लायक एक बॉल ब्लॉक वाला पडाल बॉल होगूर डिफेन्सिव्ह फॉरवर्ड स्ट्रोक केल्लो ऑफ साइडाक पुश करून 1 रन कंप्लीट केला अस सो विघ्नेश भट कोटेश्वर हागेले अकाउंट ओपन जातस तशींची GSB बुल्स कोडियालाचे अकाउंट ओपन जाला फील्डिंग थोडे चेंजेस करता असती इत्या म्हणल्यार लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन अस प्रतिपटी राईट हँडेड बॅटर क्रीस येताना तशींच लेफ्ट हँडेड बॅटर स्ट्राईक येताना फील्डिंग पोझिशन चेंज करपाक जाता त्या एक मस्त एक फील्डिंग टीमाक एक तोंदरे म्हणून म्हाका दिसता आता राईट हँडेड बॅटर रमेश पै अनेक क्लासिकल पीस ऑफ बॅटिंग खेळचित असले एक प्लेयर शास्त्रीयबद्ध आटगार म्हणून म्हणता ती तोत क्रिसरस नेक्स्ट बॉल फेस करता विघ्नेश भट आबरण एंड दकुनु सेकंड बॉल घेऊन येतस रमेश पैक That's a full toss by Vignesh Bhatt to the batter there. The batter gets a good drive towards the long off and covers, gets 2 runs to his individual account. Ramesh Pai is the batter there. रमेश पहिले अकाउंट ओपन जातस 2 जण ओपनर बॅटर्स तांगता गेला अकाउंट ओपन करून खेळतस ती वेल थर्ड अंपायराक डिसिशन वतस फील्ड अंपायर थ्रू टू चेक वेदर इट्स ए बाउंड्री थर्ड अंपायर टेलिव्हिजन स्क्रीन तो चेक करता वेदर द बॉल हॅज क्रॉस द बाउंड्री रोप्स पळोवका कसं डिसिशन येता बोडू There's a request from the umpires to check whether if it would cross the boundary line. That's boundary. That's fantastic. That was a good decision by the umpires and the batters there. They got couple of 2 more runs added. That's another over pitch ball. This time straight into the hands of the fielder there. The fielder drops the catch in the covers. This should have been caught. बॉल येशील फिल्डर राजेश हातावत बट बॉल स्लिप जालो कॅच जाऊन कन्वर्ट करून जायनी हॉड एक जीवदान मेळतं संघ रमेश पैक सो रमेश पैल इंडिव्हिज्युअल स्कोर जाल्ले 5 आता लेफ्ट हँडेड बॅटर विघ्नेश भट स्ट्राईक आयला Rajesh should be disappointed for dropping that catch. Hope it doesn't cost them lot. That's a nice defense in front. Running for a single, reaches the crease safely. राउंड द विकेट जाऊन बॉलिंग केलं विघ्नेशन आराम से हुगूर टॅप करून पुश करून ऑफ साइड ड्राइव करून 1 रन काढू स्ट्राईक रोटेट केला त्या सिंगल घेतील मित्र तो वापस रमेश पै स्ट्राईक आयला ओव्हर द विकेट जाऊन रमेश पैक बॉलिंग करतस विघ्नेश भट फ्रॉम दी आबरण एंड फुल टॉस जाऊन पडाल बॉल फिल्डर माता वयर दखून उबार लॉंग ऑफ ड्राइव केला बट लॉंग चेस आशिल फिल्डराक इथे म्हणा पवर प्ले आशिल जावन आशिल मित्र फिल्डर इनसाइड दी सर्कल आशिल्लो मागशे वचून दवरून बाउंड्री लाइन लागी ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन लागी स्टॉप केला तश जावन खाली 1 रन मात्र मेळतस आता वापस स्ट्राईक मेळतस विघ्नेश भट्टाक
विघ्नेशन गेल्यार बॉल ब्लॉकोला पडल्यार बॉल फॉरवर्ड डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक खेळलो त्या बॉलाक खंयची नमुने रेस्पेक्ट दिवका की तशीच खेळलो लायक एक लाईन एंड नंतर पडल्यार बॉल आशिल्लो लायक बॉल सो डॉट बॉल जल्ला कडे बॉल अंतू खंयची रन एनी ओवर कंप्लीट जल्ला फर्स्ट ओवर पवर प्ले ಅಂತೂ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ 8 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಣದಿಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೆಳತ 2 ರನ್ ಅರಿ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಕೆಳತ ಸರ್ ಅನ್ನರಿ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ 8 without any loss. This is a good start. They are at 8 for no loss at the end of first over. This is considered to be a good average to start with. We can look forward for a couple of bigger runs in the second over. Karthik is the new bowler with the ball. He will be bowling from Smart Bazaar end. दोन्ही ओव्हर स्टार्ट जातस फ्रेश ओव्हर बॉलिंग करूक कार्तिक येतस बॉलिंग करूक स्मार्ट बाजार एंड आदकुनु अनेक लायक एक एक्सपीरियन्स क्रिकेटर मस्त पुरा जीएसबी क्रिकेट अंतू खेळलो प्लेयर अनुभवशील प्लेयर कार्तिक ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಚೇಂಜಸ್ करतस थोडे बदलावणे हाडतस ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ इथे म्हणरी लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन क्रीसा मध्ये असती क्रीसारी विस्फोटक बॅटर जावन अशे नॉन स्ट्रायकर एंडारी विघ्नेश भट असल्यारी स्ट्रायकर्स एंडारी अनेक एक्सपीरियन्स प्लेयर रमेश पै गंगोल्डी Karthik to Ramesh Pai bowls it on the leg side. There's an appeal. Umpire goes unmoved. It's another dot ball for the bowling team there. That's a nice delivery by Karthik, slightly on the leg stick. Yes, loud appeal leg before the wicket but I think the ball was going down the leg side. Thus, John umpire kanche problem nashila kanche hesitation nashila. He was not at all interested in that appeal. So he says not out kanche damage join yanga. First ball dot jala opasa. Left arm round the wicket Javnu. Karthik bowling kuru tayar jalla from the Smart Bazaar end. And the man on strike is Ramesh Pai. Chikke problem aila during his bowling run up. So wapas ball given Makshetas Karthik. Second over is in progress. Donni over chaltas 8 run aila. Surve batting karta sanga GSB Bulls Kodiyal ite mala Veera Venkatesh captain ana toss win javnu fielding choose kelala. Power play चालतीन तसं last power play is in progress. Karthik to Ramesh Pai. Ramesh Pai pulls it towards the mid wicket, gets 4 runs to his team. This is his second boundary. लायक एक शॉट जावन आशिल्लो एक जबरदस्त बाउंड्री आयला हांगा वेलकम बाउंड्री म्हणत जीएसबी कोडियाल बायलाक वन बाउंस जावन टवर्ड्स द मिड विकेट बाउंड्री फॉर 4 runs all the way to the boundary for 4 runs. No chance for any fielder to stop that ball. Television screen on तुम्ही replay पळोवेत खंयचे फिल्डराक चान्स नाशिल्ला इथे म्हळ्यार पॉवर प्ले जावन आशिल्लो मित्र ऑलमोस्ट पुरा प्लेयर्स ऑन साइड अंतू भितर आशिल्ली ती सो गॅप फाइंड करून खंयचे फिल्डर रातील जाग्यार मारला इट वाज ए वेकंट region played that shot that was the no man's area and gets a boundary. Welcome boundary boundary मारलो रमेशान स्वागत दिलेला आसा त्या टीमाक. That's a wisest shot. The ball was slightly shorter there, and he had all the time to get that ball well connected to hit it towards the long on and mid wicket. फुडली बॉल अंतू पनिशमेंट म्हणल्यार कार्तिकाक आता थोडे चेंजेस करतस ओव्हर द विकेट जावन बॉलिंग करचे प्रयत्न कार्तिकाला रमेशान attempted for a switch hit but he found complete failure in playing that one. बॅट आणि बॉलामध्ये खंयचे कनेक्शन येतना डॉट बॉल जाला यशवंत. Definitely. I think that's an adventurous shot which is attempted nowadays in all the 2010 6-over match. एक विशेष शैली शॉट मारचे प्रयत्न करताचे. Many of them have got success in that and the attempts are still on. Yes, recent days अंतू असं एक रिव्हर्स शॉट रिव्हर्स स्वीप रिव्हर्स हिट म्हणतात स्विच हिट मस्त पळोवचें मेळटा आमकां. ह्या फाटी पळयात बॉल आउटसाइड दी ऑफ टर्म जावन आशिल्ल्या बॅट्समॅन केळूक विफल जाल्लो चिके लो जावन आयिल्लो बॉल बॅट्समॅन रमेश पैन मस्त बाउन्स जाता म्हूण लेखलें बट तशें जायनी नेल्यार आयिल्लो बॉल बीट जातस वरल्याल काम विकेट किपर विघ्नेशान केलेलो खंयचे रन येतना डॉट बॉल जाल्ला स्कोर 12 रबला. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. I feel the batsman, though he is hitting it hard, he lacks a bit of footwork there. That's a good boundary by the batter there. Ramesh Pai gets his, Vignesh Bhatt gets his first boundary. Vignesh Bhatt, no, Vigneshan.
Apologies there. It's Ramesh Pai who gets his third boundary. लाईक एक बॅटिंग दाखयतो संघ रमेश पै खंयचे फिल्डर नतील जाग्या मारनो बाउंड्री प्राप्त केलेलो स नेक्स्ट बॉल कार्तिकाला रमेश केलेलो बॉल या पटी स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड डाऊन द स्ट्रोक जेवन आशिल्ले लॉंग ऑफ अ बॉल वतस बट ते प्रोटेक्शन असस तशें जेवन एक रन संतोष जेवका दोन्ही रन खंयचे अवकाश ना आशिल्ले ओव्हर एंड जाला सिंगल आयला लास्ट बॉलांतू तशें जेवन वापस स्ट्राईक रिटेन करता आसतना रमेश पै सो ऑल टुगेदर दोन्ही ओव्हर कंप्लीट जाला सुरवे बॅटिंग करता जीएसबी कोडियाल बुल्साक 17 रन आयला सो लायक एक रन रेट अस खंयचे विकेट कळवून घेनी यशवंत 8.5 रन सारी रन रेटार खेळतस लायक पार्टनरशिप येतस सो असल संदर्भरी वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स मँगलोराक विकेटाच्या अगत्यते अस इजंट इट ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತನ್ನಿದ ಏಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೋನ್ ಗೆತಿಲೆ ಏಕ ಜಲ್ತಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿವನ್ ಗಲ್ಕ ಮುಣಗೆನ್ ಹಂಗ they have decided to field first to ensure that they restrict the batters to score as less as possible. With the 17 on the scorecard at the end of 2 overs, it's almost more than 8 runs. In fact, they should attempt to keep the run rate within 8 runs to ensure that they have a decent score which they can chase and get their team towards the success. 15 रन स्कोर कोट रमेश पै खेळतस एदोळते 9 बॉल ताण फेस केला 3 बाउंड्री तागेले इनिंग्स आमकां पळोवचें मेळ्ळा विघ्नेश भट्टान काले 3 बॉल मात्र फेस केला एदोळते 2 रन स्कोर करून खेळतस आता वापस स्ट्राईक मेळतस रमेश पैक बॉलिंगात चेंजेस केला नेक्स्ट बॉलर जावन येतस विघ्नेश अनेक ऑलराउंडर क्रिकेटर वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स तर्फेन विघ्नेश कारकळा बॉलिंगाक रेडी जाला That's a ball outside the off stick. A dot ball, a nice delivery. The batter could not get anything connected there. He just had to leave the ball behind to the keeper. वापस बॉल विघ्नेशाला तास शॉर्ट बॉल जेवन आशिल्ले टर्न केले ऑन सायडांतू बट तितले फर्म जेवन आशिल्ले ड्राईव्ह नाही त्या काही फिल्डर्स की तई गेल्ले प्रोटेक्शन असते तो सो 1 रन मेळतस सो विघ्नेशान केलेले ह्या बॉलांतू 1 रन मेळ्ळा जीएसबी बुल्स कोडियालाक विघ्नेश भट्टाल ಬಗ್ಗೆ सांगची म्हणून जाल्यार यशवंत जीपीएल इतिहासांतू दोन्ही पटी मॅन ऑफ द सिरीज घेतील प्लेयर बाईक 2 व्हीलर घेतील एक प्लेयर विघ्नेश भट्ट लायक एक ऑलराउंडर क्रिकेटर अनेक एक रेकॉर्ड असता गेला एक ओव्हरांत 5 सिक्सर मारला तसल एक प्लेयर विघ्नेश तसल एक प्रचंड प्लेयर म्हणत आता बॉलिंग घालतस That's an interesting fact that you told, Suresh. It was interesting for me. Hitting 5 sixers in a single over is something which is amazing in tennis ball. And also you said he had got twice a man of the series. He should be a big contester. Unfortunate for him that he had to leave the crease. There was a snick of the bat. The keeper did not make any mistake. We were just talking about it. Probably he heard it and wanted to. The batter Vignesh Bhatt is just out, having an edge of the ball there. The keeper did not make any mistake. Anantesh was the keeper there. सो जीएसबी बुल्स कोडियालाचे फर्स्ट विकेट हांगा पडलेलो विघ्नेश भट्ट आउट जाला एड्ज जावन बॉल सीधा विकेट कीपर हाता गेलेल्या विकेट कीपर अनंतेशान खंयची चुकी करली इजी कॅच जावन कन्वर्ट केला तश जावन एक ब्रेक थ्रू मेळ्ळा हांगा वीर वेंकटेश क्रिकेटर्साक विकेटाचे अगत्यते आशिल्ले त्याच टायमार एक राईट टायमार विकेट मेळ्ळा विघ्नेश सक्सेसफुल बॉलर म्हणत विघ्नेशाक हे एक इम्पॉर्टंट विकेट मेळ्ळा विघ्नेशान विघ्नेश भट्टाक पेविलियनाक वापस पेटयलस सो 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 point overs GSB Bulls Kodial by We have Nitish Kamath in the middle. Nitin Kamath is the best batsman of the last series. He's on the strike now. He'll be playing Vignesh Shanai, who will be bowling from Auburn end. Vignesh Shanai to Nitin Kamath.
That's outside the off stick. The batsman doesn't attempt anything. ಒನ್ ಡೌನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜವನು ನಿತಿನ್ ಕಾಮತೈಲ ಮೂಲತಃ ಮುಲ್ಕಿಚ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔತರ್ಸ್ 11 ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೂ ಕೆಳ್ಳಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಫುಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಲಾಯ್ಕ್ एक हार्ड हिटिंग स्किल्स अशिल प्लेयर. खंचे संदर्भरी हॉट शॉट मार्चितस अले कॅलिबर अशिल प्लेयर. नितीन स्ट्रायकर येतस लायकोन ग्लाइड केला. थर्ड मॅन आवतस ते प्रोटेक्शन आशिल्ले बट एक रन प्रिव्हेंट करून जायनी क्विकली डाऊन कंप्लीट केला हांगा. राईट टायमार क्रीस येवन पावला रमेश पै. सो रमेश पै एक नितीन कामताक एक रन मेळतस. नितीनाला अकाउंट ओपन जाला. नितीन इज स्ट्रेट अवे ऑफ द मार्क. दॅट इज द एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर. 3 ओव्हर नंतर जीएसबी बुल्स कोडियालाचे ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. Score is 19 for the loss of 1 wicket at the end of 3 overs. We have Vignesh Shenoy who just bowled his 1 over. That was a fantastic over. He just gave 2 runs in his over with a success rate of 1 wicket already into his account. Ramesh Pai and Nitin Kamath are the batters. Ramesh is already on 16, playing at 11 deliveries with 3 boundaries. He is the man of performance there. Much expectations are being put on him. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ 9 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಎಸೆತಗಾರ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನ ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾಲ್. Karthik to Nitin Kamath. Nitin Kamath misses it. The batters have to think here. It's time for them to definitely show some good performance, get some bigger hits. The run rate is much around 6 now. They need to elevate this to more than 8.5 to 9 to keep this match for the last over. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್. ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪ್ಪರ್ ಕಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ರನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್. 2ನೇ ರನ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಬಿ ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇವಾಗ 20ಕ್ಕೆ 1. ಔಟ್ ಆದಂತ ಆಟಗಾರ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್. ಇವಾಗ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಪೈ ಈ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. That's an attempt for a switch shot. This time he gets it connected, but unfortunate for the batter there. The ball drops straight into the fielder's hand. Deepak is the fielder who did not make any mistake there. He had to run almost around 15 feet from his standing position. Gets that catch well into his hand. That ends up with 1 wicket down for GSB Bulls Kodial. They are at the loss of 2 wickets and still on the score of 20 at the end of 3.3 overs. ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ರಮೇಶ್ ಪೈ ಅಂತಹ ಓರ್ವ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಮೇಶ್ ಪೈ, ಬಟ್ ಒಂದು ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಬಗ್ಗೆ? Probably this is one of the technique to put the pressure on the bowler actually. A pressure ಯಾರೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಲರ್ಗೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಮಾನ ಹತ್ರ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಲರ್ ಕದಲ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸುರೇಶ್. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬೌಲರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್. ಚೆಂಡನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತ ಆಡಿ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಅಂಬಾಗಿಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಡ್ ನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ಗೆ
Karthik to Nitin, that was a nice delivery. Slightly pitched on the middle and leg. Completely gets beaten there. A dot ball. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಆ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನಿತಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 11 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಬಾಕಿದೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ಗೆ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The batter attempts to leave, make some space and tries to hit the ball. The non-striker runs towards the run but had to come back. There was no response from the striking end. There was no run actually there. That was a wise decision from the striker. There was always a risk for the non-striker when he was reaching there. He'd have got run out. That's a wise decision. Nitin Kamath and Vivek Prabhu are the batters in the middle. There's a lot of pressure on the batting team now. GSB Bulls Kodial Bail are just on 21 for the loss of 2 wickets, and they are almost down with 4 overs being completed against them. They just have 3 more overs, may require 40 to 50 to make this match a decent with a decent score, or else this might be a tough match for them when they come back to bowl. ಪ್ರಸ್ತುತ ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 5.25 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಅವರ ಬಳಿ ಇವೆ. ರನ್ಧಾರಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 5 ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಚೆಂಡು ದಾಂಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ GSB ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾನಭೋಗು ಕುದ್ರುವಿನ ಸುಂದರವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ವರುಣ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ, ಅರ್ಥಾತ್ ಆಭರಣ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ ವರುಣ್ ಕಿಣಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು. They have to accelerate their score now. It's almost 4.1 overs. Looking forward for big shots. That's another dot ball. It's Varun bowling from Abaran, and that was quickie. The batter could not get any connect of his bat with the ball there. Completely misses it. The keeper holds the ball well and returns it back. ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರಾಮತ್ತನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಬುರುಳಿಕೆನೆ ಕಂಡುಕೊಡುತ್ತಾ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಅನಂತೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 21ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಬಳಿಕ. Suresh, I feel Varun is very cheeky there. He is realizing that the batter is quickly turning himself, probably trying for a reverse shot. He identifies that and he knows exactly where to bowl. Basically, the switch it and reverse shot are 2 different techniques. The batter switches himself at the last minute, just about when the ball was delivered there. But a reverse shot is something where he prepares himself before the ball is delivered. ವರುಣ್ ಕಿಣಿ ಎಸೆದಂತ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪವನ್ ಶಿರ್ವಾ ಇವರಿಂದ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದನ್ನ. Definitely he has to consume maximum with this ball as there is no risk of anything. Varun to Vivek. That's a good delivery by Varun.
He looks to be a seasoned bowler. He knows exactly where to bowl to this batter. Vivek is almost with a lot of pressure in the middle there. He's playing his sixth ball without much of the score, except for one that he has scored. Nitin Kamath is on 2. Both the batters looks that they are yet to be comfortable in the middle, not able to get any connect to the ball, missing most of the shots and helping the bowler get a good dot deliveries. ಒಳ್ಳೆಯ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರುಣ್ ಕಿಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಬಿಗು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವರುಣ್ ಕಿಣಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಗೆತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಿದೆದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರುಣ್ ಕಿಣಿಯವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. That's another dot ball. ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೌನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಶವಂತ್ ಅವರು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೌಲರ್ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುರೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅವರು ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬೋಲ್ ದ ಪೇಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಪಿಚಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಓವರ್ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಮೇಲಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಅವರು. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 1 run in his over. ದಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನ 23 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್. Only 2 more overs are remaining in the innings of team GSB Bulls Kodial. By now things are slowly down now after the dismissal of Ramesh Pai. Runs are dried up for GSB Kodial Bile. 23 runs have come so far. Right, Suresh. And meanwhile, I think one more wicket is down here. The batsman Vivek Prabhu is out. GSB Kodial Bulls have lost their 3rd wicket at the score of 23. And we would have to really appreciate the bowling performance of the bowlers of Veera Venkatesh. And I think the captain has also made his intention clear in the way he decided to field first. He employed his bowlers in such a good manner that all his bowlers have done an excellent job. So what would you like to say? Definitely, that's a very interesting part for any captain actually, knowing the strength of his team and identifying what would be the best choice for them when they win the toss. Is it what it makes? And I'm sure in this case, the captain of the fielding team has taken the best decision. He had all the confidence on his bowlers. He just gave them the ball and said, look boys, I need some wickets, and the boys have done it for his team. It was Vignesh G. Kamath who bowled that last delivery. Vignesh G. But correction there. That's another shot towards the mid wicket. A bit of odd shot, not an orthodox shot. Nice. There's a chance of run out, but I think there was a chance for a run out on the non-striker, and however the fielder wanted to throw it towards the strike. Had all that ball which he forced towards the keeper. It was a bit of good timing for the batters to reach this crease within time there. This is an excellent running between the wicket, aggressive running between the wicket it was. And Ashwant, I think these kinds of runs are necessary for a team in this shorter format of cricket, isn't it? Definitely, Suresh. They don't have a choice here. They are not getting much of the bat. They have to capitalize on anything that gets them any extra runs here. Definitely, those throws, even they are straight to the wicket. The batters have to put their energy into their legs and keep running in between the wickets to get the best of the score that has been put into their scorecards. So ball is in the hands of the bowler Vignesh now from the smart buzzer, and here he goes. Right arm over the wicket to Kaushik. That ball was going down the leg side. That should be a wide. No doubt about delivery. No argument at all from the bowler because he knows the situation. Anything down the leg side will be declared as wide ball. So one more extra run has been added to the total of GSB Bulls Kodial Bile, which takes their full score to 26 now.
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಾಜಾರ್ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೌಶಿಕ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಂದ. ಕೌಶಿಕ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆಯುವ ಬಾರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಗೆ. could not get any score there. We come back to Vignesh now as the next delivery from the commentary box bench. Kaushik played the shot. That was the longer, but the ball has gone straight in the throats of the fielder. Excellent catch has been taken there. The fielder who was standing at long off region made no mistake, caught it beautifully. What an outstanding catch it was. ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಜಿಗಿದು ಹಿಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಕಿಣಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ವರುಣ್ ಕಿಣಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸುಮಾರು 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಜಿಗಿದು ಹಿಡಿದಂತ ಕ್ಯಾಚ್. ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನವಾಗ್ತದೆ GSB ಬುಲ್ಸ್. ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಬೈಲ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈಗ 26. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಸೆತ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದು. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. What an incredible catch it was from Varun Kini. A good presence of mind. You can't do anything whenever you have got fielders with such a good presence of mind. The ball was almost going out of the park and almost jumping like a bird. He converted that into an amazing catch. Pawan Kamath. That's again a very fine delivery there by Vignesh, which beats the batsman. The ball went straight to the hands of the wicketkeeper. So no possibility of the run there. Very good over from Vignesh has come to an end now. Vignesh has completed his quota of 2 overs, no maiden. 11 runs he has given, and Vignesh has picked up 2 important wickets. So altogether, after 6 overs, GSB Bulls are now 26 for 4. I suspect if this match would be the lowest score match of the day one. They are on 26 as of now. The previous lowest score was 43 from Supreme Golden Garudas. I correct there, it was from V Strikers, which was 35. And this would be the next score in line. So you are watching the match number 6 of this GSB Premier League 2026 season 10 of GPL. And after this match, yet another interesting match will be played between Auburn Diamonds versus Manipal United Tigers. I request the players of both the teams to get ready for the next match. So change in the bowling position here. Nagesh Pai Ganguly has been brought into attack. Nagesh Pai will bowl the first ball of the 7th over from the Auburn end. Right arm medium fast bowler. Here is Nagesh Pai. That was a full toss delivery, and Nitin Kamath found a complete failure in playing that one. That ball beats not only the batter but also the wicketkeeper. Wicketkeeper Anantesh was not able to stop that ball. Meanwhile, the fielder who was standing just beside the wicketkeeper stops that ball, but in between these two batters have taken a single here. 1 run has been added to the total in the form of extra, in the form of bye. Score moves up to 27. ನಾಗೇಶ್ ಪೈರ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನ ತಂಡ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಕಿ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಓವರು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1-2 ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಾಂಡಿಗರು. Well, again attempted for a switch hit, but found utter failure in playing that one. No connection with the bat and ball. That ball kept very, very low. Surprised the batsman. The pace deceives the batsman. Ball defrosts the batsman and directly into the wicketkeeper's baggage. So no runs resulted. Dot delivery. ನಾಗೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಆಗಿತ್ತು ಇದು. ಆಭರಣ ತುದಿಯಿಂದ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪವನ್ ಕಾಮತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು 11 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಇವರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Nitin goes for a big one. The ball is, there is a fielder underneath it. Can this be taken? That's a very good catch taken by Vignesh. He kept his eyes on the ball. Nitin wanted to go for a big hit, but didn't get the line of the ball properly. Not from the middle of the bat. Not a fully controlled stroke. He played the shot with the loose hands, and there was not much of power behind that shot. As a result, the ball was quite high in there for a while, and the man standing at mid-on region, Vignesh, made no mistake. He kept his eyes on the ball and he converted that into a simple catch. One more wicket is down. Nitin is very, very disappointed here because he faced 12 balls and he was able to score only 2 runs in his individual account. ಅದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುರೇಶ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕಾದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅದು. Requesting KMC Physio to come to the main stage. Attention please. Requesting KMC Physio to come to the main stage, which is near to the commentary box. Requesting KMC Physio to come to the main stage near the commentary box. All right, 28 for 5 now. Nagesh bows this one. Another quicker delivery here. Batsman Naveen Prabhu. Jadu is the newcomer. He was not able to make any connection with the bat and ball. Meanwhile, they get a run here in the form of bye. And one more run has been added to the total of team GSB Bulls Kodial. And I think there's the end of the innings of GSB Bulls Kodial here. Altogether, after batting first, they have scored 28 runs. 29 runs they have scored. I beg your pardon. 29 runs they have scored, and now the target is 30 for Veera Venkatesha cricketers. So this is not a difficult target for Veera Venkatesha because Yashwant, they have got a very good batting lineup. They have got a strong batting lineup. So I think they can win this match very easily here. Whereas if we see GSB Bulls Kodial Bile, lot of effort, lot of hard work is required for the bowlers. Let's see how the bowlers will do their job in this match. A good bowling and a good fielding is also a compulsory there. They have to bowl ensuring that they understand the direction of the wind and get that. It's the lowest score of the day. 29 has been scored by GSB Bulls Kodial Bile. With you will be Ajay Raj for commentary in Hindi. Keep it there. Keep it. ಸರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಟಿದೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದು ಒಳಗೆ ಇಲ್ವಾ ಓ ಎಸ್ ಸರಿ ಅದ GSB Bulls Kodial Bile. On the toss, make it ball. Target 30. Hello, check. Hello, check.
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भट्टी और यशवंत जी। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध करता हूं, कृपया टॉस के लिए आए। आभरण डायमंड्स और मणिपाल यूनाइटेड टाइगर्स। आभरण ज्वेलर्स और मणिपाल यूनाइटेड टाइगर्स दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है, कृपया टॉस के लिए जल्दी आए। तो आइए, इस वक्त जीपीएल 2026 सीजन 10 में इस वक्त मुकाबला जीएसपी बुल्स और कुडियाल बैल, जीएसपी बुल्स कुडियाल बैल और वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स के बीच में चलता हुआ। टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी करने का फैसला, 30 रनों का लक्ष्य। दूर वाले छोर से दूसरी पारी की पहली गेंद स्टंप्स के स्कीट पर थोड़ा सा घूमकर अंदर की तरफ आई और इस गेंद तो थोड़ा सा ऊपर उठकर अंतिम क्षणों में बल्ले का भारी सिरा देकर कट भर कर दिया बल्लेबाज ने। 1 रन को चुराकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी। नागेश भाई अपना पहला रन बना चुके हैं, खाता खोल चुके हैं। लक्ष्य 30 रनों का, जबकि वीर वेंकटेश 1 रन बगैर किसी नुकसान के और गेंद को लेकर उच्च छोर से गोकुल गडियार यानी कि आभरण बैनर छोर से आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। बाएं हाथ के बैट्समैन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, वरुण स्ट्राइक एंड पर। बड़ा कोई ज्यादा मुश्किल वाला टास्क नहीं है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ओवरफुल टॉस थे, अंतिम क्षणों में इंतजार किया, आने दिया, बल्ले का निचला हिस्सा देकर गेंद को धीरे से पॉइंट की दिशा में ड्राइव कर दिया। आसानी के साथ 1 रन को बटोरकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी। रन बढ़कर पहुंच चुका 2 पर बगैर किसी नुकसान के। इस वक्त कहना यही होगा कि वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स के कप्तान ने योजना बनाई है कि दोनों अग्रिम स्थान के बल्लेबाज सुरक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी करें, सिंगल्स को बटोरें, क्योंकि लक्ष्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। और ऐसे में क्या ये योजना उनकी सफल हो पाती है। उस छोर से अगेन ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर थे, लेकिन उसके बावजूद 1 रन को तेज कदमों के साथ दोनों ने पूरा कर लिया और कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 3 पर बगैर किसी नुकसान के। इनफील्ड के अंदर के बहुत ही सतर्क और चतुर कहें, चालाक कहें, चपल कहें, फील्डरों का होना बहुत जरूरी है, जो ऐसे सिंगल्स को रोक सकते हैं। लेकिन बात नहीं बनी, जैसे ही हाथ से छूट गई, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को तेज कदमों के साथ पूरा कर दिया। हेलो चेक, हेलो। तो कुल मिलाकर रन बढ़कर 3 पर बगैर किसी नुकसान के। 4.15 का आस्किंग रन रेट बताता हुआ गोकुल की गेंद, थोड़ा सा स्टेप आउट करके गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का महिम स्पर्श लेकर गेंद विकेट कीपर के हथेलियों में और इसी के साथ पहला छक्का। हेलो चेक, हेलो। हेलो चेक, हेलो। तो इस शानदार विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2026 सीजन 10। गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में थोड़ा सा आगे निकलकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे तेजी के साथ बल्ले को महिम स्पर्श करती हुई हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। हेलो चेक, हेलो हेलो। हेलो चेक। हेलो चेक, हेलो। हेलो चेक। हेलो चेक, हेलो। गोकुल की एक और गेंद, एक और शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। गेंद स्टंप से जाकर टकराए, यू मिस मी, आई हिट यू। हेलो चेक, हेलो चेक। तो इस बेहतरीन विकेट के प्रोजेक्ट है जीपीएल 2026 सीजन 10। सारे फील्डर्स एकत्रित होकर इस वक्त उत्साह मना रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने स्कोर बोर्ड पर कोई ज्यादा रन्स तो नहीं बनाए और इस वजह से शुरुआत में ही उनको दबाव बनाने के लिए विकेटों को प्राप्त करना होगा। और ऐसे में
दो बहुमूल्य विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। इन 2 विकेटों के साथ कहीं ना कहीं कुछ आशा की किरणें इस वक्त प्रकट होती हुई जीएसपी बुल्स कोडियाल बेल के लिए, क्योंकि 2 बहुमूल्य विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। रन्स बन चुके हैं 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रिक्वायर्ड रन रेट 4.38 का बताता हुआ और लक्ष्य 30 रनों का। गोकुल अभी भी अपना पहला ओवर समाप्त नहीं कर पाए। 2 शानदार विकेट उन्होंने अर्जित कर लिए, 3 मात्र रन्स खर्च किए हैं। पिछले 2 गेंदों में लगातार 2 विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिया है और आखिरी गेंद को लेकर वो आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। और स्ट्राइक पर इस वक्त नए बल्लेबाज अनंतेश आ चुके हैं। उस छोर से ये गेंद आवरण बैनर छोर से अनंतेश के लिए और ये थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद उछल कर आई ऑन साइड की दिशा में, टो के जरिए उछल कर गेंद को खेलना चाहते थे, मिस कर गए। हल्की सी आ निकली, अंपायर ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया और रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। और इसी के साथ पहला ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। करंट रन रेट जो कि 3 का बता रहा है। और मैं समझता हूं कि यहां पर जीएसबी बुल्स कोडियाल बेल के कप्तान ने बहुत अच्छी योजना बनाई। वो जानते हैं कि रन्स कुछ बोर्ड पर ज्यादा नहीं है, ऐसे में शुरुआत के मैंडेटरी पावर प्ले कहीं ना कहीं की फैक्टर बन सकता है। यहां पर वो अपने शानदार गेंदबाजों को आजमाना चाहते हैं और इस योजना के साथ शानदार विकेट्स उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। 3 के कुल योग पर 2 रन 2 विकेट प्राप्त कर लिए गए हैं। तो बहुत शानदार गेंदबाजी जीएसपी बुल्स कोडियाल बेल की तरफ से। वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स के चाहने वालों को मैं कहूंगा, जब लो स्कोरिंग हो जाता है तो एक बार माइंडसेट अलग हो जाता है कि रक्षात्मक तरीके से रन्स बना लें, लेकिन साथ ही साथ जब आप डिफेंसिव हो जाते हो, ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो, तो आपका नेचुरल गेम चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं गेंदबाज समझ जाते हैं कि इस वक्त डिफेंसिव गेंदबाज बल्लेबाजी चल रही है, तो वो बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं और आक्रामक गेंदबाजी करने लगते हैं। ऐसे में विकेट गिरने की संभावना ज्यादा बनती है और इस वजह से कहीं ना कहीं एक आध बल्लेबाज ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल नेचुरल स्ट्रोक्स खेलें। आइए इस गेंद पर आते हैं। नया ताजा ओवर लेकर स्मार्ट बाजार छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हुए। उनकी गेंद लेंथ में ज्यादा थी, ड्राइव कर दिया हल्के हाथ से गेंद को और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा करने का समय मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 4 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। हवा इतनी तेज चल रही है, सामने जो एलईडी स्क्रीन लगाया हुआ है वो भी हवा में झूलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या बात है। ये हेजमाड़ी मुल्की का खूबसूरत मैदान, हवादार कहना ठीक रहेगा। यहाँ पर खिलाड़ियों को निश्चित तौर पर गर्मी का कोई एहसास ही नहीं होगा क्योंकि इतनी तेज हवा यहाँ पर चलती है। 26 चौके अब तक लग चुके हैं, 34 छक्के लग चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा उछलकर बाहर की तरफ निकल गई। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। आइए अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन तैयार हैं और मैं आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करूंगा, अंपायर अगर यहां पर मौजूद हैं तो कृपया टॉस के लिए आए। दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के सामने मौजूद हैं। ये गेंद 1 रन चुराने का मौका बन सकता है, शायद रन्स 4 रन कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों के कैप्टन इस वक्त तैयार टॉस के लिए। उनको उस एक और मंच की ओर जाना पड़ेगा जहां पर ये टॉस की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। और दोनों टीमों के कैप्टन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी टीम बहुत अच्छा करे। इस वक्त 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर क्या कहें। जीएसबी बुल्स तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह से वो बहुत तेजी के लिए जाने जाते हैं और एग्रेसिवनेस के लिए जाने जाते हैं, नाम वही है। इस वक्त वो दिखा रहे हैं कि वो इस छोटे टोटल को बड़ा बनाकर दिखा सकते हैं। इस छोर से आक्रमण पर गेंदबाज नहीं वही गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को चलाया, मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कौशिक शनाई कर रहे हैं। 1 मात्र रन्स अब तक वो दे चुके हैं और रन्स कुल मिलाकर 4 विकेटों के नुकसान पर। मानो रनों पर अंकुश लगाया गया है, कोई रन्स इतने आसानी से नहीं बन रहे हैं। श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है गेंदबाजों पर, कप्तान पर कि सही समय पर सही गेंदबाज को आक्रमण पर लगाना, यह खासियत होती है।
कप्तान की। कौशिक शर्मा आक्रमण फिर से तैयार, उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया बल्लेबाज ने। अंपायर ने इस बार देखा कि कुछ ज्यादा बाहर जा रही है, उसको इस गेंद को उन्होंने वाइड घोषित कर दिया। 1 रन पुरस्कार के रूप में मिले हैं। इस पर ध्यान देने वाली बात होगी जीएसबी को, बुल्स को, क्योंकि इतना अच्छा करने के बाद भी अगर आप अतिरिक्त रन देते हैं तो गफलत हो सकती है। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाद, स्लो आर्म डिलीवरी थी, क्या बात है, योजना बहुत अच्छी थी बल्लेबाज को फांसने के लिए। बल्लेबाज बल्ले को पहले उठा चुके थे, अंतिम क्षणों में गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ गई, बल्लेबाज मात खा गए और कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर गेंदबाज की जीत हो चुकी है। कौशिक शर्मा आक्रमण पर फिर से तैयार, 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्मार्ट बाजार बैनर छोर से 99 के जर्सी में यह गेंद कौशिक के ऑफ स्टंप के बाहर, बार बार वो कड़ी परीक्षा ले रहे हैं बल्लेबाज की, और बल्लेबाज हैं कि वो एक तरह से कहना चाहिए कि बार बार बीट होते जा रहे हैं। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के समाप्ति पर 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैंगलोर की ये खूबसूरत प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2026। पेशे से मैं एक चित्रकार हूं और आप जानते हैं कि चित्रकार अपने चित्र को महान बनाने के लिए अलग अलग रंगों से उसको भरता है। और मैं जीएसबी प्रीमियर लीग को देखता हूं, शुरुआत से आज तक जब मैंने देखा तो जितने परिवर्तन उसमें आए हैं, जिस तरह से उस स्तर को बढ़ाया गया है, ऐसा लगता है कि महान चित्रकार अपने चित्र को और महान बनाने के लिए अलग अलग रंगों से उसको भर रहा है। 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या बात है, इस वक्त बुल्स के गेंदबाज, उनके फील्डर, उनके कप्तानों में जो हौसला है उसकी अफजाई करनी पड़ी है। क्या कमाल का प्रयास वो कर रहे हैं। टारगेट 30 का है, सामने सूरज आकाश में चमकता हुआ आज के दिन के लिए अलविदा कहने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा। आंखों पर फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाज गोकुल। इस ओवर की एक और गेंद को लेकर योजनाबद्ध तरीके से, जी नहीं, सामने वाले छोर से आक्रमण हो रहा है। आभ्रमण छोर से गेंद को लेकर आ रहे हैं, पटकी हुई गेंद थी, उछाल थोड़ा सा धीमा था, समय मिला बल्लेबाज को। आसानी के साथ ऑन साइड की दिशा में उन्होंने आड़े बल्ले से गेंद को मोड़ दिया, 1 रन को चुरा लिया। रन बढ़कर 6 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 for the loss of 2 wickets. सतीश सालियान, गोपी भट्ट, सुरेश भट्ट और यशवंत जी, कहना होगा कमेंटेटर बॉक्स को सजाने के लिए अपने अपने अंदाज में तत्पर हैं। और एक शानदार जुगलबंदी इस वक्त चल रही है। और आइए इस गेंद पर आते हैं, दूर वाले छोर से ये गेंद जड़ में डालने का प्रयास था, लेंथ में ज्यादा थी, अंतिम क्षणों में कलाइयों का और कदमों का सही इस्तेमाल था। ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ दिया जब तक फील्डर आ जाते। 1 रन को बटोर लिया और कुलियों को बढ़ाकर पहुंचा दिया 7 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। मणिपाल टीम के कप्तान ने टॉस जीता है अगले मैच के लिए। निर्णय शायद वो गेंदबाजी करेंगे और ज्यादातर कप्तानों ने यही निर्णय किया है। गोकुल उस छोर से, अब रन बैनर छोर से उनकी गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ पुल किया है। क्या बात है, गेंद टप्पा खाकर लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लग बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये 6 रन। कैमरा मैन थोड़ा सा ध्यान दे, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है। ऐसा लगा कोई इंटरनेशनल प्लेयर, कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है। और इस स्ट्रोक की तारीफ करनी होगी खासतौर पर नागेश की, जिस अंदाज में उन्होंने स्ट्रोक को खेला। पहले इस गेंद पर आते हैं, आभरण छोर से एक और गेंद, थोड़ा सा डिविएशन बाहर निकल गई। अंपायर ने धीरे धीरे हाथ को फैलाया, कहा कि इस गेंद को अतिरिक्त करार देना होगा। जैसे ही चौका लगा, गेंदबाज का विश्वास कहीं ना कहीं उड़ गया। फिर एक अतिरिक्त रन उन्होंने दे दिया, अतिरिक्त गेंद कर दिया। रन बढ़कर 12 पर 2 विकेटों के नुकसान पर। शाम का खूबसूरत प्रहर, आप जानते हैं युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा प्रहर होता है। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो घूमते हैं, फिरते हैं। इस वक्त शाम के 6:05 हो चुके हैं। ये गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट। मिड विकेट में फील्डर आ जाते, इससे पहले दोनों बल्लेबाजों ने
एक रन के साथ रन बढ़कर 13 पर 2 विकेटों के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स ओवर द विकेट शॉट ऑफ लाइन फिर से थोड़ा सा उछल गए और गेंद को पुल करने का प्रयास था गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर पीछा करते हुए गेंद को जब तक समेट पाते दोनों बल्लेबाजों के पास समय कि वो 2 रनों को तेज कदमों के साथ दौड़ लें और इन 2 रनों के साथ रन्स में अभी थोड़ा सा सुधार आ चुका है रन गति में रन बढ़कर 15 पर 2 विकेटों के नुकसान पर सब्र का फल मीठा होता है वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स इस वक्त सब्र का उनका इम्तिहान है 2 विकेट जब गिरे तो लगा कि वो थोड़ा सा बैकफुट पर हैं लेकिन धीरे धीरे संभाल रहे हैं इस वक्त ये गेंद अपील कर रहे हैं गेंदबाज मानो थोड़ा सा झुककर गुहारी लगा रहे हैं अंपायर को कि इस अपील को वो स्वीकार करें लेकिन पाषाण पर पानी का क्या असर हो सकता है इस अपील को खारिज किया साफ साफ अंपायर ने और इसी के साथ लेग बाय के रूप में 1 रन का इजाफा हुआ और रन बढ़कर 16 पर तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज ऑन 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इक्वेशन आपको बता दें बचे हुए कितने गेंदों में कितने रनों की दरकार है और मैं अगर गलत ना हूं तो 14 और रनों की जरूरत है जबकि गेंदें बची हैं कुल मिलाकर 24 बॉल्स टू गो एंड 14 रन्स टू गेट ऐसे में सारे फील्डर्स कुछ बीच बीच में जलपान की व्यवस्था जो की गई है उसका फायदा उठा रहे हैं कुछ योजना भी बनती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ टिप्स मिलते हैं उस एक तरह से कहा जाए कि ये एक बहाना ही हो सकता है बीच में कुछ टिप्स मिलते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए खिलाड़ी आ जाते हैं कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं एक्सपर्ट्स बहुत सारे होते हैं जो डगआउट में बैठे हैं दर्शक भी बैठे हैं वो अपनी तरफ से एक्सपर्ट्स की राय दे देते हैं लेकिन क्रिकेट अपनी जगह है आप अपने प्रेडिक्शन अपना एक्सपर्ट की राय कितना भी दे दे क्रिकेट बिल्कुल अपने हिसाब से चलता है उसकी योजना को परखना बिल्कुल असंभव है निश्चित तौर पर अनुमान को लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये खेल होने और अनहोने का है आक्रमण पर कौशिक शनाई अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर उनकी गेंद को पहली गेंद को उछाल दिया है और गेंद हवा में थी कैच हो सकता था फील्डर थोड़ा सा ढीला पड़ गया अगर तेज कदमों से दौड़ लगाते तो कवर क्षेत्र में शायद एक कैच बन सकता था लेकिन क्या कहें अगर उम्मीद थी कुछ योजना थी कुछ जबरदस्त प्रयास होता तो शायद बात बनती उन्होंने इंतजार किया थोड़ा सा ढीला पड़ गए और बल्लेबाज को अवसर मिला कि रनों को वो बटोर ले रन बढ़कर 17 पर 2 विकेटों के नुकसान पर नागेश भाई स्ट्राइक एंड पर 6 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं अनंतेश ने 10 गेंदों का सामना किया बहुत ही पेशेंटली वो बल्लेबाजी कर रहे हैं मात्र 4 रन उन्होंने बनाए हैं धीरज का फल जैसा मैंने कहा कि मीठा होता है इस वक्त उस मीठे का वो इंतजार कर रहे हैं कौशिक शनाई की एक और गेंद इस वक्त फ्रंट फुट पर गेंद के पिच तक अनुमान में खेला गया स्ट्रोक था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं 1 रन लेने का अवसर मिलेगा बल्लेबाज को इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 18 पर 2 विकेटों के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है आज के कई मैचेस ऐसे रहे हैं जो बहुत जल्द समाप्त हुए ये गेंद कुछ खिलने का प्रयास लेकिन पैरों का मूवमेंट जो था बस फ्रंट फुट तक सीमित था जिसकी वजह से गेंद तक पहुंच नहीं पाया गेंद कुछ ज्यादा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पाया विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया सौंप दिया कौशिक शनाई को बहुत अच्छी योजना के साथ कौशिक शनाई गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर इस वक्त अनंतेश थोड़ा सा ओपन स्टांस है उनका ये गेंद और ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक लेकिन पासे में फंस गए फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हुआ है तो शानदार विकेट के प्रायोजक थे कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की खूबसूरत प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 शानदार गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी जीएसबी बुल्स जब रन्स बना रहा था तब ना मालूम किसी ने सोचा होगा कि क्या इतने छोटे लक्ष्य को क्या वो डिफेंड कर पाएंगे लेकिन पैशन जो होता है क्रिकेट का जज्बा जो होता है वो निश्चित तौर पर काम आ जाता है अटल विश्वास होने की जरूरत है जीएसबी बुल्स के कप्तान और उनके सारे खिलाड़ियों ने एक यूनिटी के साथ बहुत शानदार योजना के साथ कमाल की गेंदबाजी की है लेकिन अभी उनका रास्ता पूरा नहीं हुआ है अभी भी वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स का पलड़ा भारी है क्योंकि 18 रन बन चुके हैं अब सिर्फ 12 रनों की जरूरत है
सिर्फ 12 रनों की जरूरत और गेंदे मुझे लगता है कि इस ओवर में 2 बचे हुए हैं, उसके पश्चात 3 ओवर शेष बचा हुआ है। करंट 100 बता दें 4.91 का चलता हुआ और आक्रमण पर इस वक्त कौशिक शर्मा की मुझे लगता है कि अभी भी 2 गेंदें उनकी शेष बची हुए हैं और स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर विघ्नेश शर्मा आ चुके हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जब भी आते हैं गेंदबाज को भी 2 बार सोचना पड़ता है कि इस गेंदबाज बल्लेबाज को किस योजना के साथ वो गेंदबाजी करें। अपने बॉलिंग मार्क से यानी कि स्मार्ट बाजार एंड से गेंदबाज 99 नंबर के जर्सी में कौशिक शर्मा 1 विकेट वो प्राप्त कर चुके हैं। 4 रनों को उन्होंने खर्च किया है। इस छोर से गेंद इस वक्त खेलना चाहते थे, 1 रन को आनंद फानंद में पूरा कर लिया है। क्या बात है, अंपायर कह रहे हैं कि वाइड का पुरस्कार भी दिया जाएगा। दिशा से भटकी हुई गेंद थी, 1 रन दौड़कर 1 रन वाइड में यानी कि सोने पे सुहागा। 2 रनों के साथ रन पर बढ़कर 20 पर 3 विकेटों के नुकसान पर सही समय पर फ्लडलाइट की रोशनियां जल उठी हैं। दूधिया रोशनी इस वक्त कुछ धीमी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा छाता जाएगा ये रोशनी इस तरह से जलेगी, यह मैदान ऐसा लगेगा कि धरती पर कोई चांद उगाया हुआ है। इस छोर से गेंद शॉट ऑफ लेंथ प्लेसमेंट के साथ गेंद को इनसाइड आउट के अंदाज में खूबसूरती के साथ खेल दिया। थोड़ा सा हवाई रास्ते से गेंद को खेल दिया है। जब तक फील्डर डीप में कवर में गेंद को कवर कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया। कुल रन संख्या को बढ़ाकर पहुंचा दिया 22 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथे ओवर की आखिरी गेंद कौशिक शर्मा थोड़ा सा धीमा पड़ गए। पिछली गेंद बहुत ज्यादा विड था, रूम मिला बल्लेबाज को आसानी के साथ स्ट्रोक में बदलने का और उसका फायदा उठाते हुए नागेश भाई जो काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जम चुके हैं, उन्होंने गेंद को आसानी के साथ हवा के रास्ते खाली इलाका स्थान जो था वहां पर गेंद को खेल दिया, 2 रन खाते में बटोर लिए। इस छोर पर कौशिक शर्मा इस गेंद पर क्या योजना बनाते हैं? दाहिने हाथ से विकेट, बहुत अच्छा स्ट्रोक था, अच्छी तकनीक के साथ खेलते हैं। इस वक्त फ्रंट फुट को आगे ले आए, बल्ले को साथ में ले आए और थोड़ा कलाइयों को घुमाकर बल्ले का टॉप एज देकर गेंद को दबा देने के अंदाज में खेल दिया। 1 रन को पूरा करने का समय था और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आप देख रहे हैं जीपीएल 2026 सीजन 10। दूर आकाश में मात्र एक ऐसा बादल जो सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि सूरज को भला कौन ढक सकता है। पूरी तरह से पृथ्वी को रोशनी देने वाला सूरज इस वक्त धीरे धीरे ढलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और श्रृंखला के आज के मैचेस की अगर बातें करें तो मुझे लगा जो कमेंट्री पैनल है उसमें कई बार ऐसा समय भी आया जब बदलाव करना था, लो स्कोरिंग था जिसकी वजह से बदलाव करने का अवसर नहीं मिला, और जब लो स्कोरिंग था तो पारी कुछ लंबी खींची गई और आखिरकार जैसे तैसे जो अंडरस्टैंडिंग हमें बननी है वो निश्चित तौर पर हमेशा बनी रहती है। 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस छोर पर आक्रमण के लिए दूर वाले छोर से आवरण छोर से गेंदबाज इस वक्त वेंकटेश भट्ट नया ताजा ओवर लेकर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर उनके सामने वही बल्लेबाज ड्राइव किया, आसानी के साथ 1 रन को पूरा कर लिया बल्लेबाज नागेश पर ने। वो बढ़कर 14 पर पहुंच गए, रन बढ़कर 24 पर 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। विघ्नेश भट्ट या फिर कोई और गेंदबाज क्यों ना हो, इस वक्त दो जानते हैं कि अब बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों बल्लेबाज जम भी चुके हैं, खासतौर पर नागेश भाई जम चुके हैं। वेंकटेश तो अभी आए हैं, विघ्नेश तो अभी आए हैं, ये नागेश पे जम चुके हैं। 14 रन बन चुके हैं और रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विघ्नेश भट्ट की एक और गेंद, आवरण बैनर छोड़ से राउंड विकेट, शॉट ऑफ लेंथ थी, शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, बैकफुट पर गए, पंच किया, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ, निशाना चूक गया। बल्लेबाज ने 1 रन को तेज कदमों के साथ पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 25 पर 3 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 5 और रनों की जरूरत है और ऐसे में फिर से नागेश भाई स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गेंद को लेकर विघ्नेश भट्ट कुछ जादू करना चाहते हैं, लेकिन क्या क्रिकेट में ऐसी जादूगरी देखने को मिलेगी? इस छोर से इस मैच में खासतौर पर ड्राइव किया, लोअर फुल टॉस थे, आसान सा स्ट्रोक था और जब तक फील्डर डीप में एक्स्ट्रा कवर में आकर गेंद को बाउंड्री लाइन के पास रोक कर थ्रो कर पाए, दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो 2 रनों को बटोर ले। नागेश भाई 2 रनों के साथ बढ़कर 16 पर पहुंच गए। रन्स कुल मिलाकर 27 पर 3 विकेटों के नुकसान पर 34 छक्के और 27 चौके अब तक इस श्रृंखला में लगे हैं और ऐसे में
फिर से विघ्नेश भट्ट आवरण बैनर छोर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए नागेश भाई के लिए उनकी ये गेंद, और इस वक्त फ्रंट फुट पर डिफेंस करना चाहते थे, पूरा विश्वास नहीं था डिफेंसिव स्ट्रोक में, गेंद बल्ले का किनारा ले गई और जब तक स्लिप कॉर्नर में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते तो दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन को पूरा कर लिया, रन को बढ़ाकर 28 पर पहुंचा दिया। अब सिर्फ 2 रनों की जरूरत है और बल्लेबाजों का हौसला जो कि बढ़ चुका है। विघ्नेश भट्ट अभी भी उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने में लगे हुए हैं, क्रिकेट का ये नियम है। इस बार फुल टॉस गेंद को बहुत स्टाइलिश अंदाज में विनिंग शॉट कहा जा सकता है, कवर बाउंड्री लाइन के बाद गेंद लॉफ्टेड ड्राइव था 4 रनों के लिए। तो इस शानदार चौके के साथ ही इस मैच को वीर वेंकटेश क्रिकेटिस्ट ने जी हां 7 विकेटों से जीत लिया। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। जीएसबी बुल्स कोडियाल बैल को अगले मैच के लिए शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित तौर पर इस मैच में जो रन्स कम बने इस पर वो ध्यान देंगे और अगले मैच में निश्चित तौर पर कुछ और अच्छा करने का वो प्रयास करेंगे। आइए, इस वक्त समय है मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार को देने का और तो आइए, इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को देने का समय है और उस मंच पर जहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है वहां पर मैं वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स के एक ऐसे बल्लेबाज को जिन्होंने धैर्य का उदाहरण दिया, किस तरह से धैर्य से बल्लेबाजी करते हैं, शानदार 17 रन बनाए, उस बल्लेबाज को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है और वो है नागेश भाई। नागेश भाई कृपया बड़े मंच की ओर आए और इस पुरस्कार को स्वीकार करें। आयोजनकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जो हैं उनके जरिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार को नागेश भाई को प्रदान करें। इस मैच में इतना ही। आइए अगले मैच की ओर बढ़ते हैं और अगला मैच जैसा मैंने आपको बताया कि आभरण डायमंड्स और मणिपाल यूनाइटेड टाइगर्स के बीच में शुरू होने जा रहा है और टॉस की प्रक्रिया को पूरा किया है आयोजनकर्ताओं ने। इस वक्त समय विवरण में बदलाव का है और मैं सोच रहा हूं कि बगल में भट्ट जी बैठे हैं, उस छोर पर सतीश जी बैठे हुए हैं और दोनों के मन में चल रहा है कि कौन है नेक्स्ट। मुझे लगता है कि अगली आवाज गोपी भट्ट जी की है, वो बहुत खूबसूरती के साथ प्यारे सुंदर कोंकणी लैंग्वेज में भाषा में आपको आगे का विश्लेषण सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वाजे सर. जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 2026 7 मॅच आता तुमगेले इधर जत्ता सर. आभरण डायमंड्स आणि मणिपाल युनाइटेड टाइगर्स टॉस विन जाऊन फील्डिंग येतील असं पुळका उगुर सूर्यास्ताच्या समय येतास लाइट्स ऑन जाला शानभाग कुद्रून तो जाऊचे या फर्स्ट सीजन तशीच जीपीएल धनचे सीजन तुमगेले इधर जत्तास शानभाग कुद्रू म्हणाले का चंदे का ग्राउंड आणतो हे सगळे जीपीएल उत्सव अशान क्रिकेट मॅच जत्ता असल्यारी तशान फूड कोर्ट किड्स झोन तशीच विंगड कॉम्पिटिशन्स हे पुरे एका कडेन जत्ता आसचे हाजे खातीर जीपीएल उत्सव रितीन हे आयोजन जत्ता सगळे समाज बांधव खुशीरी प्रति एकले चेडू दलमनशे बैलमनशे स्टुडंट्स प्रति एकले येवन हे एन्जॉय करता सची जीपीएल उत्सवाचे हे एक वर्षाचे क्रीडोत्सव हे एक वर्षाचे आयोजन हेजमाडी लगीचे
मुलकी परिसराच्या शांभवी न्हंयच्या पवित्र न्हंयची बरीन जतासच्या तुम सगळ्यांक एक सर GPL धनची वर्षाच्या एक सुसंदर बांधतो या धनची वर्षाच्या एक अविस्मरणीय क्षण कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन हातुलान तांकां सदस्य आला परचेस केलेला स्ವಂತ एक जागे तो जत्ताश ಮುಂಚೆ त्या चमके खुशी परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेल्या जन्मशताब्दी आचरण सगळे वर्ष चोल येईल असं तशीची 12th एक्स्ट्रा प्लेयर मणिपाल युनायटेड आणि आबन डायमंड्साचे दैकोन तुम्ही जलतीतलं बघ घेऊ का हंग प्लेयर्स नाव सांगू का अगत्य जाऊन जाऊ का जाता एक मॅच स्टार्ट करू कष्ट दोन टीमाचे एक्स्ट्रा प्लेयरान एक्स्ट्रा प्लेयरान पळय जलतीतलं बघ घेऊ का मॅच स्टार्ट करू का हंग मस्त कस जाता प्लेयर्स नाव सांगू का कैसाची दोन टीमाचे वगे दैकोन आबन डायमंड्स तुमगेले एक्स्ट्रा प्लेयर जलतीतलं घेऊ का नाव सांगू का बॅट्समॅन विनायक आणि आदित्य स्ट्राईक येतस विनायक तशी नॉन स्ट्रायकर आदित्य फर्स्ट बॉलाची लाईक स्टंपाची मस्त बाहेर येईल तसल बॉल वाईड सिग्नल एक एक्स्ट्रा ಮೂಲಕ आभरण डायमंड्साच्या स्कोर बोर्ड आणतो एक स्कोर ऍड झालेला सर भारतीय दिक्षाट स्ट्रेट ड्राइव केला कोणी ना ते फिल्डर बॉल गॅदर करून ओळच भितरी दोन्ही रन दौदे की बळगा सना मट्ಟ मिसफील्ड जलते जलारी एक रन मात्र मेलता कंचे दोन्ही रन अवकाश नाते लेफ्ट हँडेड आणि ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಗ್ ಜನ ತುಂಗೆಲ ಕಿಸಾ ಮುಕಾರಿ ತುಂಗು ದಿಸ್ತಾ ಸಚಿ ಅತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗೆತ್ತ ಸ हार्ड हिटर आदित्य भट ह्या पटी आभरण डायमंड्स या टीमांत खेळता स नॉन स्ट्रायकर आरी विनायक अस तशीची बॉलिंग घालू का सुजित फर्स्ट ओव्हर सुजित मणिपाल युनायटेड टायगर्स तुलाना घालूक तयार झाला आदित्यना चंद एक ड्राइव केला सीध वापस स्टॉप केला या पडी खंचे फील्डर राहते बॉल ड्राइव जाता स बाउंड्री लाइन लगीची बाउंड्री लाइन वचाका खंचे ते चूकिना 4 रन फर्स्ट बाउंड्री आभरण डायमंड साक मेलता से 4 रन ಔಟುಚಿ स्कोर येऊन पाविल स तुम स्कोर कार्ड दिसता कमेंट्री बॉक्स लगी तशीची युट्यूब आनी तुम्ही पुढे येता 5 बॉलाक 8 रन झाला खंचे विकेट काढून घेनाशी या ओव्हराच्या अखेरीची एक बॉल बाकी वरला लास्ट बॉल कसं जत्ता पळो का सदा मटा टिप्प जलालते बॅट का तस दिसता अंग साऊंड ऐकला ह्या जोटोची एक ओव्हर मुक्ताय झाला एक ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 8 रन तशीची 7 मॅच जत्ता स ಒಟ್ಟು 12 मॅच 5 दिवसा जावचा स हाजी नेक्स्ट ह्या मॅच नेक्स्ट टेंपल स्क्वेअर पुत्तूर आणि उडुपी ब्लास्टर्स हांगेल मध्ये तो मॅच जत्ता दोन टीमाच्या या इनिंग्स ब्रेक आणतो टॉस घेऊ का त्यानंतर 9वा मॅच कोडियाल सुपर किंग्स आणि वडलंगी फायटर्स मुलकी धनची मॅच मुंबई पल्टन्स आणि जीएसबी बुल्स कोडियाल बैल इकरा मॅच जीआरएस फॅन्टसी पार्क मैसूर वॉरियर्स आणि आभरण डायमंड्स तशीची 5 दिवसाचे लास्ट मॅच रॉयल चॅलेंजर्स बाळंबेटू आणि टेंपल स्क्वेअर पुत्तूर आज 12 मॅच तशीची 5 मस्त मॅच सकट जाऊच्या असं त्याची परा म्हळ्यार एप्रिल 12 तारीख क्वार्टर फायनल्स सेमीफायनल्स तशीची फायनल 3rd 4th मॅच आपले लायक पंजाट 12 तारखे जाल्यारी जावचास हे एक प्रशस्ती सुत्ता अंतू ಒಟ್ಟು 16 टीम या पटी 2024 2026 इसवीच्या GPL सीझन ದಂತಂತು भागी घेतास कर्नाटक तेलंगाणा महाराष्ट्र केरळ विंगड कडेन तुला नाही तसला टीम्स प्लेयर्स एक कडेन शानभाग कुद्रुमळल जागे अंतू एक कडेन ಒಟುಚಿ ಜಾಯಿನ್ जावन या सीझन केलता आदित्य भटान लॉफ्ट केला खंचे फील्डर ना ते 4 रन मेलता बाउंड्री धवलची बाउंड्री विनायकाला बॅट तुला नाही जाल्यारी आत्ताची बाउंड्री आदित्याला बॅट तुला नेतास दोन्ही ओव्हराच्या पॉवर प्ले तुमगेले द्रास्ता
दोन्ही ओव्हर पॉवर प्ले जल्दीतली स्कोर कोर का म्हणाले का इच्छा प्रति एक टीमाच्या असता आबर्न डायमंड्स 1.1 ओव्हर्स 12 विदाउट लॉस झाला आणि 5 बॉल या एक ओव्हर अंतवरला पळो का 5 बॉलांत किती रन काढताची म्हणून वापस लॉफ्ट केला सीधा बाउंड्रीला बाहेरी सिक्सर आदित्य भट लेफ्ट हँडेड बॅटर भारी चंदेक ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೈ ಹಂಗ ತುಲಾನ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಾची सांगू येत आशिल्ले खंडित बॉल बॉन्ड लेन क्रॉस करता डायरेक्ट म्हणून सांगून त्या प्रकार प्लेयर डगआउट वैरी बॉल पावून सरन खंचे फिल्डर आशिल जाल्यार अवकाश खंडित साध्य नाशिल्ले या कॅच दवरूक भारी लायक एक बॅटिंग आदित्य भटाला बॅटातून आमकां पळोवचा मेळतास वापस अनेक लॉफ्ट केला जलारी ह्या पटी बॅट्समॅन बीट जाला कनेक्ट जाला जलारी लायक खंडित शॉट आशिल्ले आदित्य भट एक लायक एक हार्ड हिटर तो सनप्रेयचो उदयोन्मुख आटगारू म्हणून सांगू येत खोड्यालचो प्लेयर आदित्य भट विंगड टीम अंतू बरी बॅटाक सम कनेक्ट जायनी एक रन मात्र मेळता खंडित या पॉवर प्ले अंतू बाउंड्री सिक्सर साक प्रयत्न करता रसाची प्लेयर्स जलारी तसले एक लायक बॉलिंग दोन्ही ओव्हरांतू आमकां पळोवच्याक मेळता सांगा 1.5 ओव्हर्स 220 विदाउट लॉस यूट्यूब अंतू यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड चॅनल अंतू या मॅच जाता असल्यारी हंगा तुम्ही ग्राउंडा सुत्तू एलईडी डिस्प्ले अंतू लाईव्ह पळो येता स्कोर डिस्प्ले जाता आसा ताजेवटूची विंगड स्पॉन्सर्स तांगेले एडवर्टाइजमेंट तुम्ही या ग्राउंडा सुत्तू बोंडलेना भायर पळो येता लॉफ्ट करू प्रयत्न लौड अपिला ಬ್ಯಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಲ ಖಂಡಿತ ಟಿಪ್ ಜಲಾಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹಂಗದ ಏಕಲ ಔಟ್ ಜಾವನು ಪ್ರಥಮ ಸಫಲತಾ या मुखांतर आबर्न डायमंड्साच्या विनायकल ಮೂಲಕ मणिपाल युनायटेड टायगर्स अंक मेळतास दोन्ही ओव्हराचे हंग मुक्ताय झाला 2 ओव्हर मुक्ताय नंतर करेक्ट 10 रन एव्हरेज जारी आभरण डायमंड्स खेळतास भारी संदेक वातावरण निर्माण झालेलं असं दक्षिण कन्नड उडुपी भागांत तुमका गोतस विपरीत शाख या समयांतू सकाळ तुलान ह्युमिडिटी तशीची शाख मस्त शिला या सकाळ तुलान प्लेयर्स या शाखे खेळता आशिल्ले जाल्यार आत्ता संजवळ तुम्ही पळो येता हे एक शांभवी न्हंयची बरीन हे एक ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹ್ಲಾದಕರಣ वातावरण आता निर्माण जातास ಸ್ವಲ್ಪ थंडाई सूर जाला सूर्यास्त जातास अशाण सकाळी नाही रात्री नाही म्हणाल म्हणके वातावरण हांगा निर्माण जालेलं आसा तशान सूर्य तुम्ही पळो येता अस्त जातास अशाण फ्लड लाइट्स ऑन जाला ಹೊನಲು ಬೆಳಕು ಮಳ ತಶಿಚಿ ಹೊನಲು ಮಳ ಸಕಾಣಿ ಹೊನಲು ಮಳ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕು ಮಳರಿ ತಾಜಿ ಉಜ್ವಾಡ खेळत ಅಸಲ ಸಕಾಣಿ आणि ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ घेऊन ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ म्हणून तुम्ही ऐकून शपुर सकाळ आणि रात्री सकाळच्या सूर्याला उजवाडाक तशीच रात्री फ्लडलाइट उजवाडाक खेळत असेल एक पंद्याट हे जावन अस प्रति एक सीझन अंतू तुम्ही पळो येता 3 दिवसाचे हे एक पंद्याट एप्रिल 10 11 12 एप्रिल 10 11 12 3 दिवसाच्या पंद्याट तशीच जीपीएल उत्सव हंगा चलता रस भारी छंदेक बॉलिंग ती तिन्ही ओव्हर घालुवायला आदी पै कुंदापुरचो आदी तिन्ही ओव्हर घालतास लॉफ्ट केलास फील्डर अस लॉंग ऑन एक रन मात्र मेळता दोन्ही रन खंचे अवकाश ना सेफ हँड्स ऑन द बॉल अस लायक एक स्कोर करू प्रयत्न दोन्ही ओव्हराच्या सुरे पॉवर प्ले अंतू तांणी 20 रन मारला म्हळ्यार 10 रन एव्हरेज जारी खेळता आशिल्लीची आता 2.1 ओव्हर्स जाला 2.1 ओव्हर्स अंतू स्कोर 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळाच्या जी नंतर दोन्ही राउंड दोन्हीच्या मॅच प्रति एक टीमाच प्रारंभ जाता क्रुशियल स्टेज उगुर आणि प्रारंभ जाता असं तशी आजी मध्यरात्री जाऊची पंद्याट अंतू तुम्ही सकडाने हंगा उपस्थित असू का क्रिकेट मात्र यशान विंगड स्पर्धा आयोजन जाता अस किड झोन अस कॉम्पिटिशन जाता अस रात्री 3 रत्न आजी ख्यातीचे 3 बुत्तूरगळू आजी कलाविद गुजरी गोविंदू म्हणाले हास्यमय नाटक फूड कोर्ट गेस्टचे एंटरटेनमेंट कोर्ट अंतू त्यांनी प्रस्तुत करता असं एक नाटकही तुम्ही पळो का म्हणून तुमगे लागी निमगून घेता असची अशी प्रति एक विषयांत एंटरटेनमेंट हंगा जाता असता आदित्य भट लायक एक ड्राईव्ह केला 1 रन मात्र मेळता 2 रन ट्राय केल्या जाल्यार ना रिस्क घेवच्या तयार राजकांचे प्लेयर्स
आनीक 7 ओव्हराचे पंद्याट बाकी 7 ओव्हराचे पंद्याट अंतू जतितीस रन स्कोर कोरका लायक एक टार्गेट मणिपाल टायगर्स अंक दिवका म्हणाला एक प्रयत्न आबन डायमंड्साचे खंडित जाऊन असं पळोका आणि बरलाय लगी लगी 4 आणि चिल्लर बॉलिंग असं आणि लॉफ्ट केला खंचे फिल्डर राहते बॉल बाउंड्रीला वतासा अंपायर सिग्नल आम्ही वेट करता सची बाउंड्री लेनाचे जस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖಾರಿ ಪಿಚ್ ಜಲ ನಿಮಿತ್ತ 2 रन उणी मेळ्ळ्या म्हणाले 6 वचनी 4 रन मेळतास बाउंड्री या ಮೂಲಕ भारी चंदेक बॅटिंग प्रदर्शन ते वसंत नायक जीपीएल सीझनाच्या सुरुवे सीझन तुलाना खेळतास नॉन स्ट्रायकर आरी आदित्य भट्टस दोग जणे लायक एक बॅट्समॅन आ बಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ लॉफ्ट करू प्रयत्न सीधा कीपर आला ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ लावताच बॉल ड्राइव जातास बाउंड्री लाईनला बॉल गॅदर करून बॉल उडोच भितर 2 रन कंप्लीट केला 3 रनाक प्रयत्न केले सनामट जाल्यारी रनिंग ಸ್ವಲ್ಪ स्लो असेल आणि ಸ್ವಲ್ಪ रिस्की असेल त्या रन तस देखून 2 रनाक मात्र संतुष्ट जावक झालाय हंगाक 3 ओव्हर मुक्ताय झालेला 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट रात्री मध्यरात्री ते जाऊच्या असं पंद्याट हे सगळे पंद्याट तुम्ही असू का आणि 2 मॅच नंतर प्रति एक टीमाच्या दोन्ही मॅच 5 दिवसाचे प्रारंभ जाता आणि क्रुशियल स्टेज स्टार्ट जाता प्रति एक गावच्या टीमाच्या तुमगेल टीमाक सपोर्ट करताच ह्या एक जीपीएल उत्सवांत भागी जाऊ का म्हणून निमगून घेतास तशीची 3 ओव्हर मुक्ताय झाला 3 ओव्हर मुक्ताय नंतर 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आदित्य भट्ट स्ट्राईक घेतास ಒಟ್ಟು सॉल टीम ह्या एक जीएसबी प्रीमियर लीग अंतू भागी घेता तुम सगळ्यांक गोतस तशीची फाई संजवाडा विशेष जाऊन आशिल्ल्या शांभवी आरती म्हणाले एक कार्यक्रम जावचा आसा काशींतू हरिद्वारान सकड तुम्ही आरती पळोवन आसा पुरो गंगा आरती तसले नमनाचे एक विशिष्ट आरती उत्तर कन्नड भागाचे एक परिणत जाऊन आशिल्ल्या आरती कोरचे एक थंड हंग ह्या स्थळांत येताची तुम्ही येताना ब्रिज पळयल्या पार्किंग जाऊन एक ब्रिज तुमकां दिसली ते तात्कालिक जाऊन निर्माण केला तसले एक सेतू आहे त्या सेतुवेंतू फाय संजे 7 गंटेक विशिष्ट निमित्तून जाऊन आशिल्ल्या शांभवी आरती चलचास वापस लॉफ्ट करू प्रयत्न केलाय कंचे फिल्डर असेल ते जाल्यार आदित्य भट्टाक एक धैर्य त्या फिल्डर माता वेळतुलन जाल्यार मारची एक बल मकास म्हणून सांगून करेक्ट ते 2 जण रबयला ताणे एक प्रयत्न केलेला एक स्पॉट आणतो जाल्यार तागेले एक कॉन्फिडन्स पळयला रे खंडित ताक एक बल असा वैरी तांगेल्या पेटयता म्हणाल धैर्य ताकच म्हणून तसले एक सामर्थ्यशील तसल खंडित लायक एक हार्ड हिटर तो आदि भट ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರು गांवचो मंगळूरांतू असं शिक्षण करता असं कॅनरा कॉलेजांतू लॉफ्ट केला जाल्यार बॅटा कनेक्ट जायती रन आउटाक अवकाश आउट यो नक्का म्हणून सांगून सना म्हणटा ती कन्फ्युजन जाल्लें बॅटरा कळली बॉल खंय गेला म्हणून जाल्यार ह्या संदर्भांत असल एक लायक विकेट खंडितय आदित्य भट्टाल मेळ्ळा म्हळ्यार लायक एक सफलता मळपे युनायटेड टायगर्स हांकां मेळ्ळा म्हणून खंडित जावन सांगू येता स्कोर बोर्ड तुम्ही पळयता सची 3 पॉइंट 2 ओव्हर्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स स्कोर पळोवचा गेली म्हणजे खंडित लायक एक एवरेज जारी आभरण डायमंड्स गेलतास आदित्य भट्टाल विकेट वचूक आशिल्ल्या मल्पे युनायटेड टायगर्स तांकां इता म्हळ्यार हॉट एक स्कोर घालच्याक भायर सरलेले आदित्य भट्टाल विकेट खंडित जावन अत्यमूल्य जावन मल्पे युनायटेड तांकां मेळ्ळा म्हणून खंडित जावन सांगू येता तुम्ही पळयत मणिपाल युनायटेड टीमा तांकां मेळ्ळा म्हणून सांगू येता सूर्यास्त जातास सूर्याला सन एक दृश्यमान दिसतास मोडान तू आता त्यावेळी धंपून गेलाय सूर्यास्त जावन आनी मुखारी प्यूर फेडलेटरी हे पंद्याट जावचार आसा आनीक रात्री म्हणताना भारी चंदेक वातावरण हांगा निर्माण जाता
ते एक लाईटा उजवाडांतू लाईटाच्या एक लायक एक वातावरणांतू त्या मॅच पळोवचेची भारी खुशी तेवे असल एक ग्राउंडांतू खंडित तुम्ही मॅच पळोवपाचीच 9 बॅटर अनंत शणै बॅटिंग आयिल्लो आसा बेंगळूरच्या गांवच्यो उडपा गांवच्यो बेंगळूर टिमा सकड खेळला विंगड गांवची टिमा सकड खेळला फुडल्या GPL सिजना पुरय ಮೂಲತಃ ಉಡುಪಿ गांवचो आता ह्या पटी आभरण डायमंड्स उडपाचीच टिमाक खेळचे एक अवकाश मेळाला आसा तशीच टिमाचे कप्तान जावनूय आसा आयकॉन प्लेयर 1 रन मेळता 1 रन ओटूची स्कोर बोर्डान तुम्ही स्कोर पळयता आसाची 3.3 overs 30 for the loss of 2 wickets 3.4 overs या ओव्हराचे दोन्ही बॉल बाकी वरला आणि वाईड नो बॉल घालनी म्हणजे केवळ दोन्ही बॉल या ओव्हरांतू बाकी वरला बॉलिंग लुक आदेश लॉट कर प्रयत्न बॉल बोर्ड लाईनला वत्ता कंचे फील्डर ना ते 4 रन बॉल कंची डायरेक्शन येईल की तसले डायरेक्शन आणतो रिवर्स स्वीप मारू कंचे फील्डर ना म्हणून तसं लायक एक प्लेसमेंट ते वसंत आला 4 रन मेळाला सा आभरण डायमंड्स टीमा तांका हात जोटूची स्कोर मुखार वत्तास एवरेज मुखार वत्तास लायक एक हंतांतू लायक एक सिच्युएशन ಅಂತ ಇವನು ಆಭರಣ ಡೈಮಂಡ್ ಪೌಲ ಅಮೌಂಟ್ ಸಂಗುವೇತ 3.5 overs 34 ರನ್ लगीची 9 रन एवरेज जारी खेळता असाची वापस लॉफ्ट कर प्रयत्न कंचे अवकाश नाते बॅट्समॅन कंप्लीट बीट झाला हजोटूची 4 ओव्हर मुक्ताय झाला 4 ओव्हर मुक्ताय नंतर स्कोर 34 2 विकेट काढून घेऊन आभरण डायमंड्स तशीच मुखारच्या कमेंट्री दिवचाक श्रीयुत सतीश सालियान हंकाम प्रीतीनं आमंत्रण करतास Thank you so much, Gopi Bharji, for your wonderful cricket commentary in Konkani language. The Habaran Diamonds, after completion of 4 overs, they are looking in good position, and 34, and they lost 2 wickets under this condition, under floodlight. Definitely, any score around 55 to 60 plus runs are definitely going to be a good score to depend in this condition, because condition will going to change here, and performing under floodlight and performing under natural light is always going to be a different ball game, and that's what Manipal Diamonds Manipal United Tigers have to be very careful in the remaining 3 overs, because any runs after this, the 3 overs I am just talking about, if we manage to get another 25 runs here, and the target will be 60 plus, and that will going to be a good enough in this condition for any depending team. And so it's a very crucial for both the teams, and Abaran Diamonds just wanted to get 20 plus runs in the remaining 3 overs. At the same time, team Manipal United Tigers just wanted to restrict their opposition less than 50. That's what they needed to do here. 32 boundaries so far in this cricket tournament. Aditya Pai brought into attack to bowl the 5th over in fact, and first ball. So I'm just trying to play that one across the line. And Vasant Anand Shanai picked up a single in that occasion, tried to get that one onto the mid-wicket region. Doesn't get hold up that one properly, but good enough for him to pick the single. So with that single, Skoban moves on to 35 for the loss of 2 wickets. So weather condition seems to be a similar. Of course, sun almost completed the journey from east to west, and under light, this ground looks so beautiful. This time, this ground looks so beautiful, and this stroke is much better than that. It's more beautiful, isn't it? What a lovely shot, just shuffled across the line of the delivery, swings it away down to deep square like boundary for a maximum. Now the wind will go to flow in a different way.
The move for morning, I think the ball is the wind which is flowing to right side of our community box. Now the wind is flowing in a different, the opposite area down to onside region. And this is what we can watch in our main stage. We are watching the dignitaries, the people behind this cricket tournament. They are absolutely very happy because quite understandable. After that, lot of hard work. It's not an easy job to come here and organize the cricket tournament. And all we can see that within 2 months, they prepared such a wonderful condition here for the cricket. And definitely the 10th year of this cricket tournament, one of the most memorable day for GSP Premier League by Cordial Sports Association Mangalore. Nicely played it down to extra coverage and for a single. With that single scored moves on to 42 for the loss of 2 wickets. We were watching Naresh Shana and Naresh Prabhu. All we can see that dignitaries in the main stage enjoying the game of cricket. Again, ball just kept low in the last moment. Anand Pai operated from the far end and the ball which is kept low. So batter couldn't manage to take the advantage of that delivery which is outside the line of off stump. This time, catch it is a call and mid-wicket fielder making no mistake at all. Well. Looks like the one stage, it looks like going to be one more maximum. But he maybe just choosing one of the longest part of the cricket ground in the deep mid-wicket region. Rajesh, but the catcher is making no mistake at all. Almost drags it from outside the line of off stump. That's why he didn't got that much of distance what he is looking for. He got the elevation, but fails to get the distance. The fielder in the mid-wicket region making no mistake at all in the negation. That's the end of Anand Shanai. 42 for the loss of 3 wickets. Over number 5 which is comes in, and now another 2 overs remaining in the innings. Manipal United Tigers winning the toss, selected to field first. Already 42. This has been a great over, and the previous over, of course, 6 pitches came from that over, but he got the wicket of Anand Shanai in the same over. 8 runs came from that over. Altogether, Aditya Pai's 2 overs spell, or 2 overs no maiden. 17 runs he conceded, and he picked up a 1 wicket. Adesh Bhatt brought into attack to bowl the penultimate over, the over number 6. The previous match won by Veera Venkatesha cricketers against GSP Bulls Kodial Bail. Adesh Bhatt, one more very recognized player. Bowled very well in the first over with the 4 runs and a wicket. This time lovely delivery right on the block hole as the batter tried to get that one into the onside region. Leg by call by umpire Dikshit in his own style. Kicking his right leg 2-3 times. One of his unique way of giving the decision. One of the most entertainer as far as the field umpire is concerned. 43 for 3. Adesh Bhatt. Swimming away from us to the left-hand batter. Nikhil is a new batter. Will going to take the strike. His first delivery. This time tried to pull that one, but he played it down to mid-wicket region because not that much of short enough for Nikhil to get that one into the square leg region. But he just went with a stroke. Played it down to mid-wicket region for a single. He's off the mark with a single. Scored moves on to 44 for 3. Adesh Bhatt will not going to bother about these singles. You know exactly the restrict that big shots in this over. A slower one, but very effectively bowled. And Vasant Naik completely received with the slow bouncer. Extra bounce as well for Adesh Bhatt. Lovely delivery there from Adesh Bhatt. Needed to be sometime when you are having a 7 hours game. Little for the bowler, but more for the batter. And the experiment is so important for the bowler.
but you need to be very careful when having the experiment. You need to be very accurate when you are bowling that slow deliveries. Oh my goodness! The wicket keeper behind the stump. I think he missed it. Held the edge, isn't it? Held the edge. Straightforward opportunity is gone in vain. Karthik, one of the safest pair of hands, wicket keeper, making a mistake, isn't it? Always is not a regular wicket keeper, but in this particular match, need to do the job as a wicket keeper. A very good outfielder, but I couldn't manage to hold that one. I missed it completely. Once again, slow delivery, fantastically executed. Opportunity of run out, missed out by Karthik. Not only missed the stump, but he's conceded extra run as well. This is not a good cricket. Leg by call by umpire Dikshit again. That will going to frustrate the bowler, isn't it? Where it is going to be a 1 run at least, or a chance of run out. The couple of runs which is completed here, 2 leg byes, will going to frustrate the bowler. 47 for 3, the last time in this over. Pitch it is attempted again. Wicket keeper misses a chance of run out here. Again, they completed single. Now I think that's the inside edge of the bat. One more addition to total. Lovely over there from Adesh, but excellent over. If you see this over, the only few runs came from the bat. All the extras. The great spell there from Adesh, but 2 overs, no made, and 7 runs, no wicket. But I'm not talking about is unsuccessful. We were very successful because 3.5 runs per over. The economy. Always, it's been a great spell for any bowler when it's going to be a 7 overs game. It's 48 for loss of 3 wicket after completion of over number 6. The different view of this cricket ground, it is definitely going to be a different scenario. Watching this cricket ground in the morning in the natural light, and you're watching this particular cricket ground under floodlight. It looks so beautiful. Such a fantastic arrangement is made here. Left of our commentary, because you have the big food court, the varieties of foods available, some entertainment as well. Altogether, festival atmosphere here in this beautiful Shanbag Kudro Island, HMRD Mulki. And really making a history. The Kudial Sports Association Mangalore in their glorious 10 years of journey. Amgare Abaran JPL Utsav starts very well. This is the first day of this cricket tournament and the first match under light. The 7th match of the day. Last over going to start from the far end. The bowler brought into attack to bowl the last over, Ramchandra. One more experienced campaigner from the Abaran Jeweler end. They will going to start the final over of their innings, the innings of Abaran Diamonds. Oh, this time shuffled across the line after delivery. The intention of the batter to get that one very fine. Fine leg inside the ring. By call by umpire. One more extra. With the addition of that extra, Skobana moves on to 48 for the loss of 3 wicket. Ramachandra brought into attack. He bowling his first over. The last over of the innings of the team Abaran Diamonds. Left and right combination. And slight a bit of headache here for the captain of the position, and even for the bowler to change the field set every time the strikes are rotated. They have to change the field set. Vasant Nayak looking so good so far. He's batting on 19 in 10 deliveries. Beautifully ball. Fantastic delivery, isn't it? The ball is just missed the stump by Whisker. Beautifully executed Yorker and delivery, but ball just misses stump. Lucky escape here for the batter, Vasant Naik, as he tried to shuffle across the line after delivery. And good to see the bowler is absolutely aiming that leg stump of the batter in exactly what the batter is trying for. The last 4 deliveries remaining. Ramachandra. Balls off the back foot, played it down to deep, long on.
The wide is long on a fumble from the fielder. Already there, complete a couple of runs. Ramachandra desperately wanted to come back for the second just because he just wanted to retain the strike in the last over. He's the one, a settled batsman. 50 comes of here for the team Havaran Diamonds. Under light, the 51. I think it's a good score. Another 3 runs, 3 deliveries remaining, but good comeback by the bowlers. Manipal United Tigers, the last 3 overs they bowled well. They brought some good overs. Ball kept low in the last moment. It can't do anything sometime. You can see that all in sudden batters started to see the devils in the pitch. Till the evening, this has been outstanding condition for the batters to bat on, but all in sudden when the lights are on, we can see some kind of movement, and even the balls are kept low as well. Last couple of deliveries remaining. Vasant Naik. Once again, lovely delivery. Right on the block hold again. Absolutely good one there from Ramchandra. This time they're going for the second. This is one more sensible thing you need to do here. When you were dealing in the final deliveries of the over, if you wanted to keep the strike, of course the batter had to sacrifice his wicket, Nikhil, in the form of run out. But they completed single, but Vasant Naik is back on strike. It's 51 for the loss of 52 for the loss of 3 wicket. Last ball remaining. Now this is going to be last delivery, one of the outstanding last over. Couple of runs, only couple of runs. 2 balls remaining. Correction. And well, Ramachandra, the watching the non-striker, is already starts his run. Adarsh. Full toss. This time he got a bat onto that. But only the single, not a couple. Now Vasant. The young man has got no idea. Young man has got an idea, but it is the last delivery of the over. But so they have to go for the run. So that's it. The good comeback by the bowlers of Manipal in the last 3 overs. But still, Havaran Diamonds got enough runs. The 52 they managed, 53 they managed to score. And they set a target of exactly 54 to win this match. The 54 to win this match for the team Manipal United Tigers. And wait and see how well Tigers will go into roar under light. It's not so easy for the batters sometime. I think the nature, which is, of course, we are watching all 9 edition in Sahyadri Cricket Ground. There also dew factor which comes into play, but I'm not thinking about the dew factor here. I'm not seeing any kind of dew because this is the month of April, very hot condition, no question of having a dew, but probably we were having the 9 edition, we were witnessing some dew factor because the tournament is organized in the month of December or January. That time I think the dew which comes into play, but now it's the month of April. We will not going to do anything here, the dew factor. So that I think the 52, it's a very good total. The competitive total put on by 53, in fact, put on by team Havaran Diamonds. And wait and see how Manipal United Tigers will going to get this total. We'll take a short break here in commentary box, and after short break, we have another 2 gentlemen in our commentary box. Welcome for Suresh Bhatji as well as Yashwant for the further explanation of this particular match. Thank you. Thank you very much, Satish ji. Havaran Diamonds तशींची मणिपाल युनायटेड टायगर्स मध्ये GPL सीझन 2 match number 7 चलतर आज नंतर टेंपल स्क्वेअर पुत्तूरू will be playing against उडुपी ब्लास्टर्स. 2 टीमांचे प्लेयर्स रेडी असुका. टेंपल स्क्वेअर पुत्तूरू आणि उडुपी ब्लास्टर्स match number 8 अंतू मुखामुखी जाता.
सो आता 54 रन्साचे टार्गेट असं टीम मणिपाल युनायटेड टायगर्साक रन रेट पळयल म्हणजे जाल्यार 7 रन पशी चड 7.7 इज द रिक्वायर्ड रन रेट. मस्त एक हॉट टार्गेट नाही जाल्यार आबरण डायमंड्स एक बलिष्ठ टीम लायक बौलर्स आशिल्ली टीम. अनंत शेणाय आगेल्या कॅप्टन्सीन तू कॅप्टन जावन लीड करता सो आबरण डायमंड्साक. सो फर्स्ट बॅटिंग केलेल्या आबरण डायमंड्साच्यान 53 रन्स स्कोर केला. वसंत नायक टॉप स्कोरर जावन आशिल्लो 15 बॉल फेस स्कोर 22 रन्स स्कोर केले. तशींच आदित्य भट्टान 14 रन स्कोर केला 12 बॉलांतू. सो ತಂಗೆಲ್ दोग बॅटिंग निमित्त 53 रन स्कोर केला आबरण डायमंड्सान. सो 54 रन्साचे टार्गेट पळोवया कशी हांगा चेस करता मणिपाल युनायटेड टायगर्स. फर्स्ट टाइम GPL अंतू एंट्री घेतस पादार्पण घेतला मणिपाल युनायटेड टायगर्साच्यान एक नवे टीम हॉड एक टार्गेट अस. सो ओपनर्स ऑलरेडी क्रिसारी रेडी जाल्ली मणिपाल युनायटेड टायगर्सा तर्फेन दोग जण ओपनर्स क्रिसा ऑलरेडी एंट्री घेतला. फर्स्ट ओवर प्रारंभ जातस आबरण एंडा तर्फे दोन बौलर रेडी जाला बौलिंग घालूक. आदित्य भट लेफ्ट आर्म मीडियम फेस बौलर चिक्के स्लो जावन आयिल्ले बॅट्समॅन बीट जातस बॉल बॅटा मेळतना पुंडलीक पाय क्रिसारी ओपनर जावन हार्ड हिटिंग स्किलाक मस्त नाव पविले एक प्लेयर पुंडलीक पाय आक्रमणकारी स्ट्रोक्स खेळत असला एक प्लेयर मस्त एक्सपिरियन्स क्रिकेटर सीनियर मोस्ट क्रिकेटर म्हणून पुंडलीक पाय क्रिसारी. ह्या फाटी नेलार ग्लाइड केल्या टवर्स दी पॉइंट मारून 1 रन आराम से धावन कंप्लीट केला. पुंडलीक पहिले अकाउंट ओपन जातस तशींच मणिपाल युनायटेड टायगर्साचे अकाउंट ओपन जाला. मणिपाल युनायटेड टायगर्साक 54 रन जावका आणि वरल्या 42 बॉलांतू. ह्या एक मॅच मस्त क्लोज फिनिश जावन आसता म्हणून म्हाका दिसतस. त्याची एक निरीक्षरी सक्कड आमगेले क्रिकेट स्पेक्टेटर्स निरीक्ष करतस ती ह्या मॅच एक नेल बायटिंग फिनिश जावो एक इंटरेस्टिंग मॅच जावन आसुका म्हणून पुराय जण निरीक्ष करतस ती. आदित्य भट्टाला नेक्स्ट बॉल पुंडलीक बाईने हॉट शॉट मारचे प्रयत्न केला बॉल वारेर आसा कॅच जाता की पळोवक फिल्डर आसतय लायक एक कॅच फिल्डरान लॉंग ऑन आशिल फिल्डर सोहन कामताना खंयचे चुकी करनी लायक कोण जज कोण कॅच जावन कन्वर्ट केला. सो फर्स्ट विकेट पडतो सांगा हॉट एक आगत मणिपाल युनायटेड टायगर्साक. पुंडलीक पळयत आसले एक विध्वंसक बॅटर आउट जाला लायक एक कॅच जावन आशिल्ले सोहल कामताला करेक्ट जावन जज कोण कॅच केला. सो त्या कॅचा बग्गे आणि विकेटा बग्गे तुमगेल विश्लेषण यशवंत. That was a fantastic catch, but let me put it together on this. Select time on to at this moment of the day, especially when the sun is just setting down and we have the floodlights up here, it would be really difficult to sight the ball and get the hold on it. We should really give that fielder, whoever was there, Suhan Kamath from Bangalore. He did a fantastic job there. A good catch always helps to win their matches. And we are down with 1 wicket at the rate of at the score of 2 runs. We just have 2 more balls to be bowled in this over, and the bowler is ready on the Abaran end. उपास आदित्य भट्टन गेल्या बॉल हॉड एक शॉट मारचे प्रयत्न केला बट या पटी कॅच जायना बॉल गेला वैरी बायरी आणि दूर सरनाक मॅक्सिमम. That's a big shot. It's been hit outside the boundary. Gets a 6-run to his team. With this, the score leaps to 8. We are just left with 1 more ball to be delivered in this over from the Abaran end. The last ball of this over. लास्ट बॉलांतू लायक एक सफलते मेळ्ळेले आदी भट्टाक बट ह्या बॉलांतू पनिशमेंट मेळ्ळा. सीधा लायक कोण स्लॉट येवन पिक करून भायर पेटयले सरन काडले. कार्तिक प्रभू अनेक हार्ड हिटर पिंच हिटर ऑफ मणिपाल युनायटेड टायगर्स म्हणून म्हणत फर्स्ट बॉलान तुझी गेले आक्रमणकारी स्ट्रोक खेळचे ताणे स्टार्ट केलेलो. सो ओव्हर एंड जाला सुरवे ओव्हर नंतर फर्स्ट पॉवर प्ले एंड जाला सुरवे ओव्हर नंतर मणिपाल युनायटेड टायगर्सचे वट स्कोर 9 with 1 wicket down. The man out is Pundalik Pai. It would be a tough time for Abaran Diamonds here. They have lowest score. It's not the lowest of the tournament or the day, but definitely 53 is an achievable target here.
they have to put their best bowler who would be bowling the second over during the power play. And this over can decide what would be the next couple of overs that may be hit here. It's a very crucial over of this innings. They need to make sure that they control that, and the captain brings in the best bowler of his team, who would also get the benefit of the wind. It's a bit unfortunate. I think the bowler would not get the benefit of the wind. The wind is against the bowler's bowling arm direction here. Anand Shena is the new bowler who will be bowling from Smart Bazaar end. He is an icon player of the team. A lot of expectation from here. He has to put down all his best, bring his wise and experience while he runs with that ball to deliver to the batter there. Anand Shenoy, Auburn Diamonds such a icon player. Ball given ready jatters on his way to the right-handed batsman Karthik Prabhu. Leg side ashil ball turn kelle fine leg ball direction dilla ball fine leg la watters tayashil fielder ani avanu ball collect kelle but ek run prevent koru jaini. Karthik Prabhu no आराम से दावनु एक रन कंप्लीट केला. सो कार्तिक प्रभू मेळतो सो एक रन या एक रन कार्तिक अल स्कोर जल्ले 8 तशिंचत गुरुप्रसाद स्ट्राइक घेता नेक्स्ट बॉल फेस करूक. Anand Shenoy for the second time in this over to Guruprasad. That's another short pitch ball. This time the batter hooks it down towards the mid wicket. Gets a single run. An attempt for the second was made, but there was no coordination between the striker. It's good that they did not take that run. Definitely it would have been disastrous if they had attempted that. That's a good bowling from Anand. Slightly shortish there, but he is completely giving a lot of time for the batter to hit that back shots, and he has the fielder on the mid and long at the deep. That's another lovely flick on the fine leg towards the fine leg. Gets one run to the team. The batters are playing smart here. They know that they have to just get this striking, rotate the strike in between the field there. They're doing it wise there. It's 12 for the loss of 1 wicket at the end of 1.3 overs. Just Dhoni over at Chalters. Second power play is in progress. Anand Shenoy next ball. गुरुप्रसाद ओपन मारला फिल्डर ಮತ್ತೆ बघितलं बट कॅच जो चान्सेस आशिल्ले आदर्श बट फिल्डरान कॅच ड्रॉप केला. हॉड एक जीवदान मेळतं सांगा. मस्त निराश जाला बॉलर आनंद शेणय. सीधा बॉलर हाता वत्त आशिल्ले बट लास्ट मोमेंटाक आदर्श बटल हाता दोकून ते कॅच स्लिप जाले. सो big reprieve for the batter Guruprasad. Rightly said Suresh, the Anand Shenoy should be really disappointed here. But let me give the pedestal for that fielder there, Adarsh. He had to run, but you cannot forgive that drop being done there. That's another full toss. This time the batter misses it completely, could not connect it well. The ball goes back to the keeper. No run has been scored. 14 is the score at the end of 1.5 overs. Last ball of this over to be delivered. 14 is the score. Need 40 of 31 balls more. गुरुप्रसाद वेट करतं असं स्ट्रायकर. अनंतर गेला शॉर्ट पिच बॉल टर्न केला. मिड विकेट बॉल वतस ते फिल्डर आणि बॉल कलेक्ट केला बट अजी मध्ये एक रन धावन कंप्लीट केला. सो लास्ट बॉलांत सिंगल आयला. एक रन काढला गुरुप्रसादान तशींची स्ट्राइक रिटेन करता. अजोटूची दोन्ही ओव्हर कंप्लीट जाला. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 overs Manipal United Tigers such a score 15 on the board with 1 wicket down. Like a partnership with Karthik Prabhu आणि गुरुप्रसाद मध्ये पुंडलिक पहिले विकेट वग्गी पडल्या. त्या एक हॉड आघात जावन आशिल्ले मुंबई मणिपाल टायगर्स मणिपाल युनायटेड टायगर्स फॉर द फर्स्ट टाइम जीपीएल ಅಂತ खेळतस मणिपालची एक टीम. सो पळोका बरलेले 7 ओव्हर ಅಂತೂ कशी आणि इनिंग्स स्टेबिलाइज करून कितली कॉशियस जाऊन खेळतात म्हणून मस्त रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेळका जाता. कार्तिक प्रभू आणि गुरुप्रसाद लायक एक स्टार्ट दिला. कार्तिक प्रभून फर्स्ट बॉलान तुची सीधा बाहेर पेटयले. 6 रन स्कोर केलेले. आता 9 रनदार खेळतस. बॉलिंग चेंज जातस. अनेक युवा बॉलर आदर्श भट येतस बॉलिंग करूक. तवळच्या ओव्हर ಅಂತ पडले आदर्श भट हाताक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॅच वत्त आशिल्ले बट कॅच ड्रॉप जाले. त्या तांक एक हॉड एक डिसअपॉइंटमेंट म्हणून म्हाका दिसता यशवंत. Now this is an opportunity for him to cut down and make sure that what he has given up earlier to cover it, he has to do something with his ball. On the Auburn end we have Adarsh, but that's another short pitch ball. This time the batter lofts it towards the action was towards the long on, but the ball goes towards the mid wicket. It was slightly raised in towards the sky.
It was a neat drop into the hands of the fielder. The fielder there does not make any mistake. Jagdish Pai is the fielder there. He had enough time to just land himself below the ball, wait for the ball and then get collecting that ball easily. That's another fall. This was much required for the bowling team there. Adarsh Bhatt. मस्त वैरशील बॉल ज्याला बारी लायक कोरनो जड्ज कोरनो कॅच धरला इंग्लिश ಅಂತ मी म्हणतात ही kept his eyes on the ball म्हणून तशी कॅच जाऊन कन्वर्ट केला तवळची ओव्हर अंतू एक कॅच ड्रॉप झालेला आहे आदर्श भट्टाला बट कॅचेस विन्स मॅचेस म्हणतात ते प्रत्येक कॅच इम्पॉर्टंट जाऊन असता प्रत्येक रनच इम्पॉर्टंट जाता सो एव्हरी balls every runs will matter every balls will count so दोन्ही विकेट पडलेला 15 for the loss of 2 wickets now Manipal United Tigers. Adarsh should be much relieved with that wicket, but he cannot be completely happy. He had to make sure that he gives his best in this over, get couple of more wickets or get couple of good dot balls. Important is to get the wickets. सक्सेसफुल बॉलर आदर्श भटान गेल्यार बॉल यापटी रनआउटाक एक चान्स आशिल्ले बट एक चिकी सिंगल म्हणून ते मस्त रिस्की रन जावन आशिल्ले बट आय थिंक असल रन्स तांकां जावक म्हणना यशवंत इथे म्हणरी कार्तिकान क्रीसर असचे मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता तांगेल टीमाचे एक बॅकबोन म्हणत कार्तिक प्रभू 9 रन स्कोर करून खेळतस नेक्स्ट बॉल आता फेस करता वापस बॉल आदर्श भटान आतास करंट सिच्युएशन पळयलें म्हणजे 29 बॉल्स बाकी आसा आनी 38 रन्स जावका मणिपाल युनायटेड टायगर्साक. That's neatly a push towards the third slip and Gully gets a single run. 17 is the score for the loss of 2 wickets at the end of 2.3 overs. नवे बॅटर जाऊन मिथुन कृष्णा आयला मूलतः बेसिकली केरळचे प्लेयर अनेक टेक्निकली साऊंड बॅट्समॅन म्हणत सो मस्त एक एक्सपेक्टेशन असतं तागेल्या वैरी मणिपाल युनायटेड टायगर्साक सो कशी खेळता मस्त कॉशियस जाऊन खेळका जातांगा मिथुन कृष्णा गेल्यार बॉल टर्न कोरून विकेट सोड मारचे प्रयत्न केले ऑन साइड मारचे प्रयत्न मस्त लो जावन येईल बॉल तशें बॅटा मेळतना बॉल सीधा येवन पाया लागले सो मिथुन कृष्णा खंयचे रन मेळतना डॉट बॉल जाला वापस बॉल घेवन मागशी वतस आदर्श भट्ट स्कोर 17 राबला. That's a full toss from Adarsh, but this time the batter doesn't make any mistake. He hits it towards the long on, gets couple of runs there, a slight misfield from the fielder. Aditya Bhatt is the fielder there, but he doesn't give up. He just picks up the ball and throws it back to the bowler. Score moves to 19 for the loss of 2 wickets. We just have one more ball to be delivered in this from Abaran end. Adarsh Bhatt is the bowler. He had his early success of 1 wicket. That's a slower ball outside the off stick. Let me put this in this way. The bowler identified that the batter is running towards the off stick, trying to leave as much space on the leg. He slowed it. He slowed his delivery and bowled it towards the off time. But this time the batter did not take any chances. He was straight on the wicket, but missed it. That's a good dot ball. येस खंडित जावन इंटेलिजंट बॉलिंग म्हणत त्या लास्ट बॉल मस्त स्लोवर जावन आशिल्ले मस्त वेरिएशन्स दाखयले आदर्श भट्टान क्लेवर बॉलिंग खंयचे रन येतना डॉट बॉल जाला अजोटीचे 3 ओव्हर कंप्लीट जाला आफ्टर 3 ओव्हर्स मणिपाल युनायटेड टायगर्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. For the first time of the batters, we have somebody having strike rate less than 100 here. This is a format where you would require to maintain that strike rate of minimum 100. That means run a ball. सो 4 ओव्हर बाकी युनायटेड टायगर्स मणिपालाच्या इनिंग्स अंतू 35 more runs required. प्रति ओव्हराक current run rate 6.33 खेळतस required run rate is 8.75 run rate चढ जातस प्रेशर आस मणिपाल युनायटेड टायगर्स खंडित जावन हॉट शॉट येवकची जाता एक 2-6 आयल म्हणजे मॅचाचे डायरेक्शन चेंज जाता पळोवया बॅटर्स कसं करतात म्हणून वापस बॉल घेऊन सेकंड ओव्हर स्टार्ट करतस आनंद शनाय आभरण डायमंड्सचे आयकॉन प्लेयर. He is yet to give a good breakthrough. He has not got any wicket. He has given 6 runs in his first over. Never mind. He would put all his effort to get something for his team. He is an icon player of this innings for his team. Abaran Diamond, they have to do something differently here. Get some wickets, get some good dot balls.
लेग साइड पळायला बॉल टर्न करची प्रयत्न केला बट बॅट आणि बॉला मध्ये करेक्ट जावन आशिल्लें कनेक्शन ना बॅटा मेळ्ळी बॉल पाया लागला तशें लेग बाय म्हणून अंपायर दीक्षितान सिग्नल केलेलो आसा 1 रन एक्स्ट्रा रूपार मेळतस मणिपाल ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗುರು ಮೂವ್ ಜಾವನು 20 ಜಲ 23 ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಯಶವಂತ್ ಅನಿಕ 34 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. That's a big shot. This time it's pulled between long on and mid wicket. The ball was on the ground for a longer time. It did not move quickly and it's a run out. Looks like the batter took it more for their comfort zone. There was a run out on the non-striker CN. There was always a chance for the second run. Let me tell you, the outfield is very slow. The ball does not go to the fielder if they are hitting it on the ground due to the grass slightly getting moisture there. Again, this ground is surrounded by river on all the sides and there's plenty of wind. The ball had a lot of time before it reached the hands of the fielder. Bit of unfortunate call between the batters there. They should have completed those runs easily. Took it granted and they had to give up 1 wicket. अननेसेसरली एक रनआउट रुपारी मणिपाल युनायटेड टायगर्सान लॉस्ट घेऊन घेतला एक विकेट. टीमांचे की प्लेयर कार्तिक प्रभू आउट जाला तशें जावन तिन्नी विकेटाचे आघात लायक एक फिल्डिंग आशिल्ले आबरण टायमांसाचे प्लेयर सोहनान कलेक्ट जावन बॉल कलेक्ट करून थ्रो केल्ले. थ्रो वय परफेक्ट जावन आशिल्ले. डेंजर एंड धांवतो आशिल्लो कार्तिक प्रभू तसले एक प्रौडेस्ट प्लेयर टीमांचे प्रौडेस्ट प्लेयर आउट जाला. खंडीत जावन मणिपाल टायगर्स युनायटेड टायगर्स हॉड एक आघात या संदर्भेरी. स्कोर 20 रन रबला अनंत शनाय लाय कोर्नो बೌಲಿಂಗ್ घालतस तागेल्या लाइन एंड लेंथ मेंटेन कोर्नो परफेक्ट डिसिप्लिन लाइनारी बೌಲಿಂಗ್ करतस अशीच कंटिन्यू करता जाता. बॅटर्स वयली प्रेशर घालचे पूरा परिश्रम करतस हांगा अनंत शनाय. This time it's been pulled towards the deep square leg. Gets a boundary. Umpire shows a signal of 4. That adds 4 more runs to the scorecard. With this, the score leaps to 25. 25 is the score for the loss of 3 wickets. We have just completed 3.3 overs. 3 more balls to be delivered in this over. 7 runs plus 4. 11 runs has been given by Anant Shenoy. मस्त लूज डिलिव्हरी म्हणत दुर्बल असे म्हणतात तसं एक बॉलाक पनिशमेंट बॅट्समॅनान दिलेलं असं. नेक्स्ट बॉल स्विचचा प्रयत्न केलाय बट कंप्लीटली फेल झालो. बॅट बॉल मेळतना डॉट झाला. क्रीसारी आदित्य पै असं अनेक हार्ड हिटर मणिपाल युनायटेड टायगर्स तर्फेने खेळतो असं आदित्य पै. सुमार GSB क्रिकेट टूर्नामेंट खेळलो तसं एक एक्सपिरियन्स क्रिकेटर आता आदित्य पैक हॉड एक जबाबदारी असं पळोव्या कशी खेळणो तांगेल टीमाक तो चेतरिके दिता म्हणून 25 रनारी स्कोर रबला. 3 विकेट ऑलरेडी पडलेलो असं मणिपाल टीमाक. That's another dot ball. Anant Shenoy gets 2 dot balls into his account. That's a nice delivery. It was very important to get those dot balls because he had 1 boundary in the previous delivery and then it was must for him to sustain himself as the best bowler for his team. Anant Shenoy has given 11 runs after bowling 2 overs. He's yet to get his first success of wicket. We have Adarsh Bhatt who has got 1 wicket there, bowling 1 over with 4 runs being given by him. Score is 25 for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs. 29 more required in 18 balls. This would be a tough going and the batters have to put the best now. ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವನ್ನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತ್ ಶನಾಯ್. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಣಿಪಾಲದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಭರಣ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ತಂಡ 54 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 3 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಮಿಥುನ್ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ ಪಾಯ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
It's time for both the team, either the batter or the bowler, to use the benefit of the wind and get the best for their teams. It's possible for both of them. That's a full toss. This is lofted high into the sky. The fielder below it doesn't make any mistakes. Vasant is the fielder there. He holds it and hits it to the ground, celebrating that success of a catch. That's another wicket for Manipal United. 25 for 4. ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ವಸಂತ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ. 25ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. A good of batting is required here from the batters. They are being tempted with full tosses and short pitch balls where they are trying to hit it against the wind. As I rightly said some time back, it's the team which uses this wind to their benefit as the one who would lead as a successful winners. They have to put their wise and experience. The bowler has to work smart with his ball on the pitch there, and the batter has to use his muzzle to his benefit. That's other short pitch ball bowled outside the off stick. The batter pulls it towards the mid wicket. That's slightly an odd shot hitting towards the leg for an offside ball. It's an unorthodox, but doesn't mind in this format of the game. They get couple of runs there. As long as you keep your scorecard ticking, it's always a good batsman, is what we say in the middle. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ಹೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಶವಂತ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್. Gets it full toss, hits it towards the deep square leg and fine leg. That's a gap in between. Goes completely outside the field on the leg side here. That was much required for the batters team. This gives them a big confidence and a powerful edge also. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಾಟ್ಗಳು. ರಿಲೀಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವಾಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್. 32 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. This has been a bit expensive for the bowler there. Anand from Abharanian. It was Adarsh but from Abharanian. That's another dot ball. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಗಳಿಸಲು 22 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಉಳಿದಂತ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. 22 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ. Others to Madan hits towards the deep square leg, gets a single. They run for the second. The striker is on the striking. That was a good running in between the wicket. The fielder there had to throw his ball towards the keeper, but there was always an opportunity. But that would be the longest distance for the fielder. He did a right job, but the keeper should have picked it and immediately thrown it towards the non-striker. That would have given them one little bit of edge. I'm not saying that they would have got a wicket, but that would have been created some tension in the middle there. ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ ತನ್ನ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ್ ಭಟ್ ಕೇವಲ 13 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ 34ಕ್ಕೆ 4. The crucial over is yet to start. 6th over would be very crucial. They need 20 runs of 12 ball. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 34 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2 more overs to be played by the batters there. Midhun Krishna and Mulki Adesh Bhatt are the batters. They have just averaged a score of run rate of around 100. They have to keep this and increase it from here to get their team towards the winning strike. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪುತ್ತೂರು ವರ್ಸಸ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಚಲ್ತಾ. ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 8 ಆಫ್ GPL ಸೀಸನ್ 10. ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಜಾವನು
टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूर टीमाच्यानं फिल्डिंग चूज केलेलं असं दोन टीमाच्यानं रेडी असू का या मॅच नंतर इमिडिएटली नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जाता. With the ball is Sohan from Smart Bazaar end. Sohan Kamath from Bangalore. He will be bowling from Smart Bazaar and he has all the responsibilities on his shoulder. He has to use his arm well, use his wrist well, deliver the right ball to the batter without giving them much space to get their muscles stretched here. It's a tough combat between the bowler and the batter now in the middle. यस मस्त रेस्पॉन्सिबिलिटी असं आता सोहन अलबैरी सोहन कामत एक यंग अँड एनर्जेटिक बॉलर म्हणत मस्त टूर्नामेंटात बेस्ट बॉलर प्रशस्ती घेतील एक प्लेयर इरुवत्तूर स्पोर्ट्स क्लब मणिपाल तसल टी बलिष्ठ टीम खेळाल प्लेयर यापुढे ड्राईव्ह केलाय आदेश भटान टॅवॉज दी लॉंग ऑफ अतस बॉल बट एक रन मेळता दोन्ही रन खंयचे अवकाश ना आशिल्ले लॉंग ऑफ आशिल्ले फिल्डर मस्त शार्प जावन आशिल्लो क्विकली बॉल कलेक्ट करून थ्रो केले अज्जी मध्ये आदेश मेळता सो एक रन स्ट्राईक रोटेट जाला वापस मिथून स्ट्रायकारी क्रीसारी वेट करता सोहन आल्या नेक्स्ट बॉल फेस करूक. Sohan to Mithun again will be bowling his second ball of the 6th over. He has to work for his team now, deliver the best. At the same time, the batters do have responsibilities here to ensure that they win their, get the scores for their teams. That's been lofted towards the fine leg. It's been caught. That's another wicket. Manipal United loses their 5th wicket. They did not have much of the choice. They had to put their muscles into the field with the bat. And that's what the batter did there, but could not complete or get the full face of the bat. The ball had a quick loft there, did not reach anything beyond the fielder's hand. That ends up with one more fall of wicket for Manipal United. Manipal United is on 35 for the loss of 5 wickets at the end of 5.2 overs. 4 more balls are very crucial. And Sohan is doing all his best to put his team into the winning phase. एक बॉल back is 19 more runs required for Manipal United Tigers. सोहन हाका फर्स्ट बॉल तुझी विकेट प्राप्त जाला. हांव सोहन हाल ಬಗ್ಗೆ उलयता आशिल्लो लायक एक बॉलर सुमार टुर्नामेंटांत बेस्ट बॉलर म्हणाले अवॉर्ड घेतील तसले प्लेयर मॅचाचे डायरेक्शन चेंज केला ह्या ओव्हरांत सोहनान म्हणत. That's another good ball, nicely delivered. Probably he's pitching it on the off and the ball is slightly getting the swing towards the mid wicket. This time the batter gets it on his body, could not connect the ball. Rightly said Suresh, anything before, 1 over before the last over will be always crucial. That is the moment where the batters would really want to get and score their success runs. I think Sohan has delivered for his team. He cannot do anything better than that. He had just given 2 runs. Probably he might be feeling disappointed, but from the audience and from the commentary, we liked his bowling. That was fantastic performance from him for his team. It depends on the last over. Last over back is 17 more runs required. 17 रन जावका टीम मणिपाल युनायटेड टायगर्स मस्त एक ಒತ್ತಡ ಅಂತस टीम मणिपाल युनायटेड टायगर्स बैटर्स आर अंडर प्रेशर इथे म्हणारी स बॉल अंतंक जावका विन जावचेक 17 एवरीथिंग इज गुड गोइंग फॉर आबरन डायमंड्स एट द मोमेंट. First 3 balls are very important. Couple of boundaries there can really put the tempo back and pressure back on the bowlers. At this point, they might be feeling an upper hand, but you never know what happens. The bowler has an advantage of the wind also. जीतन नायक लास्ट ओव्हर घालूक येतस आबरण डायमंड्स तर्फेन. आबरण एंड आदोकुनु या टुर्नामेंटाचे टायटल स्पॉन्सर्स आबरण यापटे हॉट शॉट मारचे प्रयत्न बट ते फील्डर बॉल सीधा वचनो स्ट्रेट इन द थ्रोट्स ऑफ द फील्डर. मणिपाल युनायटेड टायगर्स अनेक विकेट पडतस. आदेश बट इज आउट. The captain Anand Shanai should be happy. His boys are really doing good here. That was a fantastic catch on the mid wicket there. Catch was held by Aditya Bhatt. So much relieved from that batter. The bowler should be also feeling good. This gives a lot of confidence, especially when you get that wicket in the first ball. It gives a lot of confidence. But an overconfidence can really kill this performance. He has to be wise again. He cannot take any bad decisions of putting it short or doing something. He has an advantage of the wind. The batter has to try very hard to get the boundary hitting against the wind. He has to just keep a good line and length for the batter and try to keep the ball on the offside. That's where it might make good sense for him as of now.
मॅच मणिपाल युनायटेड टायगर्स हातात देखून हगूर निसरतस आबरण डायमंड्स दे आर इन द वर्ज ऑफ द विक्ट्री म्हणून येतं जीतन अनगल्याल नेक्स्ट बॉल फ्लिक करचे प्रयत्न केले वापस बॅट आणि बॉल मध्ये समज जावन आशिल्ले संपर्क नाशिल्ले बॅटा मेळ्ळी पांया लागले सो लेग बाय म्हणून अंपायर पवन शिरवान आमकां सांगिल्लो एक रन एक्स्ट्रा रुपार ऍड जावन टायगर्स युनायटेड टायगर्स मणिपाल आर नाव 38 for 6. Jitin to Nitish, another dot ball. This is a performance. This is a performance where the captain would be proud to have this person in his team. That's an excellent delivery. खंडित जावन आमी बॉलर्सांक आनी फिल्डर्सांक एप्रिशिएट करका आबरण डायमंड्साचे तांगेले परफेक्ट लाइन एंड लेंथ मेंटेन करून बॉलिंग केला बॉलर्सांना तशी तांगेले फिल्डर्स तितले चुरक जावन आशिल्ले ती त्या एक कारणा निमित्त आतां दे आर स्लोली मार्चिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री म्हणून म्हणयात More or less, I would say this is a formalities to bowl next two balls. Aberrant Diamonds have already made for their success in this match. That doesn't help them. Just another leg by, hopefully waiting for umpire's decision there. Yes, that's a leg by. The batter is probably trying a wrong shot. He's trying to make himself space, exposing his leg side wicket. Doesn't get that. Trying to get an advantage of the wind. Luck is not with him today. मणिपाल युनायटेड टायगर्सचे पूरा बॅटर्स मस्त स्ट्रगल करतस ती आबरणा बॉलर्साक फेस करूक या पटी लायक एक बॉल अजोटूची मैच एंड जतस आबरण डायमंड्स विन जल्ला ए मैच फर्स्ट राउंड अंतु मणिपाल युनाइटेड टाइगर्स डिफीट कोर्नो दे हैव गॉट 2 पॉइंट्स इन देयर पॉइंट्स टेबल सो बिग कंग्रेचुलेशंस टू आबरण डायमंड्स आणि थोडे वेळाने नेक्स्ट मैच प्रारंभ जाता टेंपल स्क्वेअर पुत्तूरू वर्सेस उडुपी ब्लास्टर्स. If you see Suresh, Sohan Kamath and Jitin Nayak, these two did the last 2 overs of the innings especially, and they had restricted the batting for 3 runs. This is a very interesting fact. Yes, that's a great bowling performance. In fact, they needed 19 runs in 12 balls, but that sixth over ball by Sohan Kamath was, I would say, it's a economical bowling figures for him. He is the man who has changed the whole complexion of the game, and finally they have pulled a sensational victory over Manipal United Tigers. Manipal United Tigers is a new team. For the first time they have been playing in this GPL tournament, but somehow they tried their best, but unfortunately they lost this match. You will be witnessing the coming match between Temple Square Puttur versus Udupi Blasters. Temple Square won the toss and opted to field first. Well, it's time for us to announce the man of the match which just got concluded. The 2 players from Aberrant Diamonds played brilliantly. Opener batter Aditya Bhatt scored an astonishing knock of 14 runs in just 12 balls, and Vasant Naik contributed 22 runs in 15 balls. But finally, the man of the match award goes to Aditya Bhatt of Aberrant Diamonds. Aditya Bhatt got 1 wicket also in the very first over. He just conceded 9 runs in that power play over and picked up 1 important wicket. So for his batting and brilliant bowling performance, Aditya Bhatt will get the man of the match award. So may I request Mr. Aditya Bhatt to come on to the presentation area to collect your man of the match award from our organizers, and also from our chief guest. And within a short while from now, we're going to have one more match, which will be between Temple Square Putturu versus Udupi Blasters. And the news from the center is Temple Square Putturu have won the toss, and their captain has decided to field first, and we can see the players of Temple Square Putturu are slowly entering into the ground to take their position, to set their field placement,
And meanwhile, it is time for us to change the commentary language. I've got Mr. Ajay Raj Mangalore is here with us, who is going to join us in the commentary box. So it's over to Ajay Raj ji. Thank you very much. Hello, check. Hello, check. टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूरू आणि उडुपी ब्लास्टर्स दोन्ही टीमाचे 12th मॅन जलतीतल्या ಬಗ್ಗೆ कमेंट्री ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವಕ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಕ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಕರುಕ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. We need the 12th man of both the teams. So wherever you please come to the commentators box immediately. Your presence is required here urgently. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी और यशवंत जी, बहुत शानदार तरीके से आपको विवरण सुना रहे थे। कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैंगलोर की खूबसूरत प्रस्तुति जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। अजय राज का सादर प्रणाम। इस वक्त मुकाबला टेम्पल स्क्वायर पुत्तूर और उडुपी ब्लास्टर्स के बीच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला टेम्पल स्क्वायर का। उडुपी ब्लास्टर नाम सुनते ही डॉक्टर विनोद नायक याद आ गए। हालांकि मुझे लगता है कि वो इस वक्त उडुपी ब्लास्टर्स में नहीं है, शायद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। जी हाँ, और उनको भला कौन भूल सकता है, ऑलराउंडर है वो। इस वक्त बगैर उनके उडुपी ब्लास्टर्स कितना अच्छा कर पाएगी, कितना सशक्त उनका टीम है, ये देखने वाली बात होगी। सारे फील्डर्स वार्म अप कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। एक छोर पर प्रसाद हैं, दूसरे छोर पर हर्षित हैं। आक्रमण के लिए गेंदबाज कौन आएगा इस छोर पर टेम्पल स्क्वायर पुत्तूर की तरफ से। समय इस वक्त शाम का पहर धीरे धीरे रात की ओर बढ़ता हुआ। सूरज आज के लिए अलविदा कह चुका है। रात के इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और शाम के उस सुंदर वातावरण में जहां पर सूरज डूब रहा था और फ्लडलाइट की रोशनी जल रही थी, दोनों का मिलाप हुआ और मैदान में कुछ अलग अंदाज की रोशनी फैलती हुई देखने को मिली। और शाम के पश्चात जो सॉफ्टनेस, जो धीमापन कहें या फिर थोड़ी सी नमी पूरे मैदान में दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह से खेल में काफी परिवर्तन हो चुका है। आइए इस मैच की पहली गेंद दूर वाले छोर से ऑफ स्टंप के बाहर थी, पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा उछाल था, उस उछाल को उसका फायदा उठा लिया। बल्ले का निचला और बाहरी सिरा देकर गेंद को हल्के हाथ से कट कर दिया जब तक फील्डर आ जाते। 1 रन को पूरा कर लिया प्रसाद ने, अपना खाता खोल लिया। रन्स 1 पर बगैर किसी नुकसान के। अंपायर से अनुरोध है 1 मिनट अंपायर थोड़ा खेल को रोके। अंपायर 1 मिनट खेल को रोके। 12th मैन कंपलसरी कमेंटेटर बॉक्स में बहुत जरूरी है। अंपायर थोड़ा सा ध्यान दे। 12th मैन दोनों टीमों के, टेम्पल स्क्वायर पुत्तूर टीम के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज, बहुत जरूरी है। टेम्पल स्क्वायर पुत्तूर के 12th मैन कृपया कमेंट्री बॉक्स में आइएगा प्लीज जल्दी। स्कोर स्टेटिस्टिशियन के लिए बहुत जरूरी है, रनों का लेखा जोखा चाहिए, नाम जरूरी है और मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है, इट्स कॉमन सेंस। और हर मैच में, हर श्रृंखला में आपको अपना 12th मैन
निश्चित तौर पर कमेंटेटर बॉक्स में भेजना बहुत जरूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा सहयोग करें प्लीज, जल्दी आइएगा और उसके पश्चात खेल शुरू होगा। थोड़ा जल्दी आइए, दौड़ कर आइए, दौड़ कर आइए, दौड़ कर आइएगा प्लीज जल्दी। बॉलर दूर वाले छोर से गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। थैंक यू सो मच अंपायर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 छोर से गेंद, राउंड विकेट, लेग स्टंप के आसपास की गेंद घुमाने का प्रयास, बल्ले का सिरा शायद लिया हो, अंपायर ने कहा कि लेग बाई है, पैर से टकरा कर निकल गई थी गेंद। और 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर 2 रन कुल मिलाकर। एक और गेंद दाहिने हाथ से विकेट, पलट का स्विच हिट किया, लेकिन फील्डर गेंद का पीछा कर रहे, उनको बीट करती हुई गेंद गई, लेकिन दूसरे फील्डर ने दौड़कर तेजी के साथ गेंद को समेट लिया, इससे पहले कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाने का मन बनाती। और जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, बल्लेबाज के पास समय था कि रनों को वो बटोरे। बॉलर्स नेम प्लीज भैया, कोई 12th मैन जो सबके नाम जानता हो। उस छोर से एक और गेंद, राउंड विकेट, खेलने का प्रयास मिस कर गए, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। रन अभी भी वहीं पर सिर है। टेंपल स्क्वायर पुत्तूर के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत दृश्य इस वक्त दिखता हुआ। उस छोर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गई टप्पा खाने के बाद, और अतिरिक्त उछाल भी था, दिशा से थोड़ा सा भटक गई और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। 1 और रन के साथ कुल योग बढ़ चुका है। आकाश पूरा अंधेरों में डूब चुका है, घने पेड़ जो साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे वो धुंधले से पड़ गए हैं, फ्लडलाइट की रोशनी झिलमिला रही है, और जो दूर दूर ध्वज अलग अलग रंगों के हैं वो हवा में इस वक्त बिल्कुल बलखा रहे हैं, लहरा रहे हैं। शानदार दृश्य इस वक्त दिखाई पड़ता होगा। बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन उस छोर पर इस वक्त ये गेंद लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या कहे, सौभाग्यवश बल्लेबाज की तरफ से ये कैच छूट गया और बल्लेबाज बाल बाल बच गए, हथेले में आकर गेंद छूट गई। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए फील्डरों के लिए। बहरहाल किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ, बल्लेबाज बच गए। कुल योग बढ़कर 5 पर, जबकि फिर से गेंद को लेकर सुमुख तैयार हुए। उनके गेंद आवरण विज्ञापन छोर से ऑन साइड के दिशा में हुक के अंदाज में गेंद को खेल दिया, गेंद जारी है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाद, टप्पा खाने के बाद, और ये 4 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक, रिप्ले में आप देख रहे हैं कि किस खूबसूरती के साथ गेंद को जज किया, थोड़ा सा बैकफुट पर शरीर का संतुलन बनाया, घूम गए और अपने बॉडी वेट को, शरीर के संतुलन को ट्रांसफर किया, वजन को पिछले पैर पर, और हुक किया गेंद को खूबसूरती के साथ, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही पहले ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन, कोई विकेट, कोई क्षति अभी नहीं हुई है। और ऐसे में पुत्तूर टेंपल स्क्वायर पुत्तूर इस वक्त क्या योजना बनाती है। अजय नायक को उन्होंने आक्रमण पर भेजा है। अजय नायक ऐसी परिस्थितियों में कितने सफल साबित होंगे ये देखना होगा, जबकि स्ट्राइक एंड पर हर्षित 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया, प्रसाद 6 पर खेल रहे हैं, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। दोनों बल्लेबाज 3 गेंदें खेल चुके हैं। और कमेंटेटर बॉक्स के बगल में अगर देखा जाए, बाईं ओर 2 ऐसे चक्र हैं, एक में यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड का एलईडी लेटेस्ट, जो कि विज्ञापन बिल्कुल बाएं ओर से दाहिनी ओर घूमता हुआ चक्र है। उसके अलावा एक और घूमता हुआ चक्र जिसमें शानदार यादगार क्रिकेट श्रृंखला की ट्रॉफी सजाई गई है, दुल्हन की तरह खूबसूरती के साथ कांच के अंदर उसको सजाया गया है। बहुत सुंदर ट्रॉफी दिखाई पड़ रही है। इस 2026 जीपीएल सीजन 10 की ये ट्रॉफी है।
कौन जीतेगा, कौन इसको अपने घर ले जाएगा। पिछली गेंद डॉट में तब्दील हुई, खेलने के प्रयास में बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, रन अभी कुछ नहीं बने हैं, यानी कि वहीं पर से है 9 रन बगैर किसी नुकसान के। एक और गेंद फिर से उछालने का प्रयास, लेकिन गेंद को जज नहीं कर पाए, विकेट कीपर पलक झपकते ही झट से गेंद के ऊपर गए, गेंद को उठा लिया, स्ट्राइक एंड की दिशा में घूम कर थ्रो कर दिया, लेकिन उनका परिश्रम विफल। 1 रन लेग बाय के रूप में बनेंगे, रन बढ़कर 10 पर, कोई विकेट कोई क्षति अभी नहीं हुआ है। अजय नायक फिर से आक्रमण पर हैं, प्रसाद 6 पर हैं, हर्षित 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही सुहावना मौसम, धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ रही है। जीएसबी समाज के दर्शक जितने सारे दूर दूर हैं खेतों में, वो यहाँ पर पधार रहे हैं, और उसके अलावा यूट्यूब में जितने सारे दर्शक देख रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ आयोजनकर्ताओं की तरफ से इस यादगार जीएसबी 2026 सीजन 10 में। उस छोर से एक और गेंद थी जिसको खेलने के प्रयास में 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास, रन बढ़कर 11 पर बगैर किसी नुकसान के, 11 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। बाउंड्री लाइन के बाहर दूर दूर विज्ञापन जो कि फ्लेक्स के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, और 2 बड़े बड़े एलईडीज लगाए गए हैं, एक में विज्ञापन है, दूसरे में लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अजय नायक बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो गेंद को निश्चित तौर पर हर एक गेंद को बहुत फूक फूक कर डाल रहे हैं, योजना बनाकर डाल रहे हैं। बल्लेबाज को फांस लिया, बीट कर गई ये गेंद, मात खा गए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, और फिर से गेंद अजय के पास जा चुकी है। हर्षित बल्ले को थामकर फिर से तैयार, दाहिने से विकेट, ये गेंद, एक और गेंद बल्लेबाज को बीट करते हुए, क्या बात है, फ्रंट फुट पर ड्राइव करने का प्रयास किया, चूक गए, बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने फिर से परिश्रम उठाया, गेंद को उठाकर फील्डरों के जरिए गेंदबाज को सौंप दिया है, और अजय नायक अब तक मात्र 1 रन खर्च कर चुके हैं अपने 5 गेंदों में, यानी कि वो बहुत सशक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन प्रसाद ने जाकर अपने पार्टनर हर्षित को समझा दिया है। इस छोर से एक और गेंद दाहिने हाथ से विकेट, फिर से उछालने का प्रयास मिस कर गए, गेंद पैरों से जाकर टकराई, घुटनों से जाकर टकराई, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 11 बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन बैंगलोर की ये खूबसूरत प्रस्तुति है, और लाइव टेलीकास्ट कैमरामैन तो वैसे भी तैयार हैं, एस स्पोर्ट्स जो कि सहयोग कर रहा है, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट पार्टनर हमारे यूथ ऑफ जीएसबी हैं वर्ल्ड वाइड। निश्चित तौर पर कमाल का काम चल रहा है, देश विदेशों में इस क्रिकेट श्रृंखला को सराहा जा रहा है, यूं ही नहीं सराहा जाता है, क्योंकि 10वां साल चल रहा है। शुरुआत में एक योजना बनी थी, इसीलिए मैंने कहा कि लम्हों ने योजना बनाई, कुछ लम्हों ने योजना बनाई, और सदियों ने खुशियां पाई। जीएसबी समाज के सभी लोगों ने निश्चित तौर पर खुशियां पाई है, और इस वक्त उन टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सामने दिखाई पड़ता हुआ। किरण आक्रमण पर आ रहे हैं, दूर वाले छोर से आवरण बैनर छोर से उनकी ओवर की पहली गेंद, अपने कोटे का पहला, पारी का 3रा ओवर लेकर वो आ रहे हैं। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन, वो छोर से गेंद पलट कर गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को, हाथ को ऊपर उठा लिया किरण ने, और शायद चाहते थे कि अंपायर इस अपील को स्वीकार करें, लेकिन बल्लेबाज बाल बच गए। बहुत अच्छी गेंद थी। फील्ड प्लेसमेंट में अगर आप देखें तो पावर प्ले के पश्चात सारे फील्डर्स फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऑफ साइड पर 2 खिलाड़ी दायरे के अंदर है, ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, उसके अलावा सारे फील्डर्स आउटफील्ड में बिखरे हुए पड़े हैं, बिल्कुल अपने प्लेसमेंट पर। उस छोर से एक और गेंद, फुल टॉस थी, लेग स्टंप के बाहर, हो सकता है कि अंपायर इस गेंद को वाइड करार दें। जी हाँ, उन्होंने समय लिया, और इसके साथ 1 रन को दौड़कर भी पूरा कर लिया गया, यानी कि 1+1 2 रन खाते में, रन बढ़कर 13 पर बगैर किसी नुकसान के, 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। आज सवेरे जिस तरह से खेल शुरू हुआ था, तब ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर बड़े बड़े स्कोर्स बनेंगे, लेकिन अचानक दोपहर के पश्चात शाम के वातावरण में पिच का और मैदान का मिजाज ही बदल गया, और रन्स मुश्किल से बन रहे हैं। गेंदबाजों का साथ दे रही है ये पिच, और ऐसे में बल्लेबाजों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ रहा है, गेंद थोड़ा सा रुक कर आ रही है। ये कहा जा सकता है कि गर्मी का महीना है, लेकिन नदी किनारा होने की वजह से, जैसा आप जानते हैं,
शांभवी नदी तट है जहां पर हवा तेज चलती है। निश्चित तौर पर नमी यहां पर है और थोड़ा सा सॉफ्टनेस पिच में और पूरे मैदान में इस वक्त दिखाई पड़ता हुआ। उस छोर से एक और गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। अंपायर इस वक्त पुष्टि करने में लगे हुए हैं। बल्लेबाज ने थोड़ा सा शफल भी किया था, उसको पुष्टि करने के पश्चात वो निष्कर्ष निकालेंगे और ऐसे में कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। रन 13 पर बगैर किसी नुकसान के तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। दोनों अंपायर आपस में इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और उसके पश्चात तीसरे अंपायर का सहारा वो ले रहे हैं। वाइड के लिए निश्चित तौर पर होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि गेंदबाज फॉलो थ्रू में थोड़ा सा अंपायर के सामने आया था और इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि अंपायर जब भी सचेत करते हैं, ताकीद देते हैं, तो गेंदबाज को समझना चाहिए फॉलो थ्रू में वो अंपायर के बीच में ना आए ताकि साइड करने में मुश्किल हो जाती है। इसको देखते हुए तीसरे अंपायर को इस वक्त जिम्मा सौंपा गया है और वो बताएं कि क्या ये गेंद फेयर थी या फिर अतिरिक्त गेंदों में रनों में इसको गिना जाना चाहिए। तो कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 10 साल पहले जब पहला सीजन बना था, सह्याद्री का वो मैदान और नेशनल हाईवे के बगल में हरे भरे मैदान में उस महाविद्यालय के मैदान में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई थी और त्रिमूर्तियों ने रचना की थी। त्रिमूर्ति का मतलब यह नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। हमारे यहाँ पर और तीन त्रिमूर्तियां हैं। जी हाँ, नरेश शनाय, नरेश प्रभु और चेतन कामत। उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो इस क्रिकेट श्रृंखला को बड़ा बनाने के लिए अपना 100% दे रही है। नो बॉल का संकेत अंपायर ने किया है तो कुल मिलाकर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। उस छोर से किरण गेंद को लेकर तैयार और इस फ्री हिट के अवसर का क्या वो लाभ उठा पाएंगे? बल्लेबाज लाभ उठा पाएंगे। लॉफ्ट कर दिया गेंद को और इस वक्त गेंद लगभग काउ कॉर्नर की दिशा में गई। एक रन चुरा लिया, दूसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट का मौका बनेगा। अंपायर इस वक्त शांत है, उन्होंने कोई संकेत तो नहीं किया है। बल्लेबाज बाल बाल बच गए, बहुत नजदीकी मामला हो सकता था। आधा पिच गए थे, फिर से पलट कर लौटना पड़ा और इस आनंद फानन में, हड़बड़ाहट में जैसे तैसे अपने शरीर, अपने क्रीज को पूरा कर लिया और बाल बाल बच गए, वरना निश्चित तौर पर पहला विकेट गिर सकता था। 14 रन बगैर किसी नुकसान के। धड़कनें निश्चित तौर पर तेज हुई होंगी बल्लेबाज की, बहरहाल बच गए और ऐसे में किरण फिर से योजना बनाकर तैयार हो रहा है। इस गर्मी में पसीने को पोंछना, मुझे लगता है कि ठंडी हवा चल रही है, फिर भी कभी कभार थोड़ा पसीना आ ही जाता है, का थोड़ा सा प्रेशर भी बनता है। आइए उस छोर से किरण की इस गेंद को देखते हैं। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी, जाने दिया, गेंद का पीछा किया, शफल किया था, इस वजह से अंपायर भी सतर्क हो गए। आजकल जो प्रयास किए जाते हैं शफल के जरिए, अंपायर को भी बहुत सतर्क होना पड़ता है। देखा कि बल्लेबाज शफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने बाहर जाती हुई गेंद को लीगल करार दिया। फिर से गेंद को लेकर किरण तैयार, उनकी गेंद थोड़ा सा परिवर्तन और लेग स्टंप के बाहर थी। टप्पा खाने के बाद उसको घुमाकर खेलना चाहते थे, ताकत झोंक थी स्ट्रोक के पीछे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और इस वजह से गेंद डॉट में तब्दील हुई है। रन्स बढ़कर 15 पर बगैर किसी नुकसान के। 15 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 5.29 करंट रन रेट इस वक्त चलता हुआ और एक और गेंद, फिर से उछलने का प्रयास। लाइन को बार बार बदल रहे हैं गेंदबाज किरण। इस वक्त उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास किया था, लेग बाय के रूप में 1 रन का संकेत है अंपायर के जरिए। 16 रन बगैर किसी नुकसान के, जबकि ये तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल योग 16 बगैर किसी नुकसान के। और आप देख रहे हैं कोडियल स्पोर्ट्स एसोसिएशन मंगलोर की सुंदर प्रस्तुति, जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। वेलकम बैक। जीएसबी जीपीएल 2026 सीजन 10 में मेरी नजरें इधर उधर घूम रही थी, गोपी भट्ट कहां पर गायब हो गए, क्योंकि मधुर कोंकणी में वो विवरण सुना रहे हैं। और जीएसबी की क्रिकेट श्रृंखला हो और कोंकणी में विवरण न हो तो बात हजम नहीं होती है, और इस वजह से शानदार विवरण गोपी भट्ट सुनाते हैं। ये इस वक्त चौथे ओवर की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उस छोर से आक्रमण पर, इस छोर से यानी कि
स्मार्ट बाजार बैनर शो से अश्वत इस वक्त आक्रमण पर आ रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर उनके सामने प्रसाद 8 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हर्षित इस वक्त मात्र 2 रन्स बना चुके हैं, लेकिन 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। कहना होगा कि गेंदबाजों ने बहुत देर तक उनको बांध कर रखा। अश्वत की ये गेंद और इस गेंद को थोड़ा सा फ्रंट फुट पर ड्राइव कर दिया और जब तक फील्डर मिड विकेट में डीप से गेंद को उठाकर थ्रो कर पाते, दोनों बल्लेबाज रन चुराने में थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं। अंतिम क्षणों में बच गए और उस छोर से नॉन स्ट्राइक एंड से स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज आगे आ गए थे, लेकिन पलटकर उनको लौटना पड़ा। सिर्फ 1 रन से खुश हो गए। यह दूसरा मौका ऐसा रहा जहां पर बल्लेबाज आउट होते होते बच गए, इसीलिए उनको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। रन्स बहुत धीमी गति से बन रहे हैं और आप जानते हैं कि आजकल का दौर क्रिकेट का जो बहुत तेजी के साथ चलता है। आईपीएल में तो बड़े बड़े लक्ष्य बनाए जाते हैं, लेकिन पिच कुछ और होता है। ये सॉफ्ट बॉल का खेल है, यहां पर खेल कुछ और हो जाता है। अश्वत रे की एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। लेंथ में ज्यादा इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेल दिया। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ रन को बढ़ाकर पहुंचा दिया 19 पर बगैर किसी नुकसान के। करेक्शन 18 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 18 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में 2 गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी हैं। विकेट्स भले न गिरे, लेकिन गेंदबाज खुश हैं कि उन्होंने रनों पर अंकुश अच्छा खासा लगाया हुआ है। राउंड विकेट जी नहीं, वो तो विकेट बाएं हाथ से गेंद थी लेग स्टंप के आसपास, जिसको ऑन साइड की दिशा में उछालने के प्रयास में गेंद गई। विकेट कीपर को थोड़ा सा स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में दौड़ना पड़ा, उन्होंने गेंद को समेट लिया। 1 रन को दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। बल्ले से लगकर गई थी, रन बढ़कर 19 पर। कोई क्षति, कोई आघात अभी नहीं हुआ है। धीमा टेम्पो खेल का चलता हुआ और दोनों बल्लेबाज अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गेंद है कि बल्ले से आसानी से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा रुक कर आ रही है। और इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की जरूरत है ऐसे पिच के लिए। तो ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो आने वाले ओवर्स में हो सकता है। अश्वत पे आक्रमण पर राउंड विकेट, उनके सामने हर्षित है। हर्षित ने इस गेंद को जाने दिया, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। और मुझे लगता है कि हर्षित ने जानबूझकर वो सफल नहीं किया ताकि अंपायर फिर कुछ मन अलग न बना ले, इस वजह से अपनी जगह पर खड़े रह गए। ऑफ स्टंप के गेंद को जाते हुए देखते रह गए, अंपायर की तरफ मुड़कर देखा, अंपायर ने हामी भरते हुए इस गेंद को वाइड करा दिया, कुलियों को बढ़ाकर पहुंचा दिया 20 पर। 20 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद ही ड्राइव कर दिया, गेंद को फिर से लेंथ में ज्यादा थी। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ रन बढ़कर 21 पर बगैर किसी नुकसान के। 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। सवेरे ऐसा लग रहा था कि आज रनों की बारिश रात तक होगी, लेकिन अचानक प्रहर बदल गया, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, पिच का मिजाज बदल गया। दाहिने हाथ से बाएं हाथ से उधर विकेट, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, वाइड गेंद। बल्लेबाज ने फिर से गेंद को जाने दिया। 1 और अतिरिक्त रन। अश्वत पै क्या कर रहे हैं? अच्छे खासे रनों पर अंकुश जो लगाया हुआ है, जो पकड़ मजबूत है, उसको वो ढीला कर रहे हैं। उनको गेंदों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है ऐसे समय पर जब कप्तान ने विश्वास के साथ उनको उतारा है। दोनों बल्लेबाज चाहते यही हैं कि अगर बल्ले से नहीं रन बन रहे हैं तो कम से कम अतिरिक्त से बने। और ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव करने का प्रयास किया, मिस कर गए। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा नीचे रह गई, पूरी तरह से चूक गए, मात खा गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन अभी भी 22 पर बगैर किसी नुकसान के। 34 छक्के अब तक इस क्रिकेट श्रृंखला में लगे हुए हैं। प्रसाद 10 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 1 और गेंद को लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर अश्वत पै तैयार हुए और थोड़ा सा बाहर निकलकर गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का शायद सिरा लिया था। विकेट कीपर आकर गेंद को उठा रहे हैं। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर रन बन चुके हैं 23 बगैर किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं जीपीएल 2026 सीजन 10। 3 ओवर से इस वक्त शेष बचे हुए। सारे फील्डर्स एकत्रित होकर मंत्रणा कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाज अपनी योजना बना रहे हैं। दर्शकों की नजरें गेंद और बल्ले से जुड़ी हुई है, लेकिन इस वक्त समय विवरण को बदलने का है। वधुर कंकड़ी में फिर से मैं गोपेश भट्ट जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।
और मुझे लगता है कि गोपी भट्ट जी इस वक्त थोड़ा बिजी हैं और इस वजह से विवरण में बदलाव करते हैं। सतीश सालियन जी को आगे के विवरण के लिए अंग्रेजी में बुलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी। Thank you so much, Ajay Raji. And first ball of the over number 5, which is shot outside the line of off stump and well directed short pitch delivery. And even it's a slower one as well from the bowler. And the batter Prasad couldn't manage to take any advantage of that delivery. Just left the ball into the hands of wicket keeper. One from the over, call from the umpire. Udupi Blasters 23 without loss of any wicket. Even there didn't lost any wicket. But we can see that the run rate, which is just under 6 runs per over, and they have to get some acceleration in the run rate in the remaining 3 overs. They got all 10 wickets in hand. And suddenly, out of these two batters, one of them have to take the initiative to get into that big shots. And one more single, and again well-directed short pitch delivery from Sunith. And this time batter managed to get the ball into his bat, but not really able to connect that one properly. Picked up a single for that. With that single, Skopad moves on to 24 without loss of any wicket in the over number 5 in progress. It's been a fantastic cricket tournament is in progress. Edition 10 of GPL in a different venue. One of the most beautiful venue, which is situated here in Ejamadi, Mulki, Shanbag, Kudro Island. This time, short pitch delivery, pulls that one nicely into the deep fielder, Grecian fielder. The deep scholar fielder went going to cut it off. Excellent job done by the fielder, almost giving his 100% to stop the boundary, and he just managed to do that. The Nayak did a great job here. You have to cover the ground a lot from the deep square leg to deep fine leg, and meantime, ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs, Skopad moves on to 26 without loss of any wicket. Arshit and Prasad, the opening batters, still there in the middle. The partnership of 26 runs in just 3 overs. Not in the big run rate, and but still they have got an opportunity to get the acceleration. Top edge, opportunity to break the partnership. And he does. The short fine leg fielder making no mistake at all. Arshit just wanted to get the big one. You know exactly now it's a time for him to go for the big shot. But he's not really choosing a right delivery for that. Shuffled across the line of the delivery. Top edge. The ball just ballooning up in the air. The short fine leg fielder making no mistake at all. Arshit departs. It's a struggled innings which is comes to an end. If you see that how many runs he scored, the 6, and he's taken 15 deliveries to get that 26 runs. हॅलो चेक फूड कोर्ट स्टेजवरी गुजरी गोविंद म्हणलेक कोंकणी नाटकात 8 गंटेक आरंभ जाता देखून कोणी इंटरेस्टेड असल्यार तुम्ही फूड कोर्टाला वचूका म्हणून निमगून घेता आसाचे फूड कोर्ट स्टेजारी ख्यात सतीश कुल्लापू आणि संतोष कुल्लापू हंगिले गुजरी गोविंद कोंकणी नाटक आता 8 गंटे आरंभ जाता फूड कोर्ट स्टेजारी वतलनी देखून तुम्ही वचूका म्हणून मी निमगून घेता आसाचे. Thank you so much. A lot of entertainment for all the cricket lovers who came into this cricket in this particular and most beautiful cricket ground. Not only they will going to enjoy the cricket, along with that, of course, we can some entertainment, Bharatanatyam, drama, everything. Along with that, they can yes enjoy the very delicious foods at the food court. Udupi Blasters and lost their first wicket at a score of 26 now. The Vivek Nayak is a new batter in. Just wanted to go for the pull shot ball. Half-hearted field came from the bowler and the wicket keeper. The ball certainly going to miss the leg stump. And one more addition to total in the form of leg bye. So with that extra score, but moves on to 27 for the loss of 1 wicket. Very hard to combine the runs against the disciplined bowling performance by the bowlers. And the bowler Sunith so far did a great job in this particular over. 34 boundaries and 38 sixes so far in this particular innings and a particular day, number 1. Lovely Yorker and delivery, negotiated very well by the batter. They picked up a single chance of run out in a non-striker's end. If it is a directed, I think it can be a chance for the run out, but he just survived one more wonderful over which is comes to an end. Successful over from Sunith, 4 runs and a wicket. And after completion of 5 overs, Udupi Blasters are 28 for the loss of 1 wicket. This is the match number 8 in progress. Team Temple Square Putturu
winning the toss, selected to field first, and all we can see that the strategy, the game plan, everything is going in their favor. And the bowlers really justifying the addition of the captain, exploiting that condition under light. Different ball game. I already mentioned about the morning. You witnessed so many big shots. The batters find so easy to get the distance. 38 sixes in this till the evening, but we can see that after lights are on, we are very hard to combine the big shots. That's the difference between daylight and artificial light. The first ball from the bowler, which is spun into the batters in dedication. Too much spin in that ball from Ajay Nayak, and leg by call by umpire. The batter couldn't do anything much for that delivery. Vivek Nayak and Prasad, in fact, picked up a single. Prasad picked up a single, and Vivek Nayak will going to take the strike. 29 for the loss of 1 wicket. This time wanted to go for the full shot. Doesn't get that much of shot enough for Vivek Nayak to pick any kind of big shot. Just a single. Ajay Nayak not really tried to ball quick, but he's just wanted to maintain that line and length, what he need to do in this condition. Again, nowhere near the pitch of the delivery. Even the ball which is kept low indeed. The hard time for the batter, isn't it? Ajay Nayak, without seeing the line of the delivery, which wanted to go for the big shot. The ball which is kept low in the last moment as well. And Ajay Nayak again continues. Right, Amogul, beautiful leg cutter, beautiful leg cutter. Fantastic one, unplayable leg spin delivery from Ajay Nayak. And Prasad, absolutely no clue what to do. The ball pitched on the good length spot, then just a little bit a turn in that ball. The leg spin delivery defeats the bat of the batter. The wicket keeper behind the stump did the rest. Back to bowler. 30 for the loss of 1 wicket. Once again, slower delivery, wrong one. The previous one, a leg spin, this time the off spin delivery. Ajay Nayak really exploiting the condition. He really enjoying the bowling here under light. Really testing the temperament of the batter. And followed by the leg spin again. Batsman shuffled across. Beautifully done by Ajay Nayak. What a wonderful over which is comes to an end. 6 completed after completion of over number 6. ODP Blasters are 30 for the loss of 1 wicket. Just a couple of runs came from this over of Ajay Nayak. A fantastic over which is comes to an end. Just have a look at his bowling figure, Ajay Nayak. 2 overs, no maiden, and conceded 2 runs. My goodness, 1 run per over. The 7 overs game and the bowler giving only 2 runs for their opposition in 2 overs. Just imagine. Definitely, the captain must be pleased with the performance of this man. The last over remaining. Ashwath Pai brought into attack to bowl the last over. The bowled the previously 1 over with the 7 runs. Ashwath to continue. Vivek Nayak. The last opportunity for the batter to get some acceleration in the run rate. This time again, lovely delivery, good length delivery there from the bowler. They're coming back for the second. Good running between the wicket. They have to be, because they needed some runs desperately in this last over. ODP Blasters 32 for loss of 1 wicket. The Temple Square Putturu. So far, the bowlers really dominated in this condition. Second time in this over. Ashwath Pai, left arm, beautifully ball, lovely delivery. You know exactly what the batter is trying for. This is the last over, and Vivek Nayak just wanted to get that one into the mid-wicket region, but line of the delivery not that much of good enough for him to get that one into that region. The lovely change of line there from the bowler. The 32 for the loss of 1 wicket. Last 4 deliveries left in their innings. The one more fielder has been added in the cow point region. There is no mid-off.
Long off is there and deep cow point. Deep mid wicket and square leg. Driven down to mid on and again no run scored. Dot ball. Vivek Knight not interested for a single here. Each and every run going to be very crucial. You cannot underestimate any score in this condition. If you think that 35 is a low score, I'm not thinking about that. Under light, the 35 to 40 run definitely going to be dependable if you bowl well, if you manage to exploit the condition. Loft it and long off fielder will going to get that one. No, he don't. He missed it. Not only missed the catch, but ball went into the boundary as well. The much required boundary coming here for the team Udupi Blasters. They need to blast some runs in the last over. No other option at all if you wanted to get a good runs. But I think it's a lucky run for Vivek Naik. What could be a certain catch here for the fielder at long off? Total misjudgment. At least he can save the boundary for his team, isn't it? He just tried to get the catch, missed the ball completely, and ball went into the boundary. 36 for the loss of 1 wicket. That will go some kind of oxygen here for the team Udupi Blasters. Once again, Yorker line delivery. And try to get that one in the onside edge and doesn't get that much of timing enough. Only a single. So with the addition of that single score, moves on to 37 for the loss of 1 wicket. Now last delivery of the innings. And Prasad Naik is came as an opener for the side. Is batting on 13 and is faced 20 deliveries for that. Very good competition between the boundaries and sixes, isn't it? 4s and 6s. 35 and 38. Here comes Ashwath from the far end. Last time in this over. Left arm. Over the wicket. Ball sings and missed. And that's it. The team Udupi Blaster will going to finish their 7 overs quota with a 37 for 1. If you see that, they got lost only 1 wicket. But they couldn't manage to get the big runs. But I'm not saying the small runs in this condition. The 37 maybe can be a good score if the bowler will going to exploit the condition. How the bowlers of the opposition team did the job. The same thing they have to do for the team. Of course, the Temple Square, the bowlers did a lovely job to restrict their opposition for just 37 runs, 36 runs, 37 runs in fact, and 38 runs, which is needed for the victory for the Temple Square Putturu. So just don't go away because this is not a batter's game, this is a bowler's game. And definitely the opportunity here for the team, the opposition team as well to come back very strongly with their bowling. Udupi Blaster. Wait and see how could be this game. And definitely going to be more interesting. And for that more interesting innings, I would like to invite once again Gopi Bhaji for the further explanation of the match in our Konkani language. Thank you. धन्यवाद सतीश सर. तशीची हंगशिले तवळतुलान क्रिकेट पळोवन कसले पुणे विंगड ऍक्टिव्हिटी स्कोर का म्हणाल्यांक फूड कोर्टा भितरी एक आमची गले हास्य नाटक जाता आसा गुजरी गोविंद म्हणून 3 रत्नाचे ख्यातीचे सतीश पै संतोष पै तांगेल सगळे टीम कोंकणी हास्यमय नाटक फूड कोर्टा भितरी प्रदर्शन करता आसाची. तुमका हंग क्रिकेट बोर जाल्यार खंडीत जावन ते हास्यमय नाटक पळोवन तांकां प्रोत्साह दिवका म्हणून निमून घेतास. 38 रनाचे टार्गेट दिलेलं आसा टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूर तांकां. ह्या दिवसाचे बहुशा दोन्हीचे लो स्कोर मॅच आमकां हांगा पळोवच्या मेळटार आसा. एक साइड आमी 70 लागी 70 लागी स्कोर मारला तसले टीमय पळयला. 35 ಔಟ್ जाल्यार टीमय पळयला. क्रिकेट मंथन खंडित अनिश्चितते खेळू कसले एक सांगू जायना तेव्हा ग्राउंड कंडिशन सकाळ तुला पळयलें म्हणजे जाल्यार घंटे घंटे एक पर चेंजेस येता आशिल्ले. सकाळी लायक वार आशिल्ले दनपारताय लायक एक ह्यूज टोटल्साचे आमकां स्कोर पळोवच्या मेळाले. मध्येंतू वारी होणी जाल्ले वापस लो स्कोर मॅच लो स्कोर म्हणले कुळे 1 साइड मॅच जतकी म्हणले केले जाल्यार 1 साइड जायनी तेव्हा एक ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಸದಸ್ देखून आता रात्री कंडिशन तुम्ही पळयलें म्हणजे जाल्यार ग्राउंड ಅಂತೂ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಣಿ ದಿಸ್ತಾ ಸದವಳಿ ದನ್ಪಾರ ಕಂಪೇರ್ केली म्हणजे जाल्यार 38 रनाचे टार्गेट दिलेलं आसा. वीक्षकालांगी तुम्ही निम्मिलारी
खंडित वन साइड मॅच म्हणून सांगताचे जलारी क्रिकेट अंतू खंचे वेळारी कसले सांगू जायना एक टीम 37 रबली ಮುಂಜಲಾರಿ अनेक टीमाके तिथली भितर राबोत सुलभही नाही आणि विंग टीमाक 38 सुलभेर मार्चे त्यावे अगत्य जावनु साध्य क्रिकेट अंदू खंचे एक असाध्य म्हणाल विषय ना खंची टीम लाईक परफॉर्मन्स दितकी त्यावेळारी त्या टीम विजयशाली जाता खंचे स्ट्रॉंग खंचे वीक ಮುಂಚೆ क्रिकेट अंदू असना जलारी ನಮ್ಗೆಲ್ಲ 100% आम्ही बॅटिंग बॉलिंग फील्डिंग अंतू दिली ಮುಂಜಲಾರಿ लायक एक परफॉर्मन्स लायक एक टीमा खातीर खेळणू लायक एक स्कोर रब्बो तसल अवकाश अस टेंपल स्क्वेअर पुತ್ತूराची तुम्ही विषय काढली ಮುಂಜಲಾರಿ बॉलिंग अंतू लायक एक परफॉर्मन्स दित्ताच ಎದುರಾಳಿ टीमाक केवळ 37 रन भितरी त्यांनी राबेलेलं 38 रनाचे टार्गेट स एव्हरेज बशी उण्यारी स रन बशी ओनी टार्गेट तंका चेस करूस पळोका कशी त्यांनी हे टोटल चेस करताची सुलभेर करता की नावे या मॅच फाईट येत की पळोका तशीची ऑपोजिट टीम ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತನ್ನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನಕ ಫೇಲಿಯರ್ ದಿಶಾಪುರ ಜಲರಿ बॉलर्स लायक एक बॉलिंग परफॉर्मन्स फील्डिंग तशी लायक ಮುಂಜಲಾರಿ खंडित एक लायक एक कुतूहलकारी मॅच पळोवच्याक आमकां खंडित पळोवच्याक मेळटा तशी 38 रनाचे टार्गेट चेस करता अशे टेंपल स्क्वेअर पुतूर आता क्रिजाक 2 जन 9 बॅटर येईल असाची स्ट्राईक घेवच्याक नॉन स्ट्रायकरारी हरिप्रसाद स्ट्रायकारी नितेश 38 रनाचे टार्गेट चेस करता असा बॉलिंग लुक फर्स्ट ओव्हर बॉलिंग लुक आयला गुरुदास फर्स्ट ओव्हर गारुक गुरुदास स्ट्राइकाक नितेश फर्स्ट बॉल जाता असा अंपायर सिग्नल मॅच स्टार्ट जोड कितेला आयला असा गुरुदास आता नितेशाक फर्स्ट बॉल ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಾಲ್ ತಸಲ್ ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕೆಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿಸ್ ಕಿ ಬಳಕ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ರ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ देखनु ಕ್ಯಾಚ್ ದರುಕ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಯ್ನಿ ಲೈಕ್ एक एफर्ट गल्ला मोणित फील्डर ना फर्स्ट बॉल ची लॉफ्ट करूक प्रयत्न केला 38 सना टार्गेट जलरी भगोगी फिनिश करूया पॉवर प्ले असं 2 ओव्हर पॉवर प्लेचे लायकी युटिलाइज करूया म्हणाल प्रयत्नानं नितेश आणि हरिप्रसाद बहुच्या असची लेफ्ट हँड आणि राईट हँड बॅटर आल 2 जन कॉम्बिनेशनाक कॅप्टनानं 2 जनाक पेटेला एक नितेश आला राईट हँड बॅट्समॅन आल रुपारी तशीची लेफ्ट हँड बॅटर जाऊन हरिप्रसाद मूलतः हरिप्रसाद कारकळगावच्या ह्या पटी अंडर माचे एक लायक एक बॅट्समॅन तो ओव्हर मध्ये लायक परफॉर्मन्स आहे दूरपर्यंत दिता असा प्रति एक झिपल अंत गेलाय भागित्व आशिलाय वापस फुल लो फुल टॉस येईल बॉल सीधा कव्हर ड्राईव्ह केला 1 रन मात्र मिळता लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट ते तशीची फुड्डुकोटा भितरी गुजरी गोविंद म्हणाले एक हास्यमय कोंकणी नाटक जाता असं क्रिकेट बोर्ड ज्याला खंडित तुम्ही ते पळो येतं म्हणून हांव सांगता तशी नेक्स्ट कोडियाल सुपर किंग्स आणि वळलंके फायटर्स मुलकी 2 टीमाच्याने इमिडिएटली स्टेजा लागी टॉस आयोग म्हणून निमून घेतास यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड चॅनल अंतू यूट्यूब अंतू लाईव्ह जाता सर गुरुदास फर्स्ट ओव्हर घालूकत उडुपी ब्लास्टर्स लॉफ्ट केला फील्डर असते कॅच अवकाश केला एक ट्राई वापस जलारी बॉल बोर्ड डिलिव्हरी जाता सर पळोका अंपायर डिसिजन आम्ही वेट करता असाची 2 धावलेची 3 धावलेची तिन्ही नंतर 4 रन धावच्या जायनी रिव्ह्यू दिला बाउंड्रीच्या बाउंड्री पळोचाक बाउंड्री व्या नाही व्या म्हणून एक थर्ड अंपायर आणि एक पटी पळोक म्हणून सांगितलं सर हे बाउंड्री जलारी 4 रन मेलता ना मुंजलारी ना मुंजलारी 3 रन धावनो 3 रन पुणी मेलता पळोका अंपायर डिसिजन आम्ही वेट करता असाची तशीची नेक्स्ट मॅच कोडियाल सुपर किंग्स आणि वळलंके फायटर्स मुलकी इनिंग्स ब्रेक तुम्ही अवकाश इलाय ऑलरेडी इनिंग्स ब्रेक झालेला असत देखून टॉसाक आणि तुमगे टीम रजिस्ट्रेशनाक जल्दीतलं वगी स्टेजला तुम्ही येवका म्हणून घेता असं कोडियाल सुपर किंग्सचा कॅप्टन येऊन पावलं असं वळलंके फायटर्स मुलकी हाजी कॅप्टनानं
जल तितले बघी स्टेजाला घेऊ का ऑलरेडी तुमका कोड्याल सुपर किंग्साचे कॅप्टन वेट करता आसा इनिंग्स ब्रेकान तू चमगेलाय टॉस जावका आशिल्लाय दैकोरन तुम्ही आयोजका लोटू सहकार कोरका म्हणून वापास तुमगे लागी निमून घेतार आसाचे तशीची मॅच कसला क्लबला म्हणून तुम्ही आता टीव्ही ऑन केला म्हणजे जाल्यार एक बाउंड्री गेलेला बाउंड्री वतन लायक एक फिल्डिंग केली ते फिल्डरान जाल्यार ही बाउंड्री लायनाक बॉल टच जाला की ना म्हणून अंपायर्सान एक पडी थर्ड अंपायर लागी निंबून निर्णय घेवया म्हणून सांगितलं ताजे खातीर ಸ್ವಲ್ಪ आम्ही वेट करताच अंपायर डिसिशनाक व्हिडिओ चित्रीकरण भारी एक चंद व्हिडिओ चित्रीकरण तुमका मॅचाच्या विज्युअल्स प्रति एक तुम्ही पळोवन आसा पुरो तशीच यूथ ऑफ जीएस फेसबुक अंतू इंस्टाग्राम अंतू यूट्यूब अंतू आयच्या दिवसाच्या प्रति एक कॉम्पिटिशनाच्या प्रति एक विषयाच्या रील्सही अपलोड झालेला आसा हे रील्स जल्दीतली तुम्ही शेअर करून आमगेल्या समाजाचे या एक जीपीएल उत्सवाच्या तुम्ही एक भाग म्हणून सांगून हाका संपूर्ण सहकार देऊ का म्हणून निमून घेतास तशीची फाय संजवाडा विशेष रुपारी शांभवी आरती संजवाड 7 गंट्याक आता तुम्ही वेहिकल पार्क करून एक ब्रिज पळयला टेम्पररी निर्माण झाला तसा ब्रिज त्या ब्रिज जारी उत्तर कन्नड भागाचे एक बाउंड्री सिग्नल मिळाला असा बॉल बाउंड्री टच झाला दस देखून बाउंड्री दिवका जाता म्हणून सांगून अंपायरान थर्ड अंपायरान सांगितले प्रकार बाउंड्री तशीच हांव सांगता शांभवी आरती पाय संजवाड 7 गंट्याक उत्तर कर्नाटकाच्या एक लायकीक परिणत थंड तुंगलेद्राक शांभवी आरती येताची 10 जणांन ಒಟೂರು ಹಬ್ಬನು शेष आरती रथ आरती या पूरೈ धूप दीप दाखवत असले एक भव्य जावन आशिल्ली आरती हरिद्वाराक काशी तुम्ही कशी पळयता की तसले एक आरती फाय जावचे आसा पवित्र जावन आशिल्ल्या शांभवी नदी तीराक यावेळी तुम्ही मिस करू नजा Murta Sobas full toss ball same chances की पळका ओपासा सेम रिझल्ट 4 रन बाउंड्री 38 ರನ್ನಾच्या टार्गेट चेस करता टेंपल स्क्वेअर पुत्तूर तुलाना टीम रजिस्ट्रेशन करून या जीपीएल उत्सवाचे 2026 चे दांची सीझन अंतन ह्या पटी भाग घेतील असं पुढजलालय पुत्तूराची टीम आशिल्ल्या पर्ल सिटी स्मॅशर्स म्हणून सांगून ह्या पटी फर्स्ट त्यांनी टेंपल स्क्वेअर पुत्तूर म्हणून दिलेला आहे तशीची ह्या वर्ष दांची वर्षाक टेंपल स्क्वेअर पुत्तूर म्हणाल टीम अंतू त्यांनी रजिस्ट्रेशन करून लायक परफॉर्मन्स दोलपर्यंत दिता असं तांगेल्या ಮ್ಯಾಚ್ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲೋಟ್ ಜತ್ತಾಸ ಸುರ್ವೇತನಿ ಕೇವಲ 37 ರನ್ನಾರಿ ರಬ್ಬೈಲಾಲೆ ಉಡುಪಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ तंक लायक एक बॉलिंग आणि फिल्डिंग परफॉर्मन्स आशिल्ले तसले एक परफॉर्मन्स आता तुमका बॅटिंग अंतू मेळतास मस्त एवरेज ना रिक्वायर्ड रन रेट तश म्हणताना उडपी ब्लास्टर्स त्यांनी बॉलिंग फिल्डिंग मस्त टाईट कोरका जाता जलारी फर्स्ट ओव्हर अंतूची 1 रन फर्स्ट ओव्हर अंतूची 1 रन मारून लायक एक पोझिशन अंतू टेंपल स्क्वेअर पुತ್ತೂರು हनी खेळतारची आणि केवल 27 रन मात्र जाऊ का रिक्वायर्ड रन रेट 4.5 7 ओव्हराच्या हे पंद्याट जाता 7 ओव्हर पंद्याट अंतू दोन्ही ओव्हर पॉवर प्लेत असता 30 मिनिटाच्या अवधी एक इनिंग्स अंपायर निगदी केलेला असा नवीन दोन्ही ओव्हर घालू का विवेक नायक स्ट्राईकाक नितेश लॉफ्ट केला जलारी बॅटाचं करेक्ट कनेक्ट ज्याने लॉंग ऑफ लवतच बॉल बाउंड्री लायला टच येत की ना बॉल दोन फिल्डर ताची बॉक्स नव्हत्याची दोन फिल्डरांना बॉल गॅदर करची भितरी बाउंड्री लाईन दांडून मुखार येता बॉल बाउंड्री फर्स्ट बॉलाची 4 रन्स 38 रनाचे सन टार्गेट चेस करची वळारी फील्डिंग मस्त टाईट कोरकुगा जाता एक प्रेशरलेस गेम आहे इथं म्हणारी लीग अंतू 3 मॅच असता एक टीमाक तंतू टॉप टीम एक ग्रुप अंतू 2 टीम नेक्स्ट राउंड क्वालिफाय जाता आणि नेक्स्ट मॅच तुलाना प्रति एक टीमाच्या दोन्ही मॅच प्रारंभ जाते दोलते एक मॅच जत्ता आशिल्ले वापस भारी चंदीक बॉलिंग ते विवेकालय खंचे रनाक अवकाश दिन ते गुड लेंथ डिलिव्हरी म्हणून म्हणता का लायक एक लेंथ पळत असल डिलिव्हरी मारूक ಸ್ವಲ್ಪ कष्टाची तवे पवर प्ले तू एक लायक एक एक्सपर्ट बॉलर्स खंडित जाऊक जाता त्या तकीत
विवेक नाईक प्रति एक GPL खेळला या वर्ष ದಂಚಿ ವರ್ಷ तो खेळतास ವಾಪಸ್ ಲಾಫ್ಟ್ ಕೋರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೀದಾ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅತ್ತಂತ ಏಕ್ ರನ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ತಾ ಖಂಡಿತ ಜಾವನು दोन्ही रनाक खंयचेय चान्स ना ते स्कोर उगूर उगूर मुखार वतास स्कोर तुम्ही पळय येता हांगा कमेंट्री बॉक्स लागीच सना एक LED स्क्रीन घालल आसा LED स्क्रीनान तुम्ही पळयता आसा स्कोर 1.3 ओव्हर्स 16 विदाउट लॉस रिक्वायर्ड रन रेट तुमकां दिसता आसा एक्झॅक्ट 4 रन रिक्वायर्ड रन रेट आरी मॅच टार्गेट चेस करता आसा टेंपल स्क्वेअर पुತ್ತೂರು भारी संदीक बॉलिंग ते विवेकाला एक रन मेळता एक रन तुलाना कसले मक्षेवच्या जायना एक रन धावन कंप्लीट करताच 32 रनाचे बहुशः सुलभेरी टार्गेट चेस करता की अनेके वर्लल बॉलर्स टाईट कोण हंक बांधून घालता की म्हणून पळो का कसं जत्ता म्हणून सांगू का आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मी राखू का जत्ता लॉफ्ट केला खंचे फील्डर स्किन आपण पळो का लाईक के जाऊ कसं ओ ड्रॉप ಹತ್ತಂತ ಇಲ್ ತಸಲೆ एक ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ कष्टशील ಖಂಡಿತ रन धावनु या कॅच दवरूक प्रयत्न केला जलारी असल चान्सेस मिस केली म्हणून जलारी कॅचेस विन्स मॅचच म्हणून सांगताची कॅचेस ड्रॉप केली म्हणून जलारी मॅचची कळून घेवचे अपाय खंडितय असता लायक एक रनिंग बिटवीन दी विकेट ती हजोटूची दोन्ही ओव्हर मुक्ताय झाला दोन्ही ओव्हर मुक्तायानंतर स्कोर 20 रन 10 रनाचे एक्झॅक्ट 10 रन एव्हरेज आरी टेंपल स्क्वेअर पुತ್ತೂರು हानी खेळता आसाची 20 रन जाला 38 रनाचे टार्गेट चेस करतास आणि 18 रन जाऊ का या मॅच विन जाऊ का म्हणून जाला रे डीजे खोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन मंगळूर प्रेझेंट्स GSB प्रीमियर लीग 2024 म्हळ्यार 2026 खोडियाल तुलान येवन सगळी टीम मुल्की भागाचे हेजमाडींतू हे वर्ष ದಂಚಿ वर्षाचे सीजन हंग करता आसाची लॉफ्ट केला फील्डर असते आता तो जलारी बॉल गॅदर करू जायनी बॉल बाउंड्री लाईन दांटून 4 रन बॉलिंग लुक श्रीधर लायक एक बॉलर यो पोर्तुलान GPL खेळ आशिल्लो बॉलर श्रीधर मेंडव म्हणून म्हणता आम्ही एका शिरसी गावच्या उत्तर कन्नडाचो प्लेयर विंगड विंगड गावातुलान येवन खेळणू उडपा टीमांक ह्या पटी खेळता रस्तो लॉफ्ट करूक प्रयत्न जलारी खंचे रन अवकाश ना तशीची आणि 14 रन जाऊ का 14 रनाचे आवश्यकता लॉफ्ट केला 1 रन मात्र मेळता या 1 रन ओटूची ना दोन्ही रन केलावली दोन्ही रनाक अपील करता सजी थर्ड अंपायराक दिला थर्ड अंपायराक डिसिशनाक दिला लस पळो का थर्ड अंपायराक डिसिशनाक आम्ही आता वेट करता आसाची थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी को थोड़ा सा तुरंत जाना पड़ रहा है कुछ और जिम्मेदारियां उनके ऊपर है और इस वजह से आगे के विजन के लिए
अजय राज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 24 रन बगैर किसी नुकसान के, लक्ष्य है 38 रनों का। श्रीधर इस वक्त आक्रमण पर है, दूर वाले छोर से गेंद को लेकर वो इस वक्त योजना बना रहे हैं और दोनों बल्लेबाज एक छोर पर नीतीश, जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी आज की। आउट का संकेत अंपायर ने किया जी हाँ। तो इसी के साथ एक और विकेट का पतन और इस विकेट के प्रोजेक्ट है जेएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 करेक्शन। 24 रन बगैर किसी नुकसान के और करंट रन रेट इस वक्त 10.29 का चलता हुआ। श्रीधर अब तक 4 रन खर्च कर चुके हैं। इस ओवर में अभी 4 गेंदें शेष बची हुई हैं और 38 रनों का लक्ष्य अगर 25 की कटौती की गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने और रनों की जरूरत है। 23 रनों की शानदार पारी नीतीश खेल चुके हैं। 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया अब तक और इस वक्त एक जुझारू बल्लेबाज की तरह वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूर वाले छोर से गेंद को लेकर आभरण विज्ञापन छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की एक और गेंद ऑन स्टंप के बाहर थी, बगैर सोचे न लाइन को पहचाना, आक्रामक तरीके से बल्ले को उछाल दिया बल्ले, लेकिन मिस कर गए और लाइन से बहुत दूर रह गए, अलग रह गए, जिसकी वजह से संपर्क नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि नीतीश जैसे बल्लेबाज ऐसे ब्लाइंड शॉट तो नहीं खेला करेंगे। बहरहाल इस वक्त थोड़ा सा ताव में आ गया और गेंद को उछालने का उन्होंने प्रयास किया, मिस कर गए। श्रीधर की एक और गेंद, दाहिने हाथ से विकेट और इस वक्त उछाल दिया। अच्छा स्ट्रोक है और पूरी तरह से घूम गए, स्ट्रोक के अंदर पूरी तरह से लीन हो गए और स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में जब तक फील्डर गेंद को समेटने का प्रयास करे, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदलकर 1 रन को पूरा कर लिया, रन को बढ़ाकर पहुंचा दिया 26 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अश्वथ इस वक्त स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। हालांकि इस वक्त कोई बड़ा लक्ष्य तो है नहीं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसा आप जानते हैं, कौन से पल में क्या हो जाए, गेंद क्या गुल खिलाए, कहना मुश्किल हो जाएगा। श्रीधर इस वक्त चुनौती से गुजर रहे हैं। कप्तान ने एक जिम्मेदारी उनको सौंपी है कि वो बहुत ही सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। राउंड विकेट दाहिने हाथ से उनकी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, थोड़ा सा टो पर उछल गए बल्लेबाज, गेंद के ऊपर आ गए और बल्ले का सिरा देकर कलाई के सहारे से गेंद को पॉइंट की दिशा में मोड़ दिया। जब तक फील्डर आ जाते, दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो 3 ओवर के समाप्ति पर 27 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हैं जीपीएल 2026 सीजन 10। मैं डीजे से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया धुन को थोड़ा सा तैयार रखें। चौके छक्के और विकेटों के पश्चात शानदार धुन अगर बजती है तो बहुत अच्छा लगेगा, स्तर बढ़ेगा और जितने इतने सारे दर्शक जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी निश्चित तौर पर आनंदित हो सकते हैं। बहरहाल 27 रन से 1 विकेट के नुकसान पर। 38 रनों में से अगर 27 की कटौती की गई तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी 11 और रनों की जरूरत है और गेंदें बची हैं कुल मिलाकर 24। एक छोर पर जाबाज नीतीश मौजूद है। अश्वथ के लेके हवा के रास्ते गेंद को उछाल दिया, बहुत ऊंचा स्ट्रोक खेला है। फील्डर गेंद के नीचे दौड़ते दौड़ते कुछ ज्यादा दौड़ गए और गेंद उनके सर के ऊपर से निकल गई। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों के पास समय था कि वो दौड़कर रनों को बटोर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मौका, 2 रन बटोरने का अवसर। कुछ ही देर पहले गोपी भट्ट जी ने कहा कि कैचेस विंस द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच की कहावत है और थोड़ा उत्साह में ज्यादा दौड़ने के प्रयास से आगे निकल गए, गेंद पीछे रह गई और बल्लेबाज को जीवनदान प्राप्त हुआ। राउंड विकेट लोअर फुल टॉस थी, डिप हुई, उसको खूबसूरती के साथ ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में ऑल अलोंग द कारपेट ड्राइव किया। जब तक फील्डर आ जाते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया, कुल्लियों को बढ़ाकर पहुंचा दिया 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 30 रन माफ कीजिएगा, 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, यानी कि 8 रनों की जरूरत है। विवेक नायक आक्रमण पर रहे और क्या कर पाएंगे, लेंथ में ज्यादा थी, ब्लॉक होल में डालने का प्रयास था, थोड़ा सा स्लो आर्म डिलीवरी थी, रुक कर आई, उसको देखते हुए इंतजार करते हुए अंतिम क्षणों में बल्ले को ले आकर गेंद को धीरे से कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया और कुछ रनों को बटोरने का अवसर। 2 रन खाते में और रन बढ़कर 32 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शक टीममेट्स अलग अलग टीमें इस वक्त इधर उधर जा रहे हैं और निश्चित तौर पर अपने डगआउट की ओर जा रही हैं।
कुछ दर्शक इधर उधर जा रहे हैं, फुट काउंटर ओपन है, उसके अलावा दूर दूर चेयर बिखरे पड़े हैं। निश्चित तौर पर यादगार क्रिकेट श्रृंखला में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूर आपको एक आई लव जीपीएल का एलईडी लेटर झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो बहुत सुंदर बनाया गया है। और क्यों ना हो, सभी जीपीएल से प्रेम करते हैं इस जीएसबी समाज के सभी बंधु और भगिनी। इस वक्त गेंद को लॉफ्ट कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद गई हवा के झोंके के साथ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ ही इस मैच को दिया शानदार तरीके से विनिंग शॉट लगाते हुए जीत लिया है टीम ने। टेंपल स्क्वायर पुत्तूर शानदार जीत उन्होंने अजीत कर लिया, बहुत बहुत बधाई उनको, मैनी कांग्रेचुलेशंस। फील्डर्स इस वक्त थोड़े से निराश, लेकिन अगले मैच के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित तौर पर अगले मैच में वो अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं। आइए, इस वक्त नया ताजा मैच शुरू हो रहा है और विवरण में बदलाव करते हैं। हमारे 2 कमेंटेटर जो इस वक्त कुछ देर पहले दर्शक बनकर उस चेयर पर बैठकर आनंद उठा रहे थे, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया कमेंटेटर बॉक्स की ओर प्रस्थान करें और बहुत शानदार तरीके से अपने अंदाज में विवरण सुनाएं। सुरेश भट्ट और यशवंत जी इस वक्त पधारे हैं। आगे के मैच के लिए वो अपने अलग अंदाज में आपको विवरण सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, chick. Hello, chick. Hello, chick. Hello, chick. थँक यू अजय राजी. जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 वॉच करत अशा सक्कड विवर्साक उपासेकपटी स्वागत. वेलकम बॅक शानभोग कुद्रू ग्राउंडांतू अनेक हाय वोल्टेज मॅच आता प्रारंभ जातस. कोडियाल सुपर किंग्स विल प्ले अगेन्स्ट वळलंके फायटर्स मुल्की. दोन्ही बलिष्ठ टीम्सामध्ये टॉप टीम्सामध्ये चोलचित असल्या सेकंड राउंड मॅच आज सुरवे दिसाचे फर्स्ट मॅच अंतू कोडियाल सुपर किंग्साच्यान अवतार्स मल्पे युनायटेड एक डिफीट करून तांगेल टीमाक एक शुभारंभ दिलेला. ताजे नंतर आम्ही वळलंके फायटर्स पळयले म्हणजे सुप्रीम गोल्डन गरुडास कोच्ची एदराक फर्स्ट राउंड मॅच विन जावन 2 पॉइंट्स तांणी घेतिले तांगेल पॉइंट्स टेबलांतू. सो यशवंत दोन्ही टीम टॉप मोस्ट टीम्स 2 टीमाचे पॉइंट्स टेबल पळयले म्हणजे 2 एक मॅच विन जावन 2 पॉइंट घेतला दोन्ही टीमाच्यान. सो हे एक मॅच मस्त रोचक रोमांचकारी जावन आसता, एक एक्सायटिंग मॅच जावन आसता म्हणून म्हाका दिसतस. त्यांची एक निरीक्षर आसा ती हांगासचे सक्कड स्पेक्टेटर्स. Definitely, Suresh, looking forward for a fantastic match between these two teams. They are the best of the tournament, and it all depends who would sustain their capabilities in the middle and play for the time what they are facing here. That's what leads them to the next match. I think it would be a tough match for both the team players. Both would want to challenge each other's. I am sure audience would have a fantastic entertainment with thrillers in this match. That's an expectation from me, Suresh. आज प्रीवियस मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच नितेशाक मेळतस. टेम्पल स्क्वेअर पुत्तूरचे नितेश दयकोरनो तुम्ही कमेंट्री मेन स्टेज येऊन
आमगेल चीफ गेस्ट लागी मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड स्वीकार करका म्हणून निमगल घेतस. सो दोन्ही टीम्स रेडी जाला सेकंड राउंड मॅच खेळच्याक एक नेल बायटिंग क्लॅश दोन टीमांमध्ये पळोवचे एक अवकाश हांगाशील सकड वीक्षकांकस समालोचन जतस ग्राउंडामध्ये अंतू कोडियाल सुपर किंग्स टॉस विन जावन सुरवेक फील्डिंग चूज केलेलस ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೇಳ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಸಾಕು ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋಜನರಿ ಯಶವಂತ್ GPL ಆಚೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತೂ ದಂತು ದಾ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೆ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ಏಕಮಾತ್ರ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ KSK ಮುನ್ಮಂತತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಜರ್ಸಿचे ಟೀಮ್ फर्स्ट सीजन ಅಂತೂ ನಿರಂತರ ಜಾವನು खेळता इलिंती दोन्ही पटी रनर्स अप टीम तशींची 5 पटी थर्ड प्लेस म्हळ्यार सेकंड रनर्स म्हणून म्हणताती तसं एक प्रशस्ती घेतली टीम एदोलते GPL ट्रॉफी लिफ्ट करू जायनी सो या एक टूर्नामेंट कशी पण somehow we want to win this tournament and win this trophy म्हणून म्हणाले की इंटेंशन अरे खेळतस तशींची तांगेल ऑपोजिशन टीम पळेल म्हणून जरी वळलंके फायटर्स GPL हिस्ट्री तो अनेक बलिष्ठ टीम दोन्ही पटी चॅम्पियन्स तशींची एक पटी रनर अप झाला टीम सगळे 5 सीझन अद्भुत जेवण प्रदर्शन दिलेलं एक टीम वळलंके फायटर्स आता कोडियाल सुपर किंग्स एद्रक या एक मॅच खेळतस दोन्ही टीमांमध्ये मॅच प्रारंभ जातस. Thank you, Suresh. एक ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಗ್ ಮಿಗಲೆ. In fact, we have played almost 8 matches for the day now. Requesting 12th man of both the team, Volalanke and KSK, to join us here. Requesting 12th man 12ನೇ ಆಟಗಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಚಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇದುವರೆಗೂ 8 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಡ್ 8 ಮ್ಯಾಚಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ and it was all 16 innings that we witnessed. We have 39 big sixes that are being seen by this 8 match and 39 fours. The maximum sixers are been hit by Charan Kamath, who is for Mumbai Paltans. He had the maximum of 5 sixers being hit during his batting. Prajwal stands second, Prajwal Shanai with 4 and Ajay Kamath 4 each. And they are followed by Durgesh, Sunil and Padmanabh Pai, Srinath, Srinivas Pai, Shrujan and Ashwath Pai with 2 and 1 each. वळलंके फायटर्स 12th man on the corner commentary box ayuka. And this match that you are witnessing here was all possible because of the original Abaran and the Reliance Smart Bazaar. They were the main top sponsors for this event. They have put together their entire contribution to ensure that this tournament gets successful. I'm told that the original Abaran has been always supporting GSB community. They have almost 19 branches spread across 9 districts in Karnataka and Goa. That's an interesting fact. Requesting 12th man to join us here, please, of Volalanke. A call for Volalanke team. We need your 12th man to be present near the commentator and scoreboard. All set. कोटा गणेश नायक फर्स्ट ओव्हर प्रारंभ करतस. KSK आयकॉन प्लेयर आभरण ಎಂಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಜಲ್ಲ ಕಂಚೆ ರನ್ ಎತ್ತನ दोग जण ओपनर्स वळलंके तर्फे क्रीसर असती मस्त एक एक्सपेक्टेशन असतं या दोग जण बॅटर्स वैरी सो कशी खेळणू कंचिन मध्ये स्टार्ट तांगेल टीमाक दिता ती म्हणून पळका रवींद्र आणि दयानंद ओपनर्स जावन दयानंदन ऑन साइड फ्लिक केले एक रन इजिली काढला स्ट्राइक रोटेट जतस सो एक रन दयानंदन काढू अत
स्ट्राईक रवींद्र एसकेक दिला. लेफ्ट हँडेड बॅटर आक्रमणकारी स्ट्रोक्स खेळची तसं एक बॅटर रवींद्र अंपायरला गार्ड घेतस. फील्ड प्लेसमेंट केअरफुली वॉच करून नेक्स्ट बॉल फेस करतस. आबरण एंडा दखून कोटा गणेश नायक राउंड द विकेट जाऊन बॉलिंग करता. केएसकेच्या आयकॉन प्लेयर जीएसबी क्रिकेट अंतू मॅन ऑफ द सिरीज प्लेयर घेतील एक प्रचंड आटगारा म्हणून आता बॉलिंग करतोस. डाऊन द लेग साइड जाऊन आशिल्ल्या लेग स्टंपर करून बस्ट बाहेर आशिल्ल्या खंडीत जाऊन वैड जाऊ का खंयचे डाऊट ना. लेग स्टंपर करून बाहेर वत आशिल बॉल. अंपायर पवन शिरवान तागेला दोन्ही हात स्ट्रेच करून वैड म्हणून म्हणला. सो 1 रन एक्स्ट्रा रुपार मेळतस टीम वळलंकेक. वापस चिकेल नेरारा येईल बॉल. यापटी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप जाऊन आशिल बॉल कंप्लीटली बीट जाल्लो. बॅट आणि बॉल मध्ये खंयचे कनेक्शन ना. डॉट बॉल जाल्ला. बॅट्समॅन रवींद्र नेक्स्ट बॉल फेस करूक तयार झाला. आबण एंड दखून कोटा गणेश नायक यापटी होगूर कट करचे प्रयत्न केला. बट लायक एक बॉल वापस बीट जातस. परफेक्ट डिसिप्लिन लाईन बॉलिंग घालतस. एक फॅन्टास्टिक परफेक्ट डिलिव्हरी म्हणून म्हणत बॅट्समॅन बांधून घालचे प्रयत्न करतस सांगा कोटा गणेश नायक. यापटी वापस मस्त नेला राहील बॉल लो जाऊन आयला. बॅट्समॅन रवींद्र कशी खेळची म्हणून कळणी ताण एक्सपेक्ट केला म्हणजे बॉल मस्त रेस जायनी बीट जातस. वरल्याल काम विकेट किपर दत्तेशान केलेला अस. दत्तेशान बॉल कलेक्ट करून वापस केला. बॉलर कोटा गणेश नायकाक बॉल आतास कोटा गणेश नायक हातांतू. सो सुरवे ओव्हर चलतस. 5 बॉल जाला. यशवंत खाली 2 रन मात्र आयला वळलंकेक. The last ball, Ganesh Nayak bowls to Ravindra. This time Ravindra gets his account open, hitting towards the point, gets a single run there. And they're running for a couple of runs. There's a chance for run out. The bowler hits the ball towards the wicket, misses it completely. There's an extra run. There's some mix up in the middle. Both the batters are on the same side. मिसअंडरस्टँडिंग जाऊन असेल दोघे बॅटर्स मध्ये. अननेसेसरली सुरवे विकेट पडलेला सांगा रनआउट रुपारी टीम वळलंके फायटर्स फर्स्ट ओव्हर अंतुची दयानंद रनआउट जाऊन पेविलियन वापस वचका जाला. एक हॉड एक आगत वळलंके फायटर्स. There's a need for a good coordination. It's not that you hit the ball. It's also very important to look at the ball, sight it and keep an eye and be very wise and run between the wickets. Bit of unfortunate moment for Vadalanke here. Both the batters were on the non-striker's end when the ball was easily in the hands of the keeper there. He could immediately lift the bails and send one of the batters back. Dayanand is the batter who got out there, been run out. Ganesh is the new batter. Ratan is the new batter, correction there again. दयानंदाला विकेट पडल्यानंतर रतन क्रिस आयला. अनेक लेफ्ट हँडेड बॅटर. हॉड एक जबाबदारी असत रतन अलवैरी. राईट हँडेड बॅटर रतन कामत नॉन स्ट्रायकर एंडर अस. लेफ्ट हँडेड बॅटर रवींद्र एसके. मस्त कॉशियस जाऊन खेळका जाता दोघे बॅटर्साने इनिंग्स स्टेबिलाइज करका. इथे म्हणा सुरवे ओव्हर अंतुची 1 विकेट पडलेला अस. यापटी फिल्डर माथ्यावर उभार केल्याचे प्रयत्न ऑफ साइडाक. बट इनसाइड द सर्कल ते फिल्डर आशिल्लो. फिल्डरांनी येऊन बॉल कलेक्ट केल्ले बट 1 रन प्रिव्हेंट करू जायनी. फिल्डरांनी येऊन बॉल दवरून वापस करचे पुढेची 1 रन धावन कंप्लीट केलेला अस. सो वळलंके फायटर्साक मेळतस 1 रन. रवींद्राला इंडिव्हिज्युअल स्कोर 4 जाल्ले. आता नवे बॅटर जावन आयलो रतन कामत स्ट्राईक घेता. वळलंके फायटर्स 6 for the loss of 1 wicket. Second over is in progress. Rohish to Ratan. Rohish is bowling from Reliance Smart Bazaar end. Score is 6 for the loss of 1 wicket. That was a mix up in the middle. They got a run out, which was a bit of unfortunate for Vadalanke. That's an attempt for an Yorker. Misses the bat. That's a good keep by the keeper. Could not hold it with the hand, but he was able to stop the ball. No extra runs have been scored here.
That's another nice dot ball. Slightly outside the off stick. The batter has tried his best to hit it towards the cover. Misses it again. That's a bye. Signaled by the umpire there. सो मस्त लाईक कोण बॉलिंग करतं सांगा रोहिश बॅटर साबायली प्रेशर घालचे प्रयत्न करतस ಮೂಲತಃ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೋವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ रोहिश KSK ಅಂತ खेळतस आता राऊंड द विकेट जाऊन रवींद्राक बॉलिंग करता रवींद्रान पुल करचे प्रयत्न केला टर्न केला टवर्ड्स द मिड ऑन ते फिल्डर असं प्रोटेक्शन दवरला फिल्डर इनसाइड दी सर्कल असं त्यामुळे पॉवर प्ले चलतं असं पॉवर प्लेचे ऍडव्हान्टेज घेवच्यान तो विफल जाला म्हणून येतो बोळालंके फायटर्स ಎದುರ್ತೆ ಕಂಚೆ ಹಾಟ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತನ ಖಾಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ್ಲ 7 ರನ್ एक विकेट ऑलरेडी पडलेला असं आता खंयचे विकेट कळवून गेना अशी इनिंग्स स्टेबिलाइज करचे मस्त इंपॉर्टंट जावन असं या दोन ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸಾಕು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಶ್ ರತನ್ ರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಎಸೆತಗಳನ್ನ ಇವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು 5ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿ 4 ಓಟಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರತನ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 1.5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಬಡಿದು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಗ್ಗಿ ಕಡೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರತನ್ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಚೆಂಡು खंडित जेवण त्या एक ज्युसी फुल टॉसाच्या ऍडव्हान्टेज घेतला रतनानं कंचे फिल्डर नातील जाग्या मारनो पॉवर प्लेचे ऍडव्हान्टेज युटिलाइज करून 4 रन घेतला वेलकम बॉर्डरी म्हणत वळालंके फायटर्सक अजोटूचे दोन्ही ओव्हर मुक्ताय जातस 2 ओव्हर नंतर वळालंके फायटर्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट तुम्ही पळत असती आभरण प्रेझेंट्स आभरण GSB प्रीमियर लीग 2026 brought to you by Kodia Sports Association powered by the original Abaran. Joining them are Reliance Smart Bazaar. We have 2 ends dedicated for this sponsors. We thank them for all their cooperation. This tournament would have not been possible without the support of Abaran and Reliance Smart here. Many of them have contributed. We put together all the best for their businesses. You are witnessing GSB Premier League Season 10 2026. Organized by Kodial Sports Association Bangalore and they are being supported by broadcast partner Youth of GSB Worldwide. Some of you who are watching this live, this is the 9th match of the day and we are witnessing this match between Kodial Super Kings versus Vadalanke Fighters Mulki. Kodial Super Kings won the toss and opted to field and Vadalanke Fighters have lost their first wicket with a mix-up of both the batters being on the non-strikers in. They had to lose their batter Daya in the first over. पंचम बट्टेत सो तिन्नी ओव्हर बॉल करूक फार एंड दकुनु आभरण एंड दकुनु पंचम बट लेफ्ट हँडेड बॅटर आक रवींद्र गलाल बॉल क्रॅशिंग ड्राइव्ह टुवर्ड्स द ऑफ साइड लाईक एक शॉट गॅपा मारला 2 रन इझिली धावन कंप्लीट केला लाईक एक अंडरस्टँडिंग असेल दोघांच्या बॅटर्स मध्ये भरपूर टाइम असेल 2 रन धावच्याक सो 2 रन मेळतं संघ रवींद्राला इंडिव्हिज्युअल स्कोर जाल्ले 7 मस्त कॉशियस जाऊन खेळतस त्यामुळे फर्स्ट ओव्हरांतू दयानंदाल विकेट पडल्या रनआउट रुपारी त्याच्यानंतर हॉड एक जबाबदारी आयला हांगा रतन आणि रवींद्र वैरी 1 डाऊन बॅटर जावन आशिल्लो रतन नॉन स्ट्रायकर एंडर 4 रनार खेळतस वापस ऑन साइड ड्राइव्ह केले बट ते फिल्डर असं रनआउट चान्सेस आशिल्ले बट थ्रो तितले ॲक्युरेट ना आशिल्ले थ्रो वॉज नॉट परफेक्ट तस जावन रवींद्र हांगा बचाव जाला That was a bit unfortunate. If the throw was straight into the hands of the bowler, there was a chance of another run out. The batters were a little lucky there. In a hurry, Pradeep Pai could not throw it straight to the bowler. He just had one pitch to the bowler there. That gave enough time to the batter to reach the crease. यापटी ओव्हर द विकेट जाऊन गेल्या बॉल रतना गेल्या बॉल चिके लो जाऊन आयले रतनान हॉट शॉट ऑन साइड ड्राइव्ह करचे प्रयत्न केला बट बॉल बॅट मेळतना बॅट्समॅन बीट जातस तितलेने अशी विकेट कीपर बीट जाला आदी मध्ये 1 रन धावली ती 1 रन मेळतस बैर मुखांतर एक्स्ट्रा रन ऍड जाऊन वळालंके फायटरचे स्कोर होगुर मुखार वतस 16 रनार
That's an attempt for a big shot, but this time there is a confusion between the two players. There was an opportunity for a keeper and the bowler. Both had run to catch the ball. Both of them drop it in the middle. That's another lucky moment for the batters in between. They're fully capitalizing all the best what they could do. दोन जीवदान वळालंके फायटर्स मेळतस एक ओव्हरांतू अजी पुढे एक रनआउटाक चान्स आशिल्ले बट थ्रो एक्युरेट ना आशिल्ले मित्र बॅट्समॅन बचाव जालो आता एक कॅच ड्रॉप जाला तश जावन एक रन मेळतस वापस रतनान ऑन साइड ड्राइव करचे प्रयत्न ब्लॉक होला पडल्यार बॉल बॅट आणि बॉल मध्ये खंयचे कनेक्शन ना खंयचे रन येतना डॉट बॉल जाला स्कोर 17 रे रबला 17 for the loss of 1 wicket. कडेच एक बॉल बाकीस बॉल पंचम बटल हातारी KSK युवा बॉलर पंचम बट बॉलिंग कंटिन्यू करतस यापटे बॉल बॅट एज लागून सीधा गेले विकेट कीपर हातांतू विकेट कीपर दत्तेशान कंचे चूक करनी सीधा कॅच जावन कन्वर्ट केला एक सिंपल कॅच टू द विकेट कीपर वळंके फाइटर्स हैव लॉस्ट देयर सेकंड विकेट That was a good spin of the ball there. You could see that the ball just spinned outside the batter. And the batter could not do anything, just get an edge. The keeper did not make any mistake. Datesh is the keeper. He was just following the ball's direction. He was slightly outside the off stick to collect that ball. He noticed that an edge of the bat, did not make any mistake. He contributed with that catch with another wicket for his team. Vadalanke Fighters are 2 down now with the score of 17 on the scorecard at the end of 3 overs. सो दोन्ही आगात हंगा वळंके फायटर्साक 3 ओव्हरांतू 17 रन मात्र आयला 5.67 करंट रन रेटार खेळतस प्रोजेक्टेड स्कोर आम्ही पळयले म्हणजे 40 to 41 रन्स जाता म्हणून दाखयतस पळोवया कितले रन्स स्कोर करून वळंके फायटर्स खंयचे नमुन्याचे टार्गेट हांगा सेट करता म्हणून हॉड एक टार्गेट सेट करचे प्लॅन आरी खेळतस वळंके फायटर्स मुलकी कोडिया सुपर किंग्स बैटिंग पळयले म्हणजे तांगेले लायक एक बैटिंग लायनअप आशिल्ले टीम तश जावन 50 रन्स आयली म्हणजे त्या एक फायटिंग टोटल म्हणून म्हाका दिसता यशवंत Definitely, Suresh. And for the surprise that all the moment I see is the wind has lightened up. It's softened now. Kota Ganesh Nayak bowls his first ball of this over. Completely gets a dot ball. The batter misses it, trying to hit for a big shot. Keeper collects the ball and returns it back. Jersey 17 is Kota Ganesh bowling for Kodial Super Kings. An icon player of the team. Another dot ball. That's a nicely pitched ball. It looks like there was an edge of the bat. It looks like Vadalanke Fighters are in a hurry to get bigger scores. Yes, they do need it. They are just blocked at 17. You might have noticed that in many of the matches, either the contribution of 1 and 7, 8-1 it totals. There were fall of wickets regularly. And this doesn't surprise many of you, but this is again something which many of you would have observed. We have 17, which has held this score, not moving from there. They have lost consecutively 2 wickets at 17 as of now. खंडित जावन वळालंके फायटर्साक एक डिसअपॉइंटमेंट म्हणून येतं ओपनर बॅट्समॅन जावन रवींद्र 9 रन स्कोर करून आता पेविलियनाक वापस वतस ताका रिप्लेस करून नवे बॅटर जावन वळालंके फायटर्साच्या आयकॉन प्लेयर सॉरी सनत नवे बॅटर जावन आयला The icon player of Kodial Super Ganesh Nayak will be bowling to another icon player, Sanath Pai. That's an appeal for a catch. सेवेंटीन ಅಂತೂ ಸ್ಕೋರ್ रब्बिलस लेफ्ट हँडेड बॅटर सनत पै नवे बॅटर जावन स्ट्रायकर्स तशींची नॉन स्ट्रायकर्स एंड ಅಂತೂ वळालंके फायटर्सच्या बॅकबोन सुहास प्रभू दोग नवे बॅटर्स क्रिसा मध्ये असती यापटी ड्राइव्ह केलं ऑन साइडाक थंय फिल्डर असतं प्रोटेक्शन दवरला दोन्ही रन धांवता की पळोवका हाजे मध्ये चिक्के फिल्डिंग ಅಂತೂ मिसफील्ड केले तशें जावन ताजी एडवांटेज घेतले सिंगल आशिल्ले डबल जावन कन्वर्ट केला लायक एक रनिंग बिटवीन द विकेट एक एग्रेसिव्ह रनिंग बिटवीन द विकेट जावन आशिल्ले 2 रन मेळतस वळालंके फायटर्साक सनाताल अकाउंट ओपन जातस
This is the fourth over and the ball has been lofted towards the long off. There was again a confusion. 3 players attempting to catch that ball. There was no coordination. Everyone wanted to hold it. Just it's another drop of the catch. This is not much expected. While the Vadalanke fighters have got plenty of life, somehow they are not able to capitalize their luck here. They are 19 plus 3 more score. 19 plus 2 more added. 21 is the score. Looks like the batters are a bit lucky here. They need to capitalize fully on this. मस्त निराश झाला कोटा गणेश नायक लायक एक चान्स आशिल्ले विकेट काडचे बट कॅच ड्रॉप जाला हांगा नेक्स्ट बॉल फुल टॉस जावन लो बॉल फुल टॉस आशिल्ले ऑल अराउंड द कार्पेट डाउन द ग्राउंड खेळ्ळो लॉंग ऑन बॉल वतस थंय आशिल्ले फिल्डरांनी येवन बॉल कलेक्ट करून थ्रो केले वापस बॉलर सेंडक बट अज्जी मध्ये 1 रन मेळतस लास्ट बॉल अंत सिंगल आयला सो 4 ओवर कंप्लीट जाला वडलंके फायटर्स आर 2-2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स 22 for the loss of 3 wickets at the end of 4 overs. 3 more overs to complete. तीन ओव्हर बाकीस पळोवया कितले रन्स आनी बरले 3 ओव्हर ಅಂತ ಎತ್ತ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಕ ಮಣು ಕಂಚಿನ ಮನಚ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಕೋರ್ನು ತಂಗರ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಕ ದಿತ್ತ ಮಣು और एक डिस्कशन समालोचने चलता रस KSK च्या टीम तबडी सांगेल मंके KSK मस्त स्ट्रॉंग एक टीम GPL च्या इतिहास पळेल म्हणजलरी प्रति एक सीझन अंतू केळले एकैक टीम KSK आयच दिसाचे सुरबे मॅच अंतू बलिष्ठ अवतास मल्पे युनायटेड एक डिफीट कोरनो लायक एक शुभारंभ मेळ्ळाल तंगेल टीमाक तशींची वडलंके फायटर्स GPL अंतू दोन्ही पटी GPL टायटल घेतील टीम एक पटी रनर अप झालेली टीम सो दोन्ही टीम मुखामुखी जतस या एक सेकंड राउंड मॅच अंतू Definitely, Suresh, Vadalanke fighters are a tough time at they have to prove their muscles and also their ability in this tournament. They have to do something. The batters are in the middle. They have to definitely do and play for their team. It's important they settle there and get some of those quick runs. Ground shots cheltitले try korka bowlers tanka kanche space dittanachi. That's another unfortunate thing for the batters. I just wish that they would be able to make their best for the life that they have got in this tournament. Score is 22. Looks to be the lowest as of this over. 4th over has been just completed. 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದುರ್ಗೇಶ್ ಬಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದ್ರು ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ದತ್ತೇಶ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಗೇಶ್ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ನ ಎಡ್ಜ್ ನ ತಗಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಡಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ I think number 4 and 8 are playing really an havoc for this team. They have lost the 4th wicket at the score of 22. 4 and 8 are said to be really powerful numbers. They are either destructive or constructive, and for this team it looks like it's becoming destructive. Just a thought there, nothing about any belief in that. But observing most of the matches, I get the feeler that when you are at the count of 4 or 8, you need to be a little careful when you are batting. 22ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಸಂಕಟಕರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಶರತ್ ಪ್ರಭು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ GPL ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಶರತ್ ಪ್ರಭು ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನ ಶರತ್ ಪ್ರಭು ನೀಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ Kota Ganesh should be happy now. His decision is yielding here. They've got already 4 wickets and have restricted the batters to just score 22 at the end of 4.2 overs. The batter tries to make himself space, comes outside the off stick, tries to get a big hit, misses it completely on the dot ball, and it's a good delivery by Durgesh. ತುಂಬಾನೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಶರತ್ ವಿಫಲರಾದ್ರು
ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 22ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ದೀವಿ. 3 ಬಾಲ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 1 ರನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಶರತ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರತ್ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಜೋಡಿ ಇರುವರು ಸಹೋದರರು ಕ್ರೀಸ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. Can these brothers make something big for their team? Lot of dependency on Sharath and Suhas here. Attempt for a switch shot. Probably this is a reverse shot. The batter was already had shifted his stance before the ball was delivered. I would call that as a reverse shot. Attempt for a reverse shot, misses it completely. The ball was outside the leg stick for him. Could not judge that well. That's another attempt for a reverse. This time gets it on his body. A single run has been run in between the wicket. Umpire signals it as leg by. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದುರ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ರನ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಒಳಲಂಕೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇನ್ನುಳಿದಂತ 12 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. 24-4 ಒಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್. I think the bowling performance here by the fielding team is excellent. Ganesh has done his best, giving 10 runs of his 2 overs. And Durgesh, we just witnessed, he could have done much. He could not do anything much better than what he has already done. 1 run in that over with 1 wicket already into his account. पंचम पट बौलिंग संची ओवर लास्ट ओवर आभरण एंड अदकुनु ऑपरेट केलेले यापटी स्मार्ट बजर एंड अदकुनु पंचम पट रेडी जल्ला बौलिंग कुरुक विथ ए शॉर्ट रन अप. क्रीसारी वेट करतस सुहास प्रभु. सुहास प्रभू अकाउंट येदोलते ओपन जायनी 2 बॉल फेस केला. शॉर्ट बॉल जाऊन शिले होगूर ऑफ साइड कवर पॉइंट मारले 1 रन मिळता 2 रन कंचे अवकाश नाते फील्डर आणि बॉल कलेक्ट केला. सो सुहासल अकाउंट ओपन जतस आता स्ट्राइक मिळतस टीमाच कॅप्टन शरद प्रभुक. Sharath Prabhu on the strike will be playing Pancham Bhatt. Pancham Bhatt will be bowling from Smart Bazaar end. Pancham to Sharath. That's a nice delivery. Had a bit of swing there. The ball just pitched and got into the hands of the keeper. Slight turn which has been witnessed from here. Outside the off stump जाऊन पडलेला बॉल बॅट्समॅन ते मस्त बाहेर बत्त म्हणून खेळची प्रयत्न करणी सोडून दिला. यापटी तसले एक बॉल सिमिलर डिलिव्हरी आणि सिमिलर रिझल्ट वापस बीट जतस बॉल बॅट येताना पंचम बट मस्त एक परफेक्ट डिसिप्लिन लाइनर बॉलिंग घालतस तगेले डायरेक्ट आणि अॅक्युरेसी का मस्त इंपॉर्टन्स घालनो बॉलिंग घालनो मिंचवतस पंचम बट. Pancham Bhatt back again to Sharath. That's a big shot hit towards the mid wicket. This time the batter gets a big score into his individual account. 4 more runs getting added. Like एक शॉर्ट बॉल जाऊन शिले करेक्ट जाऊन स्लॉट आयोन पिक कोरनु सीधा पटेला मिड विकेट बाउंड्री लगी 1 bounce over the boundary rough जाऊन 4 रन मिळतस शरद प्रभुक. तिथले नेशी वळलंके फायटर्सचे स्कोर बोर्ड अंतु 4 रन ऍड जतस बॉल सीधा टवर्स ದಿ ವಳಲಂಕೆ ಫೈಟರ್ಸ್ ಡಗ್ ಔಟ್ ಅಲಾಗೆಲ್ಲ 4 ರನ್ ಮೇಲ್ನು ತಂಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಜಂಪ್ ಜಾವನು ಅತ್ತ ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲ 29 on the scoreboard. It was a bit of unusual shot. The batter has all the time to move towards the off stick. Covers almost 2 feet outside the crease there. Hits it towards the mid wicket. That's a powerful punishment for that ball. A reverse shot. This time the ball flies into the sky. That's a gap. There was no fielder anywhere near to the ball. That's a slight misfield from the keeper. That's not been capitalized. Both the batsmen are settled in the middle.
Suhas and Sharath, the brothers here in the middle, have got their team a bit of score. We are on 31 for the loss of 4 wickets at the end of 5.5 overs. One more delivery to be done here by Prashant Bhatt. Correction there, Pancham Bhatt. पंचम बट लास्ट बॉल गलतरस यापटी वापस स्विच प्रयत्न केला बट लेग स्टंप मस्त बाहेर गेला बॉल डाऊन द लेग साइड जेवण आशिल्ले बॅट बॉल मेळतना डॉट बॉल जाला अजोटूची अनेक ओव्हर कंप्लीट जाला सो 6 ओव्हर नंतर वळलंके फायटर्सचे ಒಟ್ಟು स्कोर 31 with 4 wickets down. Satish, I think this team will get somewhere around another 12 runs in this over. What's your gut feeling on this? This is the 7th over. They have to do or die. They have wickets in their hand. खंडित जाऊन विकेट आणि काही मस्तच वळलंके फायटर्स लागी बट ओनली थिंग इज बॅट बॉल समा येतना कंडिशन्स तितली इजी ना बॅटर्साक सो हॉट शॉट येवका हे एक ओव्हर अंतू 10 रन आयली म्हणजे एक रेस्पेक्टेबल टार्गेट म्हणूयात सो तशें हॉट शॉट प्रयत्न करका हांगा बॅटर्सान शरत आणि सुहास प्रभू कशी खेळता ती पळोवया लास्ट ओव्हर घालूक नवी बॉलराक इंट्रोड्यूस केला KSKच्यान नवी बॉलर जावन हरिकिशन येतस फर्स्ट टाइम बॉलिंग घालतस आभरण एंड आदकुनु The wind looks almost still in the ground now. We don't have any signs of wind blowing here. It's very light and calm. It's a combat between the bowler and the batter. Hari Kishan Pai is the new bowler who will be picking up that ball to deliver the last over of this innings. Vadalanke fighters have Suhas and Sharath in the middle. सुहास स्ट्रायकर नॉन स्ट्रायकर जाऊन शरद प्रभू आता हरिकिशन फर्स्ट बॉल घालता लास्ट ओव्हराच्या फायनल ओव्हराच्या फर्स्ट बॉल फ्रॉम द आभरण एंड Hari Kishan to Suhas. Suhas misses this completely. The ball was slightly outside the off stick. A reverse switch try Ashilthai. He misses it. Probably they have to think wise here. सुरवे बॉल अंत कंची रन येनी डॉट बॉल जल्ला डेथ ओवर अंत बೌಲಿಂಗ್ ಗಲ್ತಸ್ ಹರಿಕಿಶನ್ 7 ಓವರ್ ಚಲ್ತಸ್ 31 ರಬ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ फेस करूक सुहास प्रभू रेडी जतस फर्स्ट बॉल स्विचचा प्रयत्न केलेला बट रन येनी यापडी वापस अटेम्प्ट केले स्विचटाक बॅट आणि बॉल मध्ये समजावून आशिल्ले कनेक्शन ना आशिल्ले ऑनसाइड ड्राइव करचे प्रयत्न आशिल्ले बट एज लागून विंगड डायरेक्शन बॉल गेले अजी मध्ये 1 रन मेळनो स्ट्राइक रोटेट जतस आता स्ट्राइक मेळतस शरताक पळोव्या शरत कशी खेळता म्हणून I think the batters are exposing their next shot before the ball is delivered. The bowler is getting enough time to notice what they would do, and they are being wise in the middle there. That's an interesting performance by Hari Kishan. That's another drive towards the deep square. Like this time, they should get couple of runs. One has been already taken. The second is run. There's an call for a run out. The batter is safe within this crease. 2 runs are being added to the scorecard. With this, the score moves to 34. We have 3 more balls to complete in this last over. Like एक रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणून येतं यशवंत एग्रेसिव्ह रनिंग बिटवीन द विकेट दोग जण बॅट्समॅन मस्त क्विक आशिल्ली ती सो सिंगल आशिल्ले हांगा डबल जावन कन्वर्ट केला सो 2 रन मेळता सो वडलांके फायटर्साक अजोटूचे स्कोर जाल्ले 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स That's a full toss outside the leg stick. Umpire doesn't have much to do except to stretch his hand and signal a wide. That adds 1 more run. This is not expected in the 7th over. When they are doing really good, there is no need to increase the pace and try to cheat the batter with the leg side, attempting for an Yorker on the leg. लाइन एंड लेंथ मेंटेन करचंत विफल जल्लो हरिकिशन नेक्स्ट टाइम मस्त बाहेर गेलेला बॉल सो वाइड रूपारी 1 रन मेळतस वडलांकेक ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಜಲ್ಲ 35 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ Looks like a DRS has been called. Umpire requires some support on that decision.
थर्ड अंपायर एक डिसिशन वतस म्हळ्यार मस्त भायर आशिल्लो बॉल सो अंपायराक जड्ज करू जाय न्ही नेकेड इंतू तशें जावन वेदर इट इज ए वाइड और नो बॉल म्हणून चेक करचे खातीर थर्ड अंपायराक फील्ड अंपायर जावन अशें मेन अंपायर जावन अशें पवन शिरवान रेफर केला थर्ड अंपायर आतां चेक करता पळोवया कसं डिसिशन येता म्हणून सो जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 दांचे सीझन चलतस कोडिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैंगलोर अन्नी प्रेजेंट करचे टूर्नामेंट मस्त चंद रीतीर चलला 3 दिवसात क्रिकेट फेस्टिवल क्रिकेट कार्निवल एक मेगा क्रिकेट एक्स्ट्रा वेगांचा म्हणून येतो शान बघू कुद्रूचे हे एक सुंदर जावन आशिल्ले विस्तार जावन आशिल्ले मैदानांतू हाजे मध्ये वैड म्हणो अंपायर आला थर्ड अंपायर डिसिशन येतस 1 रन मेळतस हांगा वळलंके फायटर्साक या 1 रन ऍड जावन स्कोर बोर्डार तांगे स्कोर आता दाखयतस 36. With that wide being added, the score moves to 36 for the loss of 4 wickets. 3 more deliveries in the 7th over. Harikishan to Sharath. चिके शॉर्ट बॉल जावन आशिल्ले हरीश किशनान घालेले बट स्विंग एंड मिस म्हणत चिके भायर आशिल्लो बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप आशिल्लो बॉल बॅट्समॅन विफल जाल्लो शरद प्रभू बॅटामध्ये बॅट आणि बॉलामध्ये खंयचे कनेक्शन ना अशी बॉल विकेट किपर हाता गेला भरलेलं काम विकेट किपरान केलेलं असं खंयचे रन येतना डॉट बॉल. They need big shots. Last 2 balls of this innings. Batsman pulled as a full toss. The batter gets easy connect to the bat. There's a drop of the catch. Looks to me the fielder is. Who's the fielder there? That's a good attempt by Durgesh. Could not hold it, but he could save a couple of runs there. Definitely had saved a boundary for his team. And unfortunate for the batter's team. There's a run out. Suhas Prabhu has to leave this crease. हॉड एक शॉटाक प्रयत्न केलेले हांगा शरद प्रभून बट टायमिंग्स तितले लायक नाशिल्ले प्लेसमेंट तितले परफेक्ट नाशिल्ले खंय फिल्डर आशिल्ले की त्याच जागे गेल्ले कॅच जेवचे अवकाश आशिल्ले बट मस्त एक प्रयत्न केले दुर्गेशान तागे हाता दुखून बॉल स्लिप जालो बट लायक एक रिकवरी म्हणून येत कुडले ताणे बॉल कलेक्ट करून थ्रो केले बौलर संडाक बौलर एंड धांवतो आशिल्लो सुहास प्रभू अनफॉर्च्युनेटली क्रीज दाखवून मस्त भायर आशिल्लो सो अनेक विकेट पडला हांगा 37 for 5 now. The last delivery. The last delivery of the innings being bowled by Harikishan to Sharath. That's been pulled. Who did that? Clear the boundary. That's a 6. This was much required for the team. They just saved themselves, being the second lowest score of this tournament. लायक एक शॉट रिप्लेन तुम्ही पळोवेत एलईडी स्क्रीनांतू कशी स्लॉट येवन पिक करून पेटयल्या म्हणून बॉल गेले सीधा मिड विकेट दुखून भायरी सर अन्नाक पळोक the decision has gone to the third umpire. We'll have to check whether it's a boundary or sixer. Third umpire आता चेक करता बट बॅटिंग त्या एक हॉट शॉट अगत्य ते आशिल्ले त्या एक सुंदर बेरी लास्ट बॉलाक हॉट शॉट मारच्यान तो यशस्वी जाल्ला सो लायक एक शॉट म्हणत कसं सांगता यशवंत त्या एक शॉटा ಬಗ್ಗೆ I think he was fortunate that the full toss melted. That was very important for him. The bowler just lost his last ball. Thought there Manishit Makka. He should have pitched it. Unfortunate for him. But this was much required to keep the score with a good momentum. 43 is what it is if it is 6. It would be 41 if it is declared 4. The decision is pending. Looks like he had got that hit towards the longest part of the boundary there. सूपर जावन आशिल्ले कनेक्शन जावन आशिल्ले मस्त बॉल बीट जाल्लो शरद प्रभू बॅट मेळतना आशिल्ले बट खरे बॉलान तू अनिवार्य जावन आशिल्ले तसर एक शॉट सो हॉट शॉट मेळ्ळालो अजोटूची वडलंके फायटर्साचे इनिंग्स समाप्त जाला पळोवका थर्ड अंपायर डिसिशन आनी काय पेंडिंग आस बाउंड्री की 6 म्हणून 6th म्हणून थर्ड अंपायर डिसिशन येतस It's a 6R. Superb जावन आशिल्ले 6 valuable runs add जाला वडलंके फायटर्साक 44 would be the target for Kodial Super Kings.
43 is the score. 44 would be the target for the batters. 44 रनाचे टार्गेट चेस करकांगा कोडियाल सूपर किंग्स सचन हार्ड टार्गेटस 42 बॉल अंतू 44 रन्स कोडियाल सूपर किंग्स मुखारस पळोवका कशी त्यांनी बॅटर्स कंचिन स्टार्ट दिता ते ओपनर्स म्हणून तशींची आम्ही वरलंके फायटर्स पळय म्हणजे तांगेले लायक बौलर्स आसा ती तांगेले ट्रम्प कार्ड बौलर्स आना तांगेले बौलिंग करा ಮತ್ತು दाखोक एक क्रूशियल इंपॉर्टंट मॅच अंतू दोन टीमय एक मॅच विन जावन दोन पॉइंट्स घेऊन खेळतस दोन टीम सेकंड राउंड अंतू हंगा मुखामुखी जातस सो हे एक मॅच नेल बाइटिंग फिनिश जावन आसता म्हणून सक्कर जे निरीक्षण करतस ती पळोवया कोण हे मॅच विन जाता म्हणून सो नेक्स्ट इनिंग्स प्रारंभ जातस चेस बिगिन्स टॉप ओपतस कोडियाल सूपर किंग्स तर्फेन रेडी जातस क्रीसा एंटर जावच्याक अजिमतेंतू कमेंट्रींतू बदलावण करतस ती मुखारची कमेंट्री सांगूक इंग्लिशान सांगूक येतस Satish G from Mangalore. Thank you so much, Suresh Bharji and Yashwant for your wonderful cricket commentary in a multi-language. And before we are going to the innings of Kodia Super Kings, I would like to call upon two teams captain to please report immediately for the tossing ceremony. And 10th match of the day, number 1, Mumbai Falcons takes on GSP Bulls Kodial Bile. I request both the captains, please report here to complete the formalities of tossing ceremony for the next match. Yes, coming back to this match, two unbeaten teams, Kodial Super Kings as well as Walalanki, the fighters, are really fighting hard here for the victory. Winning the toss, selected to ball first. The Kodial Super Kings are really did a great job. And till that, the last delivery I'm just talking about, the 6 which came from the last delivery of their innings will go to give some kind of oxygen and platform for the team Kodial Super Kings to win this match. The two difference between this match for Walalanki fighters, the previous match, they chased at 40 plus runs, and now they have to depend these runs, the 44 runs. That's just a small difference. And in these two matches for the Walalanki fighters, here comes the first ball. Girish by the bowler, Padmanabh straight away is off the mark. Not really try to hit it too hard, and the soft hand comes into play, picked up a single, one without loss of any wicket. Kodial Super Kings, they have to bowl well, but in this condition you cannot underestimate the total of 44 runs. It seems to be a small one, but in this condition it can become a big if the bowler will go into exploit the condition under floodlight. Girish, the experienced campaigner, will going to continue from the commentary box, and Durgesh, one of the most dangerous and destructive batter as far as the power play is concerned, is master of power play. Just like I mentioned about take my word, this is what I'm just talking about. It's a little margin for error for the bowler. You can't pitch it short for this man. He will definitely going to go after that one. Absolutely nail that one. And Girish once again doing the mistake of this is absolutely off a tracker. Have a look at that one replay. Enough time for Durgesh to get back and push it away. And it's been a fantastic catch has been taken, not by the fielder, but one of the spectator. We can see here in our screen is so excited. One more short pitch delivery, misfield by the fielder, and they will not going to grab this opportunity. It's not a good running between the wicket. The sudden couple of runs here. Padmanabh is the one is not interested. Experienced campaigner, Padmanabh. So far, I'm watching him performing in the GPL. This is edition 10, but I think he's the one who's played all the edition of this GPL. And once again, played it gently down to cover point region. He's doing a right job here. You know exactly the right man to tackle with the power play deliveries.
That's one Durgesh. So his job is to rotate the strike, get him back on strike. 9 without loss of an wicket. Cordial Super King off to a very good start here. The 2 times champion Olanki Fighters Mulki. They know exactly what to do here. They have to get some wickets here if they wanted to back in the game. So one more single has been added to total the score, but now moves on to double figure 10 on the board. Cordial Super Kings, if you watch their performance in the GPL, they're absolutely not that much of luck enough to become the champion. 2 times they become the runner-up, but yet to become the champion. Driven just wide of the fielder. He got a fingertips onto that and couldn't manage to get that catch. Definitely, it's a hard opportunity for the fielder at mid-off to get that one. But you have to try for that, isn't it? They needed some wicket for the team Olanki Fighters, and the fielder couldn't manage to grab the opportunity. The first over completed, 11 from the first over. That means Team Cordial Super Kings off to a very good start. The fantastic, we can see that the ground which is covered with the beautiful crowd here, absolutely very decent and colorful spectators gathered with a big number. This is what the speciality of GPL. Even though it's a new venue for GSP community, but never looks like it's going to be the different venue. It is the same scenario we're watching in Sahyadri Cricket Ground every year, but the same scenario we can see that nothing is changed here. The excitement, the still here in this beautiful Shanbag Kudro Island Ejamadi Cricket Ground here in Mulki. This is what the speciality of GPL, the popularity of GPL. The same vibes you can see here in this beautiful cricket ground. First ball, just wanted to go for the big one. Chance here for the field. Oh, it did. Oh, my goodness. At one stage, looks like the fielder is drops the catch. But in a second attempt, he just kept his eye on the ball. That's very, very important. It's absolute juggle, but couldn't absolute. The fielder couldn't manage to complete the catch in a second attempt. The wicket number first gone. The 11 for 1. The dugout of Olanki Fighters now alive. With that wicket, they know exactly the picking up a wicket is the right way to back in this game. And Ratan strikes in his first delivery with a huge wicket of Padmanabh, experienced campaigner back in the hut. The captain of the side, Ganesh Kamath, Nayak correction, and walks towards the middle with some responsibility. Not a big target in front of the team Cordial Super Kings. The 44, and still they have got a 33 deficit. But they got plenty of deliveries to get that one. The current run rate is 9.43 runs per over. Required, which is just under 6, the 5.66 runs per over. And the fielding team have to get that required run rate more than 7 or 8. Each and every over they have to get some wickets and some economical deliveries. Ratan strikes with the first delivery of his over. Will going to open the gate straight away. GPL Utsav edition 10. Here comes next delivery. And Ganesh nicely played it down to short extra coverage and for a single. He's off the mark. Along that stroke, he picked up a single. The good response came from his partner as well, Durgesh. Desperately wanted to come to the striker's end. Now it's going to be a great contest, isn't it? Ratan versus Durgesh. The last over of the power play. Last 4 deliveries left in this over. Durgesh to take the strike. Ratan, seaming from the far end. Oh, lovely delivery. Nowhere near the pitch of the delivery. Even the ball which is kept low in the last moment. The Durgesh just expecting that might be the ball which can bounce a little bit. We can see that the line of the delivery and the line of the bat. It's nothing wrong with that
attempt back from Durgesh, but the fact that ball which is kept low really beats the bat of the batter. Here comes the next ball. Pulls it and one nicely into the deep square leg region. Protection has been given in the deep square leg in front of square. And ample time for Durgesh to complete the single. With that single, Skoban moves on to 13 for the loss of 1 wicket. The better over is in progress. The second over of the power play. Certainly, it's going in favor of Olalanke Fighters. But job which is not yet done. Appeal is plumb in front of wicket. Ganesh just wanted to go for across the line. Pays the penalty for that. He's find himself right in front of middle stump. It's a one more big wicket here for Ratan. What a delivery. Right on the block. Once again, the ball may be kept low. The Ganesh just tried to get that one against the line. It's very dangerous. And this is what now the Olalanke Fighters dugout is absolutely noisy. They know exactly they got the wicket. The big fish in the net. The captain of the side departs. The gate which is open now for the Olalanke Fighters. 13 for 2. The Kodial Super Kings have to get some partnership here. The Ratan is absolutely is on fire from the Abaran Jewelers end. Maybe he's getting some help from the pitch as well. I've already mentioned it's a different ball game. All we can see that from morning to evening, it's a batting paradise, and all in sudden when the switched on, the lights are switched on, we can see the bowlers started to dominate. This is what the beauty of cricket is all about. Pradeep, the new batter in. Ratan, final time in this over. 2 massive wickets, isn't it? Of Kodial Super Kings back in the hut. Here comes Ratan, final time. Shot outside and off stump. Lovely delivery to ball to the fresh leg. The Pradeep Pai just wanted to get that one onto the point region. Missed it completely. The fantastic over which is comes from here from Ratan. 2 runs and 2 wickets. This is what team of Olalanke Fighters have to do. The name is Fighters and they have to justify why the name is given for Olalanke. They are the Fighters. And even Kodial Super Kings have to prove that why they are the Kings. After they got a very good start in the first over, 11 runs without loss of any wicket, all in sudden the change in the game, 13 for 2. Now the same number of boundaries and same number of sixes in this tournament. The great competition is going on for a boundary and a 6. 41 boundaries and sixes respectively scored in this day number 1. Girish brought it to attack the ball the second over. He won a little bit expensive in his first over. But captain has got a faith in his bowling. Nicely taps that ball down to point, cover point region for a single by Pradeep Pai. Skobanda moves on to 14 for the loss of 2 wickets. Here comes the Girish. Right over the wicket balls. Just over that of that point field. Shot mid off. And this time they wanted to come back for a second, asking for trouble. And there's total misunderstanding between the wicket. It can cost 1 more wicket of Kodial Super Kings, isn't it? All right, call from Pradeep to not to come for the second. Otherwise, it's going to be 1 more disaster. 15 for the loss of 2 wickets. Girish, one who bowled first over in the power play. Now he's getting some more restriction in the deep. We can see there's so many bodies out there in the deep, long on, deep mid wicket and deep square leg. And in the offside region, deep long off and deep extra cover. This time wanted to go for the big one in the expansive drives attempted. Doesn't get hold of that in properly, but good enough for him to rotate the strike. I think both the dugouts absolutely they're cheering their each and every runs by the Kodial Super Kings. They're really cheering, and at the same time each and every dot ball and each and every wicket taking delivery, we can see that Olalanke Fighters dugout is absolutely enjoying
They're encouraging their favorite players. They needed to be edging it down quite deliberately down the third man region for a single by Pradeep Pai. Now both the batters quickly realizing that it's not a time for you to go for the big shot, but this time I think is a time for the negotiation. They lost 2 quick wickets in the previous over, so they're just concentrating over the rotating the strike. 4 singles in 4 deliveries. Just wanted to play as per the condition. Durgesh back on strike. One more lovely delivery. Even negotiated very well by the batter. This is a sensible batting there from Durgesh. This is what the quality of a good players is, isn't it? Even though they're knowing for the big shot, but sometime the condition asking them to play like that only. Assessing the condition and respecting the condition is very important. And a quality player like Durgesh know exactly his presence is very important. Full toss catch is a call, but no one there. Played it over the head of the ball, one of the safest area to drive the ball up easily. Long on and long up is wideish, so that ample time for the batter to complete the couple of runs. 3 gone after completion of over number 3. Kodial Super Kings are 20 for the loss of 2 wickets, and in the remaining 4 overs, they have to get another 24 runs to win this match. That means 6 runs per over the required run rate. 24 deliveries and 24 runs required for the victory. Girish, quite a bit expensive. You can see that his bowling analysis, 2 overs, no made and 18 runs. When you're depending on 44 runs to win this match, when you are having a bowler like Girish, who's an experienced man, conceding 18 runs in 2, it might be a little bit expensive. Now the 3 overs remaining. One gentleman taking the photos of commentators. Thank you very much. No one is taking yet. Everyone is taking the photos of their favorite players, but no one taking the photos of commentators. And we are really happy for that. Thank you. $20 for the loss of 2 wickets. Kodial Super Kings. We just were talking about how the game has quickly changed. In the morning to evening, we are witnessing some big shots. The ball is absolutely flying around out of the park. And now all in sudden, we can see that the batter started to deal with the singles, because in cricket, you cannot underestimate singles. The singles always, just like I'm just wanted to compare that singles as a raindrops. It might be the very small in the size and shape, but continuous fall of raindrops can make a river overflow. So rotation of strikes, especially when the condition like this, I think so important. You have to your change, you have to your technique of getting the runs. Yes, absolutely. Ratan back into the attack to bowl is final over. He's been absolutely outstanding in his previous over. 2 runs and 2 wickets. Starts with a wide delivery, and just getting that in swing delivery. When you're trying to bowl the in swing delivery, the line which should be just outside the line of off stump, but when you pitch the ball on the middle stump, the definitely ball is going to travel outside the line of leg stump. With the angle as he coming wide of the crease, will going to miss the leg stump, and wide call by umpire, rightly so. Edging it down, just reaching for the delivery away from his body. That's why he couldn't manage to get that timing what he's looking for. Picked up a single. Almost it was off volley from Ratan. 2-2-2. We can see the Nelson in scoreboard. All 3 2s in the scoreboard. Shot outside the left side, slashed it beautifully off the back foot into the cow point region for a single. So this is what the classical cricketing stroke will going to make the spectators very delightful to watch. Of course, some sixers make you to get up from the seat, the big shot, but the classical cricketers like make you force by watching that beauty of the stroke. This time, opportunity for the wicket keeper to take the catch.
One more wicket back in the pavilion. What an outstanding bowling here from Ratan. Picked up his third. All three wickets for him. (23 for 3) now. This is an absolutely huge fish in the net. The man who looks so dangerous in the middle, Durgesh, departs after scoring a 13 runs in 10 balls. Well. This is the right time for the Walalanki Fighters to back in the game. Whenever the new batter coming into the middle, I think it's the right time for the bowler to tighten up the screws. If you get another 1-2 wickets quickly here, the game will going to change quickly. 23 for 3. Raghavendra, new batter in. One more technically very sound player. Not a big deal if you see the position here. The run rate required is again the 6 runs per over. But Ratan is a man who definitely not given up this match yet. Full toss. Played it gently down to square leg. There's a chance of run out to throw, which is not good enough. The direct is suddenly required to get the result here from the short mid wicket fielder. Tanmay, the fielder in the short mid wicket region, trying for the run out. Need to have a bull eyes if we wanted to get the stumps, especially under lights. 24 for 3. One more Yorker and delivery, negotiated very well by Pradeep Pai. He gets his bat in right time, otherwise that ball is going to crash the middle and leg stump of the batter. Excellent bowling from Ratan so far. Very inspired. 25 for 3, 19 required for the victory. 19 deliveries remaining. The match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Shot and lovely shot. Beautiful shot. That was absolutely poetry in motion. What a classical cut shot came from the batter. Shot outside the line of off stump. And Raghavendra, I already mentioned, a technically very sound player. And no way the opportunity to miss this, to go for the cut shot. Played it square of the wicket. And that will going to release the pressure from the batter. That boundary. The one small mistake from this bowler, all the efforts are gone in vain. Ratan, who picked up a 3 wickets now, the last delivery is boundary. 29 for 3 and 3 overs remaining. Another 15 runs required for the victory. And the right time for Ajay Raj to back in the commentary box. And one of the most experienced as well as, of course, most... Yes, lost loud by the especially in the JPL, and everyone want to hear his voice as well as commentary. It's over to Ajay Raj. Ajay Raj, what do you think about this match? 15 to get from 18. Will you go into any opportunity for the team Walalanki Fighters to back in the game? If you wanted to back in the game, what kind of a strategy to be implemented in the remaining 3 overs if they wanted to win this match? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, और बहुत शानदार तरीके से विवरण आप सुना रहे थे। 29 विकेटों के नुकसान पर परिस्थितियां इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों ओर चल रही है। सतीश, अगर वलालंके को इस मैच को जीतना है तो अक्सर मैं कहता हूं जब लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारा जाता है। इस वक्त लोहा ज्यादा गर्म नहीं हुआ है क्योंकि मात्र 3 विकेट्स गिरे हैं, 7 विकेट शेष बचे हुए हैं। बल्लेबाजों का पलड़ा कुछ भारी लगता हुआ। एक छोर पर राघवेंद्र 5 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, पद भी इस वक्त 7 पर खेल रहे हैं। वो छोर से प्रदीप नाथ की ये गेंद इस छोर से, और इस गेंद को थोड़ा सा टैकल करते हुए खेलना चाहते थे। विकेट कीपर के पास मौका है कि वो रन आउट करें, गिल्लियों को उड़ा दिया और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन हो चुका है। और इस विकेट के प्रोजेक्ट है जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। क्या बात है,
दर्शक इस वक्त कैमरास में इस टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, उनका हर्षोल्लास गवाह है कि बहुत रोमांचकारी मैच साबित होने वाला है। सतीश ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त रोमांच अपने चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर हैं। दोनों बल्लेबाज आपस में तालमेल खो गए और अचानक जो पार्टनरशिप अच्छी खासी बन रही थी उसमें एक ब्रेक आ गया। एक महत्वपूर्ण विकेट गिर चुका है और चौथे विकेट के साथ ही इस वक्त 30 रन, मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है 5.25 बता रहा है कि बल्लेबाजों को अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। गेंदबाज अपने दबाव को बढ़ा रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ होता है। प्रदीप नायक आक्रमण पर इस छोर से, जी हां, स्मार्ट बाजार छोर से उनकी गेंद हवा के रास्ते, गेंद को लॉफ्ट कर दिया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने संतुष्टि प्राप्त कर ली। 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बच चुके हैं। तो बड़े लंके को जीतने के लिए जैसा कहा गया है, इस वक्त और विकेटों की तलाश है और वो प्रयास कर रहे हैं कि गेंदों को बहुत फूक फूक कर, दूध का जला छाछ में फूक फूक पर पीता है, उस अंदाज में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को बीट करते विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, थोड़ा सा आगे निकल गए थे बल्लेबाज, पलट कर क्रीज की दिशा में पहुंचा दिया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया और कुल रन संख्या 31, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक गिल्ली हवा में उड़ गई है, उसको दुरुस्त करेंगे इस वक्त अंपायर। दोनों बल्लेबाजों की बात करते हैं। प्रदीप पर 7 रन बना चुके हैं 8 गेंदों का सामना करते हुए। निश्चित तौर पर वो कुछ देर से जमे हुए हैं, उनको अपने पार्टनर अर्चित को संभालना होगा, उनके साथ मिलकर एक योजना बनानी होगी। ये बल्लेबाजी के लिए टिप्स कहा जा सकता है। गेंदबाजों के लिए मैं कहूंगा कि अभी बहुत सटीक लाइन और लत में जो कर रहे हैं उसी को बरकरार रखने की जरूरत है। एक और अच्छी गेंद, प्रदीप नायक चुन चुन कर अपने तरकस से बहुत शानदार तीर निकाल कर छोड़ रहे हैं। बल्लेबाज को परास्त करती हुई गेंद गई। इस गेंद को न छोटी थी न लंबी थी, थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट करने का असफल प्रयास किया। बल्ले को हवा डालकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाकर समा गई और बिल्कुल बल्लेबाज देखते रह गए कि यह गेंद किस तरह से उनको चकमा देकर निकल गई। 31 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 44 का लक्ष्य है। धीरे धीरे दबाव बढ़ता जाता हुआ इस छोर से एक और गेंद फ्रंट फुट पर स्टंप्स के सीध पर थी। क्या बात है, अच्छी योजना के साथ इस वक्त बल्ले और पैर को साथ में ले आते हुए रक्षात्मक तरीके से गेंद को फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक खेल दिया और निश्चित तौर पर प्लेसमेंट के साथ खेला गया स्ट्रोक था। 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति हुई 5 ओवर के समाप्ति पर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। दर्शकों की तादाद, उनका हुजूम, उनकी संख्या बता रही है कि जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10 मात्र क्रिकेट नहीं है, यह क्रिकेट का महोत्सव है। जीएसबी परिवार के लिए एक महोत्सव है जो हर साल सभी को एकत्रित करते हुए एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने पेश करती है। नरेश शनई, चेतन कामत और नरेश प्रभु को हैट्स ऑफ कहते हैं। जब इतनी सारी संख्या में जीएसबी समाज को देखते हैं तो आश्चर्य भी होता है क्या ऐसी कोई योजना बन सकती है जो इतने साल लगातार चलेगी। निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। इस वक्त एक और नया ताजा छठा ओवर लेकर गेंदबाज आक्रमण पर आ रहे हैं। शायद सुहास आक्रमण पर आएंगे। स्ट्राइक एंड पर प्रदीप पैस तैयार हो रहे हैं, बल्ले को थोड़ा सा धार कर रहे हैं। 8 रन वो बना चुके हैं, 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और रोमांच कितना बढ़ेगा क्योंकि विपक्षी टीम जो इस वक्त क्षेत्ररक्षण कर रही है उनका नाम वड़लंके है और आप जानते हैं कि वो कितनी सशक्त टीम है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के सीट पर थी, बैकवर्ड पर गए, बल्ले का मोटा सिरा देकर गेंद को फिसलने दिया। जब तक फील्डर आ जाते दोनों बल्लेबाजों ने छोर को बदल लिया और 1 रन के साथ कुल योग को बढ़ाकर पहुंचा दिया 33 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। विकेटों के पीछे शरत है टीम के कप्तान और आप जानते हैं वो कितने बुद्धिमानी है और इस वक्त अच्छी गेंद थी, बीट कर गए बल्लेबाज को। शरत ने गेंद को उठा लिया, गेंद को थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर 34 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। तो रेन ड्रॉप्स के बारे में सतीश आपको सुना रहे थे, बता रहे थे
निश्चित तौर पर सही उदाहरण आपने दिया। मुझे लगता है कि हर एक रन जो कि इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, बूंद बूंद से घट भरता है, और इस वक्त इसी प्रयास में दोनों बल्लेबाज योजना बनाकर सिंगल्स को बटोरने में लगे हुए हैं। शॉट ऑफ लेंथ थी, बैकफुट पर गए, इनफील्ड के ऊपर से गेंद को स्मैश करना चाहते थे, एक रन चुरा लिया। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन का रास्ता बना लिया है। क्या बात है, यहां पर योजना कहां पर असफल हुई, यह सोचने वाली बात है। शरत ने फील्ड प्लेसमेंट में जो योजना बनाई थी, क्या गेंदबाज उसी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त उठा हुआ, क्योंकि पिछली गेंद में शॉर्ट ऑफ लेंथ थोड़ा सा विड्थ था बल्लेबाज के पास, और इसलिए उन्होंने लगभग पॉइंट के ऊपर से गेंद को हवा के रास्ते स्मैश किया था और 2 रनों का रास्ता बना लिया। रन 36 पर 4 विकेटों के नुकसान पर है। 44 का लक्ष्य है। दूर वाले छोर से आप रन छोर से गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, और अंपायर बिल्कुल सतर्क, सजग और अपना 100% देते हुए हाथों को फैलाकर उन्होंने इस गेंद को अतिरिक्त करार दिया, वाइड करार दिया। 1 रन और मिल जाएंगे। ऐसे में फिर से सुहास को सोचना होगा कि क्या गलती वो कर रहे हैं, लाइन और लेंथ में वो कहां चूक कर रहे हैं। दाहिने हाथ से वो विकेट, एक और गेंद आप रन छोर से लेग स्टंप के बाहर थी, फिर से वाइड हो सकती है। अंपायर ने फिर से वाइड घोषित किया है। सारे फील्डर्स, कप्तान इस वक्त चिंता में पड़े हुए हैं कि इतना रोमांच, इतना संघर्ष, इतना जबरदस्त संघर्ष वो कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर अतिरिक्त रन 2 बनते हैं तो निश्चित तौर पर मैच हाथ से फिसलने की जो चांसेस है वो ज्यादा बन सकते हैं। 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि अभी भी और 6 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करते हुए जीत की ओर अगर आ रहे हैं, और ऐसे में सुहास के पास विकल्प है कि वो सिर्फ विकेटों को प्राप्त करें। ये गेंद ड्राइव किया सीधे फॉलो थ्रू के दिशा में, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गेंदबाज ने, और रन लेने का अवसर जो हो सकता था उसको वहीं पर समाप्त किया। अभी भी 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 6ठा ओवर प्रगति पर है, अभी 8 गेंदें शेष बची हैं, 6 रनों की जरूरत है। दाहिने हाथ से वो विकेट, और इस बार थोड़ा सा टॉप करना चाहते थे, हवा में थी गेंद, गली में फील्डर मौजूद थे, लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्यवश उनके हाथ से गेंद छूट गई। डाइव लगाया गेंद को कैच करने के लिए, अपना सब कुछ झोंक दिया, बात नहीं बनी। किस्मत वाले निकले बल्लेबाज। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रयास किया गया है। अब फील्डर में थोड़ी सी अदला बदली हो गई है, और ऐसे में बाल बाल बचने के पश्चात 1 रन को दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिया। 28 स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। स्टंप्स के सीध पर आती हुई गेंद ड्राइव किया, थोड़ा सा अटपटा स्ट्रोक था, अनऑर्थोडॉक्स था, थोड़ा पीछे हट गए, बल्ले का निचला सिरा लगकर गेंद गई। 1 रन चुराने का अवसर, इसी के साथ रन बढ़कर 40 पर, और ये 6ठा ओवर समाप्त हो चुका है। 6 ओवर के समाप्ति पर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आप देख रहे हैं जीएसबी प्रीमियर लीग 2026 सीजन 10। क्या बात है, जीपीएल 2026 सीजन 10वां चल रहा है, और पुराणिक जी इस वक्त दोनों हाथ को जोड़कर बिल्कुल सामने अंपायर के पीछे खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी वो अगले मैच में अपने मुंबई पल्टन्स के लिए बना सकते हैं, और वेल बिल्ट मैन जिसको कहते हैं, और एक तरह से धष्ट पुष्ट दिखाई पड़ते हैं। उनकी टीम बहुत अच्छा करी और आगे अच्छा करें उम्मीद करते हैं। आइए इस वक्त इस आखिरी ओवर की ओर बढ़ते हैं। अभिजीत कुछ जादू करेंगे इस उम्मीद के साथ शरत ने उनको जिम्मा सौंपा है। स्ट्राइक एंड पर अर्चित है, इस छोर से ये गेंद दाहिने हाथ से विकेट। इस ओवर की पहली गेंद ऑन साइड की दिशा में गेंद को घुमा दिया, कलाइयों का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल था। स्टंप्स के सीध पर आती हुई गेंद थी, लेंथ में ज्यादा थी, पूर्वानुमान बहुत अच्छा था, कलाइयों के जरिए गेंद को घुमा दिया। 1 रन को चुराकर अपने पार्टनर प्रदीप पै को जिम्मेदारी सौंपी। ऐसे समय में अक्सर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक खेलें, ताकि ये जो दबाव इस वक्त गेंदबाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं उससे हटा जाए। लेकिन इस वक्त दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि यहां पर अगर विकेट गिरता है गेंद डॉट में आ जाएगी और दबाव बढ़ सकता है, इसीलिए वो सिंगल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हर एक गेंद को बिल्कुल पैनी निगाह रखते हुए खेल रहे हैं।
स्ट्राइक एंड पर प्रदीप जो कि 12 रन बना चुके हैं, 14 गेंदों का सामना किया है। अभिजीत की गेंद प्रदीप के लिए, शॉट ऑफ लेंथ पुल किया गेंद को, बहुत सुंदर स्ट्रोक है लेकिन फील्डर वहां पर है, 1 रन मिल जाएगा, दूसरा बनाना चाहते हैं और शरद ने गेंद को उठाकर स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। आज किस्मत लेकर आए हैं दोनों बल्लेबाज, दूसरा रन और उसके साथ ओवर थ्रो के रूप में तीसरा रन वो चुरा रहे हैं। अंपायर इस वक्त संज्ञान लेंगे और पुष्टि करने के पश्चात बताएंगे कि क्या यह सही था या नहीं। मुझे लगता है कि डीजे इस वक्त वार्म अप कर रहे हैं, बीच बीच में जो धुन सुनाई दे रहा है और शानदार धुन आपके सामने वो बचाएंगे तो निश्चित तौर पर बात बनेगी। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ, अभी टोटल में ऐड नहीं किया है। जो दर्शक यूट्यूब पर इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी 41 रन 4 विकेटों पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये जो 3 रन अभी हैं, अगर ये 3 रन है तो मैच समाप्त होता है। 2 रन हैं, थैंक यू सो मच। 2 रन ऐड किए गए, 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 4 गेंदें शेष बची है। 1 रन की जरूरत है इस वक्त कोडियाल सुपर किंग्स को जीतने के लिए। 1 रन की जरूरत, दोनों बल्लेबाजों ने आपस में गुटरगु कर ली है, मंत्रणा कर ली है, शब्दों का लेन देन कर लिया है, योजना बना ली है, जबकि अभिजीत अपने मन में क्या विचार लेकर चल रहे हैं 10 नंबर के जर्सी में, क्या वो कुछ अद्भुत, कुछ मिरेकल, कुछ जादू कर सकते हैं? क्या 4 गेंदों में 1 रन को रोका जा सकता है? इस वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभिजीत गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि कौन जीतेगा ये तो दर्शक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त गेंदबाजों को एक चुनौती से गुजरना पड़ रहा है। क्या वो 4 गेंद में 1 रन को रोक सकता है? 44 का लक्ष्य, 43 रन बन चुके हैं। अभी तो दौड़ना शुरू कर दिया, लंबे ढक भरते हुए राउंड विकेट, ओवर द विकेट उनकी गेंद हवा के रास्ते उछाल दिया, गेंद मिड विकेट पे जा रही है और खूबसूरत स्ट्रोक गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर ने गेंद को रोका और इस मैच को शानदार तरीके से कोडियाल सुपर किंग्स ने जी हां 6 विकेटों से जीत लिया है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, कंग्रेचुलेशंस। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये जीपीएल 2026 सीजन 10 का शानदार, खूबसूरत, सुंदर, किन शब्दों का इस्तेमाल करूं इस ट्रॉफी के बखान के लिए? कांच के अंदर सजाया गया ये खूबसूरत ट्रॉफी जो कि इस साल के चैंपियन को दिया जाएगा। चैंपियन कौन बनेगा ये तो समय बताएगा, अभी 2 दिन और रात शेष बचे हुए हैं। आइए इस मैच में मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार, जो पुरस्कार को देना है उसकी घोषणा करते हैं। क्या बात है, तो इस वक्त कोडियाल सुपर किंग्स की तरफ से एक बल्लेबाज ने बल्लेबाजी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया और आप जानते हैं उनका नाम दुर्गेश है। दुर्गेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है। उनसे अनुरोध करता हूं कृपया बड़े मंच की ओर आए, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दुर्गेश को दिया जाता है, तो कृपया दुर्गेश आए और इस पुरस्कार को हमारे मुख्य अतिथि जो यहां पर आए हैं उनके हाथों से स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस आपको। क्या बात है, आश्चर्य की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दुर्गेश को ही मिला था। आज मुझे लगता है कि कई मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार वो मारकर ले जाने वाले हैं। और दूसरा, तो आज पहले मैच में दुर्गेश को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया नहीं गया है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस मैच में भी वही प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने के हकदार बने हैं। तो दुर्गेश जी आए और दोनों पुरस्कारों को, मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार को वो स्वीकार करें आयोजनकर्ताओं की तरफ से, अब हमारे मुख्य अतिथियों के जरिए। कांग्रेचुलेशंस आपका, इसी तरह से परफॉर्म आप करते रहे, कामना करते हैं। आइए इस वक्त नया ताजा मैच शुरू होने वाला है और आगे के मैच के लिए विवरण में बदलाव करते हैं। मैं अपने शब्दों को, अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर से सुरेश भट्ट जी को और यशवंत जी को आगे के विवरण के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थँक्यू अजय राजी. आत्ता जाल्यार मॅचाच्या मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड वतस दुर्गेश प्रभुक. तशींची आयच्या दिसाच्या सुरवे मॅचांतूय दुर्गेश प्रभुक मॅन ऑफ द मॅच मेळ्ळाले. ते एक दिवचे पेंडिंग आशिल्ले. सो आत्ता चीफ गेस्ट दुर्गेश प्रभुक त्या दोन्ही मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितस ती. सो सेकंड टाइम या टुर्नामेंटात मॅन ऑफ द मॅच प्रशस्तीक पात्र जातस दुर्गेश प्रभु फ्रॉम कोडियाल सुपर किंग्स. GSB प्रीमियर लीग 2026 नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जातस मुंबई पल्टान्स वर्सेस GSB बुल्स कोडियाल बायल. हे दोन टीम मुखामुखी जातस सेकंड राउंड मॅचांतू. आम्ही एदोळची स्टॅट्स पळयल म्हण जाल्यार मुंबई पल्टान्स फर्स्ट मॅच विन जालेले हँग्यो 11 डिफीट कोरनो. वेरॅज GSB बुल्स कोडियाल तन्नी वीर वेंकटेश क्रिकेटर्स एदराक मॅच डिफीट जालेले. तशें जावन मुंबई पल्टान्साचे लागी दोन पॉइंट्स आसता पॉइंट्स टेबल अंतू. आता ह्या मॅचांतू GSB बुल्स कोडियाल बायल टॉस विन जावन तांगे कॅप्टनान फिल्डिंग चूज केलेलो आसा. सकड प्लेयर्स ग्राउंडाक एंटर जावन तांगेल फिल्डिंग पोझिशन राबून फील्ड प्लेसमेंट सेट करता आसा ती. अशा मुंबई पल्टान्स तर्फेन दोग जण ओपनर्स क्रिस आयिल्ले आसा ती. निनाद आणि चिराग शानबाग दोग जण विस्फोटक बॅटर्स. लेफ्ट हँडेड बॅटर चिराग शानबाग नॉन स्ट्रायकर्स एंडर असल्यारी अनेक आक्रमक स्ट्रोक खेळचे प्लेयर निनाद बोरकार स्ट्राइक. अद्भुत जवळ दिसू यशवंत क्रिकेटाक एक अनुकूल वातावरण म्हणून येतं. कोडिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन अन्नी प्रेजेंट करचे GPL 2026 लायक एक ग्राउंड शानबोगो कुद्रू हेजमाडीचे एक सुंदर जवळ विशाल जवळ ग्राउंडांतू मॅच चलतस. सुरवे दिसांत आम्ही 3 दिवसात क्रिकेट फेस्टिवल क्रिकेट कार्निवल एक वेगळा क्रिकेट एक्स्ट्रा वेगांचा म्हणत आमगेल आभरण GPL उत्सव 2026 म्हणाल नावारी. So there's a fantastic award for the man of the series. You can see that the scooter being seen there in the middle of that. And it's TVS Avenues is what I was told that would be awarded to the man of the series. That's a nice placement towards the point. Gets a single run there. खंडित पै सेल सुझुकी अन्नी स्पॉन्सर केलेला TVS Avenues 2-wheeler ब्रँड न्यू 2-wheeler तुमका पळोवचे मेळतस. मॅन ऑफ द सिरीज प्लेयराक एक ब्रँड न्यू पै सेल्स अन्नी स्पॉन्सर केलेला 2-wheeler मेळता पळोवक. ह्या पटीच्या सिजनात खंयची प्लेयर ऑफ द सिरीज प्रशस्ती घेवन एक 2-wheeleraचे ओनर जाता म्हणून. सो ग्राउंडांत कलरफुल एडवर्टायझिंग फ्लॅग्स एडवर्टायझिंग बोर्ड्स कलरफुल बॅनर्स पळोवचे मेळतस. टुर्नामेंटाक सहकार दिलेल्या सकड स्पॉन्सर्साक ह्या संदर्भात थँक्स सांगतोची. मॅच ती प्रस्तुत मॅच चलतस सुरवे ओव्हरांत. हुगूर फ्लिक केले ऑन साइड ड्राइव केले टॅप करून इझिली एक रन काढून स्ट्राइक रोटेट केला. चिराग शानबागाक मेळतस 1 रन. ह्या 1 रनान चिराग शानबागाला अकाउंट ओपन केलेलं आसा. तशीच आता स्ट्राइक मेळता निनादाक. GSB बुल्स कोडियालची टीम फर्स्ट राउंड मॅच डिफीट झालेला. सो या मॅच खंडित जाऊन विन जेवका म्हणाला
इंटेन्शन रँग खेळतस कशी पण कोण या मॅच विन जाऊ का म्हणून या पाठी रनआउटाक अपील आशिल्ले पळोवक मस्त क्लोज डिसिशन रनआउटाक अपील आयिल्ले थर्ड अंपायर रेफर केला अंपायरान पळोवया कसं डिसिशन येता थर्ड अंपायराला म्हणून That's a bit of pressure on the batter there. Looks like he is in, but the umpire has requested for a third umpire decision. GSB Bulls won the toss and opted to field. They have put Mumbai Paltans on the batting. Mumbai Paltans are on 2 on the scorecard. They just have played 2 deliveries. There's an appeal for a run out on the non-strikers in. So Poloka continue decision at the moment. Third umpire decision is pending. Chirag Shanbag, Mumbai Paltasanche एक key player, the most proudest player, most trusted player. बहुशः तगेल विकेट पडली म्हणजे मुंबई पल्तांसाक त्या एक हॉड आघात जावचे चान्सेस. That should be a moment of test for Mumbai Paltans. A decision is awaited here to know if it was a run out. Ninad Borkar, who is an extremely fantastic player in this tournament, is expected to be staying in the middle there. But if the team loses this wicket, that's what Suresh was mentioning, that they would be in troubles. So GSB Premier League match चलत राज्यामध्ये नॉट आउट म्हणाले डिसिशन थर्ड अंपायर येतं. सो बॅट्समॅन चिराग शानबाग इज सेफ कंचे डॅमेज जाताना मुंबई पल्तांसाक. सो आय थिंक द dugout of Mumbai Paltans is very happy now. That's a relief. Gokul Gadiar from Auburn and gets that dot ball, but the keeper misses it. A bit of unfortunate for the team there. It was a nice delivery from the bowler. Keeper could not keep the ball. The batter gets a couple of good runs there. गोकुल गडियार गल्ल्यार बॉल बॅट्समॅन निनाद कंप्लीटली बीट जालो. बॅट्समॅन बीट जालो तितले न्ही अशी. That looks to be a catch. I'm not sure. I had to see this again if the replay is played. There was a bottom edge. That's another nice delivery onto the leg stick for a left-hand batsman. The batter gets the ball onto his body. The ball had a little bit of elevation. Height was there. It would have easily missed probably the bails or the wicket. That's a good decision from the umpire. So Gokul Gadiar bowling continue करतोस from the far end, that is from the Auburn end. Next ball, Chris Arya left-handed batter Chirag Shanbag. That's been bowled outside the offside. This time the batter was able to connect it, gets a single run. Attempt for a run out has been made. They may go for a decision here. That's not out. The batters were safe inside this crease. No confusion of whatsoever there. Umpire was clear on this decision. At the end of 1 over, we have 4 runs on the scorecard. सुरवे ओव्हर अंतू गोकुल गडियारान मस्त एक टाइटी लाइन हाडल्यान तरी बॉलिंग कोरनो बॅट्समॅनाक बांधून घालचे अंतू यशस्वी जाल्ला. चिराग शानबाग 1 रन स्कोर करून खेळतस 3 बॉल फेस केला ताणे. तशींची निनाद बोरकरान एदोळते 3 बॉल फेस कोरनो 1 रन स्कोर केला. For some of you who are watching live, I think there is a small difference in the score. The actual score is 4 and the TV card shows 3 there. From the Smart Bazaar end, we have Kaushik Shanai, who would be bowling the second over of this innings. Kaushik Shanai to Chirag. That's been picked full toss. The batter hits towards the deep square, gets a single run there.
Both the batters have decided they would rotate the strike and keep the scorecard ticking. We are on 5 for the without the loss of the wicket at the end of 1.1 over. Kaushik again to Ninad Borkar, will be bowling from Smart Bazaar end this time. Kaushik to Ninad this time. The batter gets it well connected, drives it towards the mid wicket and long on gap. Gets a single run. That was a nice fielding from the fielder there. Just could get that ball collected and thrown it back right into the hands of the bowler. सेकंड पॉवर प्ले ओव्हर चलतर संघ मस्त कंची हॉट शॉट येनी एदोलते मुंबई पल्टन्स सुरुवे बैटिंग करतो संघ मुंबई पल्टन्स चिराग शर्मगनी निनाद डॉग जन ओपनर्स जावनु क्रीसा मध्ये असती नेक्स्ट बॉल गलोक कौशिक शण रेडी जत्तस फ्रॉम दी स्मार्ट बाजार एंड मस्त लो जावन येईल बॉल हॉट एक शॉट मारचे प्रयत्नशील पॉवर प्लेचे ऍडव्हान्टेज घेऊचे प्रयत्न चिराग शर्मा करतस बट कौशिक तितले इजी जावन तक चान्स दितना कंचे रूम दितना नेला राहील बॉल चिराग शर्मा बीट जल्ला कंचे रन्येनी बॉल सीधा विकेट कीपर विघ्नेश बटल हाता गेलेलस डॉट बॉल जल्ला स्कोर पंचारी राबला. This is lofted straight into the hands of the fielder. That's a fielder who comes up from the long off. He did not have to do much. Just wait for the ball to land into his hand. That was slightly lofted ball. Did not had much of the punch in the shot. The batter wanted to place it in between no man's land. Unfortunate for him, it just landed into the hands of the fielder who was in long off. With this, a fall of the wicket starts for Mumbai Pultons. Mumbai Pultons are 1 down for the loss of 6 wickets at the end of 1.4 overs. 2 more deliveries to be bowled by the bowler here. Charan Kamath is the new right-hand batsman entering the field. चिराग शर्मा गलबेरी मस्त एक एक्सपेक्टेशन आशिल्ले टीम मुंबई पल्टन्साक बट या मॅचांत मस्त कसं कॉन्ट्रीब्यूट करू जायनी मस्त निराश जावन आउट जावन पेविलियनाक वापस गेला. आता चरण कामत लास्ट मॅचाचे हिरो हार्ड हिटर चरण कामत क्रीस आयला मस्त एक जबाबदारी असं तागेल कंद्यावरी पळोव्या कशी ते निभायसिता म्हणून चरण कामत या एक सेकंड राउंड मॅचांत. 2 more deliveries to be bowled by Kaushik Shanai, bowling from Reliance Smart Bazaar end. That's an attempt for a New Yorker, gets it to overdrive. That's a very nice fielding from the fielder there. He had to just bend himself, drop himself into the ground, hold the ball and return it back. That was the fielding which was much required at this moment. They are putting the pressure on the batter. Batters are not allowed to freely score the runs. That's when lofted towards the mid wicket. This time straight into the hands of the fielder. The fielder does not make any mistake. Jersey number 21. Naveen Prabhu is the fielder who just had to walk a couple of feet, lands into his hand. The ball does not swing anywhere, just drops into his hand. Naveen Prabhu does not make any mistake. Another fall of wicket for Mumbai Pultons. Mumbai Pultons seem to be in trouble at the end of 2 overs. They've already lost 2 wickets with a score of 6 runs on the scorecard. हॉट एक शॉट प्रयत्न केलेला बॅटर चरण कामतन बट टायमिंग तितली लायक नाशिल्ले प्लेसमेंट तितली परफेक्ट नाशिल्ले काही फिल्डर आशिल्ले की थंयची बॉल गेल्लो नवीन प्रभून लायक करून कन्वर्ट केला कॅच जावन. हेल चेक कोडियाला వచ్చి లాస్ట్ బస్ ఇక్కడ గంటకి బాయ్ సర్తా ఐకేయాచి कोडियाला వచ్చే లాస్ట్ బస్ ಹಂಗದಕೊನು आज ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟಕ ಬಾಯ್ ಸರ್ತಾ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sandeep Kamath is the new batter who is entering the field. कौशिक शणै मस्त एक सक्सेसफुल बॉलर म्हणून म्हणत तागेले नियंत्रणकारी बॉलिंग जावन आशिल्ले खाली 2 रन मात्र सोडून दिल्ले त्या ओव्हरांतू आणि 2 इम्पॉर्टंट विकेट्स घेतिल्लस डॉगजन टॉप ऑर्डर बॅट्समॅनाक पेविलियनाक वापस पेटयला कौशिक शणै. Both the wickets are been taken by Kaushik Shanai. He has been one of the fantastic bowler
With 1 over being bowled, he has just given 2 runs with those 2 wickets. Gokul Gadiar will be the bowler who will be bowling from Abaran end to Ninad Borkar. या टुर्नामेंटाच्या टायटल स्पॉन्सर जावन आसा ती आभरण त्या बॉलिंग एंडात देखून गोकुल गडियार बॉलिंग ऑपरेट करता आसा ती तशीच स्मार्ट बाजार अनेक बॉलिंग एंड कमेंट्री बॉक्स साइडान तू सो अद्भुत जावन आशिल्ले दीस यशवंत लायक एक क्रिकेट टुर्नामेंट पळोवचेक 16 टीम्स ह्या एक टुर्नामेंटात भाग घेतात विन जाल्ल्या टीमाक ट्रॉफी तशीच कॅश प्राइज मेळटा रनर अप टीमाक रनर अप ट्रॉफी ओटोची कॅश प्राइज तितले नाही अशी बेस्ट बॅट्समॅन बेस्ट बॉलर मॅन ऑफ द सिरीज मॅन ऑफ द मॅच असल पूरा इंडिव्हिज्युअल प्राइजेस असं आणि त्यावेळी सांगेल म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज प्लेयर एक अट्रॅक्टिव्ह 2 व्हीलर पैसेल सुझुकी यांनी स्पॉन्सर केलेल्या सुझुकी अवेनिस ब्रँड न्यू अट्रॅक्टिव्ह 2 व्हीलर मेळता सो पळोवका कोण या टुर्नामेंटाच्या चॅम्पियन्स जाता आज फायनल मॅच विल बी प्लेड ऑन संडे रात्री 7 जेवो 8 गंटेक आज फायनल मॅच जाता सो पळोवया कोण ट्रॉफी लिफ्ट करता म्हणून That's a good shot towards the mid wicket. This time the batter gets it easily, clearing the boundary line. Umpire signals at 6 with raising both the hands. लायक एक पावरफुल स्ट्रोक जेवन आशिल्ले निनादाले करेक्ट जेवन स्लॉट येवन पिक करून सीधा पेटयले मिड विकेटा वयर दुखून भायर सर रनाक अद्भुत जेवन आशिल्ले शॉट ह्या एक 6 आयल मित्र मुंबई पलतांसाक एक चेतरिके आयला म्हणून म्हाका दिसतस. Definitely Suresh, तू एक सांगले this tournament is extremely going well म्हणून. Let me put my experience here. मस्त कडेन हांव टुर्नामेंट पळयला आणि I have participated in couple of them. Looking at this crowd, very decent crowd, very supportive crowd, and more than that probably म्हाका म्हणिशिता हांगा कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन तांणी खंय एक टुर्नामेंट हांगा एक्झिक्यूट करता आसाची असल नमुने टुर्नामेंट probably I have not seen throughout the Karnataka wherever I have traveled. I would put this tournament on the pedestals and say this is the best tournament which this organizers are conducting for almost since 9 years, and year on year they are maturing and every time they are bringing in something different where all the audiences are always excited to reach the ground and see the match live anga tak mast vishesh manishit makka ani tajje otu tangel broadcast partner youth of GSB when they have joined this all together, that has become a moment for many of the people who are staying outside the state or international shapro. That's an outer edge. एक रन मेळटताय सांगता international viewers एक भारी hot opportunity to see, and more than that I would say I'm also blessed to be part of this organization and trying to comment on this tournament. This is one of the fantastic day that we have in this week, and we are yet to witness 2 more days that will be much more exciting than what you are seeing. Let me remind you, tomorrow is Saturday and the next day is Sunday, where we will be playing the finals and expect a lot of crowds to be around here. We are requesting the people who are watching live, if you have not subscribed, please do subscribe to Youth of GSB channel. Tashichi, if you are part of any part of this city, please do visit the ground, witness this match live. There are many other events which are being organized. एक tournament आवडतो, side wing अंतु मस्त activities organized केला. You have live orchestra चलता शिल सकाळी. I could not watch most of them, missing them, but I'm enjoying the cricket game here, being a part of commentator Suresh. खंडित जावन आम्ही हार्टफुल थँक्स सांगू का कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशन इथे म्हणणारी निरंतर जावन 10 वर्ष दुखून असल एक हाय लेवल टुर्नामेंट करचे तितले इजी नाही, बट त्यांनी प्रूव्ह केला कोडिया स्पोर्ट्स असोसिएशन एक ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ केला. ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡರೆ ಖಂಡಿತ ಕೈ ಚೂಕಿ ಜಾಯ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ತ ಜಲ್ಲಿ ಪದ ಮಣಿಸಿತ್ತಕ ಉತ್ತಮ ಮುಂಚಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. There is no way that we can just say thank you at this moment. Thank you for bringing in such a memorable day with this tournament being played here. This is the 10th season, 2026. This will be remembered for a longer period. 10th year is not easy to achieve. 10 successful and consecutive years you had been part of this and always organizing it with a good commitment.
ಸೊ 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಜಾರ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರ ಉರುಳಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ತಮ್ಮ 2 ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ವೈಡ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ಗೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 17 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. Nitin Kamath to Sandeep. That's a dot ball. Nice delivery. Slightly outside the off stick. The batter wanted to cut the ball towards the point. Gets it missing. No run has been scored whatsoever here. ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಾದ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸೆತ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಸತತ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿವೆ. ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 17ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. That's been driven. It was flighted ball straight into the bat. The batter gets at the bottom edge. Gets a single run. They are safe there. Score moves to 18. They have just passed that 17. Little bit of unlucky number is what it is seen in the field of cricket. 18 is the score. And they have 2 wickets being lost. 3.3 overs are being completed. 4ನೇ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿನಾದ್ ಬೋರ್ಕರ್ಗೆ. ನಿನಾದ್ ಬೋರ್ಕರ್ ತಂಡದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ. 11 ರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನಾದ್ ಬೋರ್ಕರ್. ಹೊಡೆಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ತಂಡದ ಪಿಂಚಿಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿನಾದ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Nitin to Ninad. It was again flighted straight into the feet of the batter. The batter connects it full toss, gets it driven towards the deep square leg, gets that single run easily. There was no much of effort. He had just to open his face, drive the ball towards the deep square leg. That's a nice shot. Score moves to 19. Nitin to Sandeep. This time the ball drops in front of the batter. Just had a good elevation of the ball. It was a quick rise and a surprise for the batter there. Keeper connects it well and returns it back to the bowler who is bowling from Reliance Smart Bazaar end. 4ನೇ ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ 5 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿತಿನ್. ಕ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತ್. This should be caught by the keeper. Bit of bad shot there. The ball had a much of elevation after it dropped into the ground. That was again a tossed ball in front of the batter. It had a quick elevation. It had a quick height of the ball. The batter could not get much of the depth there. He just had to get his bat connected in the top edge. The keeper holds the ball easily. That's another fall of wicket for Mumbai Paltans. ಎಸ್, ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ನ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತನ್ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 19ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ರನ್ ರೇಟ್. ಕರೆಂಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 5 ರನ್ 5.1 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಾದ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. For some of you who have just visited the ground, let me remind you or give you this information. GSB Bulls won the toss and opted to field. They have put Mumbai Paltans into batting. Mumbai Paltans looks to be into a trouble position. They've already lost 3 wickets for the loss of
They have already lost 3 wickets with a score of 19 runs at the end of 4 overs. You are witnessing the 5th over, first ball being delivered by the bowler there from Abaranyan. Adarsh Prabhu is the bowler. Looks that he got the first success with his first delivery. Slightly, the bat had the snick on the ball. The keeper does not make any mistake. This is the second catch for the keeper. Does not make anything wrong there. He got us well. Palms opened up to collect that ball. Was nice enough. Gets one more wicket for his team. With this, we are on 19 for the loss of 4 wickets. Mumbai Paltans looks to be giving up quickly here. They need to have a couple of partnership in the middle, need to rotate the strike, then get that last 2 overs. They're into a bad shape as of now, but doesn't matter. ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರಾಮತ್ತನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಡೇಂಜರಸ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ನಿನಾದ್ ಬೋಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಗಡಿಯಾರ್. Both the batters are yet to open their account, yet to play the first ball. ಎಸ್, 2 ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೋಕುಲ್ ಆಕಾಶ್ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಪದ್ಮನಾಭ್ ಗಡಿಯಾರ್ 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಸನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ರತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. That was an attempt to hit the ball towards the long off. The batter gets an inner hit. The ball just moves next to the leg stick. A bit of lucky there. Did not hit the wicket. Gets 1 run to his team. With this, Padmanabha opens up his account with scoring that single run with his first ball that he played. Sri Krishna is yet to open his account. He is yet to play the first ball. And we have Akash Prabhu who will be bowling to Sri Krishna. ತುಂಬಾನೇ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ತಾನ್ಸ್ಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ಸತತ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎತ್ತ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುನ್ಸ್ವಾಡ್ಕರ್ಗೆ 1 ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುನ್ಸ್ವಾಡ್ಕರ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುನ್ಸ್ವಾಡ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ ಇವರು. The 4th ball has been bowled by Akash from the Abaran end. This time the batter gets an edge of the bat, but nothing to be getting a score there. Could not make that opportunity for the drive. Gets an edge. The keeper holds it back and returns it to the keeper, bowler. ಎಸ್, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. 21ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈತರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಗಡಿಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಅನ್ನ ಎಗರಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. That was a ball between the middle and the leg stick. That's nicely bowled. The ball did not have much rise there. It just hit the wicket. Akash Prabhu gets a second breakthrough. He has been a lucky bowler. He has just given two runs on this over, and he already has 2 wickets yet to bowl the last delivery. Ajit Bhatt is the new batter. एक अनाउन्समेंट निखिल शणै मँगलोर म्हणाला हांगेले एक पर्स होडगून गेलेलस कोणाकाय मेळना म्हणजे दैकोर त्या कमेंट्री बॉक्स जेव्हा मेन स्टेज हाण दिवका त्या बॅलट भितर तांगेले कार्ड्स निखिल शणै मँगलोर म्हणाल नाव अस कोणा मेळला की त्यांनी दैकोर त्या पर्स हाण दिवका म्हणून तुमगेल्यागी विनंती करतो असत.
That's a neatly driven strike. Gets a single run. Score moves to 21 for the loss of 5 wickets. At the end of 5 overs, we have 22 now for the loss of 5 wickets. ನಿಖಿಲ್ ಶೆಣೈ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. Requesting attention of the audience here. Nikhil Shanai had seemed to have lost his purse. If somebody has found any wallet, we would request them to please do hand over that to the commentary box or to the main stage. It is told that he had a couple of his cards there, which is very important for him. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಯಶವಂತ್ ಅವರ 5 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇವಲ 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟನ್ಸ್ ತಂಡ. ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 4.4 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ 30ರಿಂದ 31 ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಸಾಕಾಗೋಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟನ್ಸ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. That's a dot ball by Kaushik, bowling from Reliance Smart end. Kaushik to Ajit Bhatt, an icon batter for the team. Kaushik to Ajit. This time Ajit misses it completely. That was a slower ball. Sri Krishna on the non-striker's end, standing and just watching the batter missing that ball. He is wanting that strike. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು. ನೇರ ಹಾಗೂ ನಿಖರತೆನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೌಶಿಕ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುರಸಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ 1.3 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಕಾನಮಿಕಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕೀಗ. Sri Krishna is the bat. He is an icon batsman. He is the one who can change this at this moment. Expecting a lot from him. That's been driven straight into the hands of the fielder. Almost at the edge of the boundary. Pranav but does not make any mistake. Bit of unfortunate for the batter there. He had a very high elevation on the ball but did not cover the depth. Actually, it just landed exactly at the edge of the boundary line. The fielder was well prepared to hold that catch. ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಣೈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್. ವಿನಾಶಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹುನ್ಸ್ವಾಡ್ಕರ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹುನ್ಸ್ವಾಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿತ್ತು. Definitely that would have been a 6 if he had just dropped that catch or if he did not cover that position. If you notice, Suresh, Kaushik is really strategically bowling here. He is not a fastest bowler, but he exactly knows where to pitch and get the batter tempted to get those big wrong shots, and that's what he's been successful here. ಎಸ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಣೈ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆತಗಾರ, ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸಿದ್ಧ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, 1 ರನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಟರ್. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಸತ್ಯಪ್ರಭುಗೆ 1 ರನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 23ಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಳಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೌಶಿಕ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ. The last ball of this over will be bowled by Kaushik from Reliance Martin. Ajit but drives it towards the covers. There should be an easy single. They are happy with that single. With this, the striking changes. ಸೊ ಒಳ್ಳೆಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಓವರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು, 5 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕೌಶಿಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ? Kaushik ಅವರದೊಂದು performance. If you look at Kaushik's statistics, actually he has played almost 81 matches throughout, and he's been one of the best bowler with almost 56 wickets in 81 matches. Many of the matches he would have not bowled 56 wickets in 81 matches. A good performance. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅರಿಯುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು, ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಘುಬಗನೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. 25ಕ್ಕೆ 6 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ರನ್ಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. Definitely, Suresh, they have re-strategized themselves, and Pranav Butt is the bowler bowling from Abaran end to Ajit Butt. ವಿಚಿತ್ರ ಶೈಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲರ್. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ರೌಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಬೌಲ್ಸ್ ದಟ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಲರ್. This would be tricky for the batter there. They would not know when he would bowl. ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಕಳೆದ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದು ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು, ಅಜಿತ್ ಭಟ್ ಅದನ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ ನ ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಅಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ನಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. That was an excellent attempt by Vivek, a fielder in the covers. He had to jump and pop his left hand to get a shot catch. Misses it though, but that's a good attempt. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ವಿವೇಕ್ ಪ್ರಭು ಅಂಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಂಡು. ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್, ಅಜಿತ್ ಭಟ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. That's another fall of wicket for Mumbai Pultans. They are struck on 27. There was just a life just before this ball. 27 is the score for the loss of 6 wickets. ಕೊನೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಭಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್ಗೆ. 27ಕ್ಕೆ 7 ಆಫ್ಟರ್ 6.3 overs. Suresh, I feel the batter should not have any regret. This is the only time that he has to stretch himself and attempt those shots. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲಿ. There should not be any regret. This is much required. They have to attempt bigger shots to get a decent score. We have Pranav Butt who got that wicket, bowling from Abaran end. He's another good bowler who has just given 2 overs. A bit of different style he has. He just does not let the batter understand what he is going to bowl. He just jumps himself in the middle there before he delivers the ball. Interesting action from this bowler. Yes, next ball.
ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. Would this be the third hat trick? Would there be a chance of third hat trick that we can witness in this match? ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬೌಲರ್ಗಳು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಭಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವರು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. GSB ಬುಲ್ಸ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂಬೈ ಪಲ್ಟಾನ್ಸ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. ಕೊನೆಯ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. Venkatesh Prabhu is the new batter. This is an opportunity for Pranav Bhatt to get his hat trick. The batsmen are cautious, but they cannot wail there or duck the ball into the ground. They have to go for a big shot. Only thing is, would they be able to clear the boundary and get those bigger shot or miss them completely? That's been placed towards the point, gets single run. There was an त्यामुळे एक अनाउन्समेंट केलेलं आहे, एक पर्स लॉस झाला म्हणून त्या पर्स मिळालंच. थँक्यू. We had announcement some time back that there was a purse wallet being lost by one of our spectators here. The person has got his wallet back. Thank you. In case if you have tried to attempted to find that, thank you for all your support. So last ball, innings such a courage bowler, Pranav to the left-handed batter Satyajit. सत्य गलल बॉलर, बॅट्समॅन सत्य बीट झाला आजीमध्ये. Looks like a run out. An appeal has been made. Is that a wicket? All right, it is out. So batsman is out. So Mumbai Paltans have ended their innings. 7 overs completed. 28 with the 9 wickets down. That means GSB Bulls Kodial will have to score 29 runs in order to win this match. So Yashwant, this is not a difficult target for GSB Royals, GSB Bulls Kodial Bile, because they've got a very good batting lineup. So I think GSB Bulls Kodial Bile can win this match easily here. Definitely, that's what it looks to me as of now. But let me not put this aside. Mumbai Paltans have to really think on what would they want to do when they get the ball in their hands. They have to really work with their excellent thought and put all the experiences of their icon players, and the fielding should be at the best. As much as they need to get their dot balls and get those wickets quickly, couple of early overs, getting few wickets can put the batters into always a trouble. So या मॅच नंतर नेक्स्ट मॅच प्रारंभ जाता. GRS फॅन्टसी पार्क मैसूर वॉरियर्स वर्सेस आबरण डायमंड्स. 2 टीमांचे कॅप्टन्स आणि टॉस खातीर येवका ऑर्गनायझर्स वेट करता सती मेन स्टेजला येवका म्हणून निमगून घेता सती GRS मैसूर वॉरियर्स आणि आबरण डायमंड्स कॅप्टन लागी. With this, we have a change in commentary. You will be hearing Satish from Mangalore in English.
Thank you so much, Suresh Bhadji and Raghavendra ji. Welcome back once again. The innings of GSP Bulls, Kodial Bile. Not a big target to chase down, but against Mumbai Paltans, you cannot underestimate any total. 29 is the target. Thanks to the bowling performance of GSP Bulls, Kodial Bile. Their outstanding job from the bowlers of GSP Bulls, and even good cooperation coming from the fielders as well. And because of that, they are prevented the opposition, the very formidable Mumbai Falcons, for just 28 runs and 29 target for the team GSP Bulls. Vignesh Bhatt and Ramesh Pai, the opening batters, came into bat here. And Vignesh Bhatt, everybody knows this potential, is one of the outstanding cricketer. As far as the batsman is concerned, one of the mighty striker of the ball. And we're going to start the innings here for team GSP Bulls. And wait and see how Venkatesh will going to get the start here. Baltans suddenly needed some outstanding bowling performance if they wanted to win this match. Here comes pass ball outside the run of off stamp, and they played it onto that back point region, and not really try to hit it too hard, Vignesh. But it's not a tall man, the little master, so that not so easy for him to get into that bounce of the delivery. And they played it gently down to point region for a single. He's off the mark, and GSP Bull Kodial Bile, they started their journey. Not a huge journey for the team GSP Bull, but the team Mumbai Paltans have to do that huge journey. For that, they have to get some good overs, especially power play over is going to be key for the success for both the teams. Venkatesh. Now to the right-hand batter, Ramesh Pai. Shot outside the run of off stamp, off the back foot, played it nicely into the deep cow point region. Fielder chasing the ball, just like a cat chasing a mouse, and at last the fielder winning the race against the bowler, against the ball, and ample time for batter to complete a couple of runs. So the good start there from Ramesh Pai. Once again, Venkatesh pitching it short. When you're bowling in the power play, it's always the little margin for error. You can't do the mistake of pitching it short. He's not really having an adequate field for that, and he didn't got ample face in the bowling. Once again, just wanted to get that one on the offside region, inside edge of the bat. Defeats the wicket keeper, but no question of any run. Even Ramesh wanted to get the single, but Vignesh Bhatt is not interested. You know exactly, no need to panic at all. When you're chasing a 29 to win this match, they have to concentrate about that, not to lose the wickets in the early stage of the innings. But the opposition team is badly required the wicket. Venkatesh to Ramesh. Nicely turns that one to fine leg division. Again, they're looking for couple. Easily they will go into complete the couple. With that couple of runs, Coburn moves on to 5 on the board. It will go into frustrate the bowler again. Just try to get that one around the legs of the batter. It's not a good line to bowl. Just like I mentioned about, needed some attacking bowling performance. Mumbai Paltans against the GSP Bulls, Kodial Bile. Time is exactly 10 past 40 in the night. Again played it. Oh, chance here for the fielder at extra cover. The fielder from mid-off tried to get the catch, but he couldn't manage to reach that one right time. The ball which is landed safely, and the Venkatesh has got a single. Ramesh got a single. The wicket singles command was on to 6 on the board without loss of any wicket. Mumbai Paltans, they're playing their second match. They won the first match. They started very well in this edition 10 of GSP with the victory, but GSP Bulls desperately wanted a victory. This time just going for the blind hit, not really able to get into that line of the delivery. Vignesh Bhatt, one of his favorite. He always loves to drive the ball towards the mid-wicket and long on, one of his favorite. But this time missed it completely. First over gone after completion of first over. GSP Bulls, Kodial Bile, 6 without loss of any wicket. 23 needed from 5 overs, 6 overs in fact, and 36 ball. They have to get remaining 23 runs to win this match. Not a big ask. 3.83 runs per over.
The bowler brought into attack ball the second over. We are talking about the time is 10:40, but it never looks like it's going to be a night 10:30. It looks like the morning 10:30. The way that the spectators showing their energy to come here and watch this prestigious cricket tournament. Absolutely electrifying atmosphere here in this most beautiful Shanborg Kudro Island cricket ground here in Nejamadi, Mulki. Sri Krishna brought into attack the ball the second over, round the wicket. This time, the chance here for the fielder to take the catch, and mid-off fielder will not going to make a mistake here. Ramesh Pai just wanted to take the advantage of the power play, just wanted to go over the top of the infield. Idea is right, but technique is not good. Just to try to play away from his body. The pays the penalty for that. The fielder just wanted to go back and just good enough for him to get into the position quite nicely. The wicket number first gone off GSB Bulls. It's 6 for 1. Sri Krishna strikes. We can see that the players dugout of GSB Bulls, I'm observing when they're bowling, when they're picking up each and every wicket of Mumbai Fultons, they're absolutely cheering their bowlers, their fielders. Now for the batters. Still they are in the driver's seat of winning this match, but cricket is a game of glorious uncertainty. It's an absolutely unpredictable game. You cannot underestimate the small total. If you underestimate, you have to pay the penalty for that. Vivek Prabhu, one more experienced campaigner. One more little master. Sri Krishna, second time it is over. Full toss delivery, easy for the batter to get the single. Always the new batter loves to play the full toss. Even though it can be punishable, but he's not interested in exactly. They're chasing not a big total. It's a 29 to win this match. 7 for 1. The fantastic crowd is enjoying the game of cricket, even though today is the first day of this cricket tournament, the Friday. Tomorrow will be the second day of this cricket tournament. Came down the track, tried to use his feet. Vignesh once again missing the line. Sri Krishna just getting that line and length away from the batter, seeing the batsman's intention as he's charging down the track. Again, moving the ball away from the batter, and no run scored is 7 for 1. The over number second is in progress. Again, wanted to swing that one, appeal for leg. It's given him now. Umpire takes his own time and he's raised his finger. The wicket number 2 gone. The much required is a big fish in the net. Vignesh Bhatt departs. Sri Krishna bowled a beautiful delivery almost in the midland leg stump. The Vignesh just tried to get that one into the onside region. Even is not impressed with the decision of the umpire, but umpire decision is always going to be a final.